Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good evening to all of us. So today, I would like to deliver presentations about development of 5G network-centric warfare, its component and challenges. Next slide, please. So I would divide this topic into 4 subtopics. The first one is that I will give very brief introduction to 5G, the KPI, the use cases, the standardization roadmap, and so on. And then from subtopic 2 until 4, they are about the military. What are the 5G key enablers that can be used for the military? How 5G can be very beneficial or can be used for the future battlefields? And the last but not least will be, so what are some technical challenges in there that we need to consider? Okay, next slide. So I will start with this triangle, which is very famous in explaining about 5G. If I only have slide, you can see here that in 5G, basically there are 3 very big use cases. The first one is called the massive broadband, which means that the speed is much faster than the existing 4G or even the 3G and so on. And then the next one, the bottom left, no, previous slide please. Okay. The bottom left is about the massive machine type communications. So this is about so many devices are connecting to the network. For instance, in some venue or in the stadium and so on, even if there are cellular signals, in most of the cases we cannot connect to the network. It is because a number of connectivity are limited. So in 5G, this kind of problems is solved. So one big use case in the 5G will be massive machine type communications, which is later on will be used very much for the IoT, Internet of Things, and so on. And then the third use case is about critical machine type communications. This is about the very low latency, even less than 1 millisecond latency. So using these 3 big cases or big use cases, then there are many possibilities, like using 5G for sensor network, using 5G for industry 4.0, using 5G for streaming, using 5G for autonomous driving or semi-autonomous driving, and so on and so on. Next slide, please. So if we want to see a little bit detail, then the upper left or upper right picture is showing how we can compare the 5G with the 4G. So 5G is much better in all the aspects, and then we can see also in there several KPIs of the 5G, but I think it is quite difficult for you to read. But here I just want to show you that with all these KPIs, all these performance, we have very big possibilities to use it in various type of use cases, for smart cities, for mobile broadband, for the automatic controls, real-time telematics, and so on and so on and so on. And of course, 5G is connected to the AI or on also the edge computing. Next slide, please. And in this slide, you can see that the standardizations of 5G is now still ongoing. We call it the release stages, release 14, release 15, release 16, release 17, and so on. 2022, so the release 17 is already there, which means that the full set of 5G will be available in the market already. And some countries have launched the 5G. I think Pakistan is not there, but some countries like Korea, Japan, US, Germany, Saudi, and many countries have launched the 5G, so they can use all the capabilities. Next slide, please. And then if we relate this to this event,
Actually, even though 5G is originally developed for civilian applications, recently there are many studies that it also can be used in defense. This study from Allied Market Research saying that global 5G in defense is expected to reach 70,000 million US dollar. This is quite significant number. Next slide, please. Next. So, how 5G can be used for the defense? There are several key enablers. I don't know if you can read the slides because the font is quite small. But actually, there are some enablers in the 5G that is very significant for the military. The first one is the NFV, Network Function Virtualizations, in which most of the network functions will be virtualized. And then also SDN, a software-defined network. The network will be defined using software, not hardware. And also network slicing, which is the set of matters, can be very easily changed and done for different types of use case. And then orchestrations, end-to-end orchestrations. This one is using AI, and then cloud native, mobile edge computing, and of course, microwave. Next slide. So with all those key enablers, we can see that there are many studies, many research about using the 5G for the military. Just a few examples, like the one done by LMT, and then Findable, and so on and so on. Next. So this slide explaining in brief about how this 5G can be used for military applications. Okay. The first and the foremost is that it can be used for the military decision making because of the quality of connectivity, the very low latency, and so on and so on. Several studies investigating about how 5G can be used for military decision making, and then also for smart warehousing, and then for distributed command and control in the battlefields. Even some studies are investigating about the use of the 5G for NTN, non-terrestrial network. Also for tactical communication. Tacticals means that in the battlefields, using millimeter wave, so that we can use very high frequency, high directivity, and very low latencies. Also for the proximity service, 5G for the AR, VR, augmented reality, and virtual reality, also the mixed reality, and also for the geointelligence. These are some pictures, some pictures that is showing that how this 5G can be used and has very big potential for the military applications. Next. However, we can see that still there are some challenges in the 5G. The first one, click please, next, is related to the KPI challenges. Not all KPIs are there, but it is in the process. Next. The next one is about architecture. 5G is much more efficient than other G, than 4G, than 3G, of course. But if you can see here that the contribution of 5-layer algorithms is about 5 times. Contributions of spectrum is about 20. And the big contributions comes from the smaller size. It is 1,600 times. So all these components, if it is there, then it's very good. But in fact, not all of them are there. Next. And the next one is the most important, I think the most important part here is that challenge of softwareizations. Okay, in the legacy network, in the 4G, software and hardware is interlocked together. Most of them are not open. Okay. And then in the 5G, there is so-called decoupling between software and hardware, so that we can develop the software and virtualize the hardware, and so on and so on.
And then post 5G, in the after 5G, beyond 5G, it is not just decoupling, but also orchestrated using AI. So this is the most important technical revolutions in the 5G. Next. Next one is about the bandwidth and delay. I think we can skip one, and then next one. Next one is about the use of the IP version 6. Next one. So, as we can see that one of the things that have big impacts on the security in the 5G is softwareizations. Softwareizations mean that NFV, SDN, it's cloud computing, and so on. All of them are softwareizations, and it has big impacts for the security aspects. Next. Okay. If we compare these five. अस्सलाम वालेकुम। आइडियाज 2022 के स्टूडियो से नसीम राजपूत एक मरतबा फिर बीटीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट और आज उसका चौथा और आखिरी दिन है। तो फिर तकरीबन 4 साल के वक्फे के बाद होने वाले आइडियाज 2022 आज ख़त्म हो जाएगा। रिकॉर्ड पार्टिसिपेंट्स एक मरतबा फिर दिखाई दिए, रिकॉर्ड जितने भी एग्जिबिटर्स थे वो भी दिखाई दिए, कई कंपनीज यहाँ दिखाई दी। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान के लोगों के माशी हालात बेहतर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में कुछ कंपनीज ने ऐसी प्रोडक्ट रखे जो आने वाले वक्त में रोजगार के मौके भी फराहम करेंगी। एट सेम टाइम पाकिस्तान की ये प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनली भी इंशाल्लाह ज़रूरत बनेगी। इस तरह हमारी जितनी भी फोर्सेज हैं, ट्राई सर्विस इवेंट है जिसमें हमारी फोर्सेज ने कई ऐसी नई चीज़ें रखी हैं कि जो काबिल दी थी, और जितने भी इंटरनेशनल बंदूक आए हुए थे, जितने भी डेलीगेट्स थे, वो खासे मुतासिर हुए और आने वाला वक्त इंशाल्लाह बहुत फायदेमंद होगा। दो इम्पोर्टेंट शख्सियत जो स्टेक होल्डर हैं इस आइडियाज 2022 के, इन्होंने अपनी कैसी इनकी यहाँ पे इस साल अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये इस आइडियाज 2022 की बात कर लेता हूँ, तो कैसा रहा इनके लिए बात करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है मिस्टर सईदुर रहमान, ये डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है कस्बा इंडस्ट्रीज के। थैंक यू वेरी मच सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर जहूर सरवर साहब, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की गवर्निंग बॉडी के रुकन है, जबकि इनकी अपनी कंपनी सरवर इंजीनियरिंग हाउस, ये भी जबरदस्त का काम कर रहे हैं। सब बात करेंगे कैसा रहा आइडियाज 2022। सईद साहब, कैसा सवाल सिंपल सा, आइडियाज 2022? बेसिकली आइडियाज 22 हमने इस्तेमाल किया है कि हमने अपनी प्रोडक्ट अपनी लॉन्च किया है, क्योंकि हमारी नई कंपनी का सेटअप था, तो हम इसमें भरपूर शिरकत की है ताकि हमारी अच्छी हो और ज़्यादा लोकल और इंटरनेशनल कस्टमर्स को हम अपनी बारे में बता सकें और उनको अपने बारे में बता सकें कि ये कंपनी नहीं हुई है। बेसिकली हम एक्सपर्ट हैं एयर डिलीवरी वेपन्स की डेवलपमेंट, डिज़ाइन और क्वालिफिकेशन के। ये सेटअप हम इसलिए बना रहे हैं कि हम इसी चीज़ को एक आगे लेके जाना चाह रहे हैं कि हम इन सारी प्रोडक्शन की तरफ ले जाएं। इसलिए हमारा कंसंट्रेशन है कि हम लोकल डर को ही इस्तेमाल करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड काम करें कि सारे मैकेनिकल आइटम पार्ट्स और जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं और कंपनी के जो पार्ट्स हैं हमारे लोकल वेंडर्स बने और हम उनके साथ इंगेज हों ताकि हम उनके क्वालिटी एस्पेक्ट को देख सकें और हम अपने सेटअप में सारे पार्ट्स को लाके फाइनल इंटीग्रेशन अपने हाथों से। हमारे सेक्टर में बात करें तो हमारे इंजीनियर हैं ऐसे जो जी बिल्कुल, आप मतलब ये काफ़ी टेक्नोलॉजी का जो गैप है वो काफ़ी हमारे इंजीनियर्स ऐसे हैं कि जो इस गैप को पूरा कर सकते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास जो अच्छे क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं उनको हम अपने साथ रखते हैं और उनको हम इन वेंडर्स की प्रेमिसेस पे डिप्लॉय कर देते हैं और उनके साथ हमारे क्वालिटी के लोग भी साथ जाते हैं ताकि हम उनका लेवल और उनका वो जो प्रोडक्शन की वो है फैसिलिटी उसको इतना एनहांस करें कि वो एरोस्पेस की चीज़ों के काबिल हों और उसको आगे लेके चलें। सबसे पहले तो उसकी क्वालिटी पे बहुत नजर जी बिल्कुल, सबसे पहले तो क्योंकि हम उनको ड्राइंग के साथ, क्योंकि वो क्वालिटी के लिए कि सबसे पहला करना है कि जो मटेरियल उनके पास आए वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, उस फैसिलिटी अवेलेबल है, उसको कैसे लेके ट्रेस है, फिर उसकी जो फर्दर मशीनिंग है, प्रोसेसिंग है, उसको किस स्टेप पे हमने क्या चेक्स करने हैं, उसको कैसे लेके चलना है। और अल्टीमेट गोल ये है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट उसमें जितनी से कम होती जाए आहिस्ता आहिस्ता उतना उन फायदा कि हम आखिरी स्टेज पे, हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि आखिरी स्टेज पे आके ही हम उनको चलें और बाकी उन्होंने ट्रेसेबिलिटी की अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी की हो ताकि हम उसके लेके चलें, क्योंकि एरोस्पेस स्टैंडर्ड्स का हमें एक स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ती है जिसके लिए जो कस्टमर या एंड यूजर को जो चीज़ जाती है उसके साथ ये डॉक्यूमेंटेशन जाती है और जितनी ही इंपॉर्टेंट या ज़रूरी ये प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा ज़रूरी उस डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन उसकी वेरी और उसकी वेरिफिकेशन लिए बहुत अहम है।
तो हमारी बिल्कुल हमारी IDEAS 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform G2G, BUG, and E2 engine, joint ventures and investments in the defense production sector. A search seminar will also help to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 5th edition of IDEAS will be held on 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. अस्सलाम वालेकुम। आइडियाज 2022 के स्टूडियो से नसीम राजपूत एक मरतबा फिर बीटीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट और आज उसका चौथा और आखिरी दिन है। तो फिर तकरीबन 4 साल के वक्फे के बाद होने वाले आइडियाज 2022 आज ख़त्म हो जाएगा। रिकॉर्ड पार्टिसिपेंट्स एक मरतबा फिर दिखाई दिए, रिकॉर्ड जितने भी एग्जिबिटर्स थे वो भी दिखाई दिए, कई कंपनीज यहाँ दिखाई दी। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान के लोगों के माशी हालात बेहतर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में कुछ कंपनीज ने ऐसी प्रोडक्ट रखी कि जो आने वाले वक्त में रोजगार के मौके भी फराहम करेंगी। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की ये प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनली भी इंशाल्लाह ज़रूरत बनेगी। हमारी इतनी भी फोर्सेज हैं, ट्राई सर्विसेज इवेंट है जिसमें हमारी फोर्सेज ने कई ऐसी नई चीज़ें रखी हैं जो काबिल दीद थी, और जितने भी इंटरनेशनल बंदूक यहाँ आए हुए थे, जितने भी डेलीगेट्स थे, वो खासे हासिल हुए और आने वाला वक्त इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगा। दो इम्पोर्टेंट शख्सियत जो स्टेक होल्डर हैं इस आइडियाज़ 2022 के, इन्होंने अपनी कैसी इनकी यहाँ पे इस साल अगर बात कर लेता हूँ, यही आइडियाज़ 2022 की बात कर लेता हूँ तो कैसा रहा इनके लिए बात करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है मिस्टर सईदुर रहमान, ये डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है कस्बा इंडस्ट्रीज के। थैंक यू वेरी मच सईद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर जहूर सवर साहब, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की गवर्निंग बॉडी के रुकन है, जबकि इनकी अपनी कंपनी सर्वर इंजीनियरिंग हाउस ये भी जबरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। इनसे जरा बात करेंगे। सर आइडियाज 2022 सर कैसा रहा? सवाल सिंपल सा, आइडियाज 2022 बेसिकली 2022 को हमने इस्तेमाल किया है कि हम अपनी प्रोडक्ट कंपनी को लॉन्च किया है, क्योंकि हमारी नई कंपनी नया सब था तो हमने इसमें भरपूर शिरकत की ताकि हमारी लॉन्च अच्छी हो और ज़्यादा लोकल और नेशनल कस्टमर्स को हम अपनी के बारे में बता सकें, उनको अपने बारे में बता सकें ये कंपनी नई शुरू है। बेसिकली हम एक्सपर्ट हैं एयर डिलीवर्ड वेपन्स की डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, क्वालिफिकेशन के। ये सेटअप हम नया इसलिए बना रहे हैं कि हम इसी चीज़ को एक स्टेप लेके आना चाह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स को सीरियल प्रोडक्ट्स की तरफ लेके जाएं। उसके लिए हमारा सेंटर ये है कि हम लोकल वेंडर को ही इस्तेमाल करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड काम करें कि सारे मैकेनिकल आइटम पार्ट्स और जो इलेक्ट्रो पार्ट्स हैं और कंपोजिट पार्ट्स हैं वो सारी हमें लोकल वेंडर्स बनाएं और हम उनके साथ इंगेज हों फुली, ताकि हम उनकी क्वालिटी एस्पेक्ट को देख सकें। अपने सेटअप में उन पार्ट्स को लाके उनकी फाइनलेशन अपने हमारी अगर प्राइवेट सेक्टर बात करता हूँ तो हमारे इंजीनियर्स हैं, मतलब ये एक टेक्नोलॉजी का जो गैप है, काफ़ी ऐसे हैं कि जो इस गैप को पूरा कर सकते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास अच्छे क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं उनको हम अपने साथ रखते हैं और उनको हम इन वेंडर प्रेमिसेस पे डिप्लॉय करें और उनके सारे क्वालिटी के लोग भी साथ हैं, ताकि हम उनका बिल और उनका वो जो प्रोडक्शन की वो है फैसिलिटी उसको इतना एनहांस करें कि वो एरोस्पेस ग्रेडों के काबिल हों और उसको आगे लेके चलें। सबसे पहले तो क्वालिटी पे बहुत नजर जी बिल्कुल, सबसे पहले तो क्योंकि हम ड्राइंग के साथ, क्योंकि वो क्वालिटी के सबसे पहला काम है कि जो मटेरियल उनके पास आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, उसकी ट्रेसेबिलिटी अवेलेबल है, हम उसको कैसे ट्रेस करते हैं, उसकी जो आगे फर्दर मशीन है, प्रोसेसिंग है, इस स्टेप पे हमें क्या क्या चेक्स करने हैं, उसको कैसे लेके चलना है। और हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट उसमें जितनी कम से कम होती जाए उतना उनको फायदा है।
हम आखिरी पे, हमारा अल्टीमेट गोल है कि आखिरी स्टेज पे आके ही हम उनको चेक करें और बाकी सारी उन्होंने BT की अपनी डॉक्यूमेंटेशन की हो ताकि हम उसे लें, क्योंकि एरोस्पेस स्टैंडर्ड्स के साथ हमें एक स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ती है। इसके लिए जो एंड कस्टमर या यूजर को जो चीज़ जाती है उसके साथ ये डॉक्यूमेंटेशन जाती है और जितनी ही इंपॉर्टेंट या जरूरी ये प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा ऑलमोस्ट से ज़्यादा उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन उसकी वैलिडिटी और उसकी वेरिफिकेशन के लिए बहुत आम है। तो हमारी यही तो आपके पास साहब जरूर साहब, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की बॉडी के आप रुकन है। ओवरऑल अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की आइडियाज 2022 कितना इम्पोर्टेंट है, कितना लर्निंग प्रोसेस है, और खासकर अगर इनका एक इंटेलिजेंस के हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे भी कोई रिलेट करता है? जी बिल्कुल करता है। मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ पे कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने इस पे पार्टिसिपेट की आइडियाज़ में। ये बहुत ज़बरदस्त इवेंट है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो नेशनल इवेंट्स हैं उससे बड़े इवेंट कंसिडर होता है। ढेर इंटरनेशनल फर्म्स आई और हमने भी एक कोशिश हमने लोकल मैन्युफैक्चर ला के बिठाया जो पार्ट्स बना रहे हैं लोकल इंडस्ट्री के लिए, और इस हमें बहुत ज़्यादा मौका मिला। खुद पर्सनली गया, ढेर सारी इंटरनेशनल फर्म्स बैठी हुई, मैं उनसे मीटिंग करके आया, उनको कार्ड ये कि कोलैबोरेट करें। जिस किस्म का आपको पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री से चाहिए आपको मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बहुत एबिलिटी है सर। हमारी मुल्क से बनने ऑटो खासतौर पर 70 से ज़्यादा मुल्कों को एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा। तो ये बड़ी बात है और बिलियंस की एक्सपोर्ट है सर, ये कुछ जो छोड़ रही है, वेरी बिग एक्सपोर्ट। BMW, जैगुआर, इस तरह की गाड़ियों के पार्ट्स भी पाकिस्तान में बनते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। अमेरिका एक्सपोर्ट होते हैं, यूरोप एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन वो डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, वो ज़्यादातर सिविल गाड़ियों से रिलेटेड है। तो हमने इस आइडियाज़ का फ़ायदा उठा के उन इंडस्ट्री को गवर्नमेंट के साथ लाने की कोशिश की और इंडस्ट्री को जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं जो डिफेंस से रिलेटेड काम कर रही हैं उसके भी करीब लाने की कोशिश की। इट वॉज अ मार्वलस अपॉर्चुनिटी एंड वी टुक फुल एडवांटेज ऑफ इट। तो सही बात है सईद साहब, जिस तरीके आपने यहाँ पे एक तरीके से ये भी कह सकता हूँ कि मर्जर हो रहा है। पहली मर्तबा आप शिरकत हुई है तो डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनीज के साथ भी कोई मर्जर लोकल से हट के बात करो। इंटरनेशनल कंपनीज में ये हमारे ना एंड यूजर्स का है, मतलब मिडिल ईस्ट की मार्केट है जिसको हमने किया हुआ था, क्योंकि वहाँ पे फिर रिक्वायरमेंट होती है और हमारी काफ़ी वहाँ कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश हुए। काफ़ी डेलीगेट्स ने हमारे स्टॉल पे हमें विजिट किया। इनफैक्ट एक ये होता है कि पाकिस्तान को उस तरह करना कि श्योर करना कि उनको ये पता है कि ये वाकई कैपेबिलिटी है हम में ये डिलीवर करने की और बनाने की, तब वो आते हैं और वो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट किया हमारी काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट। और इवन यहाँ तक है कि दे आर ऑल इंटरेस्टेड कि वो हमारे साथ जॉइंट वेंचर करके और उसकी जॉइंट डेवलपमेंट हमारे साथ करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब लगा है कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ भी हमारी कोलैबोरेशन चल रही है, तो वो काफ़ी वो था। पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम डिफरेंट सर, लेवल डिफरेंट हो जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स का लेवल डिफरेंट होता है। कोई कस्टमर, कोई एंड यूजर, पहला सवाल उनका ये होता है कि बताएं कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स को क्या ये डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। पाकिस्तान एयरफोर्स के इस्तेमाल में है तो उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी हमारी क्रेडिबिलिटी और की और प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी का बहुत फर्क पड़ता है उसमें। जो भी ये आइडियाज 2020 करार दिया जाता है तो बिजनेस टू कई सारे MOU यही इस कमरे से बाहर अगर हम चले जाते तो ये साइन होते हैं। तो वो जितने MOU जितनी कंपनीज के साथ साइन होते हैं कभी कोई रास्ता बना, और मईशत के लिए कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है? मईशत के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना वो आप डुअल रोल रहा है कि आप जितनी आप प्रोडक्शन या इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान कर लेंगे, इसका मतलब है वो सारी प्रोडक्ट या वो सारी चीज़ें आपको इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इम्पोर्ट करने के लिए ज़ाहिर है आप डॉलर LCs को पड़ेंगी, वो डॉलर्स का होता है, वो आपका ज़र मुबादला बचेगा। फिर जब यही चीज़ यहाँ सेलअप होकर एक्सपोर्ट होगी तो ज़र मुबादला आता आएगा और वो रिटर्न हार्ड कैश होगा, तो वो काफ़ी इफेक्ट आपका होता है और उससे ये है कि और एवेन्यूज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़े। तो ये मतलब सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है, ये बहुत सारे एस्पेक्ट को ये कवर कर रही होती है। और इसमें ये हुआ कि जैसे सर कह रहे थे, मैंने हमारी ये कोशिश की, एक तो एस्पेक्ट ये था कि हम यूजर को देख रहे थे, लेकिन हम लोकल वेंडर्स को भी कर रहे थे। कॉम्पोजिट्स में कोई अच्छा वेंडर आया, कोई मैकेनिक मैन्युफैक्चरिंग में कोई अच्छा वेंडर आया, हमने उनसे जाके जरूर 1-to-1 बातचीत की है कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स इस तरह की हैं, और ये हुआ कि इस हुआ है कि कम से कम एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश हो गया। हमने सब यही कहा है कि मैं आज इंशाल्लाह बात होगी तो मंडे से हम ये हम शुरू करेंगे हर बंदे के साथ बैठे कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है और क्या वो फुलफिल कर सकते हैं करके। तो ये एक अच्छा आइडियाज़ के से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हुआ है कि हमें काफ़ी मतलब एंड यूजर आवा लोकल वेंडर हमारी ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्रोडक्ट के लिए हम लोकल वेंडर्स यहाँ नजर आए हैं जिनमें वो पोटेंशियल अवेलेबल है कि वो स्पेस क्रिएट की चीज़ें बन सकते हैं। सर कह रहे थे कि जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के भी ऑलमोस्ट उतने स्ट्रिक्ट या हुए हैं कि जितने हमें एरोस्पेस की चीज़ों के लिए चाहिए थे। तो वही वेंडर अगर वो काम कर रहे हैं तो हम उनको डाइवर्सिफाई करना आएंगे कि वो इस तरह आए और ये हमारे कोलैबोरेशन करें ताकि हम ये काम कर सकें। ठीक है जरूर साहब, आइडिया बिजनेस के लिए आने के बाद तो आज तरीके से इसमें बात की कि कई सारे आइडियाज हालांकि क्या उनसे रिलेट कर सकता है जिनके पहले पता भी नहीं था, अब वो लोग कहाँ तक इनके करामत साबित होंगे वो मंडे से शुरू हो जाएगा। जैसे सही सारे
4 दिन और काम शुरू हो गया, आप लीगल में आ जाएंगे। आज Yeah. थ्योरी या पेपर्स जितने से वो बंद हो गए। Yeah. ठीक है, सो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आई देती है, और वो ये है कि दुनिया जितनी कॉम्पिटिटिव हो गई है उसमें रेट्स बहुत काउंट करते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस बहुत कम करते हैं। अगर हम मोस्टली अपनी चीज बातें तो हमारी अपनी ममालिक में जा रही हो, मिडल ईस्ट में जा रही हो, क्योंकि हमारा फ्रांस यारी बिल्कुल डिफरेंट है, उनके रेट से बिल्कुल पैदा हो जाते हैं। जब इन्हीं ममालिक में इनकी तादाद बहुत बड़ी, लेकिन हम उस कंपटीशन को प्राइस वाइज मैनेज करते हैं। मैं जो गवर्नमेंट रहे हैं उनसे काफी अपील की, आपके तो वसत से भी ये आवाज पहुंचाना चाहूंगा कि आप हर दफा जो $200 की चीज इंपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान में अगर आपको $50 में मिल जाती है और उसी क्वालिटी की मिली है तो आप उनकी तरकीब तो बात दीजिएगा, इम्पोर्ट तो इस चीज को छोड़ कर लेना कि एक चीज लो सकती है और स्टैंडर्ड भी पूरे कर रही है, फिर आप इम्पोर्ट क्यों करते हैं? ये एक ऐसी चीज है। तो बंद की हुई है, नहीं सर, नहीं, कोई ऐसी नहीं। अच्छा, हम इम्पोर्ट लगातार लगे हुए हैं सर, हम हर चीज की इम्पोर्ट लगे हुए हैं। जो लोकल इंडस्ट्री है वहाँ पे भी यही होता है, जो हम वो भी यही करते हैं। गवर्नमेंट अदारे भी सर मैक्सिमम इम्पोर्ट पे चल रहे हैं सर, और हमारा सबसे बड़ा यही है। तो बाकी आई भी चीज होती है ना वो हमें बहुत अच्छी लगती है, जो पाकिस्तान कराची में नहीं है या लाहौर नहीं है वो अच्छी नहीं लगती। मैंने कुछ ऑफिसर से रिक्वेस्ट उन्होंने करनी चाहिए, हमारे स्टेट्स बड़े हाई हैं। मैं कहा जी कराची एरिया में बैठ के हमारा एक लोकल मैन्युफैक्चर बोइंग के इंजन पार्ट्स बना रहे हैं, वो सिंगल सोर्स है 10 साल से दुनिया में, उसके अलावा वो पार्ट नहीं दे पा रहा उस प्राइस और उस क्वालिटी। यारंडी एक कंपनी है, मैं उसकी बात हूँ 10 साल से कराची में ही है, कराची में लांडी एरिया में बैठे हैं सर, और वो बना के बोइंग को दे सके हैं। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है पार्टी ले रही, बहुत से ऐसे पार्ट है पाकिस्तान से भर के जर्मनी जाते हैं, उनके ऊपर जर्मनी लिखा जाता है, हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से वो पार्ट पाकिस्तान में, जिस तरह हमारे कपड़े बन के जाते हैं और बाहर से होकर सपोर्ट नहीं किया जा रहा पाकिस्तान बिजनेस। सर मैं ये समझता हूँ, इंपोर्ट को बढ़ा के, मैं ये तो नहीं कहूँगा सपोर्ट नहीं किया जा रहा, मैं ये तो नहीं कहूँगा सपोर्ट नहीं किया जा रहा, मैं जरूर कहूँगा कि अगर हमारे गवर्नमेंट के अदारों में जो सियाह बैठे हैं वो इस चीज इंश्योर करें कि लोकल से अगर पार्ट बन जाए इम्पोर्ट होने दें। कहने की हद तक बहुत अच्छी बातें हैं, हर कोई ये बात करता है, लेकिन इम्पोर्ट आप देखेंगे उन्होंने डाटा को टैली कर, हमारी लोकल जो बनी हुई चीज है वो बहुत छोटी क्वांटिटी, हम सब ये बन नहीं सकते पाकिस्तान में, तो थोड़ा सा यही बनेगा। एक्चुअली बहुत कुछ बन सकता है, हमें एकदम मौका देना है वेंडर्स को। हम कहते हैं हम वेंडर को एक्सपोर्ट में जाने, सबसे पहले आप तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर, उसके बाद एक्सपोर्ट में ले जाइएगा ना। आप खुद जो पार्ट बाय रहे हैं वो तो लोकल इंडस्ट्री से लेना शुरू करें, आपकी क्वालिटी मीट तक मत ले। मैं इंडस्ट्री के लिए क्यों बात हूँ, इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से क्यों बात ये बार बार कर रहा हूँ कि हमारी जो इंजीनियरिंग कंपनीज हैं ये सब कुछ कर सकती हैं, आपकी क्वालिटी का नहीं होता मत ले, अगर बन जाता है तो फिर तो इम्पोर्ट ना करें ना। उसके बावजूद भी हम इम्पोर्ट में लगे रहेंगे, वो हमारे हालात श्रीलंका से बहुत बुने जा रहे हैं सर, हालात नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट जहूर साहब ने पैगाम आ गया जहूर साहब का, सही साहब आपका भी पैगाम इस सिलसिले में मिल जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमने अपने लोगों को मजबूत नहीं किया, अपनी इंडस्ट्री को मजबूत नहीं किया, तो फिर बुरे हालात आने वाले हैं, और अगर हम अपनी उन्हीं को सपोर्ट करते रहेंगे। एक पैगाम का भी आपका क्या है? मैं जरूर साहब की बात पर ये कर लूँ कि मतलब एरोस्पेस इंडस्ट्री में पार्ट के अलावा उसकी ना लोकल सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो अगर वो जो आप इंटरनेशनल बाहर से इंपोर्ट करते हैं चीज़, उसकी फिर जो वेंडर है इंटरनेट वेंडर, उसकी लाइफ साइकिल सपोर्ट के भी आपसे इतने पे चार्ज करता है कि वो इक्विपमेंट से ज़्यादा उसके पैसे पर आते हैं। तो अगर आपका लोकल वेंडर वो काम कर रहे हैं तो वो आपको कम उसमें उस सपोर्ट दे सकता है, क्योंकि उसके पास वो उसकी एक्सपर्टीज मौजूद होती है। तो वो भी एक एस्पेक्ट जिसको आपको देखना चाहिए, वो बहुत अच्छे तरीके हो सकता है। हम यही चाह रहे हैं कि हमारी शुरू से ही यही है कि हम लोकल इंडस्ट्री को, लोकल वेंडर को पढ़ें, क्योंकि जितना वो वोट होंगे और जितना अच्छा काम करेंगे हमारी सोच होगी, हमें चीज़ अच्छी मिलेगी और आगे। अपने लोग भरोसा नहीं कर रहे, मकसद गवर्नमेंट अगर भरोसा नहीं करती है अपने वेंडर्स, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। सर हमारी फिलॉसफी अच्छे से ये है कि हम लोग इसको साथ लेके चल रहे हैं। मतलब हमारा जो शुरू से सेटअप था वो एक टोटली लोकल मतलब फोकस R&D सेटअप था। अब हम प्रोडक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, अभी उस सिलसिले में कि हम इंटीग्रेशन सिर्फ करेंगे। हमने जब भी प्रोडक्शन की तरफ गए हैं किसी पार्ट के लिए, तो हमने वेंडर्स और लोकल इंडस्ट्री को बिल्कुल हमने टारगेट किया है, और उनको टारगेट करके फोकस करके हमारे भी वेंडर्स हैं, पेशावर हमारे वेंडर्स बैठे हुए हैं, कराची में भी हम काम इन लोगों वेंडर्स से रहे हैं। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता हमने कुछ और बढ़ाने हैं, ये आइडियाज जैसे आइडियाज का हुआ है, मुझे काफ़ी कॉन्टेक्ट्स ऐसे जिनको हम इस्तेमाल के और हम इसको आगे चल सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सईद रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर जहूर सरवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आइडियाज के इस प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ आइडियाज जनरेट होते हैं, और ज़ाहिर है ये तमाम बड़े स्टेक होल्डर हैं जो मुल्क की तरक्की में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, लेकिन इनके मसाइल भी सबके सामने हैं कि अगर लोकल इंडस्ट्री को, लोकल वेंडर्स को सपोर्ट नहीं मिली, एक हद तक जा सकते हैं, लेकिन उनका नाम, आपका जितना मटेरियल है बल्क में अगर ले सकता है तो सरकार की जितनी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, उसी तरह में वो वेंडर्स मजबूत होंगे। तो ये लोग मजबूत हो रहे होंगे जितनी इंडस्ट्रीज है एट द सेम टाइम, तो फिर पहला पत्थर तो सरकार को ही फेंकना पड़ेगा। ये आइडियाज के प्लेटफॉर्म अक्सर ये आइडिया जनरेट होता आ रहा है।
नसीम राजपूत अब इजाजत चाह रहे हैं आज आखिर में। अगर मजीद कोई प्रोग्राम होगा आपके साथ मुलाकात करें, अल्लाह ने के हम ये बहुत अहम इवेंट है कि ये पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स हैं डिफेंस प्रोडक्शन में उसको पेशकश करता है और मुल्क ममालिक को पता चलता है कि पाकिस्तान ने इस दिफाई पैदावार की कितनी तरक्की की है और सबको साथ जमा करता है। हमारे दोस्त हैं, हमारे जो एलाइज हैं और जो पाकिस्तान के बारे में चाहते हैं, तो उससे पाकिस्तान का अच्छा इमेज भी उजागर करता है और कौम में भी हिम्मत मिलती है कि हम खुद कफील हैं और अपने दिफा को हम खुद कर सकते हैं, ना कि हमारा इंसार कोई बाहर के मुल्क पर है। इस खिते का इमेज बड़ा खराब है, जंग, लड़ाई, तसादम, और हिंदुस्तान का इमेज है जहरियत का है। हमारा इमेज है अमन का, हमारा इमेज है लोगों को जोड़ने का, हमारा इमेज है बाहमी ताउन को बढ़ाने का, और ताउन का एक तरीका जो है वो डिफेंस एक्सपर्ट्स को बुलाना है। ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं समझता हूँ इससे अच्छे मौसम नताइज होंगे पाकिस्तान के लिए भी और इस खिते के लिए। I just want to Taylor stakeholders across diverse industries. The big sales platform for G2G, B2G, and E2G functions, joint ventures and investments in the sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions of global challenges within the defense. The collection of ideas will be held from 1922 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamu alaikum. This is Faisal Hussain from JB Industries, and we are representing our JB Industries as a manufacturer and exporter to US and Europe, and covering most of the brands, namely like Everlast and many retail brands, and we are also in promotional business. And I'm working here as a manager merchandise and marketing. Or we are here and we are ready to come over here and बहुत एक नेक्स्ट लेवल की एक हमें यहाँ पे एक्सपोजर मिल रहा है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री इस तरह से एक नेक्स्ट लेवल पे जाए और हमारे प्रोडक्ट को लोग एक्सप्लोर करें ओवर सेवरल स्टेजेस. अदर एक्सपो हैज डन आल्सो वेरी गुड आउट ऑफ देयर एफर्ट्स, सो कीप इट अप. थैंक यू वेरी मच.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अर्रहमान, वो जो निहायत मेहरबान है। अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, तालीम फरमाई उसने कुरान की, पैदा किया उसी ने इंसान को। अल्लमहुल बयान, सिखाया उसी ने, बोलना उसको। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद पाबंद है एक हिसाब के। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, और झाड़ियां और दरख्त उसको सजदा कर रहे हैं। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, और आसमान को बुलंद किया उसी ने और कायम कर दिया मीज़ान अदल, अल्ला ततगौ फिल मीज़ान, ताकि ना तजावुज करो हद से निज़ाम मीज़ान में। वक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान, और कायम करो सही तोल इंसाफ के साथ, और मत कम करो तोलते वक्त। वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम, और जमीन बिछाई उसी ने खलकत के लिए। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम, इस मेवे हैं और खजूर दरख्त हैं जिनके खुशों पर गिलाफ होते हैं। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान, और अनाज भूसे वाला और खुशबूदार फूल। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुलाओगे। खलक़ल इंसान मिन सलसलिन कल फ़ख़्ख़ार, पैदा किया उसी ने इंसान को ठीरे की तरह खनखनाती मट्टी से। वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार, और पैदा किया उसने जिन्नात को शोले से आग के। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन, रब दोनों मशरिकों और रब दोनों मगों का। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, रवा किए उसने दो दरिया जो आपस में मिलते हैं। बैनहुमा बरक़ुन ला यग़ियान, दोनों में है एक आड़, नहीं करते तजावुज। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। यख़्रुजु मिन्हुमा लुअ्लुअ वल मरजान, निकलते इन दोनों में से मोती और मूंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। वलहु जवारिल मुनशाअतु फिल बहरि कल अअलाम, और उसी के हैं जहाज भी ऊंचे खड़े होते हैं समंदर में पहाड़ों की तरह। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम, जो कुछ है इस जमीन पर उसको फना होना है, और बाकी रहेगी ज़ात तेरे रब की जो साहिब जलाल और एहसान करने वाला है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। यसअलु मन समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा बिशअनिन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मांगता है उसी से जो कोई है आसमानों में और जमीन में, हर रोज वो किसी काम में होता है। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। सनफ़ुरुगु लकुम अय्युहस्सक़लान, अनकरीब हम फारिग होते हैं तुम्हारी तरफ, दो बोझल जमातों जिन और इंसान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। या मशरल जिन्न
والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أو تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان। कहो जिनों और इंसानों, अगर तुम्हें कुदरत हो के निकल जाओ तुम किनारों से आसमान और ज़मीन के तो निकल जाओ, नहीं निकल सकते तुम सिवाय जोर के, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران। छोड़ दिए जाएंगे तुम पर शोले आग के और धुआं, तो ना कर सकोगे तुम उनका मुकाबला। فبأي آلاء ربكما تكذبان। कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। فإذا انشقت السماء فكانت وردة كدهان। फिर जब फट जाएगा आसमान तो हो जाएगा वो गुलाबी तेली तलछी की तरह। فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो कौन सी नेमत को अपने रब तुम झुटलाओगे। فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان। उस रोज न पूछा जाएगा उस गुनाहों के बारे में किसी इंसान से और ना किसी जिन से। فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो कौन सी नेमत को अपने की तुम झुटलाओगे। يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالناس والبان। पहचाने जाएंगे मुजरिम अपने चेहरों से, फिर पकड़े जाएंगे पेशानी बालों और मुंह से। فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون। यही है वो जहन्नुम झुटलाया करते थे जिस मुजरिम लोग يطوفون بينها وبين حميم آن। घूमते फिरेंगे वो दरमियान में उस दोजक के और खौलते हुए गर्म पानी के। فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। ولمن خاف مقام ربه جنان فبأي آلاء ربكما تكذبان। और जो डरा खड़े होने से अपने सामने उसके लिए दो जन्नतें हैं, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। ذاتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان। बहुत सी शाखों वाले दरख्त, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। فيهما عينان تجريان। इनमें दो चश्मे बह रहे होंगे। فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो कौन सी नेमत को अपने रब तुम झुटलाओगे। فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان। इनमें हर तरह के फल दो किस्म के, तो कौन सी नेमत को रब की तुम झुटलाओगे। متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان। तकिया लगाए होंगे ऐसे बिछोनों पर जिनके असर रेशम के हैं और फल दोनों बागों के नजदीक झुक रहे होंगे। فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो कौन सी नेमत को अपने रब तुम झुटलाओगे। فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان। होंगी उनमें शली निगाह वालियां, ना छुआ होगा जिनको किसी इंसान ने उनसे पहले, ना किसी जिन ने। فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। كأنهن الياقوت والمرجان। गोया वो हैं याकूत और मरजान। فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। هل جزاء الإحسان إلا إحسان। नहीं है जजा नेकी की
मगर ये बदला है आला दर्जे का। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की झुटलाओगे? من دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان और इन दोनों के अलावा दो जन्नतें और हैं, तो कौन नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? هامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان दोनों गहरी सब्ज रंग की शादाब, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुलाओगे? فيهما عينان نضاختان उन दोनों में हैं दो चश्मे उबलते हुए। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की झुटलाओगे? فيهما فاكهة ونخل ورمان इन दोनों में हैं फल और खजूरें और अनार। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? فيهن خيرات حسان इनमें होंगी एक सीरत खूबसूरत औरतें। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? حور مقصورات في الخيام वो हुए जो महफूज हैं खैमों में। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? لم يمسهن إنس قبلهم ولا جان ना छुआ होगा जिनको किसी इंसान ने उनसे पहले, और ना किसी जिन ने। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को रब की तुम झुटलाओगे? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان तकिए लगाए बैठे होंगे मसनदों पर सब्ज रंग के और खूबसूरत हफीस। بأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को रब की तुम झुटलाओगे? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام बाबरकत है नाम तेरे रब का जो साहिब अजमत है और एहसान करने वाला है। صدق الله العظيم। बहुत खुशी है कि 2022 एक मरतबा फिर कराची में हो रहा है। इससे पहले कोई 11 के करीब हुए थे, लेकिन मेरा ख्याल आज जितनी इसकी ज़रूरत थी इससे पहले कभी भी नहीं रही। और उसकी बड़ी बुनियादी वजह है कि इस तरह की इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुई है कि पाकिस्तान का इमेज तर होता है, जो पाकिस्तान का जनरली इमेज बाहर रहा और ख़ास तौर पे पिछले 4 सालों में। इस तरह की एग्जीबिशन हमेशा उस चीज़ को क्रिएट करती है कि पाकिस्तान को जो बहुत से एक परसेप्शन आया हुआ है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री। Such an exhibition will demonstrate Pakistan is one of the safest country. There are problems in many countries, बहुत से मुल्कों में बहुत सी प्रॉब्लम हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सी प्रॉब्लम हैं, लेकिन जब कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आते हैं, बाहर के चीफ्स आते हैं, बाहर के हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स, हेड ऑफ द स्टेट्स आते हैं, तो फिर ये साबित करता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान खासतौर पे कराची जिसके बारे बहुत से लोगों ने बहुत सा ख़राब इमेज बना है, इस तरह की एग्जिबिशन इमेज को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होती हैं। और आई विश आइडियाज़ 2002 बेस्ट लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असलम खान, ब्यूरो चीफ दुनिया टीवी कराची। 11वीं आइडियाज़ के हवाले से आज ब्रीफिंग रही और हमें जिस तरह बताया गया है कि तकरीबन 229 अपार्टमेंट होंगे, 100 से ज़्यादा मालिक हैं जो यहाँ पर इसमें शिरकत देंगे। पहली आइडियाज़ से हम
यहाँ तक पहुंचे कि इसमें 2 नए ममालिक भी आए और ऐसे ममालिक भी हमारे पास आ रहे हैं जिनके साथ हमारे जो ब्रादराना ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात हैं। और मैं ये बताऊं कि हमारा तैयार है जेफ थंडर 17, उसमें बहुत से ममालिक ने खरीदारी में दिलचस्पी किया। माजी में अगर हम देखते हैं कि हमारा अल-ज़रार टैंक बहुत मुल्क उसकी खरीदारी में दिलचस्पी रखते थे और अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। मजमूई तौर पर आरिफिंग बहुत हौसले की हमारे लिए कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में भी किसी भी तरह पीछे नहीं है। हम पहली नुमाइश की अगर हम बात करें वो इंतहाई शानदार रही और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दिफाई नुमाइश है भी मजीद जो कामयाबी के झंडे गाड़ेगी, मजीद कामयाब होगी और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा कि हर दिफाई नुमाइश में हमें ये अब मालूम होगा कि हम दिफाई मैदान में किस हद तक आगे बढ़े। हमारी कौम उसके लिए भी ये बायस इत्मीनान है कि उसकी जो मुसाफाज है वो पूरी तरह तैयार है। किसी भी दुश्मन की जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए हम जो है वो पूरी तरह तैयार और It is a matter of great honor for me to extend a very warm welcome to the Defence Minister, State Minister, Secretaries, High Commissioner, our guest of National Business Group and Minister of International Defence Seminar 2022. Ladies and gentlemen, we are the National Defence Industry organizing the first year 2000 at Expo Center with 125 international and 150 foreign delegates. During last days, IDEA's concept is space, volume, excel, and foreigners. In IDEA's facility, we have record participation of 500 import exhibitors and 221 delegates representing 44 countries. And we are lucky with the here who was releasing that, and we had a record portion across the world. The opportunity to create the IDEA had risk affected. IDEA 2020 has to be rescheduled due to the COVID, which was one of the worst topics of living. World in general, and Pakistan in particular, fought with contention. Hope is not over, but we have learned how to do it. Ladies and gentlemen, I am glad to share that the 11th edition of IDEA is scheduled from 15 to 18 November 2022, the year of 75th celebration of independence of Pakistan. What a proud moment. Despite the gap of 4 years, we have received more than 70% available space state. Needless to say that IDEA 2022 will be much bigger in size and stature than ever before, inshallah. We are also in the process of extending invitation to defense delegation of around 85 countries and expect to receive positive from the honorable guests. IDEA has established itself as an effective and grand conduit for both mutual understanding, trust, friendship, and cooperation. In this regard, Pakistan's defense industry and vendor industry offer a great opportunity to the defense industry of the development. Ladies and gentlemen, it presents Pakistan's large defense industry to the world by showcasing Pakistan's defense capability in conventional depth. Aimed at exploring ways and means of partnership in defense production through joint ventures, outsourcing, and cooperation. Ladies and gentlemen, I would like this opportunity to share the vision of IDEA, which is four. On one hand, it aimed at increasing space for joint cooperation between Pakistan public-private interface with the region and global partners, while on the other hand, it is meant to enhance the possibility of public-private partnership, providing a unique opportunity to our friends from friendly countries to visit Pakistan, sit together, interact with each other, collaborate, operate to build defense ties, and find solutions to problems confronting the region and the world. I wish to make a special mention of Ministry of Commerce as well as the Development Authority of Pakistan for the all-out support and availability of Expo Center Karachi as a venue for the IDEA's 2022. I would also like to thank Ministry of Communication and Director General Pakistan Post for according approval for issuance of commemorative postage stamp on 14 August 2022, signifying the holding of the edition of IDEA in 75th year of celebration of independence of Pakistan. May I mention
that the government of State and Karachi District Station have always been forthcoming and very supportive of holding mega event in Karachi. I would also like to thank Badar Institution, event organizer, for his unique, untiring efforts and wholehearted support. Ladies and gentlemen, in the end, I'd like to thank all the worthy guests for accepting the invitation to attend this meeting. Honorable Minister, we are especially grateful for your presence on this meeting. I thank you all, ladies and gentlemen. Pakistan and Zindabad. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. A very well organized event. Thank you to all the organizers. My name is Salim Jan Mohammed from Kenya. We import hospitality items from Pakistan. Very organized event and a very interesting one as well. The only plea I would make to the Pakistan government is to try and encourage Pakistani textiles into East Africa. The difficulty we're having is the challenge of much lower duties from the commerce countries like Egypt, where bed linen is 50% for Pakistani product and 5% for Egyptian goods. Even though Pakistan imports so much tea from Kenya, their duty rates to Kenya are far more than other countries. So please, if you can do something about it. Thank you very much. Bye-bye. देखिए, जब ये कंसीव हुआ था आइडिया के भी आइडियाज़ करना है, तो उस वक़्त मकसद यही था कि जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर किया जाए और उसी को लेके जितनी भी एफ़र्ट्स हुई, जितना भी हमने लोगोज़ बनाए लाइक आर्म्स फॉर पीस और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है इन public sector and private sector both for the defense equipment and defense industry, वो हाईलाइट नहीं हो रहा था जैसे होना चाहिए था। तो जब से आइडियाज़ आया है तो हमने अपने शोकेस करना शुरू किया है प्रोडक्ट्स को, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ डेपो। तो उससे एक बड़ी पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का गया है और लोगों को पता चला है कि पाकिस्तान एक इतनी ताकत है, ऐसी पावर है कि जो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें बना रहा है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़ी डिमांड है। डिफेंस सेक्टर को तो सपोर्ट करता ही करता है, मगर जो आइडियाज़ है ये ओवरऑल आपकी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। टूरिज्म भी इससे बढ़ता है, लोग जो बाहर से बहुत सारे डेलीगेशन आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं इसको अटेंड करने के लिए बाहर से, वो पाकिस्तान को देखते हैं। वो पाकिस्तान को देखने के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि ये बड़ा पीसफुल और अच्छा कंट्री है, खाने अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ डेवलपमेंट अच्छी हुई है। तो अदरवाइज़ जो उनके कॉन्सेप्ट होता नहीं, जब वो ख़बरों में देखते हैं तो कोई गार के ज़माने में चले गए हैं, मगर जब यहाँ आते हैं नाइस रोड्स बनी हुई हैं, नाइस बिल्डिंग्स हैं, ईटरीज अच्छी हैं, इसके अलावा मॉल्स हैं, तो उन्हें पता चलता है यार ये तो इस वन ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वो फिर जाके अपना इमेज हमारा जो है वो पॉजिटिव इसी तरह लोगों को बताते हैं और मेरा ख्याल है कि इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली एंड पॉजिटिवली टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान सिंस द टाइम आइडियाज़ हैव स्टार्टेड। एंड बदर एक्सपो जो है वो और आइडियाज़ जो हैं दोनों आप समझें कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लगता है कि भाई ये इन्होंने इतनी मेहनत की है कि इन्होंने
पाकिस्तान के इमेज को भी उजागर किया है और इस चीज़ को नहीं देखा कि इन फ़ायदा या नुकसान, इन्होंने सिर्फ ये देखा है कि पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर होगा, उसी हिसाब से फिर इन्होंने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है। तो बदर एक्सपो का बहुत कंट्रीब्यूशन है टू हाईलाइट आइडियाज़, टू पुट आइडियाज़ ऑन अ वेरी हायर पेडेस्टल। अल्हम्दुलिल्लाह। The other stakeholders across diverse defense industries. The exhibition of the platform for G2G, 2G, and 2G National Joint Ventures and Investments in the Special Sector. A trade seminar will also be held to facilitate discussions on challenges within the defense. The issue of ideas will be held from 19 to 20 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamualaikum. This is Amber Khan from Time Publishers Private Limited. हम लोग डाटा बैंक मैनेजमेंट कंपनी हैं जो कि पूरे पाकिस्तान A to Z तमाम बिजनेस सेक्टर्स को कवर करते हैं अपनी डायरेक्टरी में। और 3 वेज मीडिया है हमारा, एक प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है और ऑनलाइन। तो तीनों मीडिया में हम करते हैं आपका डाटा भी और आपके एडवर्टाइजमेंट्स भी। तो अपडेशंस के लिए हम डाटा कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमारा करके हमें भेज सकते हैं। सेकेंड वन, आइडियाज़ के हवाले से मैं आपको बताऊं, 4 साल के बाद ये आइडियाज़ हुई है। लास्ट वाली कोरोना की वजह से स्किप की गई थी। तो इस दफ़ा लोगों का और एक्साइटमेंट जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लोग यहाँ पे मिले हैं, क्लाइंटल भी काफ़ी अच्छा मिला है हमें यहाँ पे इस बार और लिसन भी बहुत अच्छा मिला। और आइडियाज़ में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी प्रिंट मीडिया को, जो कि लोग कहते हैं आज के अब इसका वक्त जा रहा है, आइडियाज़ में हमें बात दोबारा से बताई दी है कि नहीं, प्रिंट मीडिया ही अभी भी चाहिए हमें। तमाम जो कोर्सेज हैं वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम उनको प्रिंट वर्जन ही अपना दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लोग इतना यूज़ नहीं कर रहे। तो हमारी हार्ड कॉपीज़ डायरेक्टरीज जो है वो उनके पास ही होती हैं। बदर एक्सपो के साथ हम लोग काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं एज अ मीडिया पार्टनर और जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन ही सबसे ज़्यादा क्लोज कर दिया है आपको और बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है हमारी इनके साथ। और बदर एक्सपो के तमाम इवेंट्स की तरह आइडियाज़ भी एक बेहतरीन इवेंट रहा है इस बार। थैंक यू सो मच। My name is Elena. I'm from Russia. I am for suppliers which provide my company with good fabrics and materials. I am the first time in Pakistan, the first time in Sphere, and I am really surprised because of quality, capacities of manufacturers is very amazing, and I'm very happy. Thank you very much. The atmosphere is fantastic, and really lots of very professional guys in textile, a lot of foreigners. Everybody is very kind, and everybody smiles, so that's so nice. The management is okay. I participate in many international fairs, and I think that's in Pakistan it's a good level now.
एक्सपोजर में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से एक्सपो सेंटर कराची से मुखातिब है। बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट बचत एक्सपो 2024 आपके लिए सजाई गई है बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की जानिब से। उसमें जेडीसी का बहुत बड़ा रोल, उनके साथ साथ गवर्नर सिंध, कराची शहर की इंतजामिया, इन सब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मकसद यही था कि कराची के शहरियों को सस्ता सामान भी प्रोवाइड किया जा सके, एट द सेम टाइम कोई हल्ला गुल्ला कोई एक्टिविटी भी हो। तो देखें, आज आपको स्टार्ट ही एक्टिविटी से लेता हूँ। इन बच्चों के चेहरों पे खुशियाँ देखें आप, ये तमाम के तमाम बच्चे। यहाँ पर जंपिंग जैक भी मौजूद है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के खिलौने भी आए हुए हैं जिसको इंजॉय कर रहे हैं, टॉयज। यहाँ पर कार्ड भी है बच्चों के लिए जिसको वो चलाते हैं और जाके भरपूर अंदाज से इंजॉय करते हैं। लेकिन जो मैं आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ज़रा इधर आइएगा। यहाँ आप देखेंगे तो लोग की बहुत बड़ी तादाद खाने पीने से भी लुत्फानंदोज हुई है, क्योंकि रमजान के दिन अफ्तार भी करनी है आपने, सहरी भी करनी है आपने, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये तमाम के तमाम लोग आपको इस वक्त पहर ऐसा हो रहा है कि सहरी का टाइम ही, और ये सब आपको सहरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब लोग एंजॉय करते हुए दिखाई दे। यहाँ अगर हम आएंगे तो आपको मुख्तलिफ स्टॉल्स दिखाते हैं जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। आप खाने पीने की अशा, स्नैक्स, ईच एंड एवरीथिंग, ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ है। और तो यहाँ पे जिन लोगों ने पान खाना है तो पान भी यहाँ पर मौजूद है, और तो छोड़े आप चीज़ यहाँ पर रखी गई है। ये आप देख सकते हैं वाकई एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ आ रही है, विजिट कर रही है, खाना पीना इन सब का चल रहा है। डिफरेंट खाने आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आइसक्रीम भी अवेलेबल है, फ्राइड राइस भी अवेलेबल है, और अगर यहाँ से चलते हैं आगे तो ड्रिंक्स, हलीम और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको यहाँ पर वैसे आएंगी। अगर आप यहाँ पर आएंगे, लोग आपको यहाँ दिखाएंगे तो सारे लोग आपको खाते पीते हुए एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। एक बहुत बड़ी तादाद ने यहाँ बचत एक्सपो का विजिट भी किया और बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा उठा सकते थे, तो ये फ़ायदा आपके लिए भी। आप भी आएँ, कल आखिरी दिन है, यहाँ ज़रूर विजिट करें। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको हलीम भी अवेलेबल होगा और यहाँ आपको रोस्ट भी अवेलेबल है, मुख्तलिफ खाने आपको यहाँ मिल रहे हैं। अरे कैसा लोग आ रहे हैं, चले। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, काम सही है। मकसद है कि जिस मकसद से आए थे वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें आप, ये गर्मा गर्म आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं भाई आप, ये क्या है, क्या वैसे फ्राइड राइस है। ये फ्राइड राइस की तैयारी हो रही है यहाँ पे, लोगों को आप देख सकते हैं। और डिफरेंट किस्म की चिकन यहाँ पे मौजूद है, फ्राइज के डिफरेंट ब्रांड यहाँ पर हैं। आगे आते हो यहाँ पे गप्पे आपको मिलेगा, गोलगप्पे, चाट, ईच एंड एवरीथिंग अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको मैसर है। बारबेक्यू खाने का, अगर आप रोल खाने का मूड है तो के होटल भी यहाँ मौजूद है। सर आप कैसा यहाँ पे आके कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा एटमॉस्फेयर है और बेहतरीन सब माशाल्लाह। फैमिली के साथ आना चाहिए, फैमिली के साथ। और खास तौर पे आपने कुछ खरीदारी की? खरीदारी मतलब नॉर्मल चीजें, बस अब कुछ घर के जो जरूरत की चीजें थी वो ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुनासिब रेटों में मिली हैं। चले, तो यानी कि खुश होके जा रहे हैं बचत एक्सपो से अल्हम्दुलिल्लाह। चले, ये सब लोग यहाँ पर खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लोग खाते पीते हुए एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अंदर भी चलते हैं, जरा वहाँ की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। टपाल भी यहाँ पर मौजूद है, इतना बड़ा ब्रांड है टपाल फैमिली मिक्सचर, और ये फैमिली गाला ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस भी आप देखेंगे तो आप फैमिलीज दिखाई देंगी। बचत एक्सपो 2024 का मकसद यही था कि अपनी लोगों को, फैमिलीज को हमने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाना है। यहाँ आए तो अंदाज़ आप दिखाई देगा, अंदाज का ब्रांड खासा बड़ा ब्रांड, और ये अंदाज है बचत एक्सपो का भी। हम अपना एक अंदाज है बदर एक्सपो सॉल्यूशंस का, और जितने भी लोग जेडीसी, ऑनरेबल गवर्नर से सब यहाँ पर जुड़े, इसका एक अंदाज दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर मौजूद है। और हालांकि अब टाइम ऐसा हुआ है कि तकरीबन ख़त्म होने का टाइम है, तो कल आखिरी दिन है, पहुँचे आप यहाँ पर एक्सपो से एक्सपोजर बचत एक्सपो 2024 सीज़न 3 के डे 2 से नसीम राजपूत आपसे चाहता है इजाज़त। आप ये कह करके आप आएँ और आके इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। अल्लाह निगहबान।
2020 with other stakeholders across diverse defense industries. The organization offers a platform G2G, B2G, B2G, joint ventures and investments in the defense sector. The seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The auction of ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamualaikum. My name is Awais Nadeem. I'm Regional Business Manager in Fast Cables Limited. Today we are here on second day of IDEAS 22. IDEAS जो है एक बड़े गैप के बाद हो रहा है 2022 में. इससे पहले 4 साल पहले हुआ था. It's a good occasion where industries can introduce जो लोकली हमारी इंडस्ट्री आर्म्स की प्रोडक्शन कर रही हैं या उस रेलेवेंट जो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे आर्म्स को सर्व कर रही हैं, हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स को सर्व कर रही हैं, तो वो यहाँ पे सब मौजूद हैं. फास्ट केबल्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया. फास्ट केबल इज द फर्स्ट एंड ओनली मैन्युफैक्चरर हु हैज CCV लाइन टेक्नोलॉजी. और इसके अलावा वी हैव एल्यूमिनियम अलॉय प्लांट. We are the first Schema Gold certified here in Pakistan, and we also have launched the first Fast Tasdeeq, and we're the first one who launched their app in Pakistan, जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट्स को घर बैठे बाय कर सकते हैं. We also launched Fast Tasdeeq कि आप जब भी फास्ट का प्रोडक्ट मार्केट से खरीदें तो आपको रियल क्वालिटी प्रोडक्ट मिले. So we claim that Fast serves you with a real quality, and we are the manufacturer who has the highest capacity of production. We are manufacturing 33 cables, and also we are manufacturing green, जो कि हमने एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की है और हम उसके जरिए अपने नेशनल ग्रिड्स को और जितने हमारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं तो एनर्जाइज कर रहे हैं. सो सब लोग जो रेलेवेंट इंडस्ट्री या रेलेवेंट लोग हैं वो आइडियाज को जरूर विजिट करें. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि रियल फेस पाकिस्तान का, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का. थैंक यू. Assalamualaikum. My name is Haider Hussain, and I am the founding editor of Defense Media International. We are the media partners of IDEAS 2022, and we are looking which is Pakistan's international defense magazine. We are giving all sorts of media solutions which is related to the defense industry, and I hope you're all having a good time in IDEAS, and we look forward to see you at our stall in hall number 5. Thank you very much. मेरा नाम डॉक्टर निदा है. मैं इस JDC लैब में पैथोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ. मेरे साथ वर्दा ली हैं, ये मेरे साथ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हैं. हम लोग यहाँ पे हेल्थ एक्सपो में आए हैं. बहुत अच्छा इनिशिएटिव था बदर वालों की तरफ से. बहुत अच्छा, मतलब डिफरेंट कैटेगरी से हेल्थ से यहाँ पे हम गैदर हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये रहा है हम लोगों के लिए. मैं अपनी लैब बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ. हम लोग की लैब JDC फ्री डायग्नोस्टिक लैब है. यहाँ पे हम मोर देन 250 से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त. हमारी कैपेसिटी है मोर देन 1 लाख टेस्ट करने की पर डे, और हमारे पास जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. जैसे कि जफर भाई कहते हैं कि जिसका खून लाल है वो हमारे पास आता है टेस्ट करवाने के, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. मेरा नाम आदम कासिम है और मैं CEO हूँ इंडस्ट्री लिंक का. इंडस्ट्री लिंक हमारा क्या वेंचर है, एक IT कंपनी है, और हमारा वेंचर एक अमेरिकन कंपनी के साथ है, वेस्टिंग हाउस. वेस्टिंग हाउस किसी भी इंट्रोडक्शन आज नहीं है. वेस्टिंग हाउस सर्व कर रहा है फॉर मोर देन 100 years.
और इस वेस्टिंग हाउस की काफी बड़ी रेंज है MPLP के अंदर, डाटा ट्रांसफार्मर्स, बसेस, तो उसकी काफी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है। हम IEEE में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और IEEE में हम वेस्टिंग हाउस को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और IEEE मैं पर्सनली समझता हूँ कोलैबोरेटिव एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स, मल्टीपल वेंडर्स आते हैं और टीम है। हम प्रीवियसली IEEE पे पार्टिसिपेट करते हैं अपनी पुरानी कंपनी डाटा सोल्यूशन के साथ, जिसका फीडबैक, जिसका आउटकम बहुत टॉप क्लास है। और मैं स्पेशली यहाँ पे बदर को वालों को भी जरूर नाम दूंगा कि वो डे इन डे आउट काफी वर्किंग कर रहे हैं उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब जो है विजिट करें 10 सितंबर तक ये एग्जीबिशन होगी। तो हम वहाँ पे आपसे मिलना चाहते हैं, आपको वहाँ पे सर्व करना चाहते हैं और उसके आपको अपनी साइट को के बारे में बताना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जफर अहमद सैयद है। मैं मैनेजर सेल्स और मार्केटिंग हूँ शान इंडस्ट्रीज के में। शान इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था कोई आज से 30 साल पहले कॉन्ट्रैक्टिंग से, और आज माशाल्लाह जो है हमें पाकिस्तान की तमाम बड़ी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर को हम सर्व कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के हवाले से। हमने इस 30 साल के सफर के अंदर जो है एयर डिवाइसेस से लेके आज अल्हम्दुलिल्लाह AHU एयर हैंडलिंग यूनिट तो एयर कूल चिलर तक बना रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट, इक्विपमेंट की सप्लाई और उसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम गामजन रहें। हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि हम आपका कॉपरेट हमारे साथ रहेगा और उस कॉपरेशन में शान इंडस्ट्रीज के साथ और ग्रो करेगी और उसके अंदर जो है हम एक अच्छी सर्विसेज देने के मराइल में से कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, मेरा नाम रसद मशदी है और आई बिलोंग टू मिलिट्री व्हीकल्स पार्ट बिजनेस। और बेसिकली ये जो आईओ है इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपल जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। एक विंडो पे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है
थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स, और मैं बड़ा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा डेपो को जिन्होंने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है आफ्टर दिस लॉन्ग कोविड जो सारी दुनिया ने फेस किया है। और उसके बाद ये एक जब दुनिया में B2B पॉसिबल नहीं हो रही थी, तो मेरा ख्याल है ये डेपो ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि लोग अपने एंड यूजर्स तक यहाँ पाकिस्तान मीटिंग अरेंज कर सके, अपने प्रोडक्ट को ले जा सकें और अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सकें। सो मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड वेंडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट्स हैं, उन्होंने अपने डिस्प्ले भी किया है। एट द सेम टाइम बहुत सारे फॉरेन कंपनी जो है उन्होंने भी यहाँ पे डिस्प्ले किया है, जो कि बहुत अच्छा एक इंकरेजिंग पॉइंट है पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के लिए भी। और साथ साथ ये भी दिखाया जा सकता है दुनिया को कि यस वी आर रेडी, वी आर हेयर टू सर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री है एट द सेम टाइम ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करती है। सो ये जितना भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है विन विन सिचुएशन था फॉर बोथ साइड्स, फॉर गवर्नमेंट एजेंसी और फॉर द जितने जो इसके सेल कर रहे थे या अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे या अपने नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने आए थे। सो थैंक्स टू डेपो, थैंक यू वेरी मच। हमारा हम जो यहाँ पर आए हुए हैं वो जो जूसेस की तरफ है, हमारे पास डिफरेंट किस्म के जूसेस हैं जिसके अंदर हमारे पास पेट बॉटल में जूसेस हैं, एनर्जी हमारे पास नेक्टर जूसेस हैं, CSD है हमारे पास, कार्बोनेटेड जूसेस हैं हमारे पास, कोल्ड ड्रिंक हमारे जो पाकिस्तानी आजकल ब्रांड आता है कि काफ़ी प्रमोट हो रहे हैं, उसके लिए हमारे पास पाकिस्तानी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं। फिर हमारे पास केचप्स आ जाते हैं, टेट्रा जूसेस हमारे पास अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़बरदस्त इवेंट रहा है बदर का, जो लास्ट ईयर भी किया था अल्हम्दुलिल्लाह, उससे भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। और अभी जो ये यहाँ पर इस टाइम बहुत ज़बरदस्त है। बचत बाज़ार की वजह से हमने लगाया हुआ है। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ जो आए हैं लोग उनको डिस्काउंट ही देना है। यहाँ पर हमारे पास जो डिस्काउंट अवेलेबल है वो लगभग अप टू 40% है, 30-40% का हमारा डिस्काउंट चल रहा है मार्केट प्राइस है। तो थैंक यू बदर एक्सपो। पूरे मुल्क से यहाँ मवेशी मंडी 2024 जो कराची के एक ज़बरदस्त किस्म के त्यौहार की तरह ही मनाई जाती है और हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, तो जानवर बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गए। आपकी पसंद हर तरह के जानवर जो है वो यहाँ पर दस्तयाब होंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम के तमाम जानवर हैं ये मुख्तलिफ जगहों से आए और लोग यहाँ पहुँच गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मद, आप कहाँ से आए? मैं कनकोट से आया हूँ। कनकोट से। तो कितने जानवर लेकर आए? 32 जानवर लेकर के आया हूँ। और वैसे ही कितने आ चुके हैं अब तक जानवर? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे फर्स्ट गाड़ी जो है दोनों मेरे उतरे हैं। और उसके बाद जो है काफ़ी जानवर आ चुके हैं। नेक मोहम्मद भाई ने पहली गाड़ी उतारी है मवेशी मंडी में, तो एक काम हुआ है तो देखे ना आगे इसका रास्ते बनेंगे। नेक मोहम्मद भाई गुड लक, आप जो आए खरीदारी करने के लिए। और ये जो फीस वगैरह रखी गई है सब बेहतरीन है, इंतजाम आपके लिए जो किए गए खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक ठाक हैं और सिक्योरिटी हर चीज़ जो तैनात किया गया, सब कुछ जो हम पे उतरे हैं। फर्स्ट गाड़ी हमारे उतरे हैं तो इन्होंने सिक्योरिटी दे दिया, रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दिया। उसके अलावा जो बाकी दूसरे सिक्योरिटी निज़ाम थे वो भी ठीक ठाक थे, जो उन्होंने दे दिया हर चीज़। चलें, सिक्योरिटी इसका मकसद है कि तमाम व्यापारी जो यहाँ पर कारोबार करने के लिए आए, आपके लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का मौका फराहम करने के लिए आए, वो सब लोग बहुत मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि सिक्योरिटी से लेके तमाम इंतजाम बहुत ज़बरदस्त हैं। नेक मोहम्मद भाई थैंक यू वेरी मच और गुड लक, अल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, सारे आप देख सकते हैं चुकी है यहाँ पर मवेशी मंडी। मैंने जैसे कहा ना कि कनकोट से नेक मोहम्मद साहब आए थे और
बड़ी तादाद में हम देखें ना तो यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं और स्टॉल्स भी यहाँ पे बन गए हैं, पान के केबिन खुल चुके हैं, हर जगह पे आप देखें तो रौनक लौट आई है इस वक्त मंडी में। और ये देखें ये क्या ज़बरदस्त किस्म के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद जी। शहजाद भाई कहाँ से हैं आप? शेखुपुरा से। शेखुपुरा से। तो ये अल्लाह करे पंजाब से जानवर पहुँचे हैं, वहाँ आपने कंदकोट देखा और यहाँ पे शेखुपुरा से कैसा सब अरेंजमेंट वगैरह खुश बेहतरीन मज़ा आ रहा है यहाँ पे? बस मज़ा आ रहा है, हर साल होने 16-17 साल हो रहा है। अच्छा हर साल आते हैं तो सब बेहतरीन है। कितने जानवर लेकर आए? अच्छी जानवर 36 लेके आए। 36 जानवर लेकर आए, सारे ऐसे ही तगड़े नजर आ रहे हैं? सारे इधर ऐसा तगड़े ना, सारे तो अपने जानवर। अच्छा सारे भी आपके। आइए तो हमसे बात करते हुए चलते हैं। आपको क्या, आइए हमारे साथ बात करें थोड़ा सा। ये कैसा जो अरेंजमेंट्स आपके लिए किए गए हैं, आप व्यापारी यहाँ पर आए हो, ये ठीक अरेंजमेंट है? मुतमईन है आप? सिक्योरिटी से लेके सारे इंतजाम तामन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। सिक्योरिटी भी तामन कर रही है, फौजी भाई इतने होंगे ने भी सारा देख आते हैं तो बहुत ज़्यादा तामन कर। अच्छा बहुत ज़्यादा सारे लोग आपके आके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो सब आके ताउन, पानी से लेके कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है? कोई ये सानू परेशानी नहीं किसी काम दी है। आज 12-13 दिन हो गए ना आए नू, बाकी ये हर साल ही होने किसी साल भी ना परेशानी नहीं होती। अच्छा किसी साल भी परेशानी नहीं हुई है। तो ये आप देख सकते हैं बच्चे ने अपने अगले साल दे एक खीरे बच्चे ने। अच्छा हाँ जी 1 साल के बच्चे? हाँ ये 10 महीने दे 11 महीने दे अगले साल वास्ते पढ़ाई आते हैं। क्या आपने तैयार किए हैं यार? 10 महीने में क्या खिलाते हैं और आप भी क्या खाते हैं यार? खा रहे हैं अगे, देखो अगे वही खा रहे हैं। तो आप भी माशाल्लाह है वो जबरदस्त पहलवान है। पंजाब पंजाबी माना जी, कोई कराची वाले नहीं पंजाबी। मंडी देखूंगा सेरा बनने में। ये जरा देखें अंदान, जरा दिखाएं तो सही ना यार। ये जो काम हुआ हुआ है यहाँ पे, आप जानवर देख सकते हैं। किस आइए आइए जरा तो इधर आ जाएं, आप मेरे साथ इधर आए ना, आपके साथ बात होगी। ये जरा ये क्या प्रोडक्ट है आपकी? वैसे हम भी पलवानी है बिल्कुल सही बात। मंडी में घूमे ऐसा है बछड़ा कहीं? नहीं ये बछड़ा तो भाई कौन सी नस्ल कौन सी है ये साहिवाल क्रॉस है। साहिवाल क्रॉस भाई ये एक ही है मेरे ख्याल इस साइज की। हाँ एक ही है। कुछ बछड़ा देखो आपको पसंद लगा है? बहुत ही जबरदस्त किस्म का बछड़ा है भाई। बहुत ही जो है ना अपना मज़ा आया और हम लोगों को भी बता रहे हैं। पंजाब के शेर आपने देखे के बाकी में शेर लेकर आए हुए हैं ये लोग ना। पंजाब के आप ही शेर ने जरा देखें जरा अंदाज अपना। आप ही शेर ने देखा पंजाब के शेर दोबारा बोलेंगे आप? पंजाब के शेर हैं, जानवर भी शेर हैं, हम भी शेर हैं। शेर आ चुके हैं जी मैदान में। ये आप देख सकते हैं कि हमारी मंडी जो है वो मवेशी मंडी सज चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कोई पूरे मुल्क से, यानी कि KPK से भी लोग आए हुए हैं और हर जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। कैसा अरेंजमेंट्स वगैरह? खुश हैं, मुतमईन है, मज़ा आ रहा है? बेहतरीन माहौल है मंडी का माशाल्लाह, पहले से भी बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। VIP हैं, रास्ते भी खुले हैं, पानी का जो इंतजाम है वो भी बेहतरीन है। आप यानी कि बहुत मुतमईन है, बहुत खुश हैं? बेहतरीन बहुत ही। बिल्कुल असल चीज़ है कि ये तमाम व्यापारी जो पूरे मुल्क से आते हैं, इनका मुतमईन होना, इनका खुश होना, और आपने जिसको सुना होगा वो तमाम के तमाम लोग ख़ास मुतमईन दिखाई दिए हैं। वैसे मैं अगर थोड़ी सी आपको इस मंडी की डिटेल भी बता दूं तो उसके मुताबिक 2024 में 900 से 1000 एकड़ पर ये मंडी कायम हुई है। अगर आप देखें तो ये पूरा रकबा पीछे भी अगर आप दिखाएंगे तो दूर दूर तक 1000 एकड़ पर कायम की गई है। छोटी जगह नहीं है ये। उसके साथ साथ इसमें मजमूई तौर पर 20 ब्लॉक्स बनाए गए हैं और उन ब्लॉक्स की मैं बात कर लेता हूं तो उसमें VVIP ब्लॉक भी है, VIP ब्लॉक भी और नॉर्मल ब्लॉक भी है। तो तमाम के तमाम ब्लॉक आप लोगों के लिए, जितनी मवेशी मंडी में जितने व्यापारी आ रहे हैं, सारे मुल्क से आ रहे हैं और आके अपना कारोबार करने के लिए पहुँचे, तो 3 डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, जिसमें VVIP भी है, VIP भी है और एक नॉर्मल ब्लॉक भी। इसके 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक नहीं है। व्यापारियों को पहले पाइए की बुनियाद पर यहाँ पर तमाम मुफ्त जगह दी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो व्यापारियों को यहाँ पे फराम की गई है कि आए और आके आप बिज़नेस करें और इसके साथ साथ हमारे शहर के लोगों को, यहाँ बसने वाले लोगों को सुन्नत इब्राहिमी बेहतर अंदाज से अदा करने का मौका मिले। उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ तो कई और चीज़ें दिखाई देती हैं कि मंडी में दाखिला फीस फ़ी गाय और ऊँट 4250 रुपये है।
जबकि फी बकरा और फी बकरी की कीमत 2000 रुपये रखी गई है। तो एक मुनासिब कीमत रखी गई है मंडी में। जब आप अपने के आते हैं, आपने देखा होगा एक बड़ी तादाद में जानवर भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ नमाजियों के लिए ख़ास तौर पर मंडी में जगह जगह जो है वो मस्जिद की सहूलत फराम की गई है। इसके साथ साथ हर जगह पे जो लोग भी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आएंगे उनके लिए टॉयलेट्स रखे गए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको दिखाया था कि होटल से लेके जूस के स्टॉल और दीगर स्टॉल्स ऑलरेडी यहाँ पर कायम हो गए। बहुत सारी सहूलतें यहाँ पर फराम की गई हैं, जिनमें अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें ख़वातीन के लिए भी अलहदा पैलेस है। मैं एक मरतबा फिर आपको बताऊँ कि बहुत सारी ख़वातीन आना चाहती हैं बकरा पीढ़ी, लेकिन वो नहीं आ पाती सहूलतों की वजह से। तो आपके लिए नमाज़ पढ़ने की सहूलत भी है ख़वातीन के लिए। एट द सेम टाइम आपके लिए टॉयलेट्स पीने का इंतज़ाम यहाँ मवेशी मंडी में किया गया। इसके साथ साथ पक्के सीमेंट के ब्लॉक बनाए गए, बहुत सारे पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए बहुत सारे इक़दामात यहाँ किए गए। मवेशी मंडी में बैंक की सहूलत भी मौजूद है, तो बैंक की सहूलत भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी 24 घंटे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो कोई चीज़ छोटी नहीं है, मुंतज़मीन है। जो मसाइल पहले रहे हैं उन मसाइल को दूर किया जाए। और इस दफ़ा इंशाल्लाह जो लोग भी मवेशी मंडी ख़रीदारी के लिए आएंगे उन्हें कोई मसला नहीं होगा। कुछ पुरानी वीडियोस वगैरह होती हैं, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल आप व्यापारियों से भी सुन सकें, लोगों से भी सुन सकें, तो तमाम के तमाम लोग मुतमईन हैं, सबको इत्मीनान है। और आप इत्मीनान से आएँ और आके अपना जानवर यहाँ से ख़रीदें कुर्बानी के लिए और सुन्नत इब्राहिमी अदा करें। नसीम राजपूत आपसे यहाँ मुलाकात करता रहे, जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। मवेशी मंडी में तेज़ी के साथ जानवर आ रहे हैं, अभी तो वक्त खासा बाकी है, लेकिन पूरे मुल्क से जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिनको जल्दी ख़रीदारी करनी होती है जानवरों की, वो इस वक्त आके बासानी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानवर के साथ मानूस होते हैं, उसको पालते हैं, 15-20 दिन रखते हैं, तो फिर यहाँ आ जाए, आपको हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन रेट में मैसर होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मवेशी मंडी से इजाज़त चाहते हैं और आएँ और बाकी ख़रीदारी करें। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम वसीम उमर है और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बदर एक्सप्रेस पे हमने स्टॉल लगाया पराठों का, और मार्केट रेट से हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मार्केट 80 रुपये का है और यहाँ पे हम 150 रुपये का दे रहे हैं। एक में 6 पराठे होते हैं और ये 3 महीने तक फ्रीजर खराब नहीं होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बल्कि पाकिस्तान की भी कंपनियाँ, उनसे हमारा जो ना आप अगर ट्राई करें तो हमारा बहुत अच्छा है। ये इस वक्त कराची के अंदर चल रहा है, जो कि ज़्यादातर शहरी में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो ऑफिसेज वगैरह लोग होते हैं, जो सुबह में उनको जल्दी होती है कि जो जाके लाइनों में नहीं खड़े होते होटल में, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पराठा इस्तेमाल करते हैं और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो शुक्र है पूरे कराची के अंदर ये बड़ी बड़ी बिस और मिल्क शॉप पर दस्तियाब है। और बदर एक्सपो का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने रमज़ान के मुबारक ने में ये एक बड़ा स्टॉल लगवाया। और इसी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों के इधर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है मार्केट से। और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है बदर इंशाल्लाह हर साल हर महीने इसी तरीके से बाजार लगाते रहेंगे।
Honourable Minister, Defence Production, Federal and Provincial Ministers, Chief Minister Singh, the Chairman, Chiefs of Staff, Services Chiefs, Director General, Defence Export Promotion Organisation, Senior Civil and Military Delegates, Chairman and Chief Executive of the National and International Defence Organisations, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. It is my pleasure to speak at the 11th edition of the International Defence Exhibition and Seminar, commonly known as Ideas 2022. I am very pleased to see the presence of a large number of guests, including delegates, exhibitors, and trade visitors who travelled from around the world to join us today. I welcome you all to this special edition of Innovation and Excellence. Indeed, your presence here today truly strengthens our resolve to foster and promote strategic relations with our partners and friends while encouraging technological growth and knowledge sharing. Distinguished guests, since our government formed, our unity government formed in April this year, the coalition government has been engaged in efforts to bring the country out of various challenges. The most serious among these crises that has expended most of our time and energy is the stabilization of our economy. We inherited an economic catastrophe where Pakistan was on the precipice of a default, and shukr alhamdulillah, by the grace of God and the efforts of the unity government and the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we have yet to witness in our history. The most unfortunate aspect of this economic crisis was, in addition to the economic impacts of the COVID pandemic that affects each nation across the world, has caused economic difficulties for citizens everywhere. In addition, the economic impact of the conflict, the Russia-Ukraine conflict, the risk of economic default in Pakistan was not only exacerbated by these factors, but a direct result of conscious decision-making. This was effectively a collective shooting oneself in the foot, and it is something that we must all agree never happen again in the course of our governments come and go, political parties change, but we should never compromise the fundamentals of our national economic policy. At this time, we've been focused on making service delivery efficient and people-centered, fixing Pakistan's energy woes, rebuilding Pakistan's foreign relations, and giving a sense of stability in our policy political environment. As far as foreign policy is concerned, I'm happy to report, as a result of our teamwork and extensive positive engagement across the board, Pakistan's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength. Over the past 6 months, we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations, be it with the East, the Middle East, the West, or the rest of the world, culminating in our exit from the FATF grey list, the Financial Action Task Force, and on our way for the restoration of our GFP Plus status. Just when this looming economic crisis was averted and things started to move in a positive direction, we experienced the worst ever climate catastrophe that Pakistan ever seen. The monster monsoon on steroids, as Secretary General Guterres put it, resulted in 1/3 the landmass of our country being water. 1 in 7 people affected, that's 33 million people of Pakistan, 16 million of which children, 600,000 women waiting to give birth. The impacts of this on the backbone of economy, the agricultural sector, have been devastating. The total
loss damage is estimated at more than $32 billion, which is 10% of Pakistan's GDP. This climate event will directly correlate with a significant portion of our population being thrust below the poverty line. Given the massive scale of destruction, we have been pushed back for decades, but in every crisis, there is an opportunity. And we convert this crisis into an opportunity if Pakistan commits to not only investing in the less developed areas, as rural areas that have been devastated by the flooding, but also as we look towards reconstruction and rehabilitation, we hope to do so in a climate resilient manner. We too share the aspiration to not only build back, but build back better. Our interactions with world leaders, including recently concluded COP27, we have underlined the need for concentrated global action to take climate change a priority. As the chair of the G77 plus China, we have led the demands of Global South for climate finance and climate justice to enable developing countries to cope with climate adaptation and mitigation challenges. But in addition to that, we have, alhamdulillah, been successful, and this is assessed not only of the developing world that has long held this demand, but of Pakistan and the people of Pakistan, that following the devastation from this climate catastrophe, in our capacity as 77 chair, we have successfully initiated to add to the 27 agenda, in addition to mitigation and adaptation, but the concept of loss and damage. Because it was only after we in Pakistan experienced devastation, these floods that have resulted in a 10% to our GDP, they became evident to us that there was no international financing mechanism for devastation, for loss and damage of this scale. And it was after our own experience that we joined many countries that have long been demanding that loss and damage be added to the COP and global agenda. And we hope it will wait for the people of Pakistan to benefit back of such an institution, that the next country, the next developing country to be affected, will be able to benefit from an internationally agreed upon mechanism for financing loss and damage. There should be no doubt in anyone's mind about the potential of climate change to reverse endeavors for sustainable development goals. Climate change is one of the most national security threats that can ignite and deepen conflicts. As we have witnessed, Pakistan is now ground zero for climate-induced disasters and must prepare for the challenges associated. Ladies and gentlemen, today the increasingly complex security environment poses multifaceted threats to national security and stability of the country. With rapid advancement in technologies and proliferation of related knowledge, we are experiencing a visible change in the established security paradigm. In today's globalized world, the national security has emerged as a dynamic concept that is as much economic, political, social, and institutional as it is military and strategic in nature. In an age of fake news and disinformation, the threats to national security have increased manifold. The specter of rising global food and energy prices is putting immense strain on national cohesion and unity, thus deepening internal fault lines. It is our considered opinion that the best way to safeguard and strengthen national security is to achieve economic self-reliance, rebuild and strengthen political institutions, deliver the 21st century governance that is demanded and required, ensure rule of law, and put the people at the center of public policy. This requires a much needed reset in our thinking, as well as the way we conduct the business of the state. Internal consolidation alone enables our nation to secure its core economic, foreign policy, and security interests. And in order to do so, each institution must function within not only their constitutional domain, but with a primary focus on their objective, on their national goal.
For example, I am a politician, I am a parliamentarian, I represent my constituency in parliament. My job is to be answerable to parliament, to be present in parliament, and rather than bashing it out with my political opponents on the streets in the public arena, we have created this forum where all people of Pakistan can be represented, where our exchange of ideas, our debate should lead to the addressing of issues of national importance through consensus, so we can move beyond our consistent state of flux and focus on the priorities of our nation. Distinguished audiences, the new technologies led by this revolution in the field of artificial intelligence are playing a vital role in confronting various security challenges. In my view, the responsible use of technology advancements make the world a better and safer place. Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability, and order. Reciprocity, mutual interests, and international norms, the guiding principle that govern Pakistan's relations at the bilateral and multilateral levels. In the regional context, transformation of South Asian geostrategic environment has further accentuated the importance of this region in world affairs, resulting in regional cooperation and active engagement with regional and global players has become imperative, particularly to achieve regional peace, security, social, economic development. On the other hand, instability and turmoil that has beset our region for many decades also needs a firm and coordinated response by all stakeholders. We believe in meaningful dialogue on the basis of equality, not only to resolve bilateral issues, but also to unpack the immense economic potential of our region. It is here that the peaceful resolution of the standing of the Jammu and Kashmir issue is in light of the UN resolutions and aspirations of the Kashmiris is central to the establishment of sustainable peace in South Asia. Distinguished guests, it is heartening to note that Pakistan's defense industry has now achieved a good level of quality and reliability, wherein its products are comfortably competing in the international defense market. Though Pakistan is now exporting some high-tech defense products to more than 60 countries, yet the volume of exports, in my opinion, is not commensurate to our actual and true potential. A crucial factor in this context has been the limited involvement of the private sector in defense production and export activities. In addition, relatively less attention has been paid to academia industry interface and in the involvement of R&D organizations, which curtailed the competitiveness of certain sectors of this industry. In order to achieve this objective, I will stress upon the integration of public-private defense industry to achieve maximum results. New ideas and entrepreneurial and management skills of the private sector need to be co-opted with public sector defense industry. The potential of academia and R&D organizations needs to be incorporated with the defense industry for more efficiency as well as volume to our defense production excellence. Our government, ladies and gentlemen, will continue to promote a business-friendly environment for investments, human capital, professional development, demand industry. The unity government is also committed to deliver industrial strategy that contributes to growth and employment and encourages small and medium enterprises to come forward and join hands for the development of our defense industry. In this regard, I look forward to the Ministry of Defense Corruption's formulation of a clear policy work to integrate the whole potential of Pakistan's defense industry. Distinguished guests, when we talk about the defense industry, International Defense Exhibition and Seminar is an iconic platform for showcasing the latest defense technologies and innovations. In fact, Ideas is a regional gateway for national manufacturers and suppliers to explore new avenues of defense cooperation through joint ventures, outsourcing, and collaborations. On the other hand, the presence of a large number of foreign exhibitors and delegates reflects Pakistan's deeply embedded and mutually beneficial relations with the international fraternity. I would say that Ideas is a shared vision for global peace, stability, and harmony amongst the community of nations. And the Ideas slogan, Arms for Peace, truly reflects Pakistan's principal stance in this regard. Ladies and gentlemen, before I wind up, allow me to appreciate the efforts of the Ministry of Defense Production, Defense Export Promotion Organization for successfully holding a series of Ideas
a series of ideas to exhibit the best of Pakistan's sector and promote international cooperation in the field of defense production. I approve the continuous support of the federal and provincial justice, the Pakistan Armed Forces, law enforcement agencies, and to send the successful conduct of this event. I'm also very pleased to know that Pakistan Postal Services has issued a commemorative postage stamp to complement the holding of a very special edition of Ideas 2022 in the 75th year of the independence of Pakistan, and I am positive the landmark event will achieve more progress in the years to come. I thank you all. Pakistan Zindabad. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। अभी तक तो बचत बाज़ार अच्छा जा रहा है, बदर एक्सपो की तरफ से जो लगा है। लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे तो यहाँ काफ़ी अच्छा था और इस साल भी काफ़ी अच्छा है रिस्पांस। पब्लिक का फुटफॉल थोड़ा सा मेरे ख्याल से और होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग इधर काम करने के लिए बैठे हुए हैं और बचत बाज़ार जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, तो बचत के अंदर लोगों को अच्छी खासी हम लोग बचत दे रहे हैं। जैसे ये आलू है तो आलू 3 किलो का आलू का बैग आपको, अगर 3 किलो आप आलू लेते हैं तो आपको बाहर मिलता है 220 रुपये तक का ऑन एवरेज प्राइस अप्रॉक्सीमेटली। हम लोग आपको दे रहे हैं 150 रुपये का 3 kg। जैसे ये प्याज आ गई, अब ये प्याज है, ये प्याज अच्छी प्याज है, सबसे बेस्ट क्वालिटी की एक्सपोर्ट की प्याज है, सेम एज आलू। तो प्याज आपको हम लोग दे रहे हैं 500 रुपये की यहाँ पे 3 kg, और बाहर आपको भी रेट पता है और मुझे भी रेट पता है कि 600 से कम रुपए के अंदर आपको 3 kg प्याज नहीं मिलनी। अगर हम लोग टमाटर देख लें तो टमाटर के अंदर हमारे पास काफ़ी अच्छा टमाटर पड़ा हुआ है, और अगर आप टमाटर का देख सकें तो टमाटर सारा बड़ा टमाटर है और सारा लाल और अच्छा टमाटर है। यही हम लोग 60 रुपीज़ के पर kg हिसाब से हम लोग दे रहे हैं, और बाहर आपको 70 रुपीज़ का बाहर टमाटर पड़ रहा है। तो इससे तो बचत ईद आ चुकी है। तो आई बी लाइक मैं बहुत खुश हूँगा कि आप लोग आएँ और इस चीज़ को अवेल करें। बाकी थैंक यू सो मच बदर एक्सपो एंड थैंक यू सो मच बचत बाज़ार एंड थैंक यू सो मच कराची। मेरा नाम मोहम्मद दाने और मीडिया फाउंडेशन पाकिस्तान नेवी से मेरा ताल्लुक है। हमने एग्जीबिशन में जो है अपना लिए लगाया है अवेयरनेस के लिए, मेडिसन की अवेयरनेस के लिए, कि जो हम आवाम को अवेयरनेस के जो कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है जालियत व्याध लोग बनाते हैं, तो उससे अवेयरनेस भी दें कि आप लोग जो है मेडिसन मल्टीनेशनल मेडिसन को दिखें। और जो एक्सपो है ये आवाम के लिए बड़ा अवेयरनेस है, और ये है कि आवाम को जो है हमारी आवाम को अपनी हेल्थ के बारे में जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये बदर एक्सपो इन्होंने बड़ा अच्छा एक इक़दाम उठाया है लोगों के लिए, आवाम के लिए, और यहाँ की जो सर्विसेज है बहुत अच्छी हैं। और मीडिया फाउंडेशन का ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी आवाम है इन्हें मेडिसन डिस्काउंट पर भी मिले, और जो मेडिसन है वो जाली ना हो, और मेडिसन ओवरऑल जो है कंपनीज़ की हो।
Ergin Aküs Trabzon Silah Sanayi Dış Ticaret Müdürü olarak görev yapıyorum. Firmamız 1993 yılında Trabzon'da kuruldu. Entegre tam kapasite üretim tesisi. Yarı otomatik tabanca üretimi yapıyoruz. Markamız Zigana. Firmamızda yarı otomatik silahlar Zig 14, 1919 S9 polimer silahımız mevcut. Bunun yanında kendi üretimimiz ve kendi dizaynımız olan Zigana serisi, Zigana Sport, FK modellerimiz de mevcut. आइडियाज़ 2022 जो कि वैसे एक बाइनरी इवेंट है, हर 2 साल के बाद होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से 2020 में हम नहीं कंडक्ट करा सके, तो ये अब 4 साल के हो रहा है। तो उसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और हम इंशाल्लाह पूरी तरह इसके लिए तैयार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 में जिस तरह कंडक्ट कराया गया उससे मज़ीद बेहतर होगा और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा। हमारे पास काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशंस की कन्फर्मेशन आ चुकी हैं, जो कि पूरी दुनिया के तमाम बड़े आज़मों से हमारे पास डिग्नेटरीज आ और एग्जिबिटर्स भी हमारे पास यूरोप, एशिया हर से बहुत लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जिबिट आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर फोकस किया है, वो ये कि न सिर्फ हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी इसके लूप लेके आएँ और वो भी एक आउटलेट दें ताकि दुनिया के सामने अपना जो प्रोडक्शन है उसको शोकेस करें। जिस वक्त भी इस तरह की बिजनेस एक्टिविटी होती है जहाँ पर इंटरनेशनल लोग भी आए हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, इसमें एक बहुत बड़ा उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। न सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं या हमारे लोकल लोग हैं, जो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज हैं, ओईएम्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और इसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल कंपनीज हैं एट टाइम्स उनके भी जॉइंट वेंचर्स होते हैं बाहर के मुल्कों की कंपनियों के साथ। तो डेफिनेटली ये इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा साइन है। इस लेवल का ये एक इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से लोग हैं और बहुत हाई लेवल जैसे कि मैंने आपको बताया आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ अब एक दफ़ा पाकिस्तान में इसका इनका किया जाएगा तो इसका बहुत ज़बरदस्त, बहुत पॉजिटिव मैसेज जो लोग यहाँ पर आएंगे वो लेके जाएंगे। पता चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल का एक बहुत बड़ा इवेंट करा सकता है और तमाम जो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब वो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं जो हुआ करते थे और इस तरीके की चीज़ होगी। और आजकल जो फ्लड के बाद के जो हालात हैं उस बाद इस तरह का एक इवेंट कंडक्ट होने हमारी इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। इधर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम मुनक्किद करवा रहे हैं जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स में होगा। जिसका सेगमेंट 1 ईयर 1 जो है वो आइडियाज़ के पहले उसका इनेकाद किया जाएगा और उसके 4 स्पीकर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और इसी तरह जो सेकंड ईयर का जो नेक्स्ट डे पे कंडक्ट किया दैट विल बी द सेकंड डे ऑफ आइडियाज़। उसके अंदर जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने इस पे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो आके अपना काम प्रेजेंट करेंगे। और ये इन प्रेजेंट वालों के अलावा 2 हमने अपने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफिसर्स को इनवाइट किया हुआ बनेंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनसे सीख। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ के जो वेन्यू है कराची एक्सपो सेंटर उसके बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर आउटडोर एरिया है और जो एग्जिबिशन हॉल्स का एरिया के ऊपर बहुत ज़ोर काम हो रहा है और इंशाल्लाह हम अपनी टाइमलाइन को मीट करे हुए स्टार्ट से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि उनकी पैटर्न हमेशा हमारी पास्ट में भी मिले और इस दफ़ा भी आपने खुद देखा कि हमारी जो 2 कमेटी मीटिंग्स थी दे वर हेल्ड एट सेम हाउस। सीएम साहब वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने उसको शेयर किया और वहाँ पर तमाम सीमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स मौजूद थे। तो जिस तरीके से सीएम की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली उसका बड़ा पॉजिटिव हमने इम्पैक्ट देखा कि जब सिंध गवर्नमेंट ने अपना साथ हमें तो उससे चीज़ें बहुत हमारी आसान हुई। brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B direction, joint ventures, and investments in the sector. The strategic seminar will also help facilitate defense and global challenges within the defense. The training of the East will be held from 19 to 22 November 2024, Karachi Expo Center.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good evening for us. So today, I would like to deliver sessions about development of 5G centric warfare, its component and challenge. Next slide, please. So I would divide this topic into 4 subtopics. The first one is that I will give very brief introduction about 5G, the KPI, the use cases, the standardization roadmap, and so on. And then from subtopic 2 until 4, they are about the military. What are the 5G enablers that can be used for military? How 5G can be very beneficial or can be used for the future battlefields? And the last but not least will be, so what are some technical challenges in there that we need to consider? Okay, next slide. So I will start with this triangle, which is very famous in explaining about 5G. If I only have one, you can see here that in 5G, basically there are 3 very big use cases. The first one is called the massive broadband, which means that the speed is much faster than the existing one, the existing 4G or even the 3G and so on. And then the next one, the bottom left, no, previous slide please. Okay. The bottom left is about the massive machine type communications. So this is about so many devices are connecting to the network. For instance, in this kind of venue or in the stadium and so on, even if there are cellular signals, in most of the cases will not connect to the network. It is because a number of connectivity are related. So in the 5G, this kind of problems is solved. So one big use case in the will be massive type communications, which is later on will be used very much for the IoT, Internet of Things, and so on. And then the third case is about critical machine type communications. This is about the very low latency, even less than 1 millisecond latency. So using these 3 general use cases or big use cases, then many use cases like using 5G for sensor, 5G for Industry 4.0, using 5G for streaming, using 5G for autonomous driving or semi-autonomous driving, and so on and so on. Next slide, please. So if we want to see a little bit detail, in the upper left picture is showing how we can compare 5G with the 4G. So 5G is much better in all the aspects, and we can see also in there several KPIs of the 5G, but I think it is quite difficult for you to use it. But here I just want to show you that with all KPIs, all performance, we have a very big possibility to use it in very type of use cases. For smart cities, for mobile broadband, for the automated controls, real-time telematic, and so on and so on and so on. And of course, 5G connected to AI and also the edge computing. Next slide, please. And in this slide, you can see that the standardizations of 5G is now still ongoing. We call it the release stages. Release 14, release 15, release 16, release 17, and so on. Now 2022, so the release 17 is already there, which means that the full set of 5G will be available in the market already. And some countries have launched the 5G. I think Pakistan is not there, but some countries like Korea, Japan, US, Germany, Saudi, many countries have launched the 5G, so they can use all the capabilities. Next slide, please. And then, if we relate this to this event, actually, even though 5G is originally developed for civilian applications, recently there are many studies saying that 5G can be used in defense. This study from Allied Market Research saying that global 5G defense market is expected to reach $70,000 billion US. This is quite significant number. Next slide, please. Next. So, how 5G can be used for defense?
there are several key enablers. I don't know if you can read the slide because the fonts is quite small. But actually, there are some enablers in the 5G that is very significant for the military. The first one is the NFV, Network Function Virtualizations, in which most of the network functions will be virtualized. And also SDN, software-defined network, the network will be defined using software, not hardware. And also network slicing, which is the parameters can be easily changed and done for different types of use case. And orchestrations, end-to-end orchestrations, this one is using AI. And then cloud native, mobile computing, and of course, millimeter wave. Next slide. So with all those key enablers, we can see that there are many studies, many research about using the 5G for the military. This is just a few examples, like the one done by LMT and then Enable and so on and so on. Next. Okay. So this slide explaining in brief about how this 5G can be used for military applications. Okay. The first and the foremost is that it can be used for the military decision making because of the quality of connectivity, the very low latency, and so on. Several studies investigating about how 5G can be used for military decision making, and also for smart warehousing, and then for distributed command and control in the battlefields. Even some studies are investigating about the use of the 5G for NTN, non-terrestrial network. Also for tactical communication. Tactical means that in the battlefield using millimeter wave, so that we can use very high frequency, high directivity, and very low latencies. Also for the proximity service, PROSI, 5G for the AR, VR, augmented reality, and the virtual reality, also the mixed reality, also for the geointelligence. These are some pictures, some pictures that is showing that how this 5G can use and has very big potential for the military applications. Next. However, we can see that still there are some challenges in the 5G. The first one, click please, next, is related to the KPI challenges. Not all KPIs are there, but it is in the process. Next. The next one is about architecture. 5G is much more efficient than other G than 4G and 3G, of course. Okay, but if you can see here that the contribution of 5-layer algorithms is about 5 times. Contributions of spectrum is about 20 times. And the biggest contributions comes from the smaller cells. It is 1,600 times. So all these components is if it is there, then it is very good. But in fact, not all of them are there. Next. And then the next one is the most important, I think the most important part here is that challenge of softwareizations. Okay, in the legacy network, in the 4G, software and hardware is interlocked with each other. Most of them are not open. Okay, and then in the 5G, there's so-called decoupling between software and hardware, so that we can develop the software and virtualize the hardware and so on and so on. And then post 5G, after 5G, beyond 5G, it is not just decoupling, also orchestrated using AI. So this is the most important technical revolutions in the 5G. Next. Next one is about the bandwidth and delay. I think we can skip one, and then next one. Next. Next one is about the use of the IP version 6. Next one. So, as we can see that one of the things that have big impacts on the security in the 5G is softwareization. Softwareizations mean that NFV, SDN, edge cloud computing, and so on. All of them are softwareizations.
and it has very big impact for the security aspect. Next, 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 next. Okay, if we compare this 5G to 4G, then 5G is much better in terms of security, much more secure. The problem is that because 5G is more software, meaning that the security problem different. So we need an approach of assessing the security of mobile cellular communications, like Lars said just now. Maybe we need to use the cybersecurity approach. That's what makes the 5G more challenging. It's much more secure than 4G. But because of variety of use cases, meaning that it's also increasing the surface of for attacks. That's why this is a very big concern to use this 5G for military. Next slide, please. And of course, the security standard is still ongoing. Now, next. The problem is this one. Even if the standard is there, okay, the standard is the what we call it, the innermost rectangular. Okay. After that, there are some security issues which is depend on the vendor development process, and then another security issues are related to the deployment process, and then another security issues that are related to the operation process. That's why there are so many forums that are discussing about how we need to deal with this security issues in the 5G. 5G has very big potential to be used for the military, but there are so many challenges, technical challenges, software challenges, and the most important thing is that security challenges. So we need to do very important and serious research. We want to use this 5G for the military. Next. That will be the last slide for my presentation. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. बहुत ही बड़ा इवेंट के जिसमें अगर हम इंटरनेशनल डेलीगेट्स की बात कर लें, इंटरनेशनल ममालिक की पार्टिसिपेशन की बात करें, तो शायद पाकिस्तान का कोई दूसरा इवेंट जो है वो इसको मैच भी नहीं कर पाता। ये हमारा ट्राई सर्विसेज इवेंट है जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स मिलकर अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं और वहीं पर ही सारी दुनिया के लोग आके अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं। और कई सारे ऐसे जॉइंट वेंचर माजी में हो चुके हैं और इस दफ़ा भी इसके इम्कान बहुत दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की तमाम बड़ी कंपनीज वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल कंपनीज की बहुत बड़ी तादाद यहाँ अपना स्टॉल कायम कर चुकी है। आइडियाज़ 2022 जहाँ आर्म फॉर पीस जो उनका स्लोगन दिखाई देता है, जहाँ स्ट्रेन की बात हो रही है, वही एक खास टॉपिक इस आइडियाज़ 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। इस सिलसिले में एक प्रॉपर सेमिनार का इनेकाद भी किया गया और ख़ासतौर पर हमारी नौजवान नस्ल को इससे आगाही दी गई। आज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं तो सारी दुनिया में ये ख़ास सब्जेक्ट दिखाई देता है और सारी दुनिया इस पर एक ख़ास फोकस करती हुई दिखाई देती है। मेरे साथ तीन हमारे मुल्क की बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत गुफ्तगू के लिए मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत के ऊपर और इस वक्त ये किन किन चीज़ों में हमारे लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है, इंतहाई आम शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। क्लाउड एंड मेटावर्स आर्किटेक्ट, CEO पैरा क्लाउड
और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं जियाउल्लाह खान साहब। जिया साहब बहुत थैंक यू। उसके साथ MNP के बिजनेस हेड है मूलर एंड फिप्स के, और इसके साथ साथ आप ज़बरदस्त किस्म की इस मामले में भी बड़ी एक्सपर्टीज रखते हैं अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुज़म्मिल अतर साहब। थैंक यू वेरी मच मुज़म्मिल साहब। जबकि उनके साथ बड़ी जिम्मेदारियां, अहम जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, आइडियाज़ के साथ भी जुड़े हुए हैं, और जहां मुल्क में कोई मुश्किल आती है वहां पर ईसा लैब बहुत आगे दिखी देती है। CEO ईसा लैब फरहान ईसा साहब। थैंक यू वेरी मच फरहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान भाई जरा शुरू करते हैं जियाउल्लाह खान साहब से। जैसा सबसे पहले तो आम लोगों को, मुझे भी नहीं पता, तो मैं आम लोग आ रहा हूँ, हम बिल्कुल आम लोग यहाँ बैठे हुए, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखिए, नॉर्मली कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं ना, हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें इंटेलिजेंस है, मगर वो नहीं होती। मिसाल पे आप ये कहते हैं कि उसको कि आप एज अगर 65 है तो प्लीज आइडेंटिफाई करें, इनको ब्लड ना लें। अच्छा, ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है जो आपकी एज पूछ के उसका जवाब है। मगर बरखिलाफ तो नॉर्मल अभी जो हम अपनी ज़िंदगी में सवेरे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होते। मगर आप तो आम आदमी भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लगा है। आप फेसबुक पे जाते हैं, अपनी तस्वीर अपलोड करें, वो आइडेंटिफाई करता है तस्वीर में कौन कौन खड़े हुए हैं आपके तो में, और उनको ऑटोमेटिकली होता है। अब ये सिंपल सा प्रोग्राम ही है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम जो तस्वीर को देख के आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये जाए। तो इस काम के लिए आपको नए किस्म के प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। तो नए किस्म के जो प्रोग्राम है मोस्ट ऑफ द हम इस्तेमाल कर, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल नहीं होती। जो नए किस्म के प्रोग्राम है इनमें एक्सटेंसिवली इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं। नए प्रोग्राम क्या है? अब मिसाल के तौर पे टेक्नोलॉजी में अंदर नहीं जा रहा क्योंकि एक आम आदमी के प्रोग्राम है, मगर लुबला आप ये देखिए, इस तरह समझिए आप कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना, पहले तो ये होता कि, और अभी यही होता है कि हम क्या करते हैं कि उसको ना ट्रेन करते हैं। ट्रेन से मतलब है कि हम क्या करते हैं, उसको ना, जैसे मेरी 10 तस्वीर खाएंगे उसको। अच्छा, हम आम जिंदगी मुझे कैसे पहचानेंगे? मुझे 2-4 दफा दोगे तो पहचानेंगे आप। अच्छा, कंप्यूटर भी इस तरह करने लगा है कि आप खुद नहीं लिखनी पड़ती, आपने उसको कहा ये तस्वीर है, ये ज़िया है, ये तस्वीर है, ये ज़िया है। अच्छा, 10 दफा तो वो ऐसे प्रोग्राम है जो उससे ये मत निकाल लेते हैं कि स्कैन कर लेते हैं कि ये ज़िया है। तो आइंदा कोई नई तस्वीर दिखाई जाए तो वो मुझे पहचाने कि ये भी ज़िया है। इस काम के लिए ये समझना जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस वक्त जो टेक्नोलॉजी यहाँ पहुंची है, आपको प्रोग्राम को ट्रेन करता है। अगर आप ट्रेन करेंगे, यानी डेटा चाहिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो जुड़ी हुई साइंस वो है डेटा साइंस। तो आपको जैसे हमारे पास लैब्स के वो थे में, अगर अभी क्या होता था, ब्लड में वो देखकर आइन क्या होगा, और अभी हो रहा होगा, इनको हो रहा कि तस्वीर से डायग्नोस, उसको बहुत सारी तस्वीरें खाते हैं, ट्रेन करना पड़ेगा, डेटा चाहिए, और तस्वीर आके कि यार ये कैंसर, फिर वो नया कैंसर सेल देखेगा, बन जाएगा कि ये कैंसर, जो इंसान कर सकते थे सिर्फ, अब मशीनें भी कर सकती हैं। मैं जानना चाहूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से आप यूज करते हैं जिंदगी के अंदर, क्योंकि टी एक्सपर्ट इसको ज्यादा और बेहतर बता सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, जियाउल्लाह साहब एक जबरदस्त किस्म के, लेकिन IT सेक्टर के थ्रू इस इंटेलिजेंस को किस तरीके से सामने लाया जा सकता है? मैं बात शुरू करने से पहले जिया साहब जो मेरे साथ हैं, ये के साथ बैठना ही मेरे लिए बहुत बड़े फ़ख्र है, क्योंकि इनका जो तारुफ आपने कराया वो बहुत मुख्तलिफ तारुफ है। ये पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग के अंदर समझ लिए इनके साथ मेरा बैठना ये है कि सूरज के सामने आप आग रख दें तो मैं इनके सामने ज़ाहिर है बहुत ही नॉर्मल बात कर सकता हूँ। ये एक्सपर्ट हैं इस वक्त के अंदर, खास सैलानी वेल ट्रस्ट का जो इनिशिएटिव है पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत तादाद के अंदर IT एक्सपर्ट बनाने का उनका सबसे बड़ा काम ये प्रेसिडेंशियल ले के ऊपर प्रेसिडेंट किसान आरिफ अली साथ मिलकर कर रहा। तो बड़ी खुशकिस्मती है हमारी, एक दो बहुत बड़ी शख्स के दरमियान में मुझे बिठा दिया है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहरहाल एक काम हमने शुरू किया है जिसके ऊपर तवज्जो दिलाई है। इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा काम कर रही है, इसमें दो टाइप हैं, एक जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन दो चीज़ों के अंदर जिस तरह जिया साहब बताया, शुरू अंदर जो मामूली चीज़ें नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं, और उसके बाद आप इसके अंदर आगे बढ़ते हैं तरीके से। एक आज तारीख में जो गूगल असिस्टेंट, या अगर आप बात करें फिर की, तो वो AI के तौर के ऊपर सिरी को इस्तेमाल करता है। इसलिए जो स्मार्टफोन्स हैं उसके अंदर अलेक्सा इस्तेमाल होती है के अंदर। तो ये फ्रेंड तीन
टाइप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है डेफिनेटली सबसे ज़्यादा जो पावर समझी जाती है, अगर मैं नहीं हूँ तो उसके अंदर को समझा जाता है। गूगल सर्विसेज को सबसे ज़्यादा फासला, उसके बाद सीरी, उसके बाद जो है अलेक्सा को। के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के अंदर कहाँ पहुँच चुके हैं। आपका फ़ोन आपको आपसे ज़्यादा बेहतर जानता है। मैं इसकी चंद एक बड़ी दिलचस्प सामने रखूँगा। आप दिन में कितनी दफ़ा कौन कौन सी जगहों को विजिट करते हैं, इसका डेटा आप फोन के अंदर महफूज है, आपके कोऑर्डिनेट्स के साथ, आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ महफूज हो रहा है। उस जगह की फिर निशानदेही, चूंकि उसके पास किसी जगह प्रोग्राम में सेव होती है, तो वो निशानदेही करता है आया ये आपके काम की जो टाइमिंग देखता है, सुबह 10 बजे या 9 बजे दाखिल होते हैं और वहाँ 6-7 बजे निकलते हैं, तो डिटेक्ट कर लेता है कि ये इसकी वर्क प्लेस। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर अपने फोन के अंदर भी जो जाने वाले लोग हैं, जब वो मैच जाएंगे तो आप करेंगे वर्क प्लेस आप आ रही होगी, आपने ऐड नहीं किया उस वर्क को। इसी तरीके से रात का टाइम ज़्यादातर आप घर के अंदर आते हैं, मैं सब बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कि जो ज़्यादातर लोग हैं चूँकि शाम के बाद से लेकर तक का वक्त घर पर गुजारते हैं, इस वजह से उनकी होम की कैटेगरी के अंदर नजर आ रहा होता है। इसी तरीके से चूंकि संडे या संडे का दिन डेफिनेटली आप घर पर गुजारते, तो वो आपके इसी तरह से आप पर एक लास्ट टाइम के अंदर से निकलते हैं और एक जगह हैं, तो उसको डिटेक्ट है कि ये मस्जिद जाए शख्स, तो आप में ये निशानदेही है कि आप मस्जिद आने वाले हैं और दिन में दफा, यानी आप 5 वक्त के नमाजी हैं, 2 वक्त, 1 वक्त के जुम्मे के जुम्मे पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आप जिन लोगों से मुलाकातें करते हैं, अच्छा आप एक से जो स्कॉलर इस्लामिक है वो आप उससे आते हैं, आप हफ्ते में मिलते हैं, 2 दफ़ा मिलते हैं, महीने में 2 दफ़ा जाते हैं, उससे आपकी शख्सियत के बारे गेज होता है। या आप एक बड़ी से मिलने के लिए जाते हैं रेगुलर बुनियादों इस्लामिक से मिलने के लिए आते हैं, आप डॉक्टर के पास मिलने के लिए जाते हैं, डॉक्टर किस फील्ड डॉक्टर है, बिकॉज वो सारा डेटा कभी बैकएंड गूगल के ऊपर या सेफ है, तो वो उसको लिंकेज क्रिएट करता है। आज की तारीख के अंदर अगर आप उनको सिर्फ इस जरूरत होती है कि आपकी फेसबुक या आपकी गूगल आईडी उनके पास मिल जाए, उसके बाद वो आर में मुकम्मल मालूमात से ज्यादा बेहतर उनके पास आ जाए और उसकी बुनियाद क्यों फैसला करते हैं इधर आपको वीजा देना चाहिए या आपको वीजा नहीं चाहिए, आप वाकई उनके मुल्क की जरूरत है या आपके उनके मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। तो ये मैं आपको मैंने इसकी बहुत ही मामूली मिसाल दी है। जिस तरह जिया साहब फरमा रहे थे कि तस्वीर है, तस्वीर को देख के अगर आप एक बड़ी बात यह है, अगर आपके पास आपके बच्चे बचपन की तस्वीरें हैं तो उन तस्वीरों की बुनियाद ऊपर वो साल ब साल हर साल तस्वीरों उन चेंजेस साथ आपको दिखा रहा है। उसके लिए आपको प्रोग्राम फीड करने की जरूरत, गूगल और ये काम बैक के ऊपर आपके कहे कर रहा होता है। आपकी तस्वीर डिटेक्शन चेंज साथ के 1 साल बाद आपका अगर बच्चा है जिसका नाम लेट्स से राफिया है या राबिया है, वो उसको डिटेक्ट करता है कि बचपन में ये था, 1 साल बाद ये किया, 2 साल के बाद और 15 इस कंडीशन के अंदर है, तो वो उस पूरी तस्वीरों की ट्रेल वो आपके सामने है। मेरी बात लंबी है, मैं एक्चुअली बताना ये चाह रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त आपकी जिंदगी के अंदर किस लेवल तक शामिल हो गई है। बिल्कुल सही बात है फरहानी साहब, किसी के प्रॉब्लम है उसको टेस्ट करा के लिए आपके पास आ रहा है। जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस की, तो ये तो आपके शोबे में बड़ी करामत साबित होगी है, डाटा वगैरह के हवाले से, या कौन से टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, किस सीजन में हो रहे हैं, तो ये तो इंटेलिजेंस आपके लिए भी बड़ी करामत हो सकती है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने करना शुरू कर दी है, ख़ास तौर पर यूरोलॉजी के अंदर जो अल्ट्रासाउंड स्कैन्स, MRIs, हज़ारों, जिस से सर ने कहा कि वो उनकी इमेज और उनके रिजल्ट्स फीड हो गए और कंटिन्यूसली डाटा को सिखाया जा रहा है। और अब जो है वो, बल्कि हमने भी एक स्टडी की, इसके अंदर तकरीबन हमारे 45,000 इमेजेस थे और उसमें जब हमने देखा तो 40,000 इमेजेस फीड करने के बाद हमें पता ये चला कि 25 इमेजेस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चीज़ें पकड़ ली और ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट ने मिस कर दी। अच्छा, दूसरा ये हुआ है कि कोविड में डॉक्टर्स आ नहीं रहे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो ये हमने स्क्रीनिंग के तौर पे यूज़ करना शुरू किया था कि जो नॉर्मल रेडियोलॉजी की चीज़ें हैं, CT स्कैन, MRI, वो स्क्रीन हो जाएं और नॉर्मल वाली जो है वो रेडियोलॉजिस्ट के पास आ जाए। इसी तरह से टेस्ट होते हैं, जैसे खासतौर पे डेंगू, और उसके साथ दूसरे टेस्ट भी हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन है, लिवर के हैं, तो इनके डाटा कंपाइल होकर रिजल्ट्स निकल के आते हैं। जैसे इस दफ़े डेंगू आया, हमने अनाउंस किया कि वो वैसे कहते हैं ना रीडिंग जाएगी और दूसरे मसाइल होते हैं डेंगू में, लेकिन इस दफ़ा लिवर फेलियर के सिम्टम्स आए, तो हम लोगों ने तो ईसा लैब ने ये शुरू कर दिया है। अच्छा, फिर हम लोग ना बायो सेफ्टी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। कोविड ने जब आया था उसकी एपिडेमियोलॉजिकल के जैसे डेंगू
जब इंडियन बॉर्डर्स पे आया था तो हमने सर्विस कर रहे होते हैं और हमने कहा था ये कराची पाकिस्तान आ जाएगा, जो आ गया। चिकनगुनिया एक और बीमारी बॉर्डरिंग टाउन्स पे आई, हमने पहले से दिया कि उसका मच्छर भी यही है और ये तक पहुंच गई, आ जाएगी। और उसके बाद एनसीओसी के साथ मिलके भी हमने इसी के साथ मिलके काम किया और उसके आई थिंक मैं मुबारकबाद दूंगा ऐसे अच्छे इदारे को एनसीओसी बना, महमूद उसको कर रहे थे और जनरल हुमायूं साहब कमांडर कराची, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हुआ और आइडियाज़ के भी बानी है तरह से जो भी हो रहा है। जनरल हुमायूं का एक और भी हुई कि जनरल हुमायूं साहब ने जो सबका काम किया कि उन्होंने इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट को पहला, जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ पे पहला पाकिस्तान का कोविड सेंटर जो स्टैब्लिश हुआ वो जनरल हुमायूं की वजह से हुआ जी, और जी अभी हैं और मैंने कल भी उन्हें मुबारकबाद दी। और इधर का जो एक्सपो सेंटर उसके 2-3 बड़े पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया को नजर आए और पूरे पाकिस्तान को आए। पहले तो यहाँ पे एक ऐसा मॉडल बना कि जो यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स थे उनकी प्रोटेक्शन के बारे में काम हुआ। आपको बताऊं ये वो रिकॉर्ड है, जनरल हुमा थे, जीओसी जनरल वकील थे और ब्रिगेडियर शहजाद होते थे 25 मैक के उस ज़माने में, और बाद में जनरल नदीम अंजुम थे। उसमें हुआ ये कि एक डॉक्टर, एक नर्स, एक पैरामेडिक स्टाफ, एक सफाई वाला, जो रेड जोन जहाँ पे पेशेंट्स थे, मैं जो यहाँ पे हमारी ईसा लैब भी फ्री सर्विसेज दी पहले दिन से आखिरी दिन तक, एक शख्स इधर जो काम कर रहा था, एक को कोविड नहीं हुआ। इसे पूरी दुनिया हिल गई जिसमें सारे ये मैकेनिज्म्स इस्तेमाल। सेकंड चीज़ है डेथ रेट, यहाँ पे बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग ऑफ द डिजीज ऐसी कि यहाँ पे डेथ रेट ना होने के बराबर था, जबकि डेवलप कंट्रीज के अंदर मरीज तो मर रहे, खासतौर पे इंडिया के अंदर पैथेटिक उनकी कंट्रोल्स थे, जीरो, और उनको तो बल्कि पाकिस्तान से हेल्प लेनी चाहिए थी। और उन्होंने, और सेकंड चीज़ ये हुई कि जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको भी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, ये जो आइडियाज़ हैं, और आज हम भी यहाँ पे मौजूद हैं कि जो सिविलियंस और बिजनेस कम्युनिटी, आर्म्स फॉर पीस और सब जो मिल के काम कर रहे हैं, आई थिंक कि ये इंडेवर्स जो हैं जो कोविड में नज़र आए और रिकॉर्ड्स बनाए पाकिस्तान में, डेथ रेट हार्डली हो सकी, आई थिंक ये हर जगह पर होगी। और पाकिस्तान जहाँ से अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं और जितना हमारे आर्मी चीफ जिस तरह से चीज़ें गाइड कर रहे हैं, आई थिंक वी डू वंडर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरह से उन्होंने पहले दिन सेमिनार डाला, आप बताऊं, हम नॉट ओनली अ मेडिकल कम्युनिटी जो बायो सेफ्टी, बायो सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, ज़रूरत है, ये नेसेसिटी है, ये एक रियलिटी है। और इसमें जो ये इसके ऊपर और भी ज़्यादा होना चाहिए। इसकी जो हाईलाइट आइडियाज़ ने किया, आई थिंक इसने एक तहलका मचा दिया। मुबारकबाद हो सारे ऑर्गेनाइजर्स को। फोकस किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, समझ आ गया कि भाई ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्टर में। ये हम दिफाई नईश में बैठे हुए, हमारा डिफेंस सेक्टर है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे डिफेंस सेक्टर में कितनी मदद होती है? में हमें ये देखना है कि मेरे ख्याल से हम 10 साल दूर हैं। आप करें वो दुनिया जहाँ पे मुल्कों को अपनी फौजें उतारनी पड़े, रोबोट्स होते हैं। अब इमेजिन करें मुल्क अगर ये कर पाए कि एक भी उनकी कैजुअलिटी और सब रोबोट्स हों, तो ये दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। और जो मैदान में नहीं होगा उस बेचारे की हालत सोच लें, क्योंकि वो तो इंसान पोस्ट का मेरे जैसा होगा, उसी तरफ रोबोट होगा तो जीतेगा कौन? रोबोट ने जीतना। और अच्छा फर्स्ट करें नहीं भी जाओ तो कोई मसला नहीं, यहाँ बना के फिर दोबारा ले आएंगे। किसी की जान नहीं जा रही। मैं होपफुली इररिप्लेसेबल हूँ, इंसान तो इररिप्लेसेबल है, मगर मशीनें तो कोई मसला है अगर गलती भी हो गई या। अच्छा, तो पॉइंट ये कहने का है कि मैं यहाँ आने से पहले, आज की मीटिंग से पहले, मैं ये तो पढ़ के भी आया। देखें, ट्रांसपोर्टेशन से लेके मिलिट्री, जिसमें अब वो ये कह रहे हैं कि सामान, आपको पता है लॉजिक सबसे बड़ा मसला होता है वॉर में। मेरे वालिद साहब फौज में थे, जिस वक्त एक कोर चलती है तो साथ उसके पूरी ट्रेन होती हैं, हजारों ट्रक होते हैं उसका सामान मूव करने के लिए। अब जब ये ऑटोमेटिक गाड़ियां रही हैं तो जितना आपका 1 लाख आदमी डिप्लॉयड है तो 10 लाख आदमी उनको पीछे सपोर्ट करने के लिए होता है। क्या कहते हैं, अब क्या होगा कि ये पहले स्टेज में कि ये वाले जो काम है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता ही है इस वक्त सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पे और डैलस पे ऑटोमेटिक गाड़ियां घूम रही हैं जिनमें कोई ड्राइवर नहीं है। तो जिन करें कि सारा ये लॉजिस्टिक्स आर्मी का सबसे जो ट्रांसफर होगा, फिर ट्रेनिंग। अब ये जो मस्त कॉन्सेप्ट आया है, ये एक्चुअल रियलिटी का और ऑगमेंटेड रियलिटी का कॉन्सेप्ट आया है, इस थ्रू ट्रेनिंग आप एक चीज नहीं, जहाज के पायलट को एक्चुअल जहाज में की जरूरत नहीं है, वर्चुअल रियलिटी में उसने जा सकती है और इसी तरह बाइक की भी दी जा सकती है। मेटावर्स थोड़ा सा, अच्छा देखें, मेटावर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है आजकल पॉपुलर है हमारे फेसबुक ने, और उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया है। मेटावर्स में ये है कि हम क्या करते हैं कि अभी आप फिर देखें तो आपकी स्क्रीन पे फेसबुक है, तो आप फेसबुक से बाहर हैं, आप बाहर से दें फेसबुक को। अब अभी कोई 15 दिन पे मैटक्वेस्ट प्रो उन्होंने VR ग्लासेस, उसमें थोड़ा सा AR का कॉन्सेप्ट भी है। VR क्या वर्चुअल है, नहीं आपने जब वो ग्लास लगाया आप समझे, मैंने माउंट एवरेस्ट कभी देखी, तो मैंने पहला काम किया कि माउंट एवरेस्ट के वीडियो ने शुरू किए वर्चुअल रियलिटी में। तो मैं बता सकता हूँ कि
जीरो पॉइंट किधर है, बेस किधर होता है, उससे कैसे आता है, 50% फील आती है। मेरी बहुत अच्छी कुलीग है हिरा, वो हमेशा कहती है कि मैं तो जानूंगी मेटावर्स को जब आप मेटावर्स में खा के हम अभी बहुत दूर हैं खाना खा सकें, मगर देखिए रहे हम फील नहीं होगी अभी आपको, क्योंकि हम अगर थे एक एवरेस्ट के नीचे तो वहां पे चल रही होती 30, तो वो तो नहीं सारी बात इस स्टेज पे, मगर जो से नजर आता है और आइंदा कल से भी जो अभी भी आप महसूस हैं वो सब महसूस हो रहे हैं आपको, तो अगर वो माइक के थ्रू और उसके थ्रू आप जैसे मिसाल के तौर पर आप नॉर्मली नहीं देखना, देखें टीवी में अभी क्या है, आप जो कैमरामैन दिखाना चाह रहे हैं सिर्फ आप वो देख सकते हैं, वो 360 डिग्री व्यू दे रहा है। आप फर्ज करें मैं फोकस चाह रहा हूं कि फला का सामान जो सामने रखा है, मैं इक्विपमेंट ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, मैं अजम्पशन लें तो मैं इक्विपमेंट पे फोकस, मैं बाकी चीजों को कर दूंगा। में भी फर्ज करें कोई आदमी किसी एक खास बाबर आजम का फैन है, तो बाबर मैं देखना ही नहीं बॉल, मैं तो चाह रहा हूँ कि आजम फील्डिंग कर रहा है, मैं उसको चाह रहा हूँ क्या कर रहा है, तो करूंगा वहां टर्न करूंगा, अच्छा वो आपको सारा सेंस रहा है चारों तरफ के आपका मुंह कैसे, और ये सब कनेक्टेड है एआई से, ये एआई के बगैर पॉसिबल नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर मेटावर्स भी, ये जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो उसमें एआई का बहुत मेजर हाथ है इनेबल टेक्नोलॉजीज में, और इसी तरह आप क्या कहते हैं, तो ये दुनिया बदल कर जाएगा। पाकिस्तान जैसे लोगों के लिए क्रिटिक तरीन है कि देखें हमारे पास एजुकेटेड पॉपुलेशन है, इसलिए डॉक्टर आरबी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने आज से 3 साल पहले ये प्रोग्राम किया था मास लेवल पे लोगों को ट्रेनिंग देगा। मैं ये कह रहा हूँ कि माँ बाप है ना अपने बच्चों को नई दुनिया के तैयार नहीं करेंगे तो बजाएगी पाकिस्तान के लिए भी हो और इंडिविजुअली लोगों के लिए होगी। कितना लेट है? लेट है, काफी लेट है, ज्यादा लेट नहीं है, अगर अभी आप इससे अंदाजा करें, जबकि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, मगर फिर आखिर दुनिया में कंपेयर होता है। इस वक्त यह कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स $150 बिलियन है, हमारी 3 है, 150 में और 3 में तो काफी फर्क होता है, बहुत बड़ा है। और देखिए हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एजुकेटेड यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा भी ऐसे मसला होता है, अच्छा बच्चे इंटमी उन बताने की जरूरत नहीं है, वो फेसबुक पे पले और मोबाइल आप बच्चे अच्छा इस्तेमाल करें बल्कि आपको सिखाते हो, सारे काम उन्हीं से करोगे तो बच्चे बहुत आगे हैं। मैं क्या है कि जो हमारी पुरानी जनरेशन है उसको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे रिसोर्स लगाने पड़ेंगे, और उसके लिए और अभी हम कंज्यूमर तो कर रहे हैं। देखिए फेसबुक पाकिस्तान में बहुत कमा रहा है पाकिस्तान से, और दूसरी कंपनियां हमारी हैं, मगर हम यूजर एंड पे तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करने में, मगर प्रोड्यूस करने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आगे चल के और मसला हो जाएगा, अभी तो है ही और ज्यादा मसला। अभी वबाओं की चल रही होती है, कोंगो वायरस जी से नहीं आ रहे हैं, उनको चेक करना चाहिए, ऑटोमेटिकली पता चला कि किस जगह पे ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, लेकिन कोई नया वायरस आने वाला वो दुनिया के खित्ते को मुतासिर कर सकता है, इसकी भी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ काम है? देखिए तो बहुत है, थोड़ा सा ये है ना अनफॉर्चुनेटली अगर होता है ना इस मुल्क के अंदर, तो वो हमारे थैंक्स टू आर्म फोर्सेस ही हो पाता है। पॉलिटिकल विल का जो वैक्यूम है ना वो हमें बड़ा डिस्करेज कर रहा है। आज आईटी इंडस्ट्री जिससे बात करी, इंडिया तो चले बड़ा मुल्क ना, आप कह सकते हैं कि वो बड़ा मुल्क है तो इसलिए ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गई, लेकिन फिलीपींस तो पाकिस्तान से भी छोटा मुल्क है, उसकी 24 बिलियन की एक्सपोर्ट है आईटी की। तो ये तो पहले तो ये है कि हम तो गुजारिश करते हैं कि जो हमारी जो पॉलिटिकल विंग लोग जो हैं रूलर्स, वो अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं बना सकते तो इंटरफेयर करना छोड़ दें, पहली चीज़ गुजारिश है। अगर आज कोविड पे कंट्रोल हुआ तो ये एक NCOC जैसा बना था। देखिए हमारे पास अगर मेडिकल और इस काम के बारे में बात करें ना, उसका मैं एक चैलेंज को इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उससे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल 18th अमेंडमेंट आई, 18th अमेंडमेंट से हुआ ये कि हेल्थ हो गई डिवॉल्व सूबों के पास, तो जो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है कि नेशनल स्पिरिट में कोई पॉलिसी बनाई जाए सर्वेलेंस की, तो अब सिंध तो सिंध की बनाएगा ना, पंजाब पंजाब की बनाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ, इतना इम्पा का इवेंट है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, सेक्टर्स हैं, हेल्थ हो गए, इसमें एक नेशनल सी बनना बहुत ज़रूरी है और उसकी कोलैबोरेशन इंटरनेशनल के साथ होनी बहुत है। दूसरी चीज़ ये तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी NCOC के थ्रू, फोर्सेस के थ्रू जी, क्योंकि फोर्सेस एक वाहिद है ना जो पूरे पाकिस्तान जी नहीं, यही तो एक देखिए, और इसी को डच कर रहे हैं ना लोग। हो ये रहा है कि हर मुल्क की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, पाकिस्तान की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने पाकिस्तान को जोड़ रखा है वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है। आप पूछें मतलब कुछ और एग्जांपल भेजता हूँ, साउथ कोरिया की क्या है, साउथ कोरिया की मैच्योर डेमोक्रेसी है, ईरान की क्या है, नेशनल स्पिरिट है। ईरान में 30% से ज़्यादा जो लोग हैं अरब्स, टर्क्स और कुर्ड्स रहते हैं, किसी को नहीं पता। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे मुल्क की है, आज अगर देखें
ये जो हमारे डिफेंस का एक्सपो सेंटर लगा हुआ है आर्म्स फॉर पीस के शुबे से और एक्सपोर्ट करने के बारे में और कोलैबोरेशन डेवलप करने के लिए, इससे ज़रे बदला आएगा। इससे एक इम्प्रिंट भी होती है। आज दुनिया के जनरल्स और सारे स्टेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ जो ये जो डिफेंस आए, तो आज वो इसका एक मैसेज लेके जा रहे हैं दुनिया में। ये चीज़ें साथ होना, कंबाइंड होना, और डेफिनेटली अगर आर्म फोर्सेस लीड करेंगे, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, तो ये चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। और आज ये जो टॉपिक उठाया गया है वो भी आइडियाज़ पे इन्हीं लोगों ने उठाया है जो आज सारे अखबारों की ज़ीनत बढ़ाया और लोगों को थॉट प्रोवोकिंग पे लगाया हुआ है इसने। तो एक बात मैं बस थोड़ा सा बात को शॉर्ट करते हुए वो ये है कि आज के बाद जो फ्यूचर वॉरफेयर होंगी, आजकल हम हाइब्रिड वॉरफेयर से पहले हम कन्वेंशनल वॉरफेयर पे थे, अब हम एक हाइब्रिड वॉरफेयर से गुजर रहे हैं, सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ों की। और आइंदा आने वाले टाइम्स के अंदर हम जर्म वॉरफेयर और से गुजरेंगे। और ये कोविड जो है ये इसके बहुत बड़ी आई ओपनिंग कर रहा है। इसके लिए बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं अगर ऐसी वबा कोई है या जानबूझ खाई जाती है, और उसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्रोग्राम है ये और उनको क्रिएट करेगा अवेयरनेस कि इसके अंदर मिलो ना सिर्फ कि नेशनल्स में बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी है कि इसके अंदर आप कैसे बेहतरी ला पॉजिटिवली। चीज़ भी ज़रूर बताइएगा। मिसाल के तौर पे अभी जैसे कोविड आया था उसमें बहुत सारे लोग बताते नहीं थे कि उनके कोविड कुछ थे कि उन्होंने हॉस्पिटल भिजवाना है। अब अगर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके थ्रू कहीं कहीं कोई अप्रोच सकते हैं या कोई सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है ताकि ये आवाम के लिए है, ये लोगों के लिए है, तो इसको हम पा नहीं सकें। बिल्कुल ठीक है। और इसी वजह से जैसे उन्होंने बताया ना कि उसी जो हमने वो जो भी हम उसकी वो जो ये जो डाटा डिटेक्ट किया कि कोविड किसका था जब हम एनसीओसी को रिपोर्ट करते थे, उसकी वजह से बहुत ही फ़ायदा हुआ कि जो लॉकडाउन्स लगे वो माइक्रो लेवल पे लगे, पूरे शहर में बाद में बंद नहीं हो रहे थे, सिर्फ इलाके लॉकडाउन हो रहे थे। और इसमें थोड़ी सी हम सबकी अपनी जिम्मेदारी भी है। ये जो हम छुपाते ना चीज़ें ये भी बड़ी होती है। एक चीज़ मैं ज़रूर बात को ख़त्म करते हुए वैक्सीनेशन के बारे में बोलूँगा। ये जो आवाम की आपने बात की ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें इंसान को भी थोड़ा सा सीखना चाहिए। वो सीखना ये चाहिए कि आपको मैं बोलूँ कि मैं तो इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट हूँ, मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि वैक्सीन लगाने से जहन तो मफलूज नहीं हो जाएगा, आँखें तो अंधी नहीं हो जाएंगी, दिल की धड़कनें तो बंद नहीं हो जाएंगी, मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, डायबिटिक हूँ, मेरी बीमारी तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाएगी, जिगर तो नहीं फेल हो जाएगा। हमारे लोगों को यही परेशानी थी कि बच्चे पैदा हो सकते नहीं हो सकते। तो ये जब कॉन्सेप्ट एजुकेशन से फैलेगा और अगर आज एजुकेशन नहीं रही और लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं हुई तो डेफिनेटली ह्यूमन फिर प्लेस होना शुरू हो जाएंगे और ये एक बहुत थ्रेट होगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं और इसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग और अपनी को लेके आएँ। सर, एक आखिरी पैगाम हमारे यंगस्टर्स के लिए आप जानिब से जाएगा क्योंकि इस डिस्कशन के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो, कोई एक डिपार्टमेंट, कोई एक शुबा ऐसा नहीं है कि जहां पर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत ना पड़े। कोई भी सेक्टर अब ऐसा नहीं चाहिए और बल्कि इस इंटेलिजेंस के थ्रू अपने तमाम उन कामों को और बेहतर बना सके। तो सर, ये जो नौजवान नस्ल आपको रही है उनके लिए पैगाम ये आपका क्या? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस वक्त चाइना एक मेजर पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आई है, इंडिया की एक मेजर पॉपुलेशन मिडिल क्लास आई है। आपका रिजल्ट देख रहे हैं, बहुत ही और भी वजूहत हैं महंगाई की, मगर मेन वजह यह है कि ये राइज ऑफ द मिडिल क्लास इन एशिया। अच्छा, जो ये मिडिल क्लास उभर के आई है, इनके पास पैसे हैं, ये सॉफ्टवेयर से और हार्डवेयर से पैसे कमा रहे हैं। ये चाहे के एक बंदा $1.5 कमा लेता है जो पहले $200 पे था मिडिल क्लास में, वो अपर मिडिल क्लास का हो तो वो गोश्त खाएगा। अगर हमने अपने आप को इंटरनेशनल इकोनॉमी से नहीं जोड़ा, टेक्नोलॉजी इकोनॉमी से नहीं जोड़ा, तो मैं आपको बता रहा हूँ हमें खाना मसला हो जाएगा। और अभी भी आप देखें गोश्त कितना महंगा हो चुका है। ये जो महंगाई की एक वेव है दुनिया में, वजह है कि जो टेक्निकल लोग हैं जिनके पास पैसा है वो मार्केट से उठा रहे हैं सामान, और हम और आप जो कि पैसे से जिंदा रह रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम उसकी कीमत में खरीद सके। क्या होगा? हम क्या मरेंगे, वो खाना खाएंगे। तो अगर हमने जिंदा बचना है आप अपने लिए और अपने के लिए, हमें अपने आप को सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, वेब और जो लेटेस्ट आर्ट टेक्नोलॉजी है जहाँ पे सारा भलाई है, लेकिन दूध पीना अलग है और भलाई तो सारे अमेरिकन और इंडस्ट्रियल जो मुल्क वो खा जाएंगे, हमें वो दूध मिलेगा, हमें वो छाछ मिलेगी। तो अगर हमने अपने बच्चों को ट्रेन नहीं किया और अपने आप को ट्रेन नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात, सिर्फ ये बच्चों के लिए नहीं है, ये जो बड़ी उम्र के भी है, मैं खुद 60 का हूँ, मैं तो हर रोज अपने आप को रीट्रेन करता हूँ और मैं यकीन से कहता हूँ मेरे साथ दो मेहमान बैठे हुए हैं, ये दोनों ही आप रोजाना पढ़ के अपने आप को, तो हमें ये नहीं चाहिए हमारी उम्र क्या है, जो भी उम्र, अगर नए दौर में जिंदा रहना है तो नए तरीके से रहना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है।
ज़ियाउल्लाह खान, थैंक यू वेरी मच सर। आप हमारे आइडिया 2022 शो के मेंबर BTV के बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई चीज़ अगर आप कोई पैगाम कंप्लीट हुआ या अगर कहना चाहते हैं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर जी, है। असल में देखें, ये आर्म फोर्सेस के लिए मैं मिशन की लिए बात कर रहा था। हमारी आर्म फोर्स बात समझ रही है। देखिए, हमने एक वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट बनाया JFT, जो 5 जनरेशन है। जब ये पहली दफा बना, मेरे बहुत सारे भी उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शामिल थे, तो मैं भी हैरान हो गया जब मेरे उनसे होती थी कि माशाल्लाह ये मार्वल है। मगर अब नया दौर है। आप 5th जनरेशन में तो इस टाइप के 6th जनरेशन फाइटर बने, 6th जनरेशन फाइटर और 7th जनरेशन फाइटर में हमारे दुनिया के पायलट्स हैं। मगर बाय द टाइम 7th जनरेशन आएगी तो पायलट की जरूरत ही नहीं होगी। जो इस वक्त नए किस्म के जो 6th और 7th जनरेशन में, अभी वो एग्जैक्टली डिफाइन नहीं हुआ, मगर 6th और 7th जनरेशन जो फाइटर होंगे वो रोबोट्स होंगे, वो ड्रोन्स होंगे, और वो ड्रोन्स की फाइट होगी। क्योंकि जैसे पायलट है वो 9G से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ड्रोन तो 16G बर्दाश्त कर लेगा जब टर्न होगा। तो हमें ये हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर जिंदा रहना है तो मिशन के लिए तो मैंने बता दिया, आर्म फोर्सेस को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल जहाज JF-17 और F-16 में कोई मेजर फाई है, मगर जो F-35 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और उसका सॉफ्टवेयर, दैट इज द की। तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच ज़ियाउल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच मुज़फ़्फ़र साहब, थैंक यू वेरी मच रानीसा साहब, बहुत प्रिया। जी प्लीज प्लीज। इस वक्त जिस तरह फरहान भाई ने फरमाया कि हम जो आर्म्स हैं, और ये कल भी मैंने इंटरव्यू दिया था तो इसके ऊपर मैंने एम्फेसिस किया था, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी आर्म फोर्सेस जो पूरी दुनिया अंदर मानी जाती हैं अपने नज़्म के एतबार से, अपनी कंट्रोलिंग के एतबार से, अपने काम के एतबार से, तो कोई भी काम जिस तरह के अंदर किसी एक चीज़ के बारे में एक्सपर्टीज़ होती है किसी भी शख्स के अंदर, इस तरीके से हमारी आर्म फोर्स की कैपेबिलिटीज़ हैं। इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है, जिस तरीके से ज़िया साहब जैसी शख्सियात हमारे पास मौजूद हैं, हम चाहते ये हैं कि आर्म फोर्सेस इसके अंदर आगे बढ़ाएं। अगर वो JF-17 थंडर तैयारा पाकिस्तान के अंदर बना सकते हैं, सुपर शार्क तैयारे पाकिस्तान में बना सकते हैं, जो इस वक्त हम बेशुमार मुल्कों को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई वजह नहीं कि वो एक पूरी जनरेशन को डेवलप करें जो मेटावर्स, पाइथन लैंग्वेज और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक्सपर्ट हो। तो इसके लिए काम ये करना पड़ेगा कि आर्म फोर्स के साथ प्राइवेट सेक्टर्स को और ज़िया खान साहब जैसी शख्सियात को आगे बढ़ के, सैलानी जैसे इदारों को, JC जैसे इदारों को, एरी जैसे इदारों को आगे बढ़ के इनके साथ काम करना होगा, ब्रिज करना होगा, और इसके लिए एक पूरा लाहे अमल तैयार करना होगा जिसकी बुनियाद पे अगले 2 से 3 साल के अंदर हम एक बड़ी तादाद के अंदर आई एक्सपर्ट्स को पैदा कर सकें, और पाकिस्तान को IT फील्ड के अंदर, जो हम इस वक्त इंडिया से हम कह रहे हैं या फिलीपीन से कह रहे हैं बहुत पीछे हैं, हमें इसके अंदर आगे जाना होगा। लेकिन उसके लिए कोर रिसोर्स जो है, मैं समझता हूँ कि नज़्म के एतबार से, कंट्रोलिंग के एतबार से, सिस्टम के एतबार से हमारी आर्म फोर्सेस को इसके अंदर अपना रोल प्ले करना होगा। हो सकता है फरहान भाई, आपका भी कोई एक पैगाम? थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ ये, आपने यू की बात की थी तो मैं यू ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ी सी जो अभी जो हमारी जनरेशन आई है ना, जनरेशन, ये थोड़ी लोग सोचते हैं कि व्हाट इट फॉर मी, कि मेरा क्या फ़ायदा है, कुछ करने में मेरा फ़ायदा है। मैं इनसे सबसे गुजारिश करूँगा कि हम सब ने, मेरे ख्याल से हम सब ने दुनिया डील की है और दुनिया देखी है, भी हैं। मैं बताऊँ कि पाकिस्तान से अच्छा पूरी दुनिया में नहीं है। आजकल ये जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है, ये सारी एक्सपोर्ट कर सकती है। अपने मुल्क से एक्सपोर्ट करें। आप यहाँ पे लोगों को जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बने, और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें और पाकिस्तान को लेन-देन दें। अगर आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे तो यहाँ के जितने बच्चे हैं, अगर कोई बाहर भी जाता है या सॉफ्टवेयर के लिए जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। ऐसी चीज़ बनाएं कि वर्ड्स आपके हैं जो आप किसी से कमिट करें उसको पूरा करें, बल्कि मैं गुजारूंगा अंडर कमिट ओवर डिलीवर और पाकिस्तान फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच फरहानी साहब, थैंक यू वेरी मच मुज़म्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच ज़ियाउल्लाह खान साहब, इट्स विद यू, और आपके पैगाम गए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे। तो ये तीनों एक्सपर्ट्स को आपने सुन लिया होगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस आइडियाज़ 2022 का अगर मैं ये कहूँ कि चंद बड़े मकासद में से एक मकसद है तो ये बेजा ना होगा। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं दिखाई देती। जो ज़ियाउल्लाह खान साहब ने एक जुमला कह दिया, अगर हमने अपने आप को, अपने इदारों को और अपनी तमाम वो चीज़ें जो हमें ज़िंदा रखने में मददगार साबित होती हैं उनको ज़िंदा रखना है, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ख़ास फोकस हमें ज़रूर देना और हम सबको देना होगा।
ये किसी एक सेक्टर के लिए ज़रूरी नहीं है, हर शोबे की ये बुनियादी ज़रूरत दिखाई दे रही है। और आने वाले वक्त में अगर इसका सहारा नहीं हुआ तो फिर शायद हम सब बेसहारा हो जाएंगे। यानी राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इस आइडिया 2022 के स्टूडियो से इजाज़त चाहते हैं। मज़ीद गेस्ट आ रहेंगे, उनसे गुफ्तगू होगी, जल्द मिल रहे हैं अल्लाह ने के बाद। Assalamualaikum. My name is Badar Hussain, and I am the founding editor of Defense Guardian International. We are the media partners of Ideas 2022, and we are launching, which is Pakistan's international defense magazine. As well as we are giving all sorts of media solutions, which is related to the defense industry. And I hope you're all having a good time in Ideas, and we look forward to see you at our stall in hall number 5. Thank you very much. Hello. My name is Ayhan Şentürk, and I am the Business Development Manager for Profen Defense Technologies. We're a Turkish company that was founded back in 1995, and our core expertise and experience is in satellite communication systems. So that's satellite antennas, satellite ground stations, and those are the main products that we're promoting at this exhibition. So we can design and build all the way from 65 centimeters small satellite dishes, man-packed terminals, all the way up to 7.3 meter big stations. So as I said, that's our main expertise. That's where our main experience comes from. But we're also an engineering company. We do systems integration. We have a very good software team supporting us in our activities. We have a materials science team helping us with the design of our antennas. And we deliver turnkey solutions to our customers. It's our first time in Pakistan attending an exhibition, and it's been a very fruitful period for us. I mean, we've been very busy for the past 2 days. We're busy today as well, and we're very happy about it. We're very happy about it. During the COVID period, we've been having a lot of online meetings or telephone meetings with our contacts in Pakistan. So as I said, it's our first time in Pakistan, and it's a great pleasure. It's a great pleasure to be able to talk, face to face with our contacts, with our customers in Pakistan. So thank you very much. Thank you very much for everything, for your hospitality. It's been an honor to be here, and we look forward to improving our relationship with Pakistan. Thank you. My name is Badar Hussain, and I am the founding editor of Defense Guardian International. We are the media partners of Ideas 2022, and we are launching Defense Team, which is Pakistan's first defense magazine. So we are giving all sorts of media solutions, which is related to the defense industry. And I hope you're all having a good time in Ideas, and we look forward to see you at our stall in hall number 5. Thank you very much.
2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The expert platform for G2G, B2B, and B2B directions, joint ventures and investment in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges in the defense sector. The 12th edition of IDEA will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. IDEAS 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The whole event is a platform for G2G, B2G, and 2B interactions, joint ventures, and investments in the defense production sector. A seminar will also help to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of IDEAS will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Park Global is basically running a buying house. We are facilitating with the different countries' buyers with Pakistan industries, and we are giving a one-window sport so that the visitors don't have to visit again and again the same stall or the same product. We facilitate them
and with short time we make the arrangements. And recently we make 2-3 deals with the Jordan government and Zimbabwe and Nigeria, and by the grace of Allah we are very successfully running this Pak Global Supply Solution. In Pakistan, depot is presenting very good opportunity to all our potential buyers, and for the Pakistan industry like small arms and textile industry, it is a big opportunity to produce the items world standards. And for the depot and Badar Expo, I am very thankful they have provided us this opportunity for the international buyer. We are linking with them. Thank you very much all. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर एलिया है। मैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को हेड करता हूं। आज हम एक BIC की प्रोडक्ट जो कि हमारे वर्दी वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान साहब का आइडिया था, जिसको हमने अमली जामा पहनाया है हमारे इंक्यूबेशन सेंटर ने, और हमने एक ध्यान के नाम से एक बॉट बनाया है जो कि घर में बच्चों का ध्यान रखेगा, उनके साथ इंटरेक्टिव सेशन करेगा। ये AI बेस होगा और इसके अलावा स्टोरी सुनाएगा, उनके साथ इंटरेक्शन रखेगा, रिप्लाई करेगा और बहुत सारे और टीचिंग में भी मदद देगा। शुरू में हमने ये प्रोडक्ट सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन अभी 7 मंथ में हमने ये प्रोडक्ट कंप्लीट किया है। तो अभी ये ब्रिगेडियर फीक साहब जो कि नेवल कमांडर भी यहाँ कराची में, तो हम इनके शिफा हॉस्पिटल में भी इसको इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। मेरा नाम असद कमाल है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस। GIDSG पाकिस्तान की कंग्लोमरेट है, कंपनी है। हम आइडियाज़ का 2007 से पार्ट हैं और मैं ज़ाती तौर पे तो सन 2000 से आइडियाज़ को देख रहा हूँ। जब इसके शुरू में 3 हुआ करते थे, आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जिबिटर्स व्हेन आइडियाज़ स्टार्टेड। मुझे ऑनर के मैं तो देखा है ग्रो करते हुए। 2020 से हम 9 हॉल्स हैं इसके, तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मोमेंटस ओकेजन है 2022 में, क्योंकि बहुत सारे मैं देखा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और आज बहुत सारे इंटरनेशनल विजिटर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं जो इस पूरे इवेंट का पार्ट बन चुके हैं। हमारे अपनी स्टैंड पे 50 से ज़्यादा डेलीगेशन रिसीव की हैं, इससे भी ज़्यादा आई एम श्योर इन्वाइटेड होंगी। और जो एग्जिबिटिंग कंपनीज हैं, 9 हॉल्स अगर हैं तो दैट मीन्स कि एग्जिबिटिंग कंपनी जो पाकिस्तान में है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लोकल फॉरेन बहुत सारे मुल्कों का इंटरेस्ट भी है इसमें। मैं देखता हूँ कि जो डिफेंस एग्जिबिट होते हैं फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, एक बहुत आइडियल प्लेटफॉर्म आपको देते हैं जहाँ पे आप डिफेंस कैपेबिलिटीज हर 2 साल बाद डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस है क्या, और आपको एक मौका मिलता है दुनिया से नेटवर्किंग करने का, बाहर की दुनिया को मौका मिलता है कि वो आज को वेल कर सके। आई विश डेपो एंड बदर एक्सपो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, और मैं होप करता हूँ कि अंडर देयर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट they can take this platform and exhibition to new heights. So good luck to both of them. Thank you very much. Pakistan Zindabad. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आतिफ कटाना है और मैं GM सेल हूँ सर्विस इंडस्ट्री में। सर्विस इंडस्ट्री पाकिस्तान में 50 साल पुराना नाम टायर के हवाले से और शूज के हवाले से पहचाना जाता है। हम लोग आम लोग के लिए जो जूते बना, उनके अलावा हम लोग फोर्सेस के लिए भी जूते बनाए कि कंप्लीट रेंज है नेवी के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, रेंजर्स के लिए और पुलिस के लिए। इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में कुछ और चीज़ें भी बना रही है जिससे बहुत कम लोग जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग आर्मी के लिए सियाचिन में जो शूज़ इस्तेमाल किया जाता है के शूज़ वो भी बना रहे हैं। इसके अलावा हम गैर मास्क आर्मी के लिए बना रहे हैं जो पाकिस्तान में सिंगल सोर्स है आर्मी के लिए। इसके अलावा हम लोग अल खालिद और अल जरार के लिए कुछ रबर पार्ट्स भी बना रहे हैं। रिसेंटली हमारा एक JV हुआ है, चाइना की एक कंपनी
लास्ट के साथ और पाकिस्तान में पहली दफा ट्रबस रेडियल के जो टायर तारफ करवाए गए हैं ये सर्विस ग्रुप की तरफ से गए, सर्विस लॉन्ग मार्क तरफ से। इससे पहले ये सारे टायर पाकिस्तान में इंपोर्ट थे। पाकिस्तान में मार्केट साइज ट्रक बस रेडियल का तकरीबन 2 मिलियन के करीब है एक साल में, और हम जो प्लान करके इस पाकिस्तान में ये फैसिलिटी लेके आए हैं, हम इंशाल्लाह थर्ड फेज में आज से 2-3 साल बाद 4 मिलियन की कैपेसिटी एक साल की बना रहे होंगे। और मार्च में ये इनॉग्रेट हुआ है और इस वक्त हम लोग अमेरिका को या पाकिस्तान से बना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक फख्र की बात है। आई के हवाले से मैं ये बात करूंगा कि ये बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे बहुत से मुमालिक से लोग आते हैं, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, नई प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है और दुनिया को ये जानने में आसानी होती है कि पाकिस्तान भी बहुत सी चीजें अपने मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नोट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट के लिए भी है। I'd like to start with extending my thanks and I'd also like to say Assalamu Alaikum to all the increased delegates, members of the forces, Chief Guest Vice Admiral, Chief Guest Admiral Shahid Kareemullah Sahab, DGMA Vice Admiral Ahmed Saeed Sahab, and member business community, all others present over here. Assalamu Alaikum, and thank you for granting me this audience today. I'll be talking about the challenges of our shipping industry from a private sector perspective and how that relates to other stakeholders. The area of focus of this presentation is the energy supply chain. And the reason why I have chosen this topic is because I truly believe that energy is the biggest security factor for any country, especially a country like Pakistan that is heavily dominant on and reliant on energy that is being imported. Our energy comes from crude oil, from LNG, from coal. We do have indigenous local sources that we are developing, and I hope that goes on and becomes a good percentage of our energy mix. But as of today, we are a nation that imports the bulk of its energy and is reliant on imports. And that import is done through the shipping routes, through the shipping supply chain. And if we resolve those inefficiencies, some of the inefficiencies, and we are also able to capitalize on our existing shipping infrastructure, on its utilization, we can make our energy mix and our energy supply chain much better, and we can be operationally and economically efficient in managing our energy. As you already know, energy impacts all of us, from the gas in our cooking stoves, to the petrol in our car, to the gas and other sources of energy that we need to run our industries, to run our Navy fleet, to run our jets, and so on and so forth. So it is a very important factor for any nation. That is the reason why I have chosen this topic. I will be giving a few examples that will show us two sides of a coin about how we are, it will show us why we are inefficient in some ways, and how, on the flip side, by taking some small measures, we can become much better and much more efficient. So, first of all, I'd like to just present the impact of inefficient energy supply or the impact of high energy costs, let's say. So there are three components to the energy supply chain, broadly speaking. One is the product. The product is imported and the price is driven by international markets, not something that is in our control. The second are shipping costs, which is something we can control because a lot of our energy can be transported through the Pakistan National Shipping Company and its fleet, and we can manage our shipping costs in that way. I'll come and address that point later in the presentation. The third part is the supply chain, the berths, the storages, the discharging, the pipelines, connectivities. These three make up the energy supply chain, broadly speaking. So a high energy bill translates into inflation, into a current account deficit, where we face devaluation, where we face inflation because of the devaluation, and that leads us to certain sort of debt crisis every now and then, and also encourages hoarding because there's an imminent or shortage of commodities and energy products, and that leads to a certain sector which hoards the current inventories and aggravates the situation rather than helps it. So if I talk about the oil import, I'll be focusing on two products in my presentations. I don't want to bore you too much on this certain name, so I will try and keep them full and not too dry. So I've chosen oil and I've chosen to speak about coal to give you an insight and a holistic view about what can be done. So if we talk about oil imports,
We have two ports mainly catered to our oil imports: crude oil, furnace oil, petrol, diesel. All of this comes through Port Qasim and Karachi Port. I'll talk about Karachi Port. Karachi Port has a number of berths. We have OP1, OP2, DB1, DB2. They all discharge chemical, petrochemical, and oil goes. So we have multiple berths over there. And most of the time, you'll find that there are idle berths at KPT for discharging oil and related products. However, the storages in KPT are slightly inefficient. They haven't developed. The infrastructure pipeline connectivities has not been done the last 10 to 15 years. Now, in contrast, if I talk about Port Qasim, very efficient storages. It is linked all from pipeline up to Punjab. It has storages. It has a good mix of storages, but it only has one berth to discharge all oil cargoes. So you see how KPT has inefficient storage, but multiple berths, but Port Qasim has one berth and multiple storages. So the problem and the solution are sort of one and the same, in the sense that if we get the both ports, if there was some sort of connectivity between both the ports, they could benefit of that energy. They could benefit of that. Qasim does not need to make more storages, and KPT does not need to make more berths. A collaboration, a synergy, a little bit of discussions between both the ports will resolve the problem. So without spending much, we will be able to capitalize and increase the capacity utilization of the existing infrastructure. So that's a little example of how we can go about it. Just to give you a little bit more insight, there are vessels that call on Port Qasim. There is empty storages at Port Qasim available, but due to just one berth discharging one vessel at a time, we have 5 to 10 vessels waiting for the berth, incurring damages, sometimes to the tune of $100,000 per vessel, sometimes you build up onto 10 vessels, that's $1 million. And obviously for a country that is working on its foreign exchange reserve, such a situation can be avoided, should be avoided. And there is another port which is not too far away from Port Qasim that has multiple berths. All we need to do is connect both, so we can discharge 4, 5, 6 vessels at one time. We can store our energy, we can be more efficient. Talk about coal a little bit. We are developing third coal, and I think that is a very good initiative. That is something that should go on. It should become a bigger percentage of the overall coal mix. That will help us not be reliant on imported coal, something we should all prefer. However, reality as of today is that in 2021, Pakistan imported 6 million tons of coal, seaborne routes, and it is expected that with the added power plant capacity and the expansion of the cement sector, this will go up to 25 million tons over the next 2 years. 60 million tons translates to 290 vessels per annum, approximately 24 vessels per month. And during a proceeding of the Supreme Court 2018, there was a decision was made where all coal imports were destined towards Port Qasim to a single purpose custom-built terminal, which is fine. However, that terminal also has one berth. It can only discharge one vessel at a time. The time that terminal was being built, Pakistan imported less than 1 million a year. Now we import 16 million a year. The capacity is not enough. The vessels, they wait outside during traffic season, and they incur, again, damages of $100,000 and $150,000 per annum, per vessel per day, I'm sorry. And that increases our import. And at the same time, another port, KPT, which is an hour away from Port Qasim, has idle berths lying there that can discharge coal, or a purpose-built terminal can also be developed at KPT, or some kind of railway connectivity can be done so that the discharge from the vessel onto the land and forward onto the factories is much more efficient, and we don't pay extra dollars for our energy. So if I was to sum up the gaps, if you realize both the topics that I talked about, KPT, Port Qasim, crude oil, coal, we aren't talking about any new projects that we need to do. The idea that I'm trying to float over here, I'm trying to give a dissected bird's eye view that we have the capacity within the realm. We just need to have a smarter approach. There's a concept of smart hub or smart port, which basically talks about how ports can talk to each other, how they can share data on one dashboard, and they use the data to deploy their in a much more efficient manner. So in efficient capital deployment, where one port has an existing capacity which is idle, and the other port is spending more money to build the same storage facility or the same discharging facility, is inefficient capital deployment. A little bit of synergy that we can build between both the ports, between authorities,
that will help them deploy their capital in a better way and also make themselves much more efficient by building those synergies between themselves. Another initiative or another drive that we need to focus on is the impact of PNSC, the Pakistan National Shipping Corporation. The Pakistan National Shipping Corporation is a hidden gem that we must focus on. It is the only company in Pakistan that charges its freight in PKR. We don't have any other. If we want to pay for our shipping costs in Pak rupees, we don't have any option except PNSC. So PNSC should be supported to increase its fleet so it can cater to maximum energy import. Its focus is already on oil and crude oil imports that come into Pakistan. It should increase its fleet. We are trying to increase its fleet. We are talking about how PNSC should be allowed to procure sand vessels. It should be exempted from PEPRA rules so that it is able to increase its fleet, and we don't have to pay for our shipping costs in dollars. We pay for them in PKR. In fact, if we build excess capacity of PNSC fleet, PNSC will not only be able to reduce our shipping bill, it will be able to bring in foreign exchange by selling its freight and vessels to the foreign market. Also, if we are efficient and we build the synergies between our ports, we would also be able to benefit from low commodity prices. You all must remember when COVID hit, oil went down to $20, coal went down to $40. China and other countries in the region who had efficient energy supply chains, they bought commodities at very low prices, they stored them, they benefited off them when prices were high. We've seen this same issue with us in LNG. When the prices are very high, we are unable to purchase them, and that leads to a gas crisis. So that is another thing that we need to focus on. The government's part, obviously, a little bit of activism, a little bit of synergy, sharing data, flow of information. I think platforms like NEMA are a great platform where all of the authorities, stakeholders can get together, share their views, help give a holistic view, a bird's view, rather than working in small pockets. We can share our information, we can share data, and we can help spend less and become much more efficient. Also, incentivizing the private sector. And in the private sector, I would always say that we should support local companies. PNSC is a great example of how a local company is benefiting us for the same services that we could have taken from international companies. That does not mean that we should discourage international investment or JVs, but local companies should be incentivized to build rail routes, shipping routes, terminals, ports, and multiple of those facilities, so that there is more competitiveness, and less monopolization, and the market should become more efficient automatically once there is more competition. So that would be all for me, and thank you very much for your time. IDEA 2024 brings together stakeholders across diverse industries. The board offers on G2G, B2G, and B2 interactions, joint ventures, and investments in the production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The edition of IDEA will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Askari. I am business head of dynamic engineering automation. You can see मेरे पीछे भी कंपनी देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे मेरा कंपनी जो हम ऑल्टरनेट गैस सोल्यूशन देते हैं पाकिस्तान में आपको पता है आजकल के स्वी गैस है वो पाकिस्तान में नाफिज हो रही है उसी को सामने रखते हुए हम पिछले कोई 10 साल से उनके साथ 11 साल हो गए हम ऑल्टरनेट गैस सोल्यूशन दे रहे हैं जो कि एनर्जी नेशनल गैस को रिप्लेस करते हैं एलपीजी बेस्ड सिस्टम होते हैं अब तक हम कोई तकरीबन 60 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल इदारों में और तकरीबन 10 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ में ये गैस का सोल्यूशन दे चुके हैं जहाँ पर स्वी गैस नहीं होती है वहाँ पर हम एलपीजी बेस्ड एसएनजी सिस्टम देते हैं जो कि बिल्कुल उसी तरह से गैस पाइपलाइन में ट्रैवल करती है जिस तरह की नेशनल गैस ट्रैवल करती है और वैसा ही एक मीटरिंग सिस्टम लगा होता है और इसी बिल्कुल सेम बिलिंग होती है इसमें से अब तक 8 प्रोजेक्ट हम SSDC के प्लेटफॉर्म से लगा चुके हैं और 2 प्रोजेक्ट अभी हमारे जो लग रहे हैं वो SNG पे लग रहे हैं सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा SNG पे लगा रही है गिलगित के लिए पूरे गिलगित शहर पे हम ये SNG का सेक्शन दे रहे हैं और अभी रिसेंटली कराची में हमने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है 8000 घरों के लिए वो बैरियर टाउन में है जहाँ पर बैरियर टाउन के तमाम घरों को गैस पाइपलाइन के जरिए गैस मिलेगी और
मीटर्स के जरिए उनको बिलिंग की जाएगी। वो वेरिटास अपना प्राइवेट प्रोजेक्ट है और जो गिलगित प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। आज में भी मसला इंटरनेशनल एग्जीबिशन वहाँ पर हम शुरू करते हैं, बैठ के हम यूए में और अफ्रीका में काम करते हैं। So my speech today will be about artificial intelligence and its evolution in the defense market. If please have slides. So in the meantime, slides are displayed. I could probably engage you that you might have heard the word Industry 4.0, and the manufacturing industry, for example, or in the broad sense, the sense the world works is actually divided into four paradigms of 4 periods in which science is real in different ways. So the most recent one, the Industry 4.0, actually comes after the Industry 3.0 era of robotics. And this one, the current era, which was 2015, is more about integration of artificial intelligence with all sorts of devices. We keep hearing stuff like Internet of Things, for instance, or big data, for example. We keep hearing about cybersecurity. We keep hearing about so many other areas. And basically, at the back of all this, without artificial intelligence, nothing would actually work, because with what we do with all the data that we collect with IoT, for instance, if there is no AI behind it to actually process the data and take any intelligent decisions, then what's the use of having all that data? Similarly, there are proven examples of, for instance, in medical science, there's research back even in the 90s. This is before the invention of deep learning, for example, that with machine learning, a lot of complex medical problems were actually solved. The third aspect is that artificial intelligence in the current world, in the world of today, is perceived as, most of the applications of AI that we see are in the area of perception. That, for example, we have some data, we're trying to make sense of the data, and we're extracting some information and, presenting it in a way that's useful for humans to actually process or make decisions. The actual manifestation of artificial intelligence is in the form of real life and real life things which actually implement AI in the real world. And that is most obvious when it comes to defense products. For example, we all know about the Loyal Wingman project, for example. We have already succeeded in flying F-16 autonomously, right? So the Loyal Wingman project focuses on, a wingman, the real pilot, and the plane being totally pilotless. And a lot of the decisions to be pilotless depend upon the data. They are real-time decisions which can come from circuit algorithms. It can come from logic-based algorithms. It can come, some aspects of it can come from machine learning algorithms as well. So AI has a lot of paradigms. What sort of a problem in what way. For this reason, what usually is said is that AI is as good as the mind behind AI that actually writes the program, right? So the more the comprehensive the data is, and better the mind that's actually writing artificial intelligence code, that actually, gives us the manifestation of how good an algorithm of artificial intelligence will come out. So taking the privilege of the slides being late and my being able to talk to you freely, I can tell you a little bit about AI seminar, which has been a big effort with C4I and with DEPO, and it's had several legs. So it has 2 components. One component is today, another component is tomorrow. So the first component, which is today, is with 4 keynote speakers, 2 of them foreigners who have actually made time to come to Pakistan, and also Dr. Jawad Shamsi is a very prominent speaker from Pakistan side. So it's a privilege for me also to speak here. And tomorrow we're going to have presentation from it's a competition-like format in which papers and project ideas are invited from all over Pakistan, and people have competed against the project. So it's 143 submissions. From there, we came down to 70 after evaluations. For 70, the next stage of evaluation, we went down to 16. And after 16, these are the top 6 basically projects and papers which are going to be presented here. So great effort done by DEPO and CRI with some, from the National Center of Artificial Intelligence. And it's good to see that AI, the importance of AI is finally being felt in Pakistan. I would say that in every department in Pakistan, we need at least a think tank which thinks about applications, or you could say technologies which are useful in the form of including emerging technologies. At the back, automatically there will be artificial intelligence, and there will be a lot of instrumentations and sensors, etc., which will be integrated in different departments as well. AI is, by the way, not a new area. AI has been around for a long time. I think there are successful examples of artificial intelligence being applied even as old as the Second War. And the reason why AI has become more significant right now is the advent of a lot of the computational resources as well. And you could see that there is a lot of new resources are evolving, and the defense technologies are becoming more and more advanced with artificial intelligence now incorporated in them. So now that we have the slides, let me finally begin with them. So formally the topic of my presentation today is the evolution of artificial intelligence technologies in defense, the overview of the market, dynamics, and trend analysis. Next, please. Next slide, please. Okay, so a little bit about myself. So
I've been passionate about computers and about programming since my early school years. Actually, I started my programming, I think I was in the 5th grade when I started writing programs. And my first attempt at writing a research paper was in the 9th grade in school. So I've been teaching the AI and robotics at NUST. Actually, I founded the Department of AI and Robotics in 2009 at NUST after a PhD from Japan. And this is the oldest program in artificial intelligence and robotics that exists in Pakistan with this title as well. And right now, I'm the chairman of the National Center of Artificial Intelligence. Next, please. So this is a glimpse of some of the research which predates NCI that I've done. So just to give you an idea which background I'm coming from. So I'm very fond of putting artificial intelligence into real life systems and into machines that actually interact with the real world. For example, the robots that you see on right, these are humanoid robots playing soccer completely autonomously. So this is one of my famous projects that was covered in the media a lot. And this was about 6 robots on one side, 6 robots on the other side. They're completely like playing with each other autonomously without any human intervention, without even connecting to an external computer, with a trained algorithm which we actually train and we feed inside the robot, and they work by themselves to realize where the other robots are, where the goal is, where the ball is, and independently make strategy to actually score a goal and to also defend their own goals. There are technologies for rehabilitation which we have made for Sakura wheelchairs of Japan, and other projects, for example, this prosthetic hand project which we have worked with FRM, and this one has tactile sensation which actually gives back feedback to the humans. And actually on 2 of these, like the soft graphing and the hand projects, we won best awards in London and Sydney as well. So the prosthetic leg, see, this is also FRM actually. So this is an adaptive leg which actually adapts to the walking speed of the person. So a lot of other projects like that. This is just a glimpse of the sort of projects that we do. Next, please. The organization I'm currently leading is the National Center of Artificial Intelligence. This is a competitive grant awarded through the Higher Education Commission of Pakistan. And it's like in 2016, the government of Pakistan issued a call to all the Pakistan universities, all the professors, that everybody, whatever they're doing in artificial intelligence, they come forth. And looking at their research, looking at the background of their work, they awarded funding to 9 labs across Pakistan. I was very fortunate to be one of them. And then again, through petition, select which one person should lead the whole step. So right now, like I'm leading the center as the National Center of Artificial Intelligence. The labs are there, and we also awarded 12 recent projects in different domains of artificial intelligence. So we actually implement AI, and a lot of it is deployed in the real world as well. Next. Coming to artificial intelligence and its significance, we see that the financial impact of artificial intelligence, saying from Forbes, is actually very insightful. That it is forecasted to add $3.7 trillion to the global GDP by the year 2030. The main reason is that this technology is general purpose. And it has applications that span industries like healthcare, like transportation, like financial services, energy, and so on. Some consider AI to be on par with the evolution of electricity in the 20th century. So this is the reason why everybody keeps saying that AI is so significant. Some say AI is as significant as electricity. Some say that AI is the most important invention that human beings have ever worked on. So another saying, for example, that whoever leads in AI will rule the world. So all buzz around artificial intelligence, what's so special about it, and why is this the case? And then how does this apply to defense? Next, please. So let me share with you a small quote that I extracted from one of the letters which 3,000 researchers from around the world signed and sent to the UN. This is like the quote is that autonomous weapons which threaten to usher in the third revolution in warfare after gunpowder and nuclear arms will permit armed conflict to be fought at a scale greater than ever and at time scales faster than human can comprehend. So this is the perception about AI right now, particularly with focusing on defense, right? That the scale of the war and also the speed of the war will go behind, completely beyond the way that we've been fighting wars before. And with completely autonomous systems, we've all seen how the Iron Dome has worked in the recent conflict between Israel and its neighbor, like the Hamas as well, the Palestine. And we've seen how artificial intelligence-based systems are real-world systems applied in real life right now. There are others, for example, we've got the Loyal Wingman project, autonomously flying plane, for instance. We've got Valkyrie. We've got so many other land systems. I didn't show any pictures of them here, but there are autonomous ships as well. There are submerged vehicles too. So there are helicopters. This one, for example, is like a black helicopter. So this is the project Elias. Also, there are like land machines. Also, this Mars project, for instance, this Black Helmet, for example. So all of these projects actually are autonomous agents that work in the warfare strategy, and they actually also not at just this level, also at the tactical level. I'll come back to that in the next slides. So at the tactical level also, that all these things integrate together, and there's a tactical framework as well with which you can actually, using AI governance framework, and actually apply artificial intelligence towards the strategy of the war as well. Next, please.
So drones are one example in which artificial intelligence has been applied extensively, and there are so many examples of drones. Like, of course, several of them are teleoperated, but the real manifestation of drone technology is when the planes actually fly autonomously, right? So this is one of the applications areas of artificial intelligence as well. These are some of the AI-powered drones. Next, please. So artificial intelligence applies to various segments. Like I've shown you some of the machines that work autonomously within the battlefield. But AI goes well beyond that, actually, some of which you will see as examples in the papers being presented tomorrow as well. So there are, for example, mission-specific battlefield robots. Some of the pictures I've shown you. There are unmanned aircrafts. There's a formulation of the governance of artificial intelligence, AI-based governance framework, and tactical design systems. So there are unmanned vehicles and weapons with hybrid remote operation capability. There is unmanned tanks and UGVs. There are like multi-aircraft coordination and control technology. Then there's autonomous underwater surveillance systems, and of course the marine surveillance systems in general, autonomous land obstacle and mine detectors. So this is just like some of the aspects of artificial intelligence. Actually, AI extends well beyond that. For example, one of the projects that we are doing, not directly for defense right now, it's mostly for the civilian maritime sectors, is focusing on how, for example, humans are dealing with so many new technologies and why some of the accidents that are taking place with all these automated machines are because of human error, and how we can improve on that with artificial intelligence, right? So AI extends much beyond these core areas in which there are applications. Next, please. So if we look at statistics, if you look at numbers, right, because there are some analytics involved as well, the market share in defense, particularly for the defense AI market, because this is the depot, this is defense export promotion. So if you look at that, the market is expected to grow at an compound annual growth rate of 13.4% annually. So this is according to the Emergent. And this is actually the software market. If you look at the hardware market of artificial intelligence, because AI requires, computational capabilities to be developed at the same time as well. And now for a lot of, this is probably one of the major applications other than the mobile phone industry, where a lot of hardware is being designed looking at what sort of software is going to be deployed on this hardware to efficiently run that. So in the hardware industry, there's another 13.6% growth, the compound annual growth rate, CAGR, expected for the hardware industry itself. If you look at, for example, the global market share, so it's like 28.8% of global market revenue was accounted for that in the Asia Pacific region. But there is so far the development of AI is fragmented. It's not in this place. And actually, Forbes did a very famous article in January 2019 in which they compared the American capability with the Chinese ability and assessed which thing is better where, right? Particularly for like artificial intelligence technologies, so hardware and software both. So next, please. There are other tests as well. For example, in case of Global Newswire, they say that the growth rate is not going to be 13.4%. Their assessment is 12.9%. There are other studies which I did not include in this presentation, but for North America, for example, or certain regions, the growth rate in artificial intelligence actually exceeds 30%, right? So it's like really huge growth. Wherever people are coming, applying artificial intelligence into the industry, so huge growth rates are expected there. So this is what I'm talking about, that apart the development of autonomous and intelligent weapon systems, it is like the efficient information, you could say retrieval, the deployment of sensors and the information which is coming back to you, the raw intelligence which comes from the real world data, and also the automation of multi-sensor data fusion and intelligent sensing techniques to leverage better situational awareness. And once you have that situational awareness, then you can get to the tactical level, right? So cloud-based integration of land, airborne and naval threats into a battlefield management system to leverage tactical capabilities. So this is also something which is being worked on by artificial intelligence, like developers who are developing systems based on AI. Next, please. So the way AI works actually is that we have at the bottom level, I think Santaik will relate to it very much, that the way that this AI works is that at the bottom level, there's infrastructure, of course. So like this is hardware as well as the core software infrastructure in which, for example, you need a lot of data to be fed to artificial intelligence through a lot of sensor networks. You require, this can be mobile, this can be cloud, this can be Internet of Things, the things I was talking about right in the beginning of my talk. Then on top of it, you've got cognitive systems. And then on top of it, you've got applications. So the good thing is that other applications which are, like for example, application areas that may be particular to defense don't need generation of entirely different kind of algorithms. Like for example, if something has been worked on in the civilian domain, it's also very much applicable to the military domain as well. So for example, if you want to do object recognition or you want to do any activity recognition, for instance, the algorithm behind that activity recognition will be the same, even though it is applied to the military application as well. So we can leverage a lot of things, like there is transfer learning and so many techniques that are available
to actually use, the kind of knowledge we generate in one kind of scenario. And actually, this is the reason why some of the game kind of scenarios are generated when multi-agents cooperate with each other. We actually want to use this scenario for machines for example, tanks in the battlefield or aircraft in the air to actually collaborate together, share information with each other, and actually fight in the real world scenario. So if you look at, for example, segments in which artificial intelligence is divided and the impact which comes from different areas, right now, 9.6% firms are investing in the data science area, 7.8% in the business intelligence area. Then there are health plans and patient care, computer vision, speech recognition, aerospace and defense industry. So this is particularly aerospace related defense industry. Otherwise, applications of defense are involved. For example, computer vision, so many applications are in the defense industry. So natural languages processing, entertainment, and the list goes on. I could speak for a whole day just on this. Next, please. So coming to the National Center for Artificial Intelligence, let me give you a glimpse of some of the projects we are doing and, with artificial intelligence. And of course, many of them are on the civilian side. And of course, some of them have applications toward the defense side as well. So we have been able to generate the product concepts. Proposals that we generated are, 221 so far. And we are touching nearly around 635 million in funding that we've generated during the last 3 years. So the kind of projects that we've done and deployed is around that. So we just were inaugurated in March 2018. The first financial releases came in 2019. So you can say that it's just a 3 years work that we are actually displaying before you. Next. So one of the major projects, for instance, was collaboration with the Law and Justice Commission of Pakistan to develop artificial intelligence for jury. This could be very useful for military courts as well. So for instance, what we've done is that digitized data from the 70 years history of Pakistan. And whenever a new case, for example, comes in, you enter some facts about that case into the system. And the most relevant cases from the database, from the 70 years history of Pakistan, basically actually come up. And even if the decision is made by the judge himself, like AI, of course, does right now, the system AI does not suggest a judgment. So, but even in that case, for example, relevant cases coming in front of the judge can help the judge make a more informed decision, right? Thank you. Next. So I'll just, go quickly through the slides. We've been working very closely with Pakistan Air Force for establishment of the center, and we have good close collaboration. Next, please. Next. So this is one of our projects which will be displayed in detail tomorrow by one of our contestants in the competition. And this is a medium.ai. It's a company spin-off from there. This actually looks at all the media channels simultaneously. We know that 5th generation warfare is actually not just in battlefield, but in every home, right? With the digital devices and television, everything coming into everybody's hands. And this, for example, documents whatever is being said by any person who is saying what, all the content that's behind it, giving you a complete summary of whatever is happening during the day as well. So complete perception of whatever is going on in the media. Next, please. Many of these technologies have now spun off into companies like the last. And this one, for example, system where we, for example, detect various vehicles, some of the applications, for example, for parking spaces. Next, please. So this is another one for pickets, for example, like how many suspicious vehicles or persons could any human possibly remember. So this is AI-based system which is actually reading the number plates, actually looking at the make and model of the car, and based on that it can extract which kind of vehicle, for example, needs to be stopped. If a suspicious vehicle comes in, it can relate back with the database and stop that vehicle right there. Next, please. So this is another system, for example, in which you can detect weapons. For instance, this is object detection. You're actually detecting weapons. And on the left and on the right, you can see activity recognition. So for example, one person is crossing, in a different side, like not walking in the direction where everybody else is going. So this is statistical modeling of the dominant motion in the scene. So we can actually predict with a lot of accuracy whenever somebody is doing something different from the crowd. So this is for mob analytics. Next, please. So this is an example of what we do with the mob analytics. So many persons are there. Whichever persons, for example, are holding sticks are pointed out separately, right? So on the right, you can actually distinguish activity recognition. For example, if two persons are fighting with each other, or for example, a gun is being pointed, because in a real scenario, guards are always going to be carrying weapons, right? So detecting can only not mean a lot, but something being done with the weapon actually means something, right? So this is why, for example, this is activity recognition. And when the gun is pointed at someone, that's when we raise the alarm. Next, please. So this is just a glimpse from the lost and found system that we've been able to deploy with the Punjab Safe City Authority. And I'm happy to share with you that in the past year, in one of the very major events that was taking place in Lahore, we were actually able to catch some of the miscreants using the artificial intelligence-based face tracking technology, using our completely home-developed systems, actually. Next, please. So these are medical applications. One system that we've developed for thalassemia detection and assessment, another one for breast cancer. Next, please.
So these are two other systems. Brain-based is a very popular system for brain like tumor detection and cancer anticipation, lifespan prediction, and also for tuberculosis, COPD, and other pulmonary diseases. Next, please. Just actually, I think day before yesterday, our system has been deployed in the PIMS hospital in Islamabad. So another initiative, which for example you should all know about, the AI Tech Verse competition that we organized. So this is actually it was scheduled in these dates, but we moved it forward because of ideas, and it's going to be scheduled inshallah in the coming February, inshallah. So if you want to, for example, we sponsor a prize money of ₹1,000,000 in this for the winner, and if some company wants to sponsor, for example, a particular challenge that you want to entice people to develop a product of this sort, and you want to offer a prize money for the one who develops the best product, you're welcome to contribute this. And otherwise also you're welcome to visit. Next, please. Also, like to address the need of the defense market and particularly the shortage of human power, which could actually develop efficient algorithm, professional level human manpower which is required. We've started the Certified Artificial Intelligence Program, the CIP certification. So this is an expert level certification. If you want your team to enroll in this, you want them to develop the expertise, it's a 4-month long course in which they can develop their expertise. Doctor, last 2 minutes. Already finished, sir. Next, please. So this is my contact information. If any one of you would like to contact me, so you're very much welcome to do that. I got the time up reminder, so this is why I really hurried up with the things. मैं असल में इनके साथ 2012 से एसोसिएटेड हूँ। 12 और 14 के इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से ये माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर डिफेंस एग्जीबिशंस। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका, वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर, बिकॉज जहाँ पर भी ग्रुप्स और इनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी वो ख़त्म हो। बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी द लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है, और इस इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी लेवल पे या उसी बेहतर लेवल पे जा सकें। मेरा ताल्लुक उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर्ड था डेपो के अंदर, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़। एंड पहली मरतबा जब ये आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था, बैक एंड पर रह के काम करते थे, बट देन with the passage of time they have become too good this event, and mashallah itne arse ke andar they have improved a lot, and internationally now Badar Expo Solution is recognized as one of the best event managers in Pakistan. बहुत अच्छा काम है। Hello, greetings. I'm Parvez Madraswala. I'm director at Powerhouse Private Limited. And we are very excited from Powerhouse to participate in IEEE 13 Industrial Fair, which is organized here in Karachi by IEEE, and we are participating as a platinum sponsor. We believe that IEEE platform is a great platform which benefit the industry, and it gives us a opportunity to interact with the B2B customers and some foreign delegates who are going to attend this great exhibition here in Karachi. IEEE platform and fairs are excellent fairs, and they are providing opportunity for all the commercial entity to participate and exhibit their products,
so that we can get the benefit and we can also participate in many other exhibitions organized by IEEE. So I congratulate once again to IEEE for organizing such a great exhibition as they always do. And we that this time again we will meet all our business colleagues and our customers and different people who are going to attend this exhibition. So thank you very much. Look forward to see you. ये जो जा रहे हैं टीम शूटिंग कॉम्पिटिशन, ये है इनका इवेंट पिस्टल के साथ जो है निशानबाज है उनके लिए है। एक तो हम तो नए शूटर्स हैं उनके लिए तो हम कहते हैं ये एक प्रोग्राम है जो कि दुनिया में मुल्कों में होता है। पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, हमारी टीम्स बाहर के मुल्कों में ये खेलने के लिए, तो हमने कहा कि बाहर होती है लेट्स ब्रिंग देम टू पाकिस्तान अंडर इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और हम उसको यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ जाए। इस सबसे खास बात ये है कि जितने फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में, चाहे वो नेवी है, आर्मी है, रेंजर्स है, एएसएफ है, इवन जो बाकी प्रोविंस जितने भी पुलिस है, इन सब हमने इनवाइट किया है। वो अपने स्किल्स के साथ जो अपने उनके प्रोफेशनल शूटर्स हैं वो आके इस इवेंट में हिस्सा और अपनी काबिलियत को सामने रखते हुए इसमें सबको बैलेंस किया है और हमने कुछ इसमें खास इनाम रखे हैं, सर्टिफिकेट ट्रॉफीज रखी हैं। उसके अलावा जब हम इस करने जा रहे थे तो यूनिवर्सल तो हम शूटिंग का जो थे जो बेहतर शूटर्स हैं उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट है हम भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। तो हमने एक सिविल कैटेगरी रखी है कि उसमें जितने भी सिविलियन हैं जिनके लाइसेंस पे हैं वो आके अपने शूटिंग की जो स्किल्स हैं वो आजमाएं और इसमें एक ओपन कंपटीशन में हिस्सा लें। फिर एक हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है 50% हमारे 50+ हमारी वुमेन, तो खवातीन के लिए हमने स्पेशल रखी है। इसमें जो खवातीन शूटर्स वेपन हैंडलिंग बेहतर है, इनको लाइसेंस वेपन है, वो आके इसमें हिस्सा लें और इसमें भी अपनी जो स्किल है उसको आजमाएं। तो ये हमने इनिशियली 6 सितंबर को डिफेंस डे पे रखा था क्योंकि चैलम का मौका है और इस तमाम हमारे लोग प्रूफ हैं, तो हमने 9 सितंबर पर लेके आए। तो 9 सितंबर में फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान शूटिंग कंपटीशन होने जा रहा है जिसमें तमाम नेशनल और इंटरनेशनल शूटर्स हिस्सा लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इससे एक पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज है वो बाहर जाए और ये हम कहेंगे कि 20 लोग यहाँ पे बेहतर तौर पे इस चीज़ को से कन्वर्ट करते हैं। तो ये मेरी तरफ से और सिंध पुलिस की से सिंध गवर्नमेंट तरफ से उनकी सपोर्ट साथ हम इसको कर सक रहे हैं और जितने भी हैं सबको मैं करता हूँ कि इसमें कहलें और अपने स्किल्स इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ बदर एक्सपो का, उनकी का कि वो इसको ऑर्गेनाइज कर हमारी हेल्प कर रहे हैं और इसको हम एक प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि जो इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करें और ये हम इस प्रोजेक्ट करें तो एक तौर पे हम पाकिस्तान के इसको दुनिया के आगे रख सकें। थैंक यू। बताइए कितनी होगा ये कंपटीशन है, कितने इसमें शूटर जो है इसका शिरकत करेंगे, उनका वन डे कंपटीशन है, सुबह 9 बजे शुरू होगा, शाम को 5 बजे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगी और के अंदर जो लोग ना के जो हिस्सा लेने आए उनके साथ गेस्ट आएंगे उन्हें हमने एक ट्रेडिशनल तरीके से फूड स्ट्रीट टाइप का बंदोबस्त किया हुआ है जिसपे पाकिस्तान के चारों सूबों के हम आप लोगों के लिए जो आप दोस्त आएंगे उनके लिए जो लोग हिस्सा ले रहे हैं और जो गेस्ट आएंगे उनके लिए हमने वो रखा है ताकि एक डिजिटल तरीके से उनको हम वेलकम कर सकें और उनकी हॉस्पिटैलिटी कर सकें। तो ये एक मेहमान नवाजी होगी सिंध पुलिस की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों के लिए जो इसमें लेंगे और जो देखने आएंगे। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर इमेज है जो कि हम पेश करेंगे दुनिया के आगे। या सिर्फ कंपटीशन हुआ है बल्कि ये सिंध की रवायत के हिसाब से हम उनको मेहमानों का खास तरीके से इंतजाम भी किया हुआ उनके खाने पीने। इसमें इस टाइम जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो 60 लोगों ने रजिस्टर किया है तमाम पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगिस्तान से और लोकल ये वो लोग हैं जो कि यूनिफॉर्म पर्सन है। उसका सिविलियन कैटेगरी में आके टोटल जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है 140 लोगों ने इसको अपने आप को रजिस्टर किया है। प्राइस हमने उसमें रखा है कि 1 लाख फर्स्ट प्राइस है, सेकंड प्राइस 50,000 है, थर्ड प्राइस 30,000 है। इसके अलावा हम मेडल्स देंगे और ट्रॉफी देंगे और सर्टिफिकेट्स देंगे। जो पिस्तौल की गोलियां हैं वो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें जो खुद
खेल रहा होता है उसकी अपनी तरफ से होती है। उसके लिए हमने जो है वाह फैक्ट्री को रिक्वेस्ट की है कि वो अपना स्टॉल लगाए, वहीं से वो बुलेट्स ले सकेंगे और वहीं से वो अपनी शूटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। और प्रैक्टिस के लिए हमने 3 दिन पहले अपनी शूटिंग रेंज को ओपन किया है ताकि वो अपने प्रैक्टिस करें, ताकि मैच कोई उनको नया सरप्राइज मिले। तो ये सब के लिए हमने एक ही जैसा स्टैंडर्ड रखा है ताकि सब अपनी जो है काबिलियत को आजमा सके। इस तरह जो पाकिस्तान जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स हैं जो कि में काम कर रहे हैं, सब हमारे इंटरनेशनल मेहमान हैं। उनको हमने जब इनविटेशन भेजी, जो कॉन्सुलेट्स में फोर्स के पर्सनल हैं वो कुछ आएंगे जो यूनिफॉर्म कैटेगरी में करें, और जो सिविलियन है वो सिविलियन कैटेगरी में। जितने भी कॉन्सुलेट हैं दे आर आल्सो इनवाइटेड और वो लोग इसमें हिस्से लें। अच्छा सर, ये इस बेस्ट इवेंट को करने का मकसद जो है मकसद ये कि हमारे लिए, आप ये मेरी शूटिंग टीम खड़े हो जाए, हमारी शूटिंग टीम के कैप्टन हैं और इसके अलावा डॉक्टर शबीर जो कि अभी सरंजाम कराची में, वो लोग हैं जो अब शौक से इस स्किल को सीखा और इन्होंने वॉलंटियर करी जाके अपने इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लिया। तो वो जो वहाँ पे देख के आए क्या है, हम उसी चीज़ को उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के अंडर यहाँ पे इनकार कर रहे हैं। नॉर्मल मैसेज का जो एक नेगेटिव मीडिया इमेज है कि पता नहीं यहाँ पे क्या होता है और सेफ नहीं है, तो ये उनके लिए मैसेज है। यहाँ पे सब चीज़ें नॉर्मल जैसे बाहर के मुल्कों में नेशनल इवेंट्स होते हैं, ऐसा हम भी यहाँ पे करते हैं। और हम तमाम जितने भी फोर्सेज हैं उसके बीच में ये एक नेशन और ये भाई को हम मेंटेन करने के लिए, जब बाहर जगह से लोग आएंगे एक दिन अपने एक साथ शूटिंग में, एक लाइफ टाइम मेमोरी होती है जो कि शूटर या वो जो टीम वापस लेके जाती है और सिंह की मेहमान नवाजी से मुस्तफी होंगे और उसको एंजॉय करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव इमेज है जो कि दिन पाकिस्तान दे रहे हैं, एक इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी हम दे रहे हैं। यहाँ पे चीज़ बेहतर है, नॉर्मल है, हम भी वही चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो कि दुनिया में किसी और जगह पे होती है। नो एज लिमिट, सिर्फ आपका लाइसेंस होना चाहिए या फिर आपको यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये दो कंडीशंस हैं और उसकी ऐसा लेने की। देखा कि जब शहर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ा तो आप लोग काफी एक्टिव थे, फोर्सेस भी बनाई गई थी। अब वायलेंस ज्यादा हो गया स्ट्रीट क्राइम में, तो अब क्या एसएसक्यू कुछ प्लान कर रहा है, भारत स्ट्रीट में एक्टिव हो रहा है? अभी रिसेंटली आपने 15 का जो काउंटर हुआ था, आपने विटनेस किया, वो लोग कौन थे? वो एसयू ही ऑपरेट कर रहा है, एसएसयू की टीम वहाँ बैठी हुई है। स्ट्रीट क्राइम में हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाते हैं। डिफरेंट कैसे, जब भी हमें रिक्वायरमेंट आती है कि कहीं पे अगर कोई सेंसिटिव एरिया है या ज़्यादा है तो हम उस पेडिंग भी अपनी बढ़ाते हैं। मगर उसके अलावा जो 15 जो सर्विस है दैट इज बाय द एसएसयू लोगों से, और हम पब्लिक मदद उसमें कर पा रहे हैं। उनकी इंस्टेंट हेल्प की वजह से एक कॉन्फिडेंस है पब्लिक शहरियों में कि अगर हम 15 पे कॉल करते हैं तो टाइम से पुलिस आ जाती है, और ये डेटा से खौफ के लिए उस चीज़ को रोकने का बायस बन। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हम चीज़ें बेहतर कर सकें उसको कर रहे हैं और आइंदा इसी तरह करते हैं। स्केटिंग फोर्स बिल्कुल बनाई थी। स्केटिंग फोर्स का मकसद था कि जो हमारे स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं वहाँ जैसे स्टेडियम में वो टीम आई हुई है, अब जब इसमें हम पब्लिक के लिए इसको खोलेंगे तो जो स्केटिंग के जो लोग होंगे वहाँ पे लोगों की हेल्प करने के लिए होंगे। जो स्केटिंग फोर्स का था कि शहर के यहाँ पे गाड़ी नहीं जा सके या जो वॉकिंग जगह है वहाँ पे, मगर यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए हमने लिमिटेड किया है। वो 20 लोगों की टीम वो जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है हम उसको भेजते हैं, मेनली उसको हमने स्पोर्ट इवेंट के लिए रखा है। अभी आप देखेंगे जब टीम होगी इनकी मैच होंगे, जब खतीन आएंगी तो आप लेडी कमांडोज को भी स्केटिंग में देखेंगे, उन लोगों की हेल्प करते हुए, उनके साथ गाइड करते हुए, और बाकी हमारे मेल कमांडोज को देखेंगे। तो दैट इज फॉर इवेंट्स ओनली। और ये कहा गया कि एसएसक्यू कमांडो जो है वो सड़कों पे से खाना पुलिस है गरीब मौतों को देगी, कहीं पे एसएसक्यू कमांडो की जो पेट्रोलिंग है दिखाई नहीं देती है। इस तरीके से आपको बताया कि बनता है मुकाबला इस बार हमने रैपिड रिस्पांस किया था, ये गलत मोबाइल अलग से है। एसएसक्यू के अपने कमांडो है हॉटस्पॉट्स पे खड़े थे, एक दो जगह जो है वो तस्वीरें भी आई थी, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं। जब कराची पुलिस की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है कि हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है तो हम उसको डिप्लॉय करते हैं। उसके अलावा 15 की भी हमने सेटिंग की है, वो एसएससी के कमांडो से की है, तभी ये पॉसिबल है कि 3 शिफ्टों में 24/7 काम है और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो जब भी हमें रिक्वायरमेंट आएगी मजीद तो हम उसी तरीके से हॉटो भी कवर करेंगे, उसी तरीके से उनकी मदद के लिए क्विक रिस्पॉन्स भी करेंगे। अच्छा, बजट वाले से इसमें कोई बजट नहीं है, जो आपकी फीस है हम उनका जो खर्चा डालेंगे, प्लस स्पॉन्स का जो फूड अरेंजमेंट है वो है। फीस हमने 1000 रखी है फॉर यूनिट पर्सन, 5000 फॉर दिन पर्सन। फीमेल कैटेगरी की भी 2000 फीस। अच्छा सर, ये पूरी दुनिया में जो सिक्योरिटी है वो एसएचयू को और एसएचयू की जितनी इवेंट है उनको आगे बढ़ने के लिए वो बात कर रहे हैं।
कहना चाहिए? ये एक किसान के लिए बायस फख्र है कि हम हमारे मुल्क में एक ऐसा इदारा है जिसको हम एग्जाम्पलरी तौर पे पेश कर सकते हैं। परफॉर्मेंस से खाली न सिर्फ ये कि उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, बल्कि आगे लोगों की भी हम एक उम्मीद की किरण है कि जब SSU के जवान हो सकते हैं, बाकी पुलिस हो सकती है। तो एक तरफ एक हमारे में इस टाइम हम परसेंटेज में थे तो हम 2% है सिंध पुलिस के, तो 2% हो गया है। 98 इंशाल्लाह पुलिस का बेहतर होना बनता है। इस तरीके से अगर लोगों की हम खिदमत कर सकें, उन बेहतर सब्सिडी दे सकें, तो जो ट्रस्ट है पुलिस में वो हो सकेगा। जी, ये हमारा चौकंडी में SSU का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हम इसको अरेंज कर रहे हैं और वहीं पे हम कुछ शूटिंग रेंज सारा कुछ वहाँ पे हम बनाए हो जाएगा। चीज़ों सिस्टम्स को ठीक होने में जनरेशन सकती है। एक उसकी तरफ शुरू में आप देखें कि मोरबी पुलिस का जो इमेज था कितना बेहतर हुआ, पुलिस के लोग जाके वहाँ पे काम करते हैं तो वो चीज़ें बेहतर होती हैं और पब्लिक भी होती है। इसी तरीके से तो ये एक थोड़ी सी स्ट्रगल है, टाइम लगेगा इन चीज़ों को, मगर ये कि की तरफ डायरेक्शन पे हम चल रहे हैं। वक्त आएगा कि सारे इसी तरीके से बेहतर तौर पर कर सकें। हम ये सकते हैं कि जो मीडिया के दो जिनके लाइसेंस वेपन है उनका आपस में मुकाबला कराएं। उनके लिए हम स्पेशल टारगेट रखेंगे। आपने वेपन्स के साथ है, वो मेरी तरफ से फ्री ऑफ चार्ज है। आप अपने इसके वेपन्स के साथ हैं, वहीं पे अपने आप मुकाबला करें, उस प्राइस की कैटेगरी करें। आपसे रिक्वेस्ट उस बहुत अच्छा काम और अब ये होने वाला है, आगाज हो जाएगा, तो आपने अरसे पे काम किया, अभी एक्चुअली होने जा रहा है, तो उसमें ना क्या आपके लिए इस हवाले से ये सामने चीज आ रही थी कि आपने चीज पोस्ट की थी, एनआरटी दिया गया बजट और आप क्योंकि आप बहुत लोग लेकर आ रहे थे, लेकिन आईजी साहब ने जो एनआरटीसी को दिया उसमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना, तो बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स होता है, ये सब लोगों को पता है। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि तरफ से बेस्ट पुट, चाहे एक्स करे या जेड। हमने मेहनत का ये फायदा हो कि हमने डॉलर साइज लॉक कर दी, हमें वो मार्जिन्स खत्म किए जो लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट की वजह से बढ़ रहे थे। तो प्रोजेक्ट की इसको हाफ करके हम जो 200 मिलियन की 100 मिलियन में कर, अब वो 100 मिलियन पे ही लॉक है, चाहे वो A टीम करे B टीम करे। उससे फायदा हुआ कि हम एक्शन सेट कर दी, हमने चीजें बता दी किस तरीके से होगी, और हमने एक सैंपल तौर पे एक पूरा सिस्टम बाहर दिया जो अभी भी लगा हुआ है, इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह उसी गाइडलाइन पे करें। और इसमें जब ये मुल्क के लिए बेहतर होगा, इस शहर के लिए होगा, यहाँ के आम के लिए बेहतर होगा, तो इस चीज से हम होपफुल हैं कि आगे चीजें बेहतर होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मुगीस है और मैं BTL मेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सेल्स स्पेशलिस्ट हूँ और हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स में हमारे पास कंपनी रेंज है, जिसमें हमारे कार्डियोलॉजी सेगमेंट में है, एस्थेटिक इक्विपमेंट्स हैं, और हमारे पास जो रिहेबिलिटेशन है जिसको हम फिजियोथेरेपी भी बोलते हैं वो हमारे पास हैं। हमारे पास हमें जब ये एक्सपो के बारे में पता चला, हम लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया कि मैनेजमेंट ने हमसे रब्ता किया, हमने उनको अपने बारे में बताया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम, क्योंकि हम आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे एक्सपो में सब लोग अपनी मशीन्स को आए हैं, एक क्योंकि दुनिया न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर जा रही है, रोबोटिक्स के ऊपर जा रही है। सेम इसी तरह मेरे सामने यहाँ पे हमारे पास सुपर इंडक्ट सिस्टम है जो कि एप्लीकेटर है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर ये हेल्प करती है, जो कि आपकी बोन्स की ट्रीटमेंट्स को, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स को ये हेल्प आउट करती है फिजियोथेरेपी के अंदर, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी पेशेंट के लिए। सुपर इंडक्टिव सिस्टम जो कि एक लेस टेक्नोलॉजी है, जो कि दुनिया में शायद ही बहुत कम कंपनीज है जो कि इसके ऊपर, चाइनीज बहुत जो कि क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं, जो US ब्रांड्स हैं, वो अपने क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते। हमारे पास इसी तरह कार्डियोलॉजी में जो कि हार्ट से रिलेटेड मशीन्स हैं, ECG मशीन, ईट मशीन, होल्डर, एम्बुलेटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, एक कंप्लीट रेंज है हमारे पास उसमें। सेम इसी हमारे पास स्किन ट्रीटमेंट मशीन्स और डिवाइसेस हैं जो कि हम लोग पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे आपके सामने फिजिकली मशीन भी लगी हुई हैं, हमने डेमो पे लगाई हैं। हमारे साथ एक्सपो सेंटर वालों ने बड़ा काम किया। मैं खुद लाहौर बेस्ड हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पे, मुझे मैनेजमेंट अच्छी लगी है, यहाँ सपोर्टिव है, और बार बार आके उन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी भी हैं, कोई मसले मसाइल वगैरह तो नहीं है। और मज़े की ये है कि यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट में रह के आपको हेल्थ प्रोफेशनल्स मिल रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी के ऊपर बात रहे हैं। मेन चीज़ ये होती है कि पेशेंट को फैसिलिटेट किया जाए। उसको हम लोग क्या करते हैं कि पैसे चार्ज कर लेते हैं, डॉक्टर्स चार्ज करते थे, लेकिन उसको फैसिलिटी उस तरह उस लेवल की प्रोवाइड नहीं की जाती, जो कि यहाँ पे अवेयरनेस दी जा रही है, लोगों को डॉक्टर बताया जा रहा है जो उस पे आ रहे हैं। इवन
JDC वाले भी हैं हमारे पास, जो कि काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में फाउंडेशन है। तो हमने उनसे भी बात की है टेक्नोलॉजी के ऊपर, और हमने डॉक्टर से भी बात की है। तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है। फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी है वो आनी चाहिए, और हमारे हॉस्पिटल मशीन्स होनी चाहिए। थैंक यू। Ladies and gentlemen, next few minutes, we will on the same for you, defensive organization and the idea, mainly related objectives and what the organization provides. And thereafter, I will document take you the beginning of the activities of that. It was raised in 2000, the joint staff headquarters was raised in defense production in 2000. Since then, they are working under the head of MP. The basic was to promote and project parts and military industries and defense exportation. All functions of the depot are performed on common model with no financial burden on national exchequer. The statement, which has been spelled out for the depot, reads: as a national platform, provides support to defense manufacturing, service sector, and the export chain promotion, facilitation, and coordination for the growth of defense of Pakistan. To achieve the depot basically undertakes promotion, facilitation, and coordination of the business opportunities for the defense industry. It organizes defense exhibitions both inland and abroad, including the flagship event of the IDEAS. Establishes parks pavilion across the globe. Gentlemen, in this regard, DEPO establishes 12 to 14 parks and pavilions annually across the globe in different countries for our own defense production enterprises. We also had the unique honor of organizing a single exhibition in Iraq, which was actually a little while ago. With the national exhibitions, the depot has been instrumental in organizing 2 editions of the Supplies and Vendor Defense Exhibition at Law Intense with the Chamber of Commerce Lahore, 2 editions of the Defense Exhibition at the Rawal Expo at Rawalpindi in concert with the Rawalpindi Chamber of Commerce and the Defense Port Turkey at Islamabad.
The idea has been a flagship event which is conducted biannually since 2000 and it has grown over a period of time both in stature as well as in size. Other than these four subjects, the depot also maintains an international standard display center here at Islamabad. We have carried out an extensive mapping of private defence industry wherein the potential buyers across the globe are directly interfaced with public as well as private defence manufacturers. A comprehensive defence product catalog has been prepared, which is not only available online but is also provided to all our foundations and is presented to all the visiting dignitaries. In addition, they will also conduct seminars other than the main seminar during ITRs. Well, just briefly touch upon the sense of the recent depot, which is really focused on advertising of the private defence industry and wherein the private sector is facilitated for international participation. It is known that 8 private companies participate in World Defence Show PSA without the government support. However, this participation can increase manifold with the government support in the future. We are also focused on integrating and participating along with the Chamber of Commerce in our different defence, national as well as international exhibitions. Besides, we are focused on the suppliers, vendors and small-scale manufacturers, basically to link them with the large-scale manufacturers and our private and public large-scale defence production process. Now coming over to the flagship unit of IDRs, as you are aware, the IDRs is the flagship unit of international stature for Pakistan, which is a sought-after rendezvous for business and knowledge sharing. With synergistic interaction of the global defence industry, it serves as a shared platform both for global peace and stability. And recognition and participation thus truly reflect deeply embedded, mutually beneficial relations. Then the main objectives which are actually designed to be accrued out of the IDRs include provision of business opportunity for the defence industry, both for the global and exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximum numbers of the domestic as well as international exhibitors. Demonstrate organizational skills and increase in the defence exposure. Image building of the country. Promulgate Pakistan's point of view internationally. And force diplomatic efforts in the realm of defence diplomacy. Now with this gentlemen, with the brief introduction, I shall now take you through a documentary which will actually show you whatever I have said out about ideas and the depot. How did it actually reach to this where we are standing today. Thank you very much. जी मेरा नाम सैयद असद मशदी है और आई बिलोंग टू मिलिट्री व्हीकल्स पार्ट्स बिजनेस और बेसिकली ये जो आइडिया एक्सपो है इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपल हो जो कि डिफेंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं। एक विंडो पे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स और मैं बड़ा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा डेपो को जिन्होंने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है आफ्टर दिस लॉन्ग कोविड जो सारी दुनिया ने फेस किया है। और उसके बाद ये एक जब दुनिया में B2B मीटिंग पॉसिबल नहीं हो रही थी तो मेरा ख्याल है ये डेपो ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि लोग अपने एंड यूजर्स तक यहाँ पे पाकिस्तान में मीटिंग अरेंज कर सके, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सके और अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सके। सो मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड वेंडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट्स हैं, उन्होंने अपने डिस्प्ले भी किया है। एट द सेम टाइम बहुत सारे फॉरेन कंपनीज जो है उन्होंने भी यहाँ पे डिस्प्ले किया है जो कि बहुत अच्छा एक इंकरेजिंग पॉइंट है पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के लिए। और साथ साथ ये भी दिखाया जा सकता है दुनिया को कि यस वी आर रेडी, वी आर हेयर टू सर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री है एट द सेम टाइम ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करती है।
सो ये जितना भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है विन विन सिचुएशन था फॉर बोथ साइड्स, फॉर द प्रोक्योरमेंट एजेंसीज और फॉर द जितने जो इसके सेल कर रहे थे या अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे या अपने नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने आए थे। सो थैंक्स टू डेपू, थैंक यू वेरी मच। मैं असल में इस इवेंट के साथ 2012 से एसोसिएटेड हूँ। 12 का इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से एक माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर डिफेंस एग्जीबिशन। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड के वजह से इफेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर, बिकॉज जहाँ पे भी गुरु और इनकी इन्वॉल्व होती थी वो ख़त्म हो गई। बट पाकिस्तान के लिए बैक वी आर इन दी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसकी हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है। और इस इवेंट के हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी, हम दोबारा उसी लेवल या उसी बेहतर पे जाते। मेरा ताल्लुक उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर्ड था डेपो के अंदर, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था आइडियाज़। एंड पहली मरतबा जब ये आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडिया से नहीं था, बैक एंड पर रह के काम करते। बट देन with the passage of time they have become too good for this event, and in arse ke andar they have improved a lot, and internationally now Badar Solution is recognized as one of the best event managers in Pakistan. बहुत अच्छा काम है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असलम खान है, ब्यूरो चीफ दुनिया टीवी कराची। 11वीं आइडियाज़ के हवाले से आज ब्रीफिंग रही और हमें जिस तरह बताया गया कि 229 पार्टिसिपेंट होंगे, 100 से ज़ायद ममालिक हैं जो यहाँ पर इसमें शिरकत करेंगे। पहली आइडियाज़ से यहाँ तक पहुँचे कि इसमें 2 नए ममालिक भी आ रहे हैं और ऐसे ममालिक भी हमारे पास आ रहे हैं जिनके हमारे जो बरादराना ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात हैं। और मैं आपको कहता हूँ कि हमारे जो तैयारा है जेफ थंडर 17 उसमें बहुत से ममालिक ने खरीद दिलचस्पी का किया। माल अगर हम बात करें कि हमारा अल्जार टैंक बहुत से मुल्क उसकी खरीद दिलचस्पी रखते थे, और अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसकी जो प्रोजेक्ट है उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मजबूर पर आज की ब्रीफिंग हौसला अफजा थी हमारे लिए कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में भी किसी भी तरह पीछे नहीं है। पहली नुमाइश की अगर हम बात वो इंतहाई शानदार, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दिफाई नुमाइश है ये भी मजीद कामयाबी के झंडे की मजीद कामयाब होगी, और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा कि हर नुमाइश में हमें ये मालूम होगा कि हम दिफाई मैदान में किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो कौम है उसके लिए भी ये बायस इत्मीनान है कि उसकी जो मुसल्लह अफवाज है वो पूरी तरह तैयार है। किसी भी दुश्मन की नियत का मुकाबला करने के लिए हम जो है वो पूरे तैयार और डटे हुए हैं। आइडियाज़ जो कि बाइनियल इवेंट है, हर 2 साल के बाद होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह 2020 में हम कंडक्ट करा सके, 50 साल के बाद हो रहा है, तो उसकी वजह से अब इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ती है और हम इंशाल्लाह इसके लिए तैयार हैं। और हम उम्मीद करें कि 2018 में जिस तरह कंडक्ट किया था उससे मज़ीद होगा और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा। हमारे पास काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशंस की कम आ चुकी हैं जो दुनिया के तमाम बराज़मों से हमारे पास डिग्निटीज आ रहे हैं, और एग्जिबिटर हमारे पास यूरोप, एशिया, हर तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जिबिट में आ रहे हैं। और साथ मैं आपको ये भी बता चलूँ कि इस दफ़ा हमने जिस चीज़ की फोकस किया है वो ये कि सिर्फ हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी इसके लूप में लेके और उनको भी एक आउटलेट ताकि वो दुनिया के सामने जो प्रोडक्शन है उसको शोकेस कर सके। इस तरह की बिजनेस एक्टिविटी होती है जो इंटरनेशनल लोग हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो इसमें एक बहुत बड़ के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है न सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं या हमारे लोकल लोग हैं कि वो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज हैं, OEMs हैं, उनके साथ रैक करें, उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ें। उसके साथ ही साथ हमारी लोकल कंपनीज हैं, एट टाइम्स उनकी भी जॉइंट वेंचर होते हैं बाहर की मुल्क की कंपनियों के साथ। डेफिनेटली ये हमारी को बूस्ट करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा साइन है। इस लेवल का ये एक इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और बहुत हाई लेवल जैसा कि मैं आपको बताया आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ जब एक पाकिस्तान में इसका इनेकाद दिया जाएगा तो इसका बहुत
जबरदस्त और बहुत पॉजिटिव मैसेज है जो लोग यहाँ आएंगे वो लेके जाएंगे। तो पता चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल का एक बड़ा इवेंट करा सकता है। और तमाम तर जो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब हमारे साथ वो सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं हैं जो हुआ करते थे, और इस तरीके की चीज़ होगी। और आजकल जो फ्लड के बाद के हालात हैं उसके बाद इस तरह का एक इवेंट कंडक्ट होना, ये हमारी इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमिनार हम मुनक्किद करवा जो कि बेसिकली 2 इसमें होगा, जिसका टियर 1 जो है वो आइडियाज़ के पहले ही दिन उसका इनका किया जाएगा, और उसके अंदर 4 होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी तरह सेकंड ईयर का जो नेक्स्ट डे पे कंडक्ट किया जाएगा, दैट विल बी द सर्वे ऑफ आइडियाज़। उसके अंदर जो हमारे लोकल स्टूडेंट हैं उन्होंने इस पे किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आके अपना हम प्रेजेंट करेंगे। और इन प्रेजेंट करने वालों के अलावा दोनों दिन हमने अपने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफिसर्स को भी इन्वाइट किया, उनको सुनेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसे सीख के जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची सड़कें हों, आइडियाज़ के जो वेन्यू है कराची एक्सपो सेंटर बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर का जो एरिया है और जो एग्जीबिशन हॉल्स का एरिया है, सब पर बहुत ज़ोर से काम हो रहा है। और इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइन को मीट करते हुए स्टार्ट से भी कंप्लीट कर लेंगे। सिंध गवर्नमेंट के बारे में ये कहूँगा कि उनकी पैटर्नेज हमेशा हमें मिलती रही है, पास में भी मिली है। और आपने खुद देखा कि हमारी 2 स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग थी, दे वर हेल्ड एट सीएम हाउस। सीएम साहब वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने शेयर किया, और वहाँ पर तमाम सिंध गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड थे, उनको जैसे सीएम की तरफ से इंस्ट्रक्शंस भी और उनका बजट हमने इम्पैक्ट दे, जब सिंध ने अपना साथ लिया तो उससे चीज़ें बहुत आसान हुई। Assalamu alaikum. My name is Mohammad Arsalan Khan. I am VP Sales at Shibli. Shibli is Pakistan's only private manufacturer of thermal images. We have come to Ideas the 3rd time. We have been regular participant in the Ideas Expo. Ideas is a very good platform for Pakistani companies, private or national, to demonstrate what sort of capability we have in the defense industry, and we can what sort of we can export to the other armies of the world. I would also like to thank Badar Expo Solutions, because Badar Expo is basically organizing the whole event, and they're doing a very good job. We have launched 2 new SQA MP and SQA Mini Ideas, which are binoculars with the LRF. This is this is SQA MP mounted here, which is a LRF based SQA binocular that can be used in daytime or night time to give the forces image also with the exact and accurate range of the target. Thank you. आइडियाज़ 2020 जो कि वैसे एक बाहरी इवेंट है, हर 2 साल के होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से जब 2020 हम इसको नहीं कंडक्ट करा सके, तो ये अब 4 साल के बाद हो रहा है। तो जैसे अब इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और हम इंशाल्लाह पूरी तरह इसके तैयार, और हम करते हैं कि 2018 में जिस तरह कंडक्ट किया था उससे मज़ीद बेहतर होगा, और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा। इससे काफ़ी हाई लेवल डेलीगेट इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं, जो कि पूरी दुनिया के तमाम आज़मों से हमारे पास डिग्निटीज़ और एग्जिबिटर्स भी हमारे पास यूरोप, एशिया, हर तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो ये है कि न सिर्फ हम अपनी जो पब्लिक की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी इसके लूप में लेके आए, और उनको भी एक आउटलेट दुनिया के सामने अब ऑप्शन है उसको शोकेस कर। भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है जहाँ पर इंटरनेशनल लोग गए हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो इसमें एक बहुत उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। न सिर्फ यहाँ के जो
दूसरे मुल्कों से आए लोग हैं या जो हमारे लोकल लोग हैं कि वो जो दूसरे मुल्कों से आने वाले कंपनी OEMs हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ जो हमारी कंपनीज हैं एट टाइम्स जॉइंट वेंचर्स होते हैं बाहर के मुल्कों की कंपनी के साथ, तो डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है के लिए भी एक अच्छा साइन है। इस लेवल का ये इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया लोग आ रहे हैं और बहुत हाई लेवल मैंने आपको बताया आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ जब एक दफ़ा पाकिस्तान में उसका इनेका किया जाएगा तो इस बहुत ज़बरदस्त और बहुत पॉजिटिव मैसेज एक जो अपनाएंगे वो लेके जाएंगे। पता चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल का एक बहुत बड़ा इवेंट करा सकता है और तब तक जो अल्लाह बहुत शुक्र है कि अब हमारे साथ वो सिक्योरिटी चैलेंज नहीं लोग हुआ करते थे और इस तरीके की चीज़ होगी। और जो फ्लड के बाद के जो हालात हैं उसके बाद इस तरह का एक इवेंट कंडक्ट होना ये हमारी इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। इसके अंदर हमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम मुनक्किद करें जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स में होगा। इसका सेगमेंट 1 टियर 1 जो है वो आइडियाज़ के पहले पे इनेकाद किया जाएगा और उसके अंदर 4 स्पीच होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और इसी तरह जो सेकंड टियर का जो नेक्स्ट डे पे कंडक्ट कराया जाएगा दैट वुड बी द सेकंड ऑफ आइडियाज़। उसमें जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो आके अपना काम करेंगे। और ये इन प्रेजेंट करने वालों के अलावा दोनों दिन हमने अपने स्टूडेंट्स को और प्रोफेसर्स को भी इनवाइट किया और सुनेंगे और डेफिनेटली कुछ इनसे सीखें। हम पूरे ज़ोर शोर से चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ के जो वेन्यू है कराची एक्सपो सेंटर उसके ऊपर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर का जो आउट एरिया है और जो एग्जीबिशन हॉल्स का एरिया है इसके ऊपर बहुत ज़ोर शोर काम हो रहा है और इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइन को मीट करते हुए स्टार्ट से पहले कंप्लीट करेंगे। तो के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी पैटर्नेज हमेशा मिलती रही है, हाथ में भी मिली है और इस दफ़ा भी आपने देखा कि हमारी 2 स्टीयरिंग कमेटी मीट्स थी दे वर हेल्ड एट CM हाउस। CM साहब वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने उसको शेयर किया और वहाँ पर तमाम सिंध गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड जो थे उनको जिस तरीके से CM तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली और उनका बड़ा पॉजिटिव है इम्पैक्ट देखा कि जब सिंध गवर्नमेंट ने अपना साथ में दूसरी चीज़ें बहुत हमारे लिए जिस तरीके से जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं तो आइडियाज़ जो है ये इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो तकरीबन कोई 50+ कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है। जब 50 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है तो आप कुछ समझ सकते हैं कि शो का साइज़ और चीज़ें जो हैं वो किस लेवल पे चला जाता है, जहाँ पे हमारे पास सारे चीफ्स के काउंटर पार्ट्स आ रहे होते हैं, दुनिया से डेलीगेशंस की पार्टिसिपेशन हो रही होती है और ये पाकिस्तान का एक नाम जो है अभी दुनिया के अंदर एक प्रोजेक्ट हो रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा शो जो है दफ़ा दोबारा 18 नवंबर को इंशाल्लाह कराची सेंटर में होगा। आज इसकी हमारी सारी सॉफ्ट लॉन्च थी जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको रेट किया। तो हमारा असल इसके अंदर मकसद है कि इसके अंदर हम मैक्सिमम स्पेशन बनाएं और इस शो के अंदर हमारी जितनी डिफेंस इंडस्ट्री है वो सारी की सारी यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करती है। और इसके साथ साथ मेरा हमेशा से ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ है इसको तो प्रमोट करें और दुनिया को हम बताएं। जिस तरीके से इस वक्त चीफ की भी एक पॉलिसी है कि हम सेल्फ इंडिजनाइजेशन के ऊपर जाएं और हम अपनी खुद से किसान जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चर करे। या तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हमने इस पूरे इवेंट के ऊपर जिस तरीके से हम अपने लोकल बिटर्स को जो है या मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो सब्सिडी देते हैं तो उसमें उनका मकसद यही है कि हम उनको इस फोरम पे लाएं और लाने के बाद जो हमारे से दुनिया से डेलीगेशंस आती है, पार्टिसिपेशन आती है, ताकि उनको ऑर्डर्स मिल सकें और वो एक बिजनेस जनरेट कर सकें और इसके साथ साथ हमारी इस इंडस्ट्री पर नई एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जाए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जितने भी हमारे
डिफेंस इदारे हैं और जितने हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट है और ये जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बदर एक्सपो इसको मेरी पूरी टीम, मतलब ये मिल के एक बंदे काम नहीं है, सारी टीम एफर्ट्स हुए हैं और ये पूरी टीम जो है वो मिल के अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम कर रही है और इसमें जितना कोऑर्डिनेशन और जिस टाइप की चीज़ें होती हैं आप उसको समझ सकते हैं वो कितना एक टाइम होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा टीम उसको उसी के अकॉर्डिंगली जैसी जो रिक्वायरमेंट उसको मैनेज करती। तो बस अल्लाह का मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मान दिया, ये चीज़ें दी जहाँ पे लोग कंपनी के ऊपर और एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ये एक और बड़ी खुशाइन बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह के 75 ईयर्स हमारे कंट्री जो है वो कंप्लीट हो गए और आप जैसे देखते हैं कि ये साल आइडियाज़ का जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला उसकी पूरी एक सेलिब्रेशन इंशाअल्लाह आएंगी आइडियाज़ के अंदर। और हम इंशाअल्लाह जिस तरीके से आज आप सॉफ्ट लॉन्च में भी देखा कि हमने एक स्टेम बनाई जिसके ऊपर 75 ईयर्स को हमने उसके अंदर प्रोजेक्ट किया है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखें कि ये पाकिस्तान का इवेंट है और पाकिस्तान फोर्सेस का इवेंट है। इंशाअल्लाह ये उसी तरीके से ये एक सक्सेसफुल इंशाअल्लाह इवेंट होगा। जी, मेरा मकसद कमाल है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ फुल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस। जीआईडीसी पाकिस्तान की कॉन्ग्लोमरेट है, कंपनी है। हम आइडियाज़ का 2007 से पार्ट हैं और मैं ज़ाती तौर पे तो सन 2000 से आइडियाज़ को देख रहा हूँ। जब इसके शुरू में 3 हॉल हुआ करते थे, आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जिबिटर्स व्हेन आइडियाज़ स्टार्टेड। आई हैड द ऑनर के मैंने इसको देखा है ग्रो करते हुए। 2022 है, अब माशाल्लाह 9 हॉल्स हैं इसके। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मोमेंटस ओकेजन है 2022 में, क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और आज बहुत सारे इंटरनेशनल विजिटर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं जो इस पूरे इवेंट का पार्ट बन चुके हैं। हमारे अपनी स्टैंड पे इस वक्त है कि 50 से ज़्यादा डेलीगेशंस को मैंने रिसीव की हैं, उससे भी ज़्यादा आई एम श्योर इन्वाइटेड होंगी। और जो एग्जिबिट कंपनीज हैं, 9 हॉल्स अगर हैं तो दैट मीन कि एग्जिबिटिंग कंपनी जो पाकिस्तान में है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लोकल और फॉरेन बहुत सारे और मुल्कों का इंटरेस्ट है। मैं देखता हूँ कि जो एग्जिबिशंस होते हैं फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, ये बहुत लीगल प्लेटफॉर्म आप देते हैं जहाँ पे आप डिफेंस कैपेबिलिटीज हर 2 साल बाद दुनिया के डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस है क्या, और आपको एक मौका मिलता है दुनिया से कनेक्ट करने का, बाहर की दुनिया को मौका मिलता है कि वो आपको वैल्यूएट करते। डेपो अंडर एक्सपो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, और मैं होप करता हूँ कि अंडर देयर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट can take this platform and exhibition to new heights. So good luck to both of them. Thank you very much. Pakistan. मैं समझता हूँ कि ये जो आइडियाज़ है इंटरनेशनल डिफेंस मिशन है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक अच्छा मौका है जहाँ पर पाकिस्तान के न सिर्फ अपने गवर्नमेंट के दिफाई सेक्टर के लोग बल्कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अपनी 50 मुल्कों के लोगों को शोकेस कर सकते हैं। और जहाँ पर बहुत से दूसरे ममालिक लोग इधर आते हैं तो आपस में मिलकर डिफेंस के मौजूद प्रोडक्शन पर काम करने की हमारी जो भी सलाहियत है उसमें बहुत इजाफा होता है। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि गुजरने के बाद आइडियाज़ हो रहा है और बड़े धाम से हो रहा है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान की एक बहुत खुशाइन चीज़ साबित होगी इंशाअल्लाह। मैं इस इवेंट के साथ 2012 से एसोसिएटेड हूँ। 12 और 14 का इवेंट पर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से ये माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर डिफेंस एग्जीबिशंस। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर, बिकॉज
जहाँ पर भी ग्रुप्स और इनकी इन्वॉल्वमेंट थी वो ख़त्म हो गई। बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी आर इन द लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है, और इस इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी लेवल पे या उसी लेवल पे जा सकें। मेरा ताल्लुक उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर था डेपो के अंदर, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडिया, एंड पहली मरतबा जब ये आए थे तो उतना एक्सपीरियंस का आइडियाज़ का नहीं था, बैक एंड के काम करते थे। देन the passage of time they have become too good for this event, and mashallah itne arse ke andar they have improved a lot, and internationally now Badar Exposition is recognized as one of the best event managers in Pakistan. बहुत अच्छा काम है। Fair Minister for Defence Production, Federal and Provincial Ministers, Chief Minister Sindh, the Chairman, Joint Chiefs of Staff, Services Chiefs, Director General, Defence Export Promotion Organization, Senior Civil and Military Delegates, Chairman and Chief Executive of the National and International Defence Organizations, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. It is my pleasure to speak at the 11th edition of the International Defence Exhibition and Seminar, commonly known as IDEAS 2022. I'm very pleased to see the presence of a large number of guests, including honorable delegates, exhibitors, and trade visitors who traveled from around the world to join us today. I welcome all to this special edition of Innovation and Excellence. Indeed, your presence here today truly strengthens our resolve to foster and promote strategic relations with our partners and while encouraging technological growth and knowledge sharing. Distinguished guests, since our government formed, our unity government formed in April this year, the coalition government has been engaged in efforts to bring the country out of various challenges. The most serious among these crises that has extended most of our time and energy is the stabilization of our economy. We inherited an economic catastrophe where Pakistan was precipice of default, and shukr alhamdulillah by the grace of God and the efforts the unity government, the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we have yet to witness in our history. The most unfortunate aspect of this economic crisis was, in addition to the economic impacts of the COVID pandemic that affects each and every nation across the world and has caused economic difficulties for citizens everywhere. In addition to the economic impact of the conflict, the Russia-Ukraine conflict, the risk of economic default in Pakistan was not only exacerbated by these facts, but a direct result of conscious decision-making. This was effectively collective shooting oneself in the foot. And it is something that we all agree should never happen again in the course of our governments come and go, political parties change, but we should never compromise the fundamentals of our national economic policy. At this time, we've been focused on making service delivery efficient and people-centered, fixing Pakistan's energy woes, rebuilding Pakistan's foreign relations, and giving a sense of stability in our policy, not political environment. As far as foreign policy is concerned, I'm happy to report, as a result of our teamwork and extensive positive engagement across the board, Pakistan's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength. Over the past 6 months, we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations, be it the East, the Middle East, West, or the rest of the world, culminating in our exit from the FATF grey list, the Financial Action Task Force, and on our way, hopefully, for the restoration of our GSP Plus status. Just when this looming economic crisis was averted and things started to move in a positive direction,
we experienced the worst ever climate catastrophe that Pakistan has ever seen. The monster monsoon on steroids, as Secretary General Antonio Guterres put it, resulted in 1/3 of the landmass of our country being underwater. 1 in 7 people affected, that's 33 million people of Pakistan, 16 million of which are children, 600,000 women waiting to give birth. The impacts of this on the backbone of our economy, the agricultural sector, have been devastating. The total loss and damage is estimated at more than $32 billion, which is 10% of Pakistan's GDP. This climate event will directly correlate with a significant portion of our population being thrust below the poverty line. Given the massive scale of destruction, we have been pushed back for decades, but in every crisis, there is an opportunity. And we can convert this crisis into an opportunity if Pakistan commits to not only investing in these less developed areas, in these rural areas that have been devastated by the flooding, but also as we look towards reconstruction and rehabilitation, we hope to so in a climate resilient manner. We do share the aspiration not only build back, but build back better. In our interactions with world leaders, including the recently concluded COP27, we outlined the need for concentrated global action to climate change as a priority. As the chair of the G77 plus China, we have led the demands of Global South for climate finance and climate justice to enable developing countries to cope with climate adaptation and mitigation challenges. But in addition to that, we have, alhamdulillah, been successful, and this is a success not only of the developing world that has long held this demand, but of Pakistan and the people of Pakistan, that following the devastation from this climate catastrophe, in our capacity as G77, we have successfully negotiated to add on to the COP27 agenda, in addition to mitigation and adaptation, but the concept of loss and damage. Because it was only after we in Pakistan experienced the devastation of these floods that resulted in a 10% loss to our GDP, that it became evident to us that there was no international financing mechanism for devastation, for loss and damage of this scale. And it was after our own experience that we joined the many countries that have long been demanding loss and damage be added to the COP and global agenda. And we hope, if it was too late for the people of Pakistan to benefit from the lack of such an institution, that the next country, the next developing country to be affected, would be able to benefit from an internationally agreed upon mechanism for financing loss and damage. There should be no doubt in anyone's mind about the potential of climate change to reverse all endeavors for sustainable development goals. Climate change is one of the most national security threats that can ignite and deepen conflicts. And as we have witnessed, Pakistan is now ground zero for climate-induced disasters and must prepare for the challenges associated. Ladies and gentlemen, today the increasingly complex security environment poses multifaceted threats to national security and stability of the countries. With rapid advancement in technology and proliferation of related knowledge, we are experiencing a visible change in the established security paradigm. In today's globalized world, the national security has emerged as a dynamic concept that is as much economic, political, social, and institutional as it is military and strategic in nature. In an age of fake news and disinformation, the threats to national security increase manifold. The specter of rising global food and energy prices is putting immense strain on national cohesion and unity, thus deepening internal fault lines.
It is our considered opinion that the best way to safeguard and strengthen national security is to achieve economic self-reliance, rebuild and strengthen political institutions, deliver the 21st century governance that is demanded and required, ensure rule of law, and put the people at the center of public policy. This requires a much needed reset in our thinking, as well as the way we conduct business. Internal consolidation can alone enable our nation to secure its core economic, foreign policy, and security interests. And in order to do so, each institution must function within not only their constitutional domain, but with a primary focus on their objective, on their national goal. For example, I am a politician, I am a parliamentarian, and I represent the constituency in Parliament. My job is to be answerable to Parliament, to be present in Parliament, and rather than lashing it out with my political opponents on the streets or in the public arena, we have created this forum where all people of Pakistan can be represented, where our exchange of ideas, our debate should lead to the addressing of issues of national importance through consensus, so we can move beyond consistent state of flux and focus on the priorities of our nation. Distinguished audiences, new technologies led by this revolution in the field of artificial intelligence are playing a vital role in confronting various security challenges. In my view, the responsible use of technology advancement can make the world a better and safer place. Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability, and order. Reciprocity, mutual interests, and international norms are the guiding principles that govern Pakistan's relations and the bilateral, multilateral level. In regional context, the transformation of South Asian geostrategic environment has further accentuated the importance of this region in world affairs. Resultantly, regional cooperation and active engagement of regional and global players become imperative, particularly to achieve regional peace, security, and social economic development. On the other hand, instability and turmoil that has beset our region for many decades also needs a firm and coordinated response by all stakeholders. We believe in meaningful dialogue on the basis of equality, not only to resolve bilateral issues, but also to unpack the immense economic potential of our region. It is here that the peaceful resolution of the long-standing occupied Jammu and Kashmir issue is in light of the UN resolutions and aspirations of the Kashmiri is central to establishment of sustainable peace in South Asia. Distinguished guests, it is hard to note that Pakistan's defense industry has now achieved a good level of quality and reliability, wherein its products are comfortably competing in the international defense market. Though Pakistan is now exporting some high-tech defense products to more than 60 countries, yet the volume of exports, in my opinion, is not commensurate to our actual and true potential. A crucial factor in this context has been the limited involvement of the private sector in defense production and export activities. In addition, relatively less attention has been paid to academia industry interface and in the involvement of R&D organizations, which has curtailed the competitiveness of certain sectors of this industry. In order to achieve this objective, I will stress upon the integration of public-private defense industry to achieve maximum results. New ideas and the entrepreneurial and management skills of the private sector need to be co-opted with public sector defense industry. The potential of academia and R&D organizations needs to be incorporated with the defense industry for more efficiency as well as volume to our defense production exports. Our government, ladies and gentlemen, will continue to promote business-friendly environment for investments in human capital and professional development in the demand-driven industry. The unity government is also committed to deliver an industrial strategy that contributes to growth and employment and encourages small and medium enterprises to come forward and join hands for the development of our defense industry.
In this regard, I look forward to the Ministry of Defence Instructions formulation of a clear policy framework to integrate the whole potential of Pakistan's defence industry. Distinguished guests, when we talk about the defence industry, International Defence Exhibition and Seminar is an iconic platform for showcasing the latest defence technologies and innovations. In fact, Ideas is a regional gateway for international manufacturers and suppliers to explore new avenues of defence cooperation through joint ventures, outsourcing, and collaborations. On the other hand, the presence of a large number of foreign exhibitors and delegates reflects Pakistan's deeply embedded and mutually beneficial relations with the international fraternity. I would say that Ideas is a shared vision for global peace, stability, and harmony amongst the community of nations. And the Ideas slogan, Arms for Peace, truly reflects Pakistan's principal stance in the regard. Ladies and gentlemen, before I wind up, allow me to appreciate the efforts of the Ministry of Defence Production, Defence Export Promotion Organization for successfully holding a series of ideas to exhibit the best of Pakistan's defence sector and promoting international cooperation in the field of defence production. I applaud the continuous support of the federal and provincial ministers of Pakistan, armed forces, law enforcement agencies, and the government for successful conduct of this mega event. I am also very pleased to note that the Pakistan Postal Services has issued a commemorative postage stamp to complement the holding of this very special edition of Ideas 2022 in the 75th year of the independence of Pakistan, and I am positive that this landmark event will achieve more progress in the years to come. I thank you all. Pakistan Zindabad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem. Professor Dr. Syed Irfan Haider, the chair, distinguished panel members, General Arif, DG Defence Export Promotion Organization, worthy delegates from the friendly countries, general officers, dignitaries, honorable ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a great privilege for me to be standing here and thanking the distinguished panel for educating us on a subject which is still evolving but very important to us. I followed the discussion with a lot of interest, and I wanted to make some of the comments which I will now be sharing with you. One of the points that we discussed was intelligence. I believe intelligence is the ability to assimilate the information in one situation and then analyze it in a manner that it can be applied in a totally different situation, and also to be able to sift the information from noise and to be able to make corrections if something goes wrong. So all that combination which is there in the intelligence, which distinguishes us from the animals, we are trying to put it through algorithms into the IT system. So far, the Turing test appears far away. So I think we are not yet in danger of being eliminated by the computers or robots. But at the same time, we have to be very cautious, as Dr. Irfan said in the end, use of any technology. It can't be panacea for everything. And also, we have to understand that AI's use will vary from situation to situation. Take the example of chess. Now, chess has very defined rules, and chess has two opponents contesting with each other over a board of 64 pieces, 32 pieces over 64 squares. This is something which AI can understand. It can comprehend, because no matter who the two opposing sides are, they have to follow a set of rules, and then they have to apply it on a very, very limited scale. So AI can master chess better than human beings maybe. The other example that came here was that of the stock exchange. Now, stock exchange is a very limited field where there is no opponent. It's just a lot of data crunching and associating it with the things around the globe, how they are going to impact it. In normal circumstances, a flood in China would not be linked with the stocks in New York Stock Exchange. But with the help of AI and giving it a data of years and years,
the AI will be able to correlate something which human minds will need lot of exercise to to understand. For a normal mind, it will need, okay, the flood has come in a certain area. How does it affect production? How does it affect the transportation? Does it affect the tanker movement? Does it affect the petrol supply? Does it affect the container movement? With AI being able to utilize data of years and linking it with everyday stock exchange ups and downs, can reach that level quickly where any happening around the globe and its impact on the stock can be worked out. Now, taking these two examples on the side, look at what is actually warfare and what is defense. War is a contest of opposing wills, but there are rules. It's not on a chessboard, it's played live. And in this case, the things that are to be discussed or achieved are not a figurative calculation of stock values, but so much of diversification that it will be very difficult for any AI module, any AI system to overrule what a human being can do. Those of us who have been practitioners of warfare, the decisions by a captain with 5 years of service, 6 years of service, and the decisions by a general with 35 years of service, they can't be the same because of the background of 30 years difference and learning that he has done over a period of time. Whether right or wrong is something different, but the decisions cannot be the same. So similarly, giving AI a data, one, that data is not available right now, the warfare data. Every war has different dynamics, every war has different kinds of weapons, every war has different kinds of adversaries. Every war has different thought processes on both sides. The man of 1945, Second World War, his way of thinking, and the man of 2022, these are two different things. So war cannot be totally predicted by the AI or cannot be controlled by the AI. Because essentially war is what? It is contest of the opposing wills. In warfare, the main target from day one, from the very beginning of the warfare, has been the will of your opponent. You want to subdue the will of your opponent, and over the years, human beings found weapons and violence to be the key to subjugating the will of the opponent. And they use that to their advantage, and that is what brought us into the domain of wars. Where I see more scope for AI is some part which was discussed here. It is shaping the minds of your opponents and making them capitulate without firing a bullet. By using AI to play with the way they think, the way the society operates, making that society fight with each other instead of fighting outside, making that society collapse internally through economic, through political, through religious, ethnic, or any other kind of warfare internally. So I think that particular aspect of it is already in play, and we are not yet fully aware of it, but I think this is being played by the global players at various levels. And if we look at it, we are also being subjected to it. Recently, there was a discovery that Indians were operating fake sites and generating fake news to malign Pakistan. Well, this should not come as a surprise. This is what is going to happen. And how much of this is already happening is again something which should interest the practitioners of warfare. The other aspect where I think what I gathered from the discussion today, AI can help you regulate so many of the mundane tasks which today sap the energy of decision maker, like the logistic calculations, like movement of supplies, like the time taken to move from one place to another, and so many mundane plans. Those can be, computerized and automated with the help of AI with a fair degree of certainty, and of course keeping some breaks in between for the variables which you don't understand. But end of the day, the major decisions that you make will remain human, and AI will only be used as a decision support mechanism, because it will be able to analyze many of those informations which human beings cannot process at one time.
So it can act as a decision support mechanism, but it cannot replace decision makers right now as we are. Still, it is an evolving field, and like all predictions in the past, it will not be a good thing to predict something which may go very suddenly, and we may find that sometime in near future, artificial intelligence has reached that level where human beings are not required to control. But one thing I am certain, that artificial intelligence can never compensate for the natural stupidity of human beings. And that is what we need to cater for. And as practitioners of war, we need to guard against our natural stupidities. Thank you very much, gentlemen. I once again thank all of you for all the inputs that you gave us. You have given us a lot of food for thought. And I'm sure all the people attending here have benefited from this talk. Thank you very much. Honorable Defense Minister, Excellencies, distinguished guests, Assalamu alaikum. It is a matter of great honor to me to extend a very warm welcome to the Defense Minister, Federal State Ministers, Secretaries, Ambassadors, High Commissioners, Galaxy officers serving and retired officers from our offices, our guests from national media, business group, and parties. We are grateful to the Honorable Minister for placing the family lunch International Defense Exhibition Seminar 2022, known by its acronym IDEAS. Ladies and gentlemen, we entered in the national defense exhibition industry by organizing the IDEA in the year 2000 at Center Karachi with 125 international exhibitors and 150 foreign delegates. During the last 2 decades, IDEA has grown steadily in space, volume, exhibitor, and foreign delegates. In IDEA 2018, we had a record participation of 524 exhibitors and 231 delegates presenting 44 countries. And we are lucky that Dalai Lama was the DG then, and we had a record participation across the country. The opportunity to explain the idea got adversely affected when IDEA 2020 has to be rescheduled due to the COVID. It was one of the worst cuts of our living. World in general, and Pakistan in particular, fought with courage and determination. COVID is still not over, but we have learned how to live with it. Ladies and gentlemen, I am glad to share that the 11th edition of IDEA is scheduled from 15th to 18th November 2022. The 75th celebration of independence of Pakistan. What a proud moment. Despite a gap of 4 years, we have received booking for more than 70% of the available space day to day. Needless to say that IDEA 2022 will be much bigger size and stature than ever before, inshallah. We are also in the process of extending invitation to the defense delegation of around 80 countries and expect to receive positive response from the honorable invitees. IDEA has established itself as an attractive and grand venue to promote future understanding, trust, friendship, and cooperation. In this regard, Pakistan's defense industry and vendor industry offer a great opportunity to the defense industry of the developed world. Ladies and gentlemen, it presents Pakistan's large defense industry to the outside world by showcasing Pakistan's defense production capability in the Caribbean region, aimed at exploring ways and means of partnership in defense production through joint ventures, outsourcing, and cooperation. Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to share the vision of IDEA, which is twofold. On one hand, it aims at increasing space for joint cooperation between Pakistan public and private enterprises with their regional and local partners, while on the other hand, it is meant to enhance the possibilities of public-private partnership, providing a unique opportunity to our friendly countries to visit Pakistan, sit together, interact with each other, collaborate, cooperate to build defenses, and find solutions to the problem confronting the region and the world. I wish to make a special mention of Ministry of Commerce as well as the Trade Development Authority of Pakistan for the all-out support and availability of Expo Center Karachi as a venue for the IDEAS 2022. I would also like to thank Minister of Communication and Director General of Pakistan Post for according approval for issuing of commemorative postage stamp on 15th of August 2022, signifying the holding of 11th edition of IDEA in 75th year of celebration of independence of Pakistan.
May I also mention that the government of state and Karachi district administration have always been forthcoming and very supportive of holding this mega event in Karachi. I would also like to thank Badar Expo Solution, our event organizer, for his undying efforts and participation. Ladies and gentlemen, in the end, I would like to thank all the guests for accepting the invitation to attend this ceremony. Honorable Defence Minister, we are personally grateful for your presence on this occasion. I thank you, ladies and gentlemen. Pakistan and Zindabad. Ladies and gentlemen, in the next few minutes, I shall briefly touch upon the sales and an overview of Defence Support Motion Organization and ideas, mainly dilating upon objectives and what the organization does by itself. Thereafter, we will have a document to take you through the journey of the depot and activities of the ideas. Depot was restarted under joint bodies, which was replaced in industrial production in 2002. Since then, Depot is working under the emblem of FE. The aim was to promote and project the military's industrial and defense export potential. All core functions of the depot are found on corporate mode with no financial burden on national exchequer.
This statement, which is spelled out for the depot, reads, as a national platform provides support to the defence manufacturing service sector and the export chain through promotion, facilitation and coordination for sustained growth of defence exports of Pakistan. To achieve this vision, the DEP undertakes promotion, facilitation and coordination of business opportunities for the defence industry. It organizes defence exhibitions both inland and abroad, including the flagship event of the IDEA. Establishes Pakistan Pavilion across the globe. And in this regard, DEPO established 14 Pakistan pavilions annually across the globe in different countries for our own defence production enterprises. We also had the unique honor of organizing a single country exhibition at Iraq, which was actually mentioned a little while ago. With regard to exhibitions, the depot has been instrumental in organizing 2 editions of the Supplies and Vendor Defence Exhibition at Lahore in concert with the Chamber of Commerce Lahore, 2 editions of the Defence Exhibition at Naval Expo at Rawalpindi in concert with the Rawalpindi Chamber of Commerce and the Defence Port Turkey at Islamabad. The IDEAS has been a flagship event which is conducted biannually since 2000 and it has grown over a period of time both in stature as well as in size. Other than these 4 subjects, the depot also maintains an international standard space center here in Islamabad. We have carried out an extensive mapping of the private defence industry wherein the potential buyers across the globe are now directly interfaced with public as well as the private defence manufacturers. A comprehensive defence products catalog has been prepared, which is not only available online but has also been provided to all our foundations and is presented to all visiting dignitaries. In addition, the depot also conducts seminars other than the main seminar during ITRs. Now, just briefly touch upon the centerpiece of the recent efforts of the depot, which is basically focused on mechanizing of the private defence industry and wherein the private sector is facilitated for international participation. It is hard to note that 8 private companies participate in World Defence Showcase without the government support. However, this participation can increase manifold with the government support in the future. We also focused on integrating and participating along with the Chamber of Commerce in our different defence national levels international exhibitions. Besides, we are focused on the suppliers, vendors and the small scale manufacturers, basically to link them with the larger manufacturers and our private and public large scale defence production devices. Now coming over to the flagship unit of IDEAS. As you are aware, IDEAS is the flagship event of international stature for Pakistan, which is a sought-after rendezvous for business and knowledge sharing. With synergistic interaction of global defence industry, it serves as a shared platform both for global peace and stability. International recognition and participation thus truly reflects deeply embedded mutually beneficial relations. There are main objectives which are actually desired to be accrued out of the IDEAS include provision of the business opportunity for the defence industry, both for the international exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximum numbers of the domestic as well as the international exhibitors. Demonstrate organizational skills and increase in the defence exports. Image building of the country. Promulgate Pakistan's point of view internationally. And reinforce diplomatic efforts in the realm of defence diplomacy. Now with this gentlemen, with the brief introduction, I shall now take you through a documentary which will actually show you both these, whatever I have spelled out about IDEAS and how they actually reached to this where we are standing today. Thank you very much. It is indeed a matter of great pleasure to
see the International Defence Exhibition and Seminar, more popularly known as Ideas, gain strength with every passing year. The exhibition has grown in scope and stature in a span of 22 years, and I feel satisfied to see Pakistan's achievements in a relatively new ground for us. Over the years, Ideas has become a great meeting place for defense exhibitors, high-level defense delegations, analysts, and trade visitors from all over the world. This rendezvous, Ideas, provides excellent opportunity to develop better understanding and friendship, networking of the defense industry for trade and joint ventures, and more importantly, seeking affordable solutions to meet the challenges being faced by the defense industry. I should say I am really proud of the progress which Idea has made and which is evident by an overwhelmingly participation of traders, exhibitors, delegates, and visitors in last Ideas held in year 2018. Honorable guests, Pakistan harbors no aggressive designs against any state, but we are determined to defend our territorial integrity and safeguard our sovereignty. Armed forces of Pakistan are battle hardened and known for their professionalism. The world over, our contribution towards the UN peacekeeping missions and our performance around the globe is a clear manifestation of devotion to duty and professional skills. The motto of this exhibition, Arms for Peace, also highlights our commitment to the international community for peace and harmony. Pakistan will, inshallah, continue to develop our military potential that guarantees peace with honor and dignity. Towards this end, we have been able to develop significant capabilities for indigenous production of sophisticated weapons and equipment. It is a matter of great satisfaction that besides meeting the domestic requirements, our defense products are now gaining market shares at the international level as well. Praiseworthy progress has been made in production of complex systems like main battle tanks, UAVs, armored vehicles, air-launched munitions, fast-tech missile crafts, maritime battle vessels, fleet tankers, modern jet aircraft, and aircraft-related technology. I see a great potential in our defense industry to export its products on competitive basis through responsible arms trade. Honorable guests, holding of Idea is a reflection of Pakistan's consistent efforts to organize the industrial activities for production of defense equipment through collaboration and joint ventures. In addition to indigenous production, having overcome the effects of unprecedented and devastating COVID-19 pandemic, which affected the whole world, we are back in business with a renewed zeal and enthusiasm. I wish the organizers of this event success in the conduct of Ideas 2022 and look forward to an overwhelming participation from defense industries from inland and abroad. We would warmly welcome the foreign defense delegates and trade visitors to Ideas 2022 to be held in November this year after a gap of 4 years. I also congratulate all the defense-related as well as other business-associated community and media houses who have selected the mega event of international repute for participation and sponsorship. I thank you all. Assam, Mindallah.
My name is Awais Naeem. I am Regional Business Manager in Fast Cables Limited. Today we are here on second day of IDEA 2022. IDEAS जो है एक बड़े गैप के बाद हो रहा है 2022 में. इससे पहले 4 साल पहले हुआ था. It's a good occasion where industries can introduce जो लोकली हमारी इंडस्ट्री आर्म्स की प्रोडक्शन कर रही हैं या उससे रेलेवेंट जो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे आर्म्स को सर्व कर रही हैं, हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को सर्व कर रही हैं, तो वो यहाँ पे सब मौजूद हैं. फास्ट केबल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया. फास्ट केबल इज द फर्स्ट एंड ओनली मैन्युफैक्चरर हु हैज सिविल लाइन टेक्नोलॉजी. और इसके अलावा वी हैव एल्यूमिनियम अलॉय प्लांट. We are the first KIMA Gold certified here in Pakistan, and we also have launched the first Fast Tasdeeq. We are the first one who launched their app in Pakistan, जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट्स को घर बैठे बाय कर सकते हैं. We also the Fast Tasdeeq, आप जब भी फास्ट का प्रोडक्ट मार्केट से खरीदें तो आपको रियल क्वालिटी प्रोडक्ट मिले. So we claim that Fast serves you with a real quality, and we are the manufacturer who has the highest capacity of production. We are manufacturing 30 cables, and also we are manufacturing grill connector, जो कि हमने एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की है और हम उसके जरिए नेशनल ग्रिड्स को और जो हमारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसको एनालाइज कर रहे हैं. सो आप सब जो रेलेवेंट इंडस्ट्री के या रेलेवेंट लोग हैं वो आइडियाज को जरूर विजिट करें. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि रियल फेस है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की इंडस्ट्री का. थैंक यू. This is me, Arusa Salahuddin, as outreach manager from ISPR. We have a stall here in Ideas 22. It's a Hilal publication. सभी जानते हैं कि हिलाल पब्लिकेशंस जो है वो 1948 से पब्लिश हो रहा है और हम वो मैगजीन्स और बुक्स को रीड करने के लिए आया है बिकॉज आर्म फोर्सेस मैगजीन और हमारा जो बेसिक पर्पस है वो यहाँ पे जो है आर्म फोर्सेस में जो हमारी मैगजीन्स रिलीज हो रही है इसका मोटिव जिसमें हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को डिस्कस करें. अभी आइडियाज़ को स्पेशली जो है वो मैगजीन्स में हाईलाइट कर रहे हैं. इट्स अवेलेबल हेयर एंड हम उसमें एडिशनली जो है आइडियाज़ के ऊपर स्पेसिफिक जो है हमारी स्पेशल रिपोर्ट्स भी हैं इसमें. सो आइडियाज़ विल बी अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिकेशंस. दैट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. हम यहाँ पे जो है अच्छी चीज़ें जो है डिस्प्ले कर सकें. My name is Özgür Cankara. I am the Vice President in Meteksan Defense. Meteksan Defense is one of the major companies in the Turkish industry. Working in the Pakistan market Pakistan sector for 3 years. We are the supplier of the Yakamos sonar, which will be used in the Miljam ship, which will be delivered by Aswad. So today we are in the expo presenting our sonar systems, including Yakamos. And more than that, we are also supplying submarine sonar systems, promoting our newest products, which we have already delivered to the Turkish Navy. And I think all this will support the Pakistan Armed Forces, and Navy, and the Air Forces in that sense.
went through the nitty, the hard part of AI. My objective of that discussion was to lighten a little bit and put the discussion in a context, the context which is very important. Personally, I'm basically a computer science person, technology person, and I'm too afraid of technology. You can't imagine how much afraid I have stopped using PowerPoint technology for the last 20 years now. I'm better because this is distracting, right? So this is distracting what I was doing, and you can actually see those PowerPoint slides were distracting actually. The presenter is unable to express what is in the heart because maybe the presentation was not visible, it was made for some other context. And my advice to all the students basically is, I'm trying to, but I'm not quite able to bend the PowerPoint slides from the classroom. But basically, what I'm trying to emphasize is that the technology is as good as the people using it. A simple knife in the hands of an expert butcher will be able to make that meat into a beautiful piece of something eatable. And that same knife in a nincompoop like me, who doesn't know how to use the knife, will simply spoil it. That is as true with the technology, such as a simple knife. It is as true with the more sophisticated technology like a PowerPoint site, and even more sophisticated technology like the graphics. So these graphics help, but they help some of the time and not all the time. We need to be humble about the use of technology. It is for serving our purpose. It is not to serve the purpose of technology itself. It is not for the purpose of serving the purpose of the capitalist economy that would like 2G to be replaced with 3G, to be replaced with 4G, to be replaced with 5G, to be replaced with 6G, and in each such transition make our life more and more miserable and more where we do not have the quality time for us. So we were talking over here about artificial intelligence. There was a great debate between Peter Nowak and Noam Chomsky. The basic issue today where we are using data, and I think that example is very well put. We have all the data about planetary motion. So we are taking readings. We know precisely when a particular planet will be at a certain time. We have been taking those readings for the last, say, 20 years, and we have a massive database which can precisely predict, based upon the data itself, where the planet will be on such and such date. But does that mean that we do not need the Newton's equations of planetary motion? Because the Newton's equations of planetary motion required intelligence, the human intelligence. Whereas simply predicting something on the basis of huge number of data instances that we have is of course efficient, is of course speedy, it of course scales up, it makes our life easier, but will not be able to resolve some of the major issues, major concerns of our life, which is how to be happy, how to live with equanimity, what happens when there is war, and how to avoid wars, and when to stop. Yes, it is a tool that has to be used, but it has to be used in a sparing fashion. We just saw what the soft power of USA versus the hard power used in Afghanistan did. So yes, it is for the time it happens, and it is an essential part. But we must not lose sight of the greater picture of our life. So the technology is as good as the people using it. If the people are not good, I don't know what will happen. As the speakers pointed out,
that in most of the cases we are using the same password that was given by the manufacturer when the machine was installed. I think that would also be true in 95% of the cases, even in Pakistan also. So, this was also pointed out, AI is as good as the man behind the programming of the AI code that is being put in the machines. So, and that person can also put in all the viruses that one wants. And the machines, those hi-fi machines that we are buying, I'll be surprised if the manufacturer has not put in a fail-safe switch in there. It was really in the move of the manufacturer not to have put when to shut down that machine getting such and such signal. I think that's pretty easy to do and pretty simple thing. So we need to be humble about technology. It's not a panacea. It's good for solving specific problems, directed problems, and solving particular issues, very well-defined problems. But at the current state of the art, thinking about big decisions, I believe the humans will have to take and shoulder those things. But yes, of course, the challenges of speed and repetitive attacks that come in require repetitive AI technologies. So we need to identify the context in which it will work or be useful for us and context in which it will not be. The other major important thing are the fake news. We have seen how the loyal people could be used simply by pumping up their loyalty to an extent where it starts harming them. And that has happened in USA, it has happened in UK, it has happened in other countries, and is happening around us also. We need to be aware of that and need to be humble that this alarm which is going out is actually an alarm or just a fake news or a fake alarm. So it's very murky, and there are these algorithms and philosophical discussions, and we need to be aware about their philosophical understandings also, just not believing in the technology as a panacea for all. I would like to thank the speakers over here for taking time out and doing an interesting, wonderful discussion. It was a great learning exercise, and we all learned a great deal. Thank you very much. Defence Export Promotion Organisation, under the patronage of Ministry of Defence Production, Government of Pakistan, and managed by Badar Expo Solutions, is organising the 11th edition of the International Defence Exhibition and Seminar, Ideas 2022. The exhibition will bring together stakeholders and companies from diverse defence industries. The 4-day exhibition will provide an opportunity for G2G, B2G and B interactions, joint ventures and investment in defence production sector. A strategic seminar will also be conducted during the exhibition, with 11 speakers, experts from public and private sectors will share their views on artificial intelligence defence market. Ideas will be held from the 15th till the 18th of November 2022 at Karachi Expo Centre. For exhibition stands and sponsorship participation, please visit our website www.ideaspakistan.gov.pk. Assalamualaikum. My name is Awais Nadeem. I am Regional Business Manager in Fast Cables Limited. Today we are here on second day of IDEA 22. Ideas जो है एक बड़े गैप के बाद हो रहा है 2022 में. इससे पहले 4 साल पहले हुआ था. It's a good occasion where industries can introduce जो लोकली हमारी इंडस्ट्री आर्म्स की प्रोडक्शन कर रही हैं या उससे रेलेवेंट जो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे आर्म्स को सर्व कर रही हैं, हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स को सर्व कर रही हैं, तो वो यहाँ पे सब मौजूद हैं. फास्ट केबल्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया. फास्ट केबल इज फर्स्ट एंड ओनली मैन्युफैक्चरर हु हैज CCV लाइन टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा वी हैव एल्यूमिनियम अलॉय प्लांट
We are the first schema gold certified here in Pakistan, and we also have launched the first fast tasdeeq, and we are the first one who launched their app in Pakistan, जहाँ से आप अपनी products को घर बैठे buy कर सकते हैं. We also launched the fast tasdeeq कि आप जब भी fast का product market से खरीदें तो आपको real quality product मिले. So we claim that fast serves you with a real quality, and we are the manufacturer who has the highest capacity of production. We are manufacturing 33 kV and also we are manufacturing grill, जो कि हमने एक import substitution की है और हम उसके जरिए अपने national grids को और जितने हमारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसको एनर्जाइज कर रहे हैं. सो सब लोग जो रेलेवेंट इंडस्ट्री या रेलेवेंट लोग हैं वो आइडियाज को जरूर विजिट करें. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वो प्रोडक्ट्स लेंगे जो कि रियल फेस है पाकिस्तान की इंडस्ट्री का. थैंक यू. Bring together stakeholders across diverse defense industries. The board offers a platform for G2G, 2G, and B2B interaction, joint ventures, and invests in the defense sector. A strategic seminar will also be held to build sessions on global challenges within the defense sector. The Division of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. ऑब्वियसली आइडियाज जैसा आपने बोला कि एक ऐसा इवेंट है कि जो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री और पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री विद ग्लोबल प्लेयर्स के लिए एक बड़ा ब्रिज का काम करता है. तो कोविड में पूरी दुनिया में लॉकडाउन था तो जाहिर सी बात है कि इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन दिस ईयर दे आर डूइंग इट एंड आई थिंक वी विल कैच अप टू व्हाट वी हैव मिस्ड आउट. बट येट अगेन आइडियाज़ का सक्सेशन में होना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, इस मुल्क का ग्लोबल परसेप्शन के लिए, क्योंकि आप देखिए इसमें पूरी दुनिया की मिलिट्रीज आती हैं, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, तो एक पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज पे ले जाने में आइडियाज़ का बहुत बड़ा रोल है. लेकिन जिस लेवल का ये इवेंट है, जिस लेवल की इसमें पार्टिसिपेशन होती है, ये अगर ये सारे स्टेक होल्डर्स, एक तो टॉप क्लास स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें आपकी पाकिस्तानी मिलिट्री हो गई, डेपो हो गया, बदर एक्सपो हो गया, यहाँ के आपके जो बड़े डिफेंस प्रोटेक्शन फर्म्स हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शोज पुट अप पाकिस्तान. और कराची खुशकिस्मत है कि हर साल कराची में होता है. थोड़ा सा लोगों को तकलीफ होती है क्योंकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऐसी होती है, लेकिन डेफिनेटली देयर इज़ नो कंपैरिजन टू इट. Putting Pakistan on a global scale in defense production capacity in our requirements is what is pitched really well in ideas. IDEAS 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4 days platform for G2G, B2G, and B2B interactions and investments in the production sector. A strategic seminar will also help facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The Division of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center.
IDEA 24 brings together stakeholders across diverse defense industries. The exhibition offers a platform for G2G, B2G, and 2 interactions, joint ventures, and investments in the production sector. A strict seminar will also facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The Traction of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good evening to all of us. So today I would like to deliver presentations about the development of 5G network-centric warfare, its component and challenges. Next slide, please. So I would divide this topic into 4 subtopics. The first one is that I will give very brief introductions of the 5G itself, the KPI, the use cases, the standardization roadmap, and so on. And then from subtopic 2 until 4, they're about the military. What are the 5G key enablers that can be used for the military? How 5G can be very beneficial or can be used for the future battlefields? And the last but not least will be, so what are some technical challenges in there that we need to consider? Okay, next slide. So I will start with this triangle, which is very famous in explaining about 5G. If I only have slide, we can see here that in 5G, basically there are 3 very big use cases. The first one is called the massive broadband, which means that the speed is much faster than the existing one, the existing 4G or even the 3G and so on. And then the next one, the bottom left, no, previous please. Okay. The bottom left is about the massive machine type communications. So this is about so many devices are connecting to the network. For instance, in this kind of venue or in the stadium and so on, even if there are cellular signals, in most of the cases we can connect to the network. It is because the number of connectivity are limited. So in the 5G, this kind of problems is solved. So one big use case in the 5G will be massive machine type communications, which is later on will be used very much for the IoT, Internet of Things, and so on. And then the third use case is about critical machine type communications. This is about the very low latency, even less than 1 millisecond latency. So using these 3 generic subcases, use cases, then many possibilities, like using 5G for sensor network, using 5G for industry 4.0, using 5G for streaming, using 5G for autonomous driving or semi-autonomous driving, and so on and so on. Next slide, please. So if we want to see a little bit detail, then the upper left or upper right picture is showing how we can compare the 5G with the 4G. So 5G is much better in all the aspects. And then you can see also in there several KPIs of the 5G, but I think it's difficult for you to read. But here I just want to show you that with all these KPIs, all this performance, we have very big possibilities to use in various type use cases for smart cities, for mobile broadband, for the automated controls, real-time telematics, and so on and so on and so on. And of course, 5G is connected to the AI or on also the edge computing. Next slide, please. And in this slide, you can see that the standardizations of 5G is now still ongoing. We call it the release stages, release 14, release 15, release 16, release 17, and so on. Now 2020, so the release is already there, which means that the full set of 5G will be available in the market already. And some countries have launched the 5G. I think Pakistan is not there,
but some countries like Korea, Japan, US, Germany, Saudi, and many countries have launched the 5G. They can use all the capabilities. Next slide, please. And then, if we relate this to this event, actually, even though 5G is originally developed for civilian applications, recently there are many studies saying that 5G also can be used in defense. This study from Allied Market Research saying that global 5G in defense market is expected to reach 70,000 million US dollar. This is quite significant number. Next slide, please. Next. So, how 5G can be used for the defense? There are several key enablers. I don't know if you can read the slides because the font is quite small. But actually, there are some enablers in the 5G that is very significant for the military. The first one is the NFV, Network Function Virtualization, in which most of the network functions will be virtualized. And then also SDN, software-defined network. The network will be defined using software, not hardware. And also network slicing, which is the set of matters, can be very easily changed and done for different types of use case. And then orchestrations, end-to-end orchestrations. This one is using AI. And then cloud native, mobile computing, and of course, millimeter wave. Next slide. So with all those key enablers, we can see that there are many studies and research about using 5G for the military. This is just a few examples, like the one done by LMT and then Finable and so on and so on. Next. Okay. So this slide explaining in brief about how this 5G can be used for military applications. Okay. The first and the foremost is that it can be used for the military decision making because of the quality of connectivity, the very low latency, and so on. Several studies investigating about how 5G can be used for military decision making, and also for smart warehousing, and then for distributed command and control in the battlefield. Even some studies are investigating about the use of the 5G for NTN, non-terrestrial network. Also for tactical communication. Tactical means that in the battlefields, using millimeter wave so that we can use very high frequency, high directivity, and very low latencies. Also for the proximity service, PROSI, 5G for the AR, VR, augmented reality, and the virtual reality, also the mixed reality, and also for the geointelligence. These are some pictures, some pictures that is showing that how this 5G can be used and has very big potential for the military applications. Next. However, we can see that still there are some challenges in the 5G. The first one, click please, next, is related to the KPI challenges. Not all KPIs are there, but it is in the process. Next. The next one is about architecture. 5G is much more efficient than other G, than 4G, than 3G, of course. Okay, but if you can see here that the contribution of 5-layer algorithms is about 5 times. Contributions of spectrum is about 20 times. And the biggest contributions comes from the smaller cells. It is 1,600 times. So all the components is, if it is there, then it is very good. In fact, not all of them are there. Next. And then the next one is the most important, I think the most important part here is that challenge of softwareizations. Okay, in the legacy network, in the 4G, software and hardware is interlocked together. Most of them are not open.
Okay. And then in the 5G, there is a decoupling with software and hardware, so that we can develop the software and fertilize the hardware and so on and so on. And then post 5G, after 5G, beyond 5G, it is not just decoupling, also orchestrated using the AI. So this is the most important technical revolutions in 5G. Next. Next one is about the bandwidth and delay. I think we can skip one, and then next one. Next, the next one is about the use of the IP version 6. Next one. So, as we can see that one of the things that have big impacts on the city in the 5G is softwareizations. Softwareizations mean that NFV, SDN, edge cloud computing, and so on. All of them are softwareizations, and it has very big impacts on the security aspects. Next. 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 Okay. If we compare this 5G to 4G, then 5G is much better in terms of security, much more secure. The problem is that because 5G is more software, meaning that the security problem difference. So we need different approach of assessing the security of mobile cellular communications, like Lars said just now. Maybe we need to use the cybersecurity approach. That's what makes the 5G more challenging. It is much more secure than 4G. But because of this variety of cases, meaning that it also increasing the surface of for attacks. That's why this is very big concern to use this 5G for military. Next slide, please. And of course, the security standard is still ongoing. Now, next. The problem is this one. Okay. Even if the standard is there, okay, the standard is the what we call it, the innermost rectangular. Okay. After that, there are some security issues which is depend on the vendor development process, and then another security issues that are related to the deployment process, and then another security issues that are related to the operation process. That's why there are so many forums that are discussing about how we need to deal with this security issues in the 5G. 5G has very big potential to be used for the military, but there are so many challenges, technical challenges, software challenges, and the most important thing is that security challenges. So we need to do very important and serious research if you want to use this 5G for the military. Next, that will be the last slide for my presentation. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B directions, joint ventures, and investments in production. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. Production of ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center.
Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shahid Ismail. I am the director of Premier Cables. Premier Cables is one of the leading manufacturers of telecom cables, that is optic fiber cables, copper telephone cables, ducts, pipe and jointing materials. We are here today in Ideas to exhibit our new products to the home, fiber to the room, and a lot of other new varieties are demonstrated here. And inshallah, we hope that in the coming future we are going more and more better for the development of Pakistan. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मसूद रज़ा है और मैं दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता हूँ। आइडिया का आइडिया ही बड़ा यूनिक है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इतनी ज़बरदस्त एग्जीबिशन जिसमें दुनिया के तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक इस दफ़ा भी शिरकत करें। और माजी का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इस एग्जीबिशन की जो क्वालिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। जहाँ न सिर्फ इसमें हमारी जो आर्ट इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा होता है, उसकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, लेकिन शहरियों के लिए भी एक बड़ी दिलचस्पी का बायस होती है। इसलिए 3-4 दिन जितने भी ये एग्जीबिशन चलिए, शहरी भरपूर तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरी दुआ है कि इस दफ़ा भी ऑर्गेनाइजर के लिए ये इवेंट बड़ा कामयाब हो और ये पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर इवेंट हो रहा है, तो पूरे पाकिस्तान के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। सारे पाकिस्तान को इस इवेंट की मुबारक। IDEAS 2024 brings together stakeholders across diverse industries. The package offers a platform for G2G, B2G, conversions, joint ventures, and investments in the production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on both challenges within the defense sector. 12th edition of IDEAS will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Bilal Bhutto Zardari, Honorable Foreign Minister, Islamic Republic of Pakistan, Federal and Provincial Ministers, Chairman Joint Chief of Staff Committee, Services Chiefs, Senior Civil Military Delegates, Chairman and Chief Executive of National and International Defense Exhibitors, OEMs, Excellencies, Academia, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. On behalf of Ministry of Defence Production, Pakistan, we are indeed grateful to you for gracing this occasion of 11th edition of International Defence Exhibition and Seminar Ideas 2022. I am grateful to the worthy guests and dignitaries from participating countries, foreign and domestic exhibitors, OEMs, trade visitors, and diplomats for their healthy presence to make IDEAS 2022 a great success. I also warmly welcome all those who have joined us for the first time, and my profound regards to all the old friends. I assure you that it is you who make this event substantive. Distinguished guests, the development of indigenous and internationally competitive defense industry is always a strategic interest of a nation. Today, it is regarded as one of major business in the world, alone accounting for approximately 2.2% of global GDP. On the other hand, globalization of defense industry has also changed the geography of
innovation with new players, markets, partners, and opportunities. New strategic alliances ranging from consortia to joint ventures have become the norm of the day, both in the domestic and foreign industry. In the regional context, prevailing politico-military realities have further accentuated our desire to develop an agile and innovative defense industry, not only as an instrument of peace and stability, but also for its rightful contribution towards socio-economic development of the country. Pakistan has the potential to emerge as a global platform for defense, research, scientific growth, manufacturing, and joint ventures in order to strengthen our defense capabilities, support developments as well as exports in this sector. Ladies and gentlemen, Pakistan's defense industries today comprises of a wide range of technologies, well-trained human resource, and infrastructure, not only to meet its own defense requirement, but also export to international defense markets. While major defense products are manufactured by the government-owned defense production establishment, private defense industry is also instrumental in producing high-quality supportive equipment and services. Joint development and production of main battle tanks, Al-Khalid and Al-Zarar, aircrafts, F-17, A-8, Super Mashak, UAVs, maritime patrol vessels, fleet tankers, fast attack missile crafts, different variants of APCs, air launch munitions, small arms and higher grade explosive, a few to mention in this regard. Ladies and gentlemen, towards this end, Ministry for Defense Production is continuing to evolve clear priorities and approaches for protecting and defending Pakistan defense industry interests at home and abroad. Accordingly, with dedicated efforts, regularity initiatives, and incentives have led to improved defense manufacturing and quality services. Resultantly, Pakistan's defense exports are steadily growing and today is touching the figure of 382 million US dollars. This export potential is not only instrumental to the country's economic growth, but also key to our mutually rewarding relations with international fraternity. Today, we are the reliable export partners of more than 60 countries. Through mutual partnerships and joint ventures, Pakistan Industries effort offers a wide area of cooperation and collaboration. Ladies and gentlemen, here I would like to particularly mention the significant role of the private sector in our defense industry. It is a fact that enhanced collaboration of private sector in defense manufacturing will not only increase production, but also provide much needed support to public sector defense enterprises. The growing indigenous sophistication of private sector is indeed an attractive investment opportunity. Our government is now keenly encouraging private sector to expand its capabilities through partnership, involvement in R&D, manufacturing, marketing, and defense products at home and abroad. Ladies and gentlemen, while Ministry of Defense Production is fully committed to enhance defense production of Pakistan, International Defense Exhibition and Seminar Ideas is our grand initiative to project defense production potential of Pakistan at par international standards. Indeed, Idea 2022 is aimed to serve as a bridge between defense industry entrepreneurs, traders, R&D specialists, financial experts, and policymakers for capability enhancement and cost-effectiveness.
The other significance of the event is holding a strategic seminar, artificial intelligence in defense, paradigm shift, military strategy, and national security. During Ideas 2022, the academic discourse during the seminar will certainly help government to optimize defense policies and priorities of Pakistan. I am certain that participants will accrue maximum benefits from this event. I congratulate DEPO for organizing this event of national significance and playing their part promoting the growth of Pakistan's defense industry. DEPO has surely been successful in providing such a rich and rewarding platform to a large number of friends and partners from across the globe. Besides conducting ideas, it acts as a one-window national platform for promotion, facilitation, and coordination of export and defense-related products from Pakistan. Through this opportunity, I encourage all stakeholders to make use of DEPO's platform for enhancing defense exports. A special gratitude for federal and provincial ministers, Pakistan's armed forces, law enforcement agencies, Karachi Metropolitan Corporation, and Government of Sindh, who rendered their all-out support to make this event a great success. I also greatly appreciate the effort of our event organizer, Badar Expo Solutions, who utterly marketed the Ideas 2022 worldwide and very primarily organized this show. In the end, I would like to thank Honorable Foreign Minister, all the guests for gracing this occasion with their presence. I thank you all for Pakistan Zindabad. I'm Rabia Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company. Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, that time it used to be Indian Acetylene Company, and from then it changed its several names. It became Pakistan Oxygen, then it changed to British Oxygen, Linde, and we are back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases, and we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the hard good needs of industry. Ideas is a very good platform to exhibit what Pakistan is doing, and as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. We have served in COVID days and received appreciation letter from NCOC as well. People who are coming over here, when they see the name of Oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which have been in the crucial days when Pakistan was going through very difficult times. Pakistan was imported a York manufacturing plant for electrodes, and our very renowned brand, they comprised of Zodiac, Trax, Matador, 47, 48. COVID days when people were running after oxygen and weren't finding it anywhere, that time we launched this portable oxygen canister. It's indigenous product. It is a 13-liter can of oxygen, which is, you can see it weighs just half a kg, and it allows 250 puffs. So it was very much in demand in COVID days when people weren't finding oxygen. They would keep it at home. Pakistan has been importing this product many years. Now we are manufacturing it completely. This is basically, it is installed on the tanks, the storage tanks. They could be liquid storage tanks or grains, whatever. So what it does, it gives you the real-time data of what inside the tank is. For example, there's a liquid oxygen tank which is installed in a hospital, and hospital doesn't realize that what level inside is and when do they need to replenish.
देखिए, जब ये कंसीव था आइडिया कि आइडियाज़ करना है, तो उस वक्त मकसद ये था कि पाकिस्तान का सॉफ्ट में उसको उजागर किया जाए और उसी को लेके जितनी भी एफर्ट्स हुई, जितना भी हमने लोगोस बनाए लाइक आर्म्स फोर्स और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट एंड डिफेंस इंडस्ट्री, वो हाईलाइट नहीं हो रहा था जैसे होना चाहिए था। तो जब से आइडियाज़ आया है तो हमने अपने शोकेस करना शुरू किया है प्रोडक्ट्स को, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टैपो, तो उससे एक बड़ी पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान पर गया है और लोगों को पता चला है कि पाकिस्तान कितनी ताकत है, ऐसी पावर है कि जो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें बनाया है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़ी डिमांड है। डिफेंस को तो सपोर्ट करता ही करता है, मगर जो आइडियाज़ है ये ओवरऑल आपकी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। टूरिज्म भी इससे बढ़ता है, लोग जो बाहर से बहुत सारे डेलीगेशन आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं इसको अटेंड करने के लिए बाहर से, वो पाकिस्तान को देखते हैं, वो पाकिस्तान को देखने के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि बड़ा पीसफुल और अच्छा कंट्री है, खाने अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, यहाँ डेवलपमेंट अच्छी हुई है। तो अदरवाइज जो उनका कॉन्सेप्ट होता है पता नहीं, जब वो खबरों में देखते हैं तो कोई घर के ज़माने में चले गए हैं, मगर जब यहाँ आते हैं नाइस रोड्स बनी हुई, नाइस बिल्डिंग्स हैं, ईटरीज अच्छी हैं, इसके अलावा मॉल्स हैं, तो उन्हें पता चलता है यार ये तो इज वन ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वो फिर जाके अपना इमेज हमारा है वो पॉजिटिव इसी तरह लोगों को बताते हैं और मेरा ख्याल है कि इट हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली एंड पॉजिटिवली टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान सिंस द टाइम आइडियाज़ हैज स्टार्टेड। एंड बदर एक्सपो जो है वो और आइडियाज़ जो हैं दोनों आप जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लगता है कि भाई ये इन्होंने मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि इन्होंने पाकिस्तान के इमेज को भी उजागर किया है और इस चीज़ को नहीं देखा कि इनका फ़ायदा या नुकसान क्या है, इन्होंने सिर्फ ये देखा है कि पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर होगा, उसी हिसाब से फिर इन्होंने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है। तो बदर का बहुत कंट्रीब्यूशन है टू हाईलाइट आइडियाज, टू पुट आइडिया ऑन अ वेरी हायर पेडेस्टल। अल्हम्दुलिल्लाह। Next two months, I will focus upon the salient for youth, the defensive portion of the same ideas. Mainly talking about the events and what the organization does. Then we will have a total documentary which will take you to the journey of the depot and the activities. Next, we will have a joint offering project which was created under Ministry of Defense Production 2. Since that is working under the area of MDP. This aim was to both protect Pakistan military performance and defense export potential. All core functions of the depot are performed on corporate model with no financial burden on national exchequer. The vision statement, which has been sent out through the depot, reads as a national platform provides support to the defense manufacturing sector and export chain through motion, facilitation, and coordination for safe growth of defense exports of Pakistan. To achieve this vision, the depot basically undertakes promotion, facilitation and coordination of the business opportunities and networking for the defense industry. It organizes defense activities both inland and abroad to the flagship event of ideas, which is Pakistan Pavilion across the globe. In this regard, the approach establishes 12 to 14 Pakistan Pavilions annually across the globe in different countries for our own production enterprises. We also have the unique honor of organizing a single exhibition at Iraq, which was actually mentioned a little while ago. With regard to national exhibitions, the depot has been instrumental in organizing 2 editions of the Supplier Vendor Defense Exhibition at Lahore in concert with the Chamber of Commerce Lahore, 2 editions of the Defense Exhibition at Iraq, the Naval Expo at Rawalpindi in concert with the Rawalpindi Chamber of Commerce and the Defense Port Turkey at Islamabad. The idea has been a flagship event which is conducted biannually since 2000 and it has grown over a period of time both in stature as well as in size. Other than these 4 subjects, the depot also maintains an international display center here at Islamabad. We've carried out an extensive mapping of the private defense industry wherein the potential buyers across the globe are now directly interfaced with public as well as the private defense manufacturers. A comprehensive defense products catalog has been brought to the
prepared, which is not only available online but has also been provided to all our foreign missions and is presented to the visiting dignitaries. In addition, the depot also conducts seminars other than the main seminar during ITRs. Now, just briefly touch upon the centerpiece of the recent efforts of the depot, which is basically focused on magnetizing of the private defense industry, and wherein the private sector is facilitated for international participation. It is heartening to note that 8 private companies participate in World Defense Show USA without the government support. However, this participation can increase manifold with the government support in the future. We are also focused on integrating and participating along with the Chamber of Commerce in our different defense national as well as international exhibitions. Besides, we are focused on suppliers, vendors and the small scale manufacturers, basically to link them with the large scale manufacturers and our private and public large scale defense production enterprises. Now coming over to the flagship unit of ideas. As you are aware, the ideas is the flagship unit of international stature for Pakistan, which is a sought after rendezvous for business and knowledge sharing. With synergistic interaction of the global defense industry, it serves as a shared platform both for global peace and stability. International recognition and participation thus truly reflects deeply embedded mutually beneficial relations. Then the main objectives which are actually desired to be accrued out of the ideas include provision of the business opportunity for the defense industry, both for the international exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximum numbers of the domestic as well as international exhibitors. Demonstrate organizational skills and increase in the defense exports. Image building of the country. Promulgate Pakistan's point of view internationally. Reinforce diplomatic efforts in the realm of defense diplomacy. Now with this gentlemen, with the brief introduction, I shall now take you through a documentary which will actually show you these whatever I have spelled out about ideas and depot. How did it actually reach to this where we are standing today? Thank you very much. I'm Prabya Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company. Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, that time it used to be Indian Acetylene Company, and from then it changed its several names. It became Pakistan Oxygen, then it changed to British Oxygen, Linde, and we are back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases, and we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the hard good needs of industry. Ideas is a very good platform to exhibit what Pakistan is doing, and as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. We have served in COVID days and received appreciation letter from NCOC as well. People who are coming over here, when they see the name of Oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which have been in the crucial days when Pakistan was going through very difficult times. It's a company in Pakistan who has imported a European manufacturing plant for electrodes, and our very renowned brand, they comprise of Zodian, Fortrex, Matador, 47, 48. In COVID days when people were running after oxygen and weren't finding it anywhere, that time we launched this portable oxygen canister. It's indigenous product. This is a 13-liter can of oxygen, which is, you can see, it weighs just half a kg, and it allows 250 puffs. So it was very much in demand in COVID days when people weren't finding oxygen. They would keep it at home. Pakistan has been importing this product for many years. Now we are manufacturing in-house completely.
This is basically, it is installed on the tanks, the storage tanks. They could be liquid storage tanks or grains, whatever. So what it does, it gives you the real-time data of what inside the tank is. For example, there's a liquid oxygen tank which is installed in a hospital, and hospital doesn't realize that what level inside is and when do they need to replenish it. मैं ट्राई ग्रुप ऑफ कंपनी से मैं काम कर रहा हूँ। हमारा काम ये है कि हम ये वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं, छतों का, वाटर टैंक का और वॉल्स का, ये जितने भी कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो हमारा केमिकल उसमें आता है और 2 साल की हमारी वारंटी होती है। तो प्रॉपर हमारा काम होता है और पूरा एक अमला है हमारा, ट्रेंड अमला, उसके थ्रू ये काम हमारा हो सकता है। हाल वक्त तकरीबन पाकिस्तान में हमारा जाता है और कंस्ट्रक्शन का तकरीबन हमारी ज़्यादातर डिफेंस साइड में हमारा काम ये चल रहा है, तो ये हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। देखिए, जब ये कंसीव हुआ था आइडिया के भी आइडियाज़ करना है, तो उस वक़्त मकसद यही था कि जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर किया है और उसी को लेके जितनी भी एफर्ट्स हुई, जितना भी हमने लोग बनाए लाइक आर्म्स फॉर पीस, और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट एंड डिफेंस इंडस्ट्री, वो हाईलाइट नहीं हो रहा था, इससे होना चाहिए था। तो इससे आइडियाज़ आया है तो हमने अपने शोकेस करना शुरू किया है प्रोडक्ट्स को, इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टैप, तो उससे एक बड़ी पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का गया है और लोगों को पता चला है कि पाकिस्तान एक इतनी ताकत है, ऐसी पावर है कि जो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें बना रहा है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़ी डिमांड है। सेक्टर को तो सपोर्ट करता ही करता है, मगर जो आइडियाज़ है ये ओवरऑल आपकी इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। टूरिज्म भी इससे बढ़ता है, लोग जो बाहर से बहुत सारे डेलीगेशन आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं इसको अटेंड करने के लिए बाहर से, वो पाकिस्तान को देखते हैं, वो पाकिस्तान देखने के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि ये बड़ा पीसफुल और अच्छा कंट्री है, खाने अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ डेवलपमेंट अच्छी हुई है। तो अदरवाइज जो उनके कॉन्सेप्ट होता है, पता नहीं जब वो खबरों में देखते हैं तो कोई आर के ज़माने में चले गए, मगर जब यहाँ आते हैं नाइस रोड्स बनी हुई हैं, नाइस बिल्डिंग्स हैं, ईटरीज अच्छी हैं, इसके अलावा मॉल्स हैं, तो उन्हें पता चलता है यार ये तो इस वन ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वो फिर जब अपना इमेज हमारा जो है वो पॉजिटिव इसी तरह लोगों को बताते हैं और मेरा ख्याल है कि इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली and positively towards the economy of Pakistan since the time ideas have started and others वो जो है वो और आइडियाज़ जो हैं दोनों आप समझें कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लगता है कि भाई ये इन्होंने इतनी मेहनत की है कि इन्होंने पाकिस्तान के इमेज को भी उजागर किया है और इस चीज़ को नहीं देखा कि इनका फ़ायदा या नुकसान क्या है, इन्होंने सिर्फ ये देखा है कि पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर होगा, तो उसी हिसाब से फिर इन्होंने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो बदर एक्सपो का बहुत कंट्रीब्यूशन है to highlight ideas, to put ideas on a very higher pedestal. Alhamdulillah. Based on a few minutes, I will just on the saying and the overview of the organization and the ideas. Made a rating of the events and what the organization does by itself. Thereafter, we will show the document to take you through the journey and
activities of the ideas. Depot was exclusive on the staff quarters. It was later placed under Ministry of Production in 2002. Since the depot is working under the MOD. The basic was to protect Pakistan military promise and export protection. All functions of the depot are performed at corporate model with no financial national sector. The vision statement which has been spent for the depot reads: the national platform provides support to the defense production, service sector, and support chain to promote, facilitate, and coordination for sustained growth of defense exports of Pakistan. To achieve this vision, the depot basically undertakes promotion, facilitation, and coordination of the business opportunity networking for the defense sector. It organizes exhibitions both inland and abroad, including the flagship ideas, establishes parks across the globe. In this regard, depot establishes 12 to 40% pavilions across the globe in different countries for our own defense production enterprises. We also had the honor of organizing a single country exhibition at Iraq, which was actually mentioned a little while ago. With the national exhibitions, the depot was instrumental in organizing 2 editions of the supplies and defense exhibition at Lahore in concert with the Chamber of Commerce Lahore, 2 editions of the defense exhibition at the Rawal Expo at Rawalpindi in concert with the Rawalpindi Chamber of Commerce and the Defense Port Turkey at Islamabad. The Ideas has been a flagship event which is conducted annually since 2000 and it has grown over a period of time both in stature as well as in size. Other than these 4 subjects, the depot also maintains an international standard display center here at Islamabad. We have carried out an extensive mapping of the private defense industry wherein the potential buyers across the globe are now directly interfaced with the public as well as the private defense manufacturers. A comprehensive defense products catalog has been prepared, which is not only available online but has also been provided to all our foundations and is presented to all the basic dignitaries. In addition, the depot also conducts seminars other than the main seminar during ITRs. Now, just briefly touch upon the centerpiece of the recent efforts of the depot, which is basically focused on magnetizing of the private defense industry and wherein the private sector is facilitated for international participation. It is hard to note that 8 private companies participated in World Defense Show KSA without the government support. However, this participation can increase manifold the government support in the future. We are also focused on integrating and participating along with the Chamber of Commerce in our different defense, national as well as international exhibitions. Besides, we are first on the suppliers, vendors and the small scale manufacturers basically to link them with the large scale manufacturers and our private and public large scale defense production enterprises. Now coming over to the flagship event of Ideas. As you are aware, the Ideas is the flagship event of international stature for Pakistan, which is a sought-after rendezvous for business and knowledge sharing. With synergistic interaction of the global defense industry, it serves as a shared platform both for global peace and stability. International recognition and participation thus truly reflects deeply embedded mutually beneficial relations. The main objectives which are actually desired to be accrued out of the Ideas include provision of the business opportunity for the defense industry, both for the globe international exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximum numbers of the domestic as well as international exhibitors. Demonstrate organizational skills and increase in the defense exports. Image building of the country. Promulgate Pakistan's point of view internationally. And reinforce diplomatic efforts in the realm of defense diplomacy. Now with this gentlemen, with the brief introduction, I shall now take you through a documentary which will actually show you both these, whatever I've spelled out about Ideas and the depot, how did it actually reach to this where we are standing. Thank you much.
I'm Prabya Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company. Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, that time it used to be Indian Acetylene Company, and from then it changed its several names. It became Pakistan Oxygen, then it changed to British Oxygen, Linde, and we are back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases, and we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the hard good needs of industry. Ideas is a very good platform to exhibit what Pakistan is doing, and as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. We have served in COVID days and received appreciation letter from NCOC as well. People who are coming over here, when they see the name of Oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which have been in the crucial days when Pakistan was going through very difficult times. We are the first company in Pakistan who has imported a European manufacturing plant for electrodes, and our very renowned brand, they comprise of Zodian, Motrax, Matador, 47, 48. In COVID days when people were running after oxygen and weren't finding it anywhere, that time we launched this portable oxygen canister. It's indigenous product. This is a 13-liter can of oxygen, which is, you can see it weighs just half a kg, and it allows 250 puffs. So it was very much in demand in COVID days when people weren't finding oxygen. They would keep it at home. Pakistan has been importing this product for many years. Now we are manufacturing it in-house completely. This is basically, it is installed on the tanks, the storage tanks. They could be liquid storage tanks or grains, whatever. So what it does, it gives you the real-time data of what inside the tank is. For example, there's a liquid oxygen tank which is installed in a hospital, and hospital doesn't realize that what level inside is and when do they need to replenish it. अस्सलाम वालेकुम, मैं ट्राई ग्रुप ऑफ कंपनी से मैं काम कर रहा हूँ। हमारा काम ये है कि हम ये वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं, छतों का, वाटर टैंक का और वॉल्स का। ये जितने भी कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो, हमारा केमिकल उसमें आता है, और 2 साल की हमारी वारंटी होती है। तो प्रॉपर हमारा काम होता है, और पूरा एक अमला है हमारा, ट्रेन अमला, उसके थ्रू ये काम हमारा होता है। हाल वक्त तकरीबन पाकिस्तान में हमारा मटेरियल जाता है, और कंस्ट्रक्शन का तकरीबन हमारी ज़्यादातर डिफेंस साइड में हमारा काम ये चल रहा है, तो ये हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे मैं 3 प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें पहला प्रोजेक्ट जो है वो है ईगल हंट 01। ये एक कमर्शियल ड्रोन जैमर है, और इसका बेसिक पर्पस ये है कि फॉर एग्जांपल किसी भी लैंड एस्टेब्लिशमेंट में ड्रोन्स आप विजिट कर रहे हैं जो आपके लिए इनसिक्योर है, और आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं, आप विदिन 7 किलोमीटर की रेंज में आप उस ड्रोन को जैम कर सकते हैं। इसमें प्रोसेस होता है कि जो GPS कनेक्शन बनता है ड्रोन का, उसको आप जैम कर देते हैं, सो ड्रोन डोंट नो एनी मोर कि वो किस लोकेशन पे है, और वो मूव नहीं कर सकता जब तक उसको GPS लोकेशन का पता ना हो। ये जैमर का शॉर्ट इंडक्शन हो गया। उसके बाद हाई स्पीड टारगेट वाला है मेरा, जो हम लोग बनाया, हमारी लैब में बनाया। उसकी स्पेक्स हैं, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो उड़ सकता है। एनवायरनमेंट है यहाँ का एक्सपो का काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर अटेंडेड। मैंने एक्सपोज अटेंड किए, उसने बेहतरीन किए हैं, और बहुत सारे फॉरेन डेलीगेशंस और हाई रैंक ऑफिसर्स जो है वो यहाँ आ रहे हैं,
और मुख्तलिफ स्टॉल्स को विज़िट कर रहे हैं, सब लोग इंतहाई इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं। और टेक्नोलॉजीज़ का मैं अगर आम अल्फाज में तो एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से के जिस टेक्नोलॉजी से लोग आए हुए हैं और वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई एम वेरी क्लियर एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी that this expo takes place every 2 years, and I would suggest all layers and technocrats to must visit this expo. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Abu Zadari, Honorable Foreign Minister, Islamic Republic of Pakistan, Muhammad Israr Dari, Federal Minister for Production, Prime Ministers, Chief of the Naval of Pakistan Navy, representatives of armed forces, dignitaries, actors, excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. On behalf of Defence Export Promotion Organization, it is indeed an honor and pleasure to be the participants of 11th International Defence Exhibition and Seminar Ideas 2022. Today is a special day for us to host our esteemed guests from 57 countries. Honorable Foreign Minister, your presence is a great immense value for us that you have graced this occasion as the chief guest. Your presence indeed reflects your keen passion for efforts in organizing ideas, and it's a source of inspiration for us. Distinguished guest, our defense industry is not only the force behind our armed forces, but also an instrument of national sovereignty and important socio-economic component of the country. Its progressive evolution has opened a new era of technological advancement, resulting into international market quality products. Through mutual partnership, joint venture Pakistan industry today offer wide areas of cooperation and collaboration. In this, I will proudly say that with the continuous assistance of the Government of Pakistan, DAPO is supporting the support of defense industry and services through promotion, facilitation, and coordination. Ladies and gentlemen, the other aspect of the development of defense industry is the vital role of the private sector or small and medium enterprises called as SMEs. According to one estimate, 90% of the business and half or more of the export is because of private industry called SMEs, and it generates employment opportunities for approximately 70% of the labor. Hence, it is no surprise that globally SMEs are an indispensable part of major industrial sectors. In this regard, our SMEs operating in defense production possesses tremendous potential to capitalize and generate rich dividends for the country. Ladies and gentlemen, International Defense Exhibition and Seminar is a flagship event of the DAPO, which is organized for the latest technological demonstration of the national and international defense industry. The exhibition is now regarded as one of the international rendezvous, interpros, research and development specialists, financial experts, top-level policymakers to promote cooperation, knowledge sharing, and sport venture in the field of production and security. Ladies and gentlemen, indeed, IDEA is a leading event of Pakistan that brings together the global defense industry for synergetic business. The innovation, excellence exhibited here is meant to pave the way of international defense collaboration among the friends and partners. Distinguished guests, I the continuous success story since year 2000. I am glad to share that IDEA's 2022 has surpassed all previous landmarks in terms of space booking, exhibitor, and visiting delegates to Pakistan. It is evident from the fact that Karachi Expo Center has been booked to its full capacity with more than 300 exhibitors from 30 countries. Besides trade visitors, we are also hosting more than 300 delegates from 57 countries, representing almost all parts of the globe. Besides this, the initiative of IDEA's 2022 includes the creation of extra space by establishing the newest stalls to accommodate overwhelming participation from national and international exhibitors. IDEA's Karachi show is specifically organized for the people of Karachi at Nishane Pakistan Sea View. Pakistan Postal Services has issued an errand commemorative postage stamp on 14th of August 2022, specially marking the holding of 11th edition of IDEA in the 5th year of independence of Pakistan. The hospitality, culture, warmth of Pakistan culture will be demonstrated during various receptions in the honor of the dignitaries visiting Pakistan. Honorable Foreign Minister,
I would like to really mention the financial assistance and support the government of Pakistan is providing to private sector of defense industry for their enhanced participation in IDIAS 2022. Ladies and gentlemen, last but not least, let me acknowledge the organization whose cooperation was the key in organizing this memorable event. I would like to thank the Ministry of Defence Production, Armed Forces of Pakistan, especially the Headquarters Corps, Chief Minister of Sindh, Trade Development Authority of Pakistan, Defence Industry, the Sindh Rangers, Karachi Police, Karachi Metropolitan Corporation for their vivid support and contribution towards creating an enabling environment for the successful of this event. I would also like to pay special to the people of Karachi for their all support and hospitality. Thanks and appreciation are also due to our event manager, Badar Expo, for putting up a very professional show, fielding a competent, effectively marketing idea across the globe. I would again like to express sincere gratitude to the Foreign Minister and all our noted guests who have participated and traveled to Pakistan participating in this event. I thank you all. Pakistan Zindabad. मैं शारिक अमीन फारूकी, मैनेजर ताल्लुकात आमा कराची फोकस आपसे मुखातिब हूँ और हमने इस आइडियाज़ में पार्टिसिपेट किया है अपनी सर्विसेज को हाईलाइट करने के लिए कि हम किस किस किस्म की सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कार्गो हैंडलिंग की फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें हम जो है वो जो बर्थिंग फैसिलिटीज़ हैं वो भी हैं और टाइप्स ऑफ कार्गो जो हम हैंडल कर रहे हैं उसके बारे में भी हम बताते हैं। इसके अलावा जो हमारा फ्लोटिला वगैरह है, जो हम बोट्स यूज़ करते हैं, ड्रेजर्स यूज़ करते हैं, इन तमाम चीज़ों को मुतारिफ कराने के लिए और अवामुन्नास को बताने के लिए हमने इस आइडियाज़ में हिस्सा लिया है और हम केपीटी की सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असलम खान है, ब्यूरो चीफ दुनिया टीवी कराची। 11वीं आइडियाज़ के हवाले से आज ब्रीफिंग रही और हमें इस तरह बताया गया कि तकरीबन 229 पार्टिसिपेंट होंगे, 100 से ज़ायद ममालिक हैं जो यहाँ पर इसमें शिरकत करेंगे। पहली आइडियाज़ से हम यहाँ तक पहुँचे कि इसमें 2 नए ममालिक भी आ रहे हैं और ऐसे ममालिक भी हमारे पास आ रहे हैं जिनके साथ हमारे जो बरादराना ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात हैं। और मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा तैयारा है JF Thunder 17, उसमें बहुत से ममालिक ने खरीदारी में दिलचस्पी खरीदारी किया। माजी में अगर हम बात करें कि हमारा अल-ज़रार टैंक, बहुत से मुल्क उसकी खरीदारी में दिलचस्पी रखते थे और अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मजमूई तौर पर आज की ब्रीफिंग बहुत हौसला अफजा थी हमारे लिए कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में भी किसी भी तरह पीछे नहीं है। हम पहली नुमाइश की अगर हम बात करें वो इंतहाई शानदार रही और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दिफाई नुमाइश है ये भी मजीद जो कामयाबी के झंडे रहेगी, मजीद कामयाब होगी और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा कि हर दिफाई नुमाइश में हमें मालूम होगा कि हम दिफाई मैदान में सब तक आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो कौम है उसके लिए भी ये बाइस इत्मीनान है कि उसके मुसल्लह अफवाज है वो पूरी तरह तैयार है किसी भी दुश्मन की जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए। हम जो है वो पूरी तरह तैयार और डटे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ट्राई ग्रुप ऑफ कंपनी से मैं काम कर रहा हूँ। हमारा काम ये है कि हम ये वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं, छतों का, वाटर टैंक का और वॉल्स का, जितने भी कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो हमारा केमिकल उसमें आता है और 2 साल की हमारी वारंटी होती है। वो प्रॉपर हमारा काम होता है और पूरा एक अमला है हमारा, ट्रेन अमला, उसके थ्रू ये काम हमारा हो सकता है। हाल वक्त तकरीबन पाकिस्तान में हमारा जाता है और कंस्ट्रक्शन का काम तकरीबन हमारी ज़्यादातर डिफेंस साइड में हमारा काम ये चल रहा है। ये हमारी कंपनी प्रोवाइड है।
पे मैं 3 प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें पहला प्रोजेक्ट जो है वो है ईगल 01। ये एक कमर्शियल ड्रोन जैमर है और इसका बेसिक पर्पस है कि फॉर एग्जांपल किसी भी लैंड एस्टेब्लिशमेंट में ड्रोन्स आपको विजिट कर रहे हैं जो आपके लिए इनसिक्योर है और आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं, तो आप विद इन 7 किलोमीटर की रेंज में उसको जैम कर सकते हैं। इसका प्रोसेस ये होता है कि जो GPS कनेक्शन बनता है ड्रोन का, उसको आप जैम कर देते हैं। सो ड्रोन डोंट नो एनी मोर कि वो किस लोकेशन पे है और वो मूव नहीं कर सकता जब तक उसको GPS लोकेशन का पता ना हो। ये एक जैमर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हाई स्पीड टारगेट ड्रोन है मेरा, जो हम लोगों ने बनाया है, हमारी लैब ने बनाया है। उसकी मुख्तलिफ स्पेक्स हैं, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो उड़ सकता है। एनवायरनमेंट जो है यहाँ का एक्सपो का काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव अटेंडेड। जितने भी मैंने एक्सपोज अटेंड किए हैं उसमें से बेहतरीन एक ये है। और बहुत सारे फॉरेन डेलीगेशंस और हायरिंग ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं और मुख्तलिफ सॉर्स को विजिट कर रहे हैं। सब लोग विद इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं। और टेक्नोलॉजी समय अगर आम फाज में कहूँ तो एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से के पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर से लोग आए हैं और वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी हियर एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी that this expo takes place every 2 years, after every 2 years, and I would suggest all engineers and technocrats to must visit this expo. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Bilawal Gozardari, Honorable Foreign Minister, Islamic Republic of Pakistan, Muhammad Israqi, Federal Minister, Federal Minister, Chief of the Naval Staff, Pakistan Navy, Secretary of Armed Forces, Militaries, Exhibitors, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, very good morning. On behalf of Defence Sport Promotion Organization, it is indeed an honor and pleasure to welcome the participants of 11th International Defence Exhibition Seminar, Ideas 2022. Today is a very special day for us to host our esteemed from 57 countries. Honorable Foreign Minister, your presence is of immense value for us that you have graced the region as the chief guest. Your presence indeed reflects your keen patronage for efforts in organizing us, and it's a source of inspiration for us. Distinguished guest, Pakistan Defence is not only the force behind our armed forces, but also instrument of national sovereignty and important socio-economic component of the country. Its progressive evolution has opened the era of technological advancement, resulting into international market for quality products. Through mutual partnership, joint venture Pakistan industry today offer wide areas of operation and collaboration. In this regard, I will proudly say that with the continuous assistance of the government of Pakistan, DAPO is supporting export of defense industry and this through promotion, facilitation and coordination. Ladies and gentlemen, the other aspect of the development of defense industry is the vital role of the private sector or small and medium enterprises called as SME. According to one estimate, 90% of the business and half or more of the export is because of the private street called SMEs. It generates employment opportunities for approximately 70% of the labor force. Hence, it's no surprise that globally SMEs are an indispensable part of the major industrial sectors. In this regard, our SMEs operating in defense production possesses tremendous potential which, if capitalized, can generate rich returns for the country. Ladies and gentlemen, International Defense Exhibition and Seminar is a flagship event of the DAPO, which is organized biennially for the latest technological demonstration of the national and international defense industry. The exhibition is now regarded as one of the international rendezvous for enterprise, research and development specialists, financial experts, top-level policy makers to promote cooperation, knowledge sharing, and sport venture in the field of defense production and security. Ladies and gentlemen, indeed, IDEA is a leading event of Pakistan, brings together the global defense industry for energetic business. The innovation and excellence exhibited here is meant to pave the way of international defense collaboration among the friends and partners. Distinguished guests, IDEA is a continuous success story since year 2000. I am glad to share that IDEA's 2022 has surpassed all previous landmarks in terms of space booking, exhibitor, and visiting delegates to Pakistan.
It is evident from the fact that Karachi Expo Center has been booked to full capacity with more than 300 exhibitors from 32 countries. Besides trade visitors, we are also hosting more than 300 delegates from 57 countries, representing almost all parts of the globe. Besides this, the initiative of Ideas 2022 includes the creation of extra space by establishing the newest stalls to accommodate overwhelming participation from the national and international exhibitors. Ideas Karachi Show is specifically organized for the people of Karachi at Nishane Pakistan Seaview. Pakistan Postal Services has issued an elegant commemorative postage stamp on 14th of August 2022, specially marking the holding of 11th edition of IDEA in the 75th year of independence of Pakistan. The hospitality, culture, warmth of Pakistani culture will be demonstrated during various receptions in the honor of dignitaries who are visiting Pakistan. Honorable Foreign Minister, I would like to particularly mention the financial assistance and support the government of Pakistan is providing to private sector of defense industry for their enhanced participation in Ideas 2022. Ladies and gentlemen, last but not least, let me acknowledge the organization whose support and cooperation were the key in organizing this memorable event. I would like to thank the Ministry of Defense, Armed Forces of Pakistan, especially the Headquarters 5 Corps, Chief Minister of Sindh, Trade Development Authority of Pakistan, Defense Industry, the Sindh Rangers, Karachi Police, Karachi Metropolitan Corporation for their vivid support and contribution towards creating an enabling environment for successful of this event. I'd also like to pay special tribute to the people of Karachi for their all-out support and hospitality. Thanks and appreciation are also due to our manager Badar Expo for putting a very professional show, fielding a competent team and effective marketing idea across the globe. I would again like to express my sincere gratitude to the Foreign Minister and all our noteworthy guests who have participated and traveled to Pakistan participating in this. I thank you all. Pakistan Zindabad. मैं शारिक अमीन फारूकी, मैनेजर ताल्लुकात आमा कराची फोकस आपसे मुखातिब हूँ और हमने इस आइडियाज़ में पार्टिसिपेट किया है अपनी सर्विसेज को हाईलाइट करने के लिए कि हम किस किस किस्म की सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कार्गो हैंडलिंग की फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें हम जो बर्थिंग फैसिलिटीज़ हैं वो भी हैं और टाइप्स ऑफ कार्गो जो हम हैंडल कर रहे हैं उसके बारे में भी हम बताते हैं। इसके अलावा जो हमारा फ्लोटिला वगैरह है, जो हम बोट्स यूज़ करते हैं, ड्रेजर्स यूज़ करते हैं, इन तमाम चीज़ों को मुतारिफ कराने के लिए और अवामुन्नास को बताने के लिए हमने इस आइडियाज़ में हिस्सा लिया है और हम केपीटी की सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असलम खान है, ब्यूरो चीफ दुनिया टीवी कराची। 11वीं आइडियाज़ के हवाले से आज ब्रीफिंग रही और हमें जिस तरह बताया गया है कि तकरीबन 229 पार्टिसिपेंट होंगे, 100 से ज़ायद ममालिक हैं जो यहाँ पर इसमें शिरकत करेंगे। पहली आइडियाज़ से हम यहाँ तक पहुँचे कि इसमें 2 नए ममालिक भी आ रहे हैं और ऐसे ममालिक भी हमारे पास आ रहे हैं जिनके साथ हमारे जो बरादराना ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात। और मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा तैयारा है जेफ थंडर 17, उसमें बहुत से ममालिक ने खरीदारी में दिलचस्पी खरीदारी किया। माजी में अगर हम बात करें कि हमारा अलजरार टैंक, बहुत से मुल्क उसकी खरीदारी में दिलचस्पी रखते थे और अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मजमूई तौर पर आज ब्रीफिंग बहुत हौसला अफजा थी हमारे लिए कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में भी किसी भी तरह पीछे नहीं है। हम पहली नुमाइश की अगर हम बात करें वो इंतहाई शानदार रही और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दिफाई नुमाइश है ये भी मजीद कामयाबी के झंडे रहेगी, मजीद कामयाब हो और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा कि हर दिफाई नुमाइश में हमें ये मालूम होगा कि हम दिफाई मैदान में किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कौम है उसके लिए भी ये बायस इत्मीनान है कि उसकी जो मुसल्लह अफवाह है वो पूरी तरह तैयार है। किसी भी दुश्मन की जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए जो है वो पूरी तरह तैयार है और डट रहे हैं। सलाम अलैकुम,
My name is Ahmet Turul Özkan from Turkey, Aselsan company. Aselsan is the leading defense industry in Turkey, mainly involved in communication, weapon sites, satellite systems, electronic warfare systems, cruising weapon systems. We are here for promote our business with Pakistan Army as well as Air Force and Navy. We already had several projects here. And our main idea is to share our technology and our capabilities with our brother country, Pakistan. And my office established in Islamabad. I am the area manager of this company. And we are very close to the headquarters, Air Force, Navy, and GHQ. So we expect that in this exhibition, several business opportunities, which are also very new designs available with us. This one is Gökdeniz project, which is engaged with Pakistan Navy to increase their capability, defense capability in Pakistan. This was my brief information about my company. Thank you very much and wish you Pakistan Zindabad. My name is Cengiz-Han Kahraman. I'm marketing Menitech Defense Technologies. Menitech Defense Technologies is leading a supply chain manager of Turkey and MENA region. It's almost 30 years company and we manufacture sub-assemblies of tracked and built vehicles. We have been delivered 150,000 components, uncompromising quality standard to NATO and US actors for almost 30 years. Of half century experience, we are going to future with our R&D center, with our investing different companies with different sectors. As an example, electromobility. As an example, we try to turn to Turkey the giant factory. That is another subject, another project for us. More than 3,000 suppliers and with 150,000 parts. As Menitech, we supply for your priorities for high-tech manufacturing defense industry. Welcome from DHA Sports Club Moin Khan Academy from the 25 of Karachi Table Premier League Season 3. It's going to be the table toppers Maleen Malangs against North Nawabs. Earlier we saw Maleen Malangs have lost and have decided to back first yet again. The table toppers against North Nawabs, who are fighting hard to secure the spot in the semi-final. Here in the DHS Sports Club in Khan Academy, second game of the Khan has got the new ball position. Plays a call from them. Straight away, top edge could be out. Could be a big goal. It's DK who has to walk back. First ball outside edge, comfortable catch behind the stumps. But DK walks back, troubling the scorers. It is not for one. Outside edge could be out. Easy one gone. Goodness me. Mimran follows DK. Put down and just put on the board. Mimran also walking back after scoring just 2. It's 4 for 2. Here comes the first big shot. And here comes the boundary. Full toss. Straight over the baller's head for the boundary. Yeah, it was a gift for the new batter. Full toss again. Smashed away. Much bigger, much longer. Half a dozen. Once again asking to be hit. Another full toss. This time plenty on ease. पर आपने क्रिकेट के मुख्तलिफ अदवार देखे हैं पाकिस्तान में, कभी आपने सोचा भी था कि टेबल क्रिकेट इस लेवल पे हो रही होगी और इस लेवल पे एग्जीक्यूट करने पर केटीपीएल इंतजामिया की तारीफ बनती है? Big shot on the rise. Is it long enough? Not quite. Comfortably taken, well within the boundary, and Asif Pathan continues to press it. Shaji walks back after scoring 2. It's 22 for 3. So delivery, pick up. It's in the air. And this time the ball has gone over the boundary ropes.
He goes for it once again and gets plenty on it as well. Once again, the ball has landed beyond the boundary ropes. और हार्ड बॉल की क्रिकेट है बिल्कुल उसी तरीके से टेप बॉल को पाकिस्तान का ब्रांड बना के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ले जाने की बात हो रही है। मुझे लगता था आपने कुछ सालों पहले तक सोचा भी था कि टेप बॉल इस लेवल पे हो रहा होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में हो रहा होगा। एक विकेट भी इस दौरान गिर गई है। अजीज आउट होकर अब वापस पवेलियन लौट रहे हैं। ये जिस तरीके से देखी जा रही है और तैमूर मिर्जा जैसे लोग हमारे साथ खेल रहे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग मिलियंस के अंदर है, तो जिस तरीके से और इस दफा केटीपीएल को 34 कंट्रीज 84 चैनल्स के ऊपर देखा जा रहा है, अरबों की तादाद में लोग इसको देख रहे हैं। सो मुझे लगता है ये कि ये बहुत जल्द उसके लेवल के बराबर एक जो है पैरल के अंदर एक अलग टाइप की क्रिकेट शुरू होने वाली है। सो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट देने की बदर एक्सपो को जाएगा और जोहेर नसीर को जाएगा। Well, the decision has been referred upstairs. It was a very good throw towards the bowler. Looks touch and go, Falak. There you see the red light on. Confirmation. Gone back after scoring just 2. It's 43 for 5. Holds the on the side in the air. There's a fielder out there who misjudges it. And I think the ball has gone past the boundary ropes as well. Could have been another wicket for Irshad, but not to be. Hit away on the offside, over extra cover. That's going to go all the way for 6. Probably the shot of the innings so far by Ubaid. By giving away 16 in his opening over. Once again, hits that on the offside. It's up in the air. Has he timed it well enough? I think he has. There was a fielder at long off who was trying to get around it, but the arms are aloft from the on-fielder. Once again, insane timing by Kaleem. Once again, he has gone big. He has gone straight. It's up in the air. Toss to the fielder who takes it this time. It's Irshad Ali Afridi down there at long off who makes absolutely no mistake. So Kaleem is removed at the score of 25. 62 for 6. Last ball of the innings, a low full toss that has been just hit away on the leg side. They are going to be looking to come back for the second one. There is a throw at the wicket keeper's end, but he couldn't collect it, the captain. So they're going to collect a couple of the last ball of the innings. That means Maleem Malangs are finish off at 66 for 6 after their 6 overs. A job well done by North Nawabs. All set for second innings. Majid Goli starting the proceedings from far end. Down the leg side it pitched, but then it went away into the offside. He's working really hard. This is going to be 4 runs. There, oh, it is slowing down, but still has enough legs to carry over the line. You got enough amount of that. He didn't like the... And this time Hafiz Pola trunked that and trunked that with little disdain. Wow. He swings this away and swings this away beautifully for yet another 6. Full toss, cut that away. And over covers. What a magnificent shot. You beauty, Hafiz Pola. In the air. Who's going to take it? And it is caught. So Hafiz Pola shows is over. He played really well for his 22 of 10. 1 for 28 on the board, North Nawabs. And this time around, batsman has given it a go. And this is going to go all the way at mid-wicket boundary for 6. Zain has gone downtown. Absolutely smoked that away. Wow, what a good shot. Absolutely. बाएं हाथ से गेंद करने वाले तेज बॉलर और उनकी इस पहली गेंद को उठा दिया है। फील्डर के लिए यहां पर कोई मौका नहीं होगा। 6 रन। 8 रन अभी पीछे हैं पहली इनिंग में मलीर मलंग और इस बार बोल्ड कर दिया तो बहुत जल्दी हिसाब चुकता किया है फजल ने। 12 रन बनाकर ये आउट हुए। 58 पे 2 आउट। एक मरतबा फिर फजल आए और इस बार शफी ने गेंद को उठा दिया है। 6 रन।
थोड़ा कुछ डिफरेंट सा एक्शन है, लेकिन बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं खेले। टेप बॉल क्रिकेट में इस गेंद पर जोरदार तरीके से खेले, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद थे जिन्होंने एक बुलंद वाला शॉट को कैच में तब्दील कर दिया। इस तरह शफी जो है वो आउट होकर लौट रहे हैं, सिर्फ 1 रन बनाया और 65 पे 3 खिलाड़ी आउट। इमरान जोरदार तरीके से जहन खेले और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। जहन को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। और इस बार नो बॉल ये होगी, कनेक्ट उन्होंने जरूर किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मलीर मलंग को ये नो बॉल मिल गई है। फजल और कोशिश की फील्डिंग की है, वो कम से कम यहाँ पर इनको बढ़तरी हासिल करने दें, लेकिन ये एक और छक्का, इसको कहते हैं कि मुंह में बॉल कर दिया उन्होंने, और बैट्समैन ने जो जैन है उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। ऊंचा खेले इस गेंद को और गेंद फील्डर के पास पहुंची है, कुछ एक आध टप्पा खाकर, और ये बैट्समैन तीसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं और पहुंच गए या नहीं ये देखना होगा। हमने जी पहुंच गए। तो ठीक ठाक बढ़तरी यहां पर हासिल कर ली है मलीर मलंग की टीम ने। 96 रन किए हैं 3 विकेट के नुकसान पर, उनकी बढ़तरी पहली इनिंग में 30 रन की। यूबीएल कराची टेबल प्रीमियर लीग सीजन 3 का 25th मैच। नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और जहां जहां हमारी नशरियात जारी है, आप तमाम लोगों को डीएचए स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड मोइन खान क्रिकेट एकेडमी से खुशामदीद कहता है। 25वां मैच है जहां नॉर्थ नवाब और मलीर मलंग्स की टीमें मद्दे मुकाबले हैं। आप मेरे साथ 2 इंपॉर्टेंट शख्सियात यहाँ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूबीएल अमीन कराची टेबल प्रीमियर लीग, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए गिरा खदर खिदमात अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब, और उनके साथ हमारे लिविंग एजेंट द वन एंड ओनली ग्रेट जावेद मियादाद साहब की साहबजादी मारिया मियादाद, जो हमारी विमेंस विंग को अब देखना शुरू हो गई है। कायनात इम्तियाज और काम शुरू कर दिया यहाँ, एक प्रॉपर मैनेजमेंट भी, और खासतौर पे जो 16 को फाइनल है उससे पहले KTPL वुमेन्स प्रीमियर लीग की लॉन्चिंग होने जा रही है। खास तौर पे हम इसको भी बहुत फोकस कर रहे हैं। मारिया आपको और हारून भाई आपको वेलकम करते हैं। हमने आपको किसी इवेंट में उस तरीके से देखा नहीं, इस बार प्रॉपर कनेक्शन के बाद हमने इससे पहले किसी और इवेंट के साथ आपको नहीं देखा जिस तरीके से आप कराची टेबल प्रीमियर लीग के साथ जुड़ी हैं। उन बच्चियों के साथ मिला जो कुछ नई बच्चियाँ होंगी वो खेलें। मैं चाहूँगा कि जितनी फैमिलीज़ हैं उस पर्टिकुलर डे फाइनल के दिन ये आउट हो गए, ये ऊंचा शॉट खेला था, और डी के जो हैं वो दाऊद खान पठान वो आउट हो गए, एक बनाकर अच्छा कैच किया। आई थिंक अगर ये देखा जाए तो बड़ा नॉर्थ नवाब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। नहीं, हम सुनने चाहेंगे ये खबर, तो हारून भाई भी सुनने के लिए बैठे। इस बार जबरदस्त कनेक्शन, फर्स्ट हिट उसके बाद बाउंड्री के बाहर गई, कलीम का अच्छा स्ट्रोक इरशाद की गेंद पर। इशू ये है कि हमारी जो बच्चियां हैं एट द यंग एज से अबाउट 14, 15, 16, और ये इस दफ़ा ऊंचा शॉट खेल गया और गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए, सो 6 रन का इजाफा किया कलीम ने, बहुत ही अच्छा। I think that was more important to do rather than try and prove कि I can be as good as my father because I can't beat the legend. बार इमरान का छक्का है यहाँ पर, जबरदस्त हिट आसिफ की गेंद पर। लेजेंडरी जावेद मियादाद की बेटी हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट से स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, उनकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होंगी वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस फील करेंगी, इनके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं। एक और छक्का मारा है कलीम ने और इसे स्वे लेग के ऊपर से खेल दिया था, सिर्फ 10 रन की लीड अभी हुई है और ये 30 से 34 ओवर का खेल चल रहा है। फिर एक और ऊंचा शॉट और ये गेंद भी जो है वो बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी। इमरान और कलीम दोनों बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर इस हवाले से भी जानते होंगे। एक और जबरदस्त हिट, कलीम पकड़े गए इस बार। कलीम का इस बार शॉट बाउंड्री क्रॉस नहीं करा सका बल्कि सीधा हाथों में गया और लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान कैच आउट हुए। इस तरीके से ये दूसरा नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पर मलीर मलंग्स को। क्रिकेट की एकेडमीज लगाना चाह रहे हैं और ख़ास तौर पर वुमेन की, सो यहाँ से वो प्लेटफॉर्म इनको मिल सकता है अगर बच्चियाँ अच्छी खेलेंगी। लेकिन एक और विकेट गिरी है और इस तरह मलीर मलंग्स को एक और नुकसान हुआ। एक और अच्छा प्लेयर मुख्तियार आउट होकर वापस गई। Baldy knocked him over. Inside edge, rattled onto the stumps. And have a look at that. Victorious bowler enjoying his victory. And Mimran goes for 14. 50 for 4 on the board. Maleer Malangs.
Shorter one, he gets and he really nails it over mid wicket for a huge hit. That one went out of the ground. And this time it's a high one. It's hit high enough. Does it have enough distance? No, it doesn't. And very good catch is taken by Pola. An important catch here. Badar cameo is over. Just 6 to his name. Full toss. Oh, you betcha. That's all the way. That's a biggie. What a sweet connection. What a blow. That is full toss. Put away over mid wicket for 6. इन्वायरमेंट नहीं होता, क्रिकेट का रुझान नहीं होता, लेकिन इस तरह की लीग्स होंगी और लाइव चलेंगी पूरी दुनिया में, तो मेरे ख्याल में एक मिनट जरा, आप तो क्रिकेटर हैं, कैच तो बताना पड़ेगा। यहाँ विकेट गिर गई है जी मलीर मलंग्स की टीम कहीं ना कहीं कुछ कमबैक करने में जरूर कामयाब हुई है इस मैच में, लेकिन नॉर्थ नवाब का पलड़ा भी बहुत भारी। Oh, that's a very good delivery. Slow bouncer to finish things off. 6 done, 71 for 6. Effectively, they are 41, and it's going to be a target of 42 for North Nawabs to chase down when they come out to bat. और इस गेंद को ऊंचा खेल दिया बैट्समैन ने और गेंद वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर के हाथों में ऑलमोस्ट मिड ऑन पर कैच कर ली गई और इस तरह विकेट लेने में यहां पर कामयाब हो गई है टीम। यहां पर मलीर मलंग्स की और हाफिज पोला लौट रहे हैं आउट होकर। दोनों जो इनके कोचेज हैं उनको दे रहे हैं और जो हमारे वो हैं मोहम्मद समी साहब उनके लिए भी प्लॉट का उन्होंने ऐलान कर दिया अगर फाइनल जीतते हैं। ये प्लॉट एक नया सिलसिला शुरू हो गया ज़ुहैर भाई, ये तो बहुत ही बड़ा आगाज़ है और इनके लिए हम पूरे साल इन लोगों को सपोर्ट करें। तो केटीपीएल असल ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक सिर्फ टूर्नामेंट नहीं है, ये सिर्फ हम इसके अंदर इन सारे लड़कों को इंशाल्लाह पूरे साल अपने साथ एंगेज करेंगे। इसके जो टॉपर्स होंगे वो फिर दुनिया के अंदर जितने टूर्नामेंट्स होंगे उसमें हम इनको आगे लेके चलें। जफर अब्बास भाई, एक और चीज़ भी केटीपीएल विमेंस लीग का भी आगाज़ होने जाए, उसकी भी लॉन्चिंग हो जा रही है और जितनी आपकी इन्वॉल्वमेंट हमने देखी, इमरान अली रोशन साहब की देखी, डीके की देखी, सारे ऑनर्स जिस तरह मुजम्मिल अतहर सब लोग जुड़े हुए दिखाई दिए, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। तो वुमेन क्रिकेट लीग जो है उसको तो सपोर्ट करेंगे बल्कि ज़ुहैर भाई ने कहा एक टीम हमें जेडीसी को दे रहे हैं सीएसआर में, तो मैं कराची से अच्छा टैलेंट वुमेन्स का निकाल के लाऊंगा, उनको यहाँ खिलाएंगे और उनको नेशनल लेवल खिलाएंगे कि देखिए कराची जिस तरह से कराची ग्राउंड बर्बाद हुए हैं अब दोबारा से आबाद हो रहे हैं, तो उस जश्न में मैं शामिल रहूँगा इंशाल्लाह। ये बॉल के अंदर लड़कियां जो है वो हार्ड से काफ़ी डरती हैं, तो उसमें अब ये कि इंशाल्लाह बॉल्स जिससे जब वो खेलेंगी तो उनका एक जो एक डर है वो ख़त्म होगा और वो हमारे नेशनल क्रिकेट के लिए उनकी एक अवेलेबिलिटी हो जाएगी। प्लस जो उन फैमिलीज़ के लिए वो फैमिलीज़ जो अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए जो हमारा इन्वायरमेंट है कि ऐसे ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है जिससे उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इंशाल्लाह हम एक ज़बरदस्त किस्म का इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे बच्चियाँ आएँ और खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए ए बी पारो, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ऑलमोस्ट स्क्वायर लेग पे छक्का। इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए और एक बार फिर अंपायर का इशारा कि ये छक्का। यकीनन ए बी पारो अब चाहेंगे कि इसी ओवर में खेल तमाम किया जाए। गोज अगेन, लेकिन फील्डर हैं, जंप किया, क्या अपने आप को साल में कामयाब रहे हैं, बल्कि नहीं, ओ वो गिरे हैं, लेकिन कैच शायद उन्होंने अंदर फेंका है क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेलिब्रेशन हो रही है और अब हम रिप्ले में मजीद अंदाजा करेंगे, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कैचेस होगा ये। यकीनन अपना तवाज़ुन बिल्कुल खो चुके थे और तवाज़ुन खोने से ठीक पहले उन्होंने बॉल को रिलीज कर दिया अपने हाथों से बिल्कुल, और ये कैच करार दिया गया है। रेड लाइट्स ऑन हुई और जितनी तारीफ की जाए फील्डर की वो कम है और इन्होंने एक आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है बिला शुबा। ए बी पारो 13 रन बनाकर आउट हुए। यहाँ पर उठा के खेल दिया है, गेंद हवा में, देखना पड़ेगा फील्डर गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच लेकर एक और विकेट हासिल कर ली है और मुरसलीन को यहाँ ठिकाने लगा दिया है उबैद ने, तो तीसरी विकेट हासिल कर ली उबैदुर रहमान ने 17 रन देकर। दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरी, अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ से निकाल दिया है डीप स्क्वायर लेग की जानिब, फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन हासिल किया और इसके साथ फतह कर ली नॉर्थ नवाब की टीम ने
5 विकेटों से ये मैच अपने नाम कर लिया है नॉर्थ नवाब की टीम ने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ कटाना है और मैं जीएम कॉर्पोरेट सेल हूँ सर्विस इंडस्ट्रीज में। सर्विस इंडस्ट्री पाकिस्तान में 50 साल पुराना नाम टायर के हवाले से और शूज़ के हवाले से पहचाना जाता है। हम लोग आम लोगों के लिए जो जूते बने हैं उनके अलावा हम फोर्सेस के लिए भी जूते बने, तो कंप्लीट रेंज है नेवी के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, रेंजर्स के लिए और पुलिस के लिए। इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में कुछ और चीज़ें बना रही है जिससे बहुत कम लोग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग आर्मी के लिए सियाचिन में जो शूज़ इस्तेमाल किया जाता है, के शूज़, वो भी बना रहे हैं। इसके अलावा हम गैस मास्क आर्मी के लिए बना रहे हैं जो पाकिस्तान में सिंगल सोर्स है आर्मी के लिए। इसके अलावा हम लोग अल खालिद अल ज़रार के लिए कुछ पार्ट्स भी बना रहे हैं। रिसेंटली हमारा एक हुआ है चाइना की कंपनी लॉन्ग मार्च के साथ, और पाकिस्तान में पहली बार ट्रक बस रेडियल टायर मुतारफ करवाए गए, वो भी सर्विस ग्रुप की करवाए गए, सर्विस मार्च की तरफ से। इससे पहले ये सारे टायर पाकिस्तान में इम्पोर्ट जाते थे। पाकिस्तान में साइज ट्रक बस रेडियल तकरीबन 2 मिलियन के करीब है एक साल, और हम लोग जो प्लान करके पाकिस्तान में ये फैसिलिटी लेके आए हैं, हम इंशाल्लाह फेज में आज से 2 या 3 साल बाद 2-4 मिलियन की कैपेसिटी एक साल की आ रहे होंगे। और मार्च में ये रेट हुआ है, और इस वक्त हम लोग अमेरिका को ये टायर पाकिस्तान से बना के कर, जो पाकिस्तान के लिए एक फख्र की बात। आइडियाज के हवाले से मैं ये बात करूंगा, बहुत अच्छी एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पे बहुत से ममालिक से लोग आते हैं, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला है, और दुनिया को ये जानने में आसानी है कि पाकिस्तान बहुत सी चीजें अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नो डाउट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट के लिए। Well, hello. My name is Ayhan Shenturk, and I am the Business Development Manager for Profan Funds Technologies. We're a Turkish company. Our company was founded back in 1995, and our core expertise and experience is in satellite communication systems. So that's satellite antennas, satellite ground stations, and those are the main products that we're promoting at this exhibition. So we can design and build all the way from 65 centimeters small satellite dishes, man-packed terminals, all the way up to 7.3 meter big ground stations. So as I said, that's our main expertise. That's where our main experience comes from. But we're also an engineering company. We do systems integration. We have a very good software team supporting us in our activities. We have a material science team helping us with the design of our antennas, and we deliver turnkey solutions to our customers. It's our first time in Pakistan attending an exhibition, and it's been a very fruitful period for us. I mean, we've been very busy for the past 2 days. We're busy today as well, and we're very happy about it. We're very happy about it. During the COVID period, we've been having a lot of online meetings, or telephone meetings with our contacts in Pakistan. So as I said, it's our first time in Pakistan, and it's a great pleasure. It's a great pleasure to be able to talk, face to face with our contacts, with our customers in Pakistan. So thank you very much. Thank you very much for everything, for your hospitality. It's been an honor to be here, and we look forward to improving our relationship with Pakistan. Thank you. My name is Abdul Basit, and we are exhibiting ideas from the platform K Electric.
K Electric has recently launched a new company with the name of K Solar, and from the platform of K Solar, we are offering solar solution for our commercial industrial users. In these solutions, we have several models for our industrial and commercial users, which include power purchase agreement. In this solution, all the apps belongs to us. We are going to deploy it on the premises of our user, of our industrial or commercial use. In the solution, the customer don't have to pay any upfront costs. They only have to pay the monthly energy, which will be generated at the end of the month by using solar energy. So this is the first solution we are offering to our industrial and commercial users. And secondly, for the second solution we are offering is of deferred PC payment. This is one of the viable option in which the client doesn't have to pay an upfront cost for the system. They have to pay the capital cost in terms of installment for the defined period. And the third solution we are offering is the upfront cost, which will be paid by the consumer and at the time of installation. So these are the three options available for our users. And in all of our solutions, we are committed to quality, and we're not going to compromise in quality. And if the user is getting solution in K Solar, so what we're offering is one window solution for our users from survey till the commissioning of the system. Only you have to contact K Solar, and we will gonna give you one window solution. You don't have to go anywhere else for any other services. We're going to do the survey, we're going to do the designing, we're going to do the installation and commissioning, as well as we're going to do the all preparation related to the net metering application, and we will help our users to get their license. And once the license is arrived, then we will going to install the energy meter, which will be done by our other department of K Electric, net metering department. So I welcome all our users to please come to K Solar and have a good experience from us, and please try us. And in last, I just want to thank the exhibition, the organizers. It's a really experience over here, and I wish them a very good luck. मेरा नाम फातिमा है, GMI टीम हूँ FAO में, और इससे पहले FAO का स्टॉल यहाँ पर है। हमने यहाँ पे अपने 4 मेजर कॉम्पोनेंट्स जो हम FAO पाकिस्तान में मेगा कंस्ट्रक्शन इदारे तौर पे जाना जाता है, लेकिन हम कंस्ट्रक्शन के अलावा कुछ और काम करते हैं जिनको हमने यहाँ पे आज रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले बिल्डिंग इनोवेशन मॉडलिंग और टनलिंग इंस्टीट्यूट एक सबसे अहम है वो है, और उसकी हम यहाँ पे डिजिटल कंस्ट्रक्शन के पैरामीटर हैं उनको सामने रखे हुए डिजिटली कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे देखा था कि कोविड 40 दिनों के अंदर हॉस्पिटल जो है वो तैयार किया था, इसलिए बिल्डिंग इनोवेशन मॉडलिंग सिस्टम यूज किया गया कि वो जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन जो है वो ठीक किया जा सके। का एक इदारा CTTI इंस्ट्रक्शन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वो सबसे ज्यादा अहम का हामिल है, जिसमें पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर आई साइड से, बिकॉज ताल्लुक IT से है तो की साइड से वन है पाकिस्तान के तमाम रिवेज के ऊपर जो MTech का सिस्टम इंस्टॉलिंग और इंटेल सिस्टम जो है उसकी बात यहाँ पर डिस्प्ले पे हमने लाइव अपना मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो उसको हम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। हमने FAA पाकिस्तान के लिए टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए ऑल ओवर पाकिस्तान एक नया लॉ हॉल जो है इस्टेब्लिश किया है फाइबर का, और फ्रॉम कराची टू पावर वो कंप्लीट हो जाएगा अगले साल के शुरू में, और फिर तमाम मोटरवेज जो हैं वो हमारी कनेक्टेड होंगी। आप अगर पेशावर से करेंगे और सत्तर आप बगैर किसी जगह आप टोल पेमेंट जो है एंड टू एंड होगी, और जब इंसान सखर से हैदराबाद तक की मोटरवे कंप्लीट होगी तो पेशावर से कराची तक आप सिंह कॉलिंग के ऊपर और सिंह के ऊपर जो है वो आप ट्रेवल कर सकते हैं। और गैस मीडिया बिजनेस एंड गवर्नमेंट पार्टी ग्रेट मार्केट कंडीशन ऑफ बेसिक फेलियर नेशनल डिफेंस एक्सपीडिशन सेमिनार 2022 लेडीज एंड जेंटलमैन
we entered into the national exhibition industry, having the first idea in 2000, with 125 international exhibitors and 150 foreign delegates. During the last 3 days, IDEA has grown steady in space, volume, exhibitor, and delegates. In IDEA 2018, we had a record participation of 524 exhibitors and 201 delegates representing 44 countries. And we are lucky that General Ahmed is here, who was DG then, and we had a record participation across the world. The ability to accelerate IDEA got affected when IDEA 2020 has been rescheduled due to the COVID, which was the worst catastrophe of our history. But in general, Pakistan in particular fought with courage and determination. COVID is still not over, but we have learned how to live with it. Ladies and gentlemen, I am glad to share that the 11th edition of IDEA is scheduled from 15 to November 2022, the year of 75th celebration of independence of Pakistan. What a proud moment. In a gap of 4 years, we have received a booking for more than 70% of the available space state to date. Needless to say that IDEA 2022 will be much bigger in size and stature than ever before, inshallah. We are all in the process of extending invitation to the defense delegation of around 85 countries and expect to receive positive response from the honorable invites. IDEA has established itself as an attractive and grand venue to promote mutual understanding, trust, friendship, and cooperation. In this regard, Pakistan's defense industry and defense industry offer a great opportunity to the defense industry of the developed world. Ladies and gentlemen, it presents Pakistan's large defense industry to the outside world by showcasing Pakistan's defense production capability in the conventional realm. Aimed at exploring ways and means of partnership in defense production to joint ventures, outsourcing, and cooperation. Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to share the vision of IDEA, which is twofold. On one hand, it aims at increasing space for joint cooperation between Pakistan public and private enterprises with the regional and global partners. And on the other hand, it is meant to enhance the possibilities of public-private partnership, providing a unique opportunity to our friendly countries to visit Pakistan, sit together, interact with each other, collaborate, cooperate to build defense ties, and find solutions to the problem confronting the region and the world. I wish to make a special mention of the Ministry of Commerce as well as the Trade Development Authority of Pakistan for their all-out support and availability of Expo Center Karachi as a venue for the IDEA's 2022. I would also like to thank the Ministry of Communication and Director General of Pakistan for according approval for issues of commemorative postage stamp on 14th of August 2022, signifying the opening of 11th edition of IDEA in 75th year of celebration of independence of Pakistan. May I also mention that the Government of State and Karachi District Administration have always been forthcoming and very supportive of holding this mega event in Karachi. I would also like to thank Badar Expo Solution, our event organizer, for his untiring efforts and wholeheartedness. Ladies and gentlemen, I would like to thank all the worthy guests for accepting the invitation to end this ceremony. Honorable Defence Minister, we are personally grateful for your presence on this occasion. I thank you all, ladies and gentlemen, Pakistan. जिस तरीके से जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं तो आइडियाज़ जो है ये इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो तकरीबन कोई 50+ कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है और जब 50 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है तो आप कुछ समझ सकते हैं कि शो का साइज़ और चीज़ें जो हैं वो किस लेवल पे चला जाता है जहाँ पे हमारे पास सारे चीफ्स के काउंटर पार्ट्स आ रहे होते हैं, दुनिया से डेलीगेशंस की पार्टिसिपेशन हो रही होती है और ये पाकिस्तान का एक नाम जो है पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोजेक्ट हो रहा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा शो जो है इस दफ़ा दोबारा 15 to 18 नवंबर को इंशाल्लाह कराची एक्सपो सेंटर में होगा। आज इसकी हमारी सारी सॉफ्ट लॉन्च थी जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। तो हमारा असल इसके अंदर मकसद है कि इसके अंदर हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बढ़ाएं और इस शो के अंदर हमारी जितनी डिफेंस इंडस्ट्री है
वो सारी की सारी यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करती है। और इसके साथ साथ मेरा हमेशा से एक ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ है इसको हम एक तो प्रमोट करें और दुनिया को हम ये दिखाएं। जिस तरीके से इस वक्त चीफ की भी एक पॉलिसी है कि हम सेल्फ इंडिजनाइजेशन के ऊपर जाएं और हम अपनी खुद से पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चर करे यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हमने इस पूरे इवेंट के ऊपर जिस तरीके से हम अपने लोकल एग्जिबिटर्स को जो है या मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो हम सब्सिडी देते हैं, तो उसमें उनका मकसद ही यही है कि हम उनको इस फोरम पे लाएं और लाने के बाद जो हमारे पास दुनिया से डेलीगेशंस आती है, पार्टिसिपेशन आती है, ताकि ये उनको ऑर्डर्स मिल सकें और वो एक बिजनेस जनरेट कर सकें और इसके साथ साथ हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट, नई एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जाए। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जितने भी हमारे जितने ये डिफेंस इदारे हैं और जितने हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट है और ये एक जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बदर एक्सपो इसको मेरी पूरी टीम, मतलब ये मिल के ये एक बंदे का काम नहीं है, इसमें सारी टीम एफर्ट होती हैं और ये पूरी टीम जो है वो मिल के अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम कर रही है। और इसमें जितना कोऑर्डिनेशन और जिस टाइप की चीज़ें होती हैं आप उसको समझ सकते हैं वो कितना पीक टाइम होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा टीम इसको उसी के अकॉर्डिंगली जहाँ जैसी जो रिक्वायरमेंट्स उसको मैनेज करती है। तो बस अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ये मकाम दिया, ये चीज़ें दी कि जहाँ पे लोग कंपनी के ऊपर और बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ये एक और बड़ी खुशाइन बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह के 75 ईयर्स हमारे कंट्री को जो है वो कंप्लीट हो गए और आप जैसे देखते हैं कि ये साल आइडियाज़ का है वो भी इंशाल्लाह ताला उसकी पूरी एक सेलिब्रेशन इंशाल्लाह की जाएंगी आइडियाज़ के अंदर। और हम इंशाल्लाह जिस तरीके से आज आपने सॉन्च में भी देखा, हमने एक स्टेम बनाई है जिसके ऊपर 75 ईयर्स को हमने उसके अंदर प्रोजेक्ट किया है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान का इवेंट है और पाकिस्तान फोर्सेस का इवेंट है। इंशाल्लाह ये उसी तरीके से ये सक्सेसफुल इंशाल्लाह ये इवेंट होगा। I'm Rabia Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company. Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, that time it used to be Indian Acetylene Company, and from then it changed its several names. It became Pakistan Oxygen, then it changed to British Oxygen, Linde, and we are back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases, and we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the hard good needs of industry. Ideas is a very good platform to exhibit what Pakistan is doing, and as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. We have served in COVID days and received appreciation letter from NCOC as well. People who are coming over here, when they see the name of Oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which have been in the crucial days when Pakistan was going through very difficult times. Pakistan has imported European manufacturing for its clothes, and our very renowned brand, they comprise of Zodian, Trax, Matador, 47, 48. In COVID days when people were running after oxygen and weren't finding it anywhere, that time we launched this portable oxygen canister. It's indigenous product. This is a 13-liter can of oxygen, which is, you can see it weighs just half a kg. And it allows 250 puffs. So it was very much in demand in COVID days when people weren't finding oxygen. They would keep it at home. It has been imported this product for many years. Now we are manufacturing in-house completely. This is basically, it is installed on the tanks, the storage tanks. They could be liquid storage tanks or grains, whatever. So what it does, it gives you the real-time data of what inside the tank is. For example, there's a liquid oxygen tank which is installed in a hospital, and hospital doesn't realize that what level inside is and when do they need to replan it. आइडियाज़ 2022 जो कि वैसे बाइनल इवेंट है, हर 2 साल होता है,
लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से जब 2020 में हम इसको नहीं कंडक्ट करा सके तो ये 4 साल के बाद हो रहा है। उसकी वजह से अब इसकी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और हम पूरी तरह इसके लिए तैयार और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 में जो कंडक्ट कराया गया था उससे मज़ीद बेहतर होगा और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा। इसमें काफ़ी हाई डेलीगेशंस की इंफॉर्मेशन आ चुकी हैं कि पूरी दुनिया के तमाम बरिया से हमारे पास डिग्निटीज़ आ रहे हैं और एग्जिबिटर्स भी हमारे यूरोप, एशिया, इस तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स आ रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमने बहुत ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर फोकस किया है, वो ये न सिर्फ अपनी जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री उसके साथ साथ अपने प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है उसको भी इसके लूप में लेके आएँ, उसको भी एक बुकलेट दें ताकि वो सामने अपना जो प्रोडक्शन शोकेस कर सके। लेकिन जिसमें भी इस तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है जिस पर इंटरनेशनल भी आए हुए हैं, आपके इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है न सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग या जो हमारे लोकल हैं कि वो जो मुल्क से आने वाली OEMs हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और इसके साथ ही साथ हमारी लोकल कंपनीज हैं एटम की भी जॉइंट वेंचर्स हैं बाहर के मुल्कों की कंपनियों के साथ, तो डेफिनेटली ये हमारी इकॉनमी को भी बूस्ट करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री के लिए भी एक अच्छा साइन है। लेवल का ये इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और बहुत हाई लेवल जैसे मैंने आपको बताया आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ जब एक दफ़ा पाकिस्तान में इसका इनेक्ट किया जाएगा तो इसका बहुत ज़बरदस्त और बहुत पॉजिटिव मैसेज है, जो लोग पढ़ाएंगे वो लेके जाएंगे, उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल का एक बहुत बड़ा इवेंट करा सा है। और तमाम तर जो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब हमारे साथ वो सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं जो हुआ करते और इस तरीके की चीज़ होगी। और आजकल जो फ्लड बाद के जो हालात हैं उसके बाद इस तरह के इवेंट कंडक्ट होना हमारी इकोनॉमी को भी से फ़ायदा होगा। इस अंदर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार नकद करवा रहे हैं जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स का, जिसका सेगमेंट 1 टियर 1 जो है वो आइडिया पहले ही उसका इनेकाद करेगा और उस अंदर 4 स्पीकर जो एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इसी तरह जो सेकंड ईयर का जो नेक्स्ट डे पे कंडक्ट जाएगा दैट वुड बी द सेकंड ऑफ आइडियाज़, उस जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने इस पर काम किया है इंटेलिजेंस के ऊपर वो आके अपना काम प्रेजेंट करेंगे। और ये इन प्रेजेंट करने वालों के अलावा 2 दिन हमें अपने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफिसर्स को भी होगा, उनको सुनेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनसे सीख के। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ की जो वेन्यू है कराची एक्टर के बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर का जो आउटडोर एरिया है और जो एग्जीबिशन हॉल्स एरिया, सब के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम हो और इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइन को मीट करते हुए स्टार्ट से पहले कंप्लीट कर लेंगे। गवर्नमेंट के बारे में मैं कहूँगा कि पैटर्नेज हमेशा हमें मिलती रही, पास्ट में भी मिली है, इस दफ़ा भी आपको देखा कि हमारी जो 2 स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग्स थी हेल्ड एट CM हाउस, CM साहब वेरी काफ़ी उन्होंने उसको शेयर किया और पर तमाम सिंध गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स मौजूद है, उनको जिस तरीके से CM की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली बड़ा पॉजिटिव हमने देखा कि जब सिंध गवर्नमेंट ने अपना साथ हमें दिया तो उससे चीज़ें बहुत हमारे आसान हुई। देखिए, जब ये कंसीव हुआ था आइडिया के भी आइडियाज़ करना है तो उस वक़्त मकसद यही था कि जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर किया जाए और उसी को लेके जितनी भी एफ़र्ट्स हुई, जितना भी हमने लोगोस बनाए लाइक आर्म्स फॉर पीस और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट एंड डिफेंस इंडस्ट्री, वो हाईलाइट नहीं हो रहा था जैसे होना चाहिए था। तो जब से आइडिया आया है तो हमने अपने शोकेस करना शुरू किया है प्रोडक्ट्स को, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ डेपो। तो उससे एक बड़ी पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का गया है और लोगों को पता चला है कि पाकिस्तान एक इतनी ताकत है, ऐसी पावर है कि जो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें बनाया है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़ी डिमांड है। डिफेंस को सपोर्ट करता ही करता है, मगर जो आइडियाज़ है ये ओवरऑल आपकी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। टूरिस्ट भी बढ़ता है, लोग जो बाहर से बहुत सारे डेलीगेशन आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं इसको अटेंड करने के लिए बाहर से, वो पाकिस्तान को देखते हैं। वो पाकिस्तान को देखने के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि ये बड़ा पीसफुल और अच्छा कंट्री है, खाने अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ डेवलपमेंट अच्छी हुई है। तो अदरवाइज जो उनके कॉन्सेप्ट होता है पता नहीं, जब वो खबरों में देखते हैं तो कोई गार के ज़माने में चले गए हैं, मगर जब यहाँ आते हैं नाइस रोड्स बनी हुई हैं, नाइस बिल्डिंग्स हैं, ईटरीज अच्छी हैं, इसके अलावा मॉल्स हैं, तो उन्हें पता चलता है ये तो इस वन ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड।
तो वो फिर जाके अपना इमेज हमारा जब वो पॉजिटिव इसी तरह लोगों को बताते हैं। और मेरा ख्याल है कि इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली and positively towards the economy of Pakistan since time ideas have started. And Badar Expo जो है वो और ideas जो हैं दोनों आप समझें कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लगता है कि भाई ये इन्होंने इतनी मेहनत की है कि इन्होंने पाकिस्तान के इमेज को भी उजागर किया है और इस चीज़ को नहीं देखा कि इनका फ़ायदा या नुकसान क्या है। इन्होंने सिर्फ ये देखा है कि पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर होगा, उसी हिसाब से फिर इन्होंने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है। तो बदर एक्सपो का बहुत कंट्रीब्यूशन है टू हाईलाइट आइडियाज़, टू पुट आइडियाज़ ऑन अ वेरी हायर पेडेस्टल। अल्हम्दुलिल्लाह। First gather stakeholders across diverse industries. The exhibition offers a platform G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in the defense production sector. A strategic seminar will also be held with discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures, and investments in the production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19-22 November 2024 at Karachi Expo Center. अस्सलाम वालेकुम। हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इट वाज रियली ग्रेट विजिटिंग ऑल द वेपन्स रिलेटेड टू मेनी कंट्रीज हियर। माय फादर इज आल्सो इन आर्मी। वी आर प्राउड टू बी daughters of a person who's in army. We love Pakistan and it was really a great experience. Really proud to be a Pakistani. Thank you.
अस्सलाम जी, मेरा नाम शाद हसन है और मैं यहाँ पे हेल्प टेक्नोलॉजी की तरफ से हूँ और हम यहाँ पे हेल्प की तरफ से फीमेल्स के लिए सलून शॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड रहे हैं, जिसमें हम थ्रेडिंग दे रहे हैं, नेल पॉलिश दे रहे हैं और मेहंदी का आप देख सकते हैं सेटअप है। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है बदर एक्सपो ने और इस तरह की जो है वो एक्सपोज होने चाहिए, ख़ासतौर पे कराची में हमारी जनरेशन को, हमारी फीमेल्स को ख़ासतौर पे बड़ा रिलैक्सेशन मिला है। यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी क्राउड है, इस वक्त काफ़ी रश है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को, तो बहुत अच्छा लगा इन चीज़ों को लेके। थैंक यू बदर एक्सपो के इस तरह का उन्होंने हमें चांस दिया, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम एक अच्छी चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। Ideas 2020 Taylor stakeholders of diverse defense industries. The 4-day exhibition is a platform for G2G, B2G, and B2B actions, joint ventures and investments in defense product sector. A strategic seminar will also help to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Hello everyone, this is Sun from Narenco, China North Industries Corporation. Our corporation is an international defense company, and today we expected our most advanced defense product like BTV main battle tank and SH-15 howitzer. We are very honored and delighted to exhibit here. Thank you all. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The exhibition was a platform G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in the production sector. A strategic seminar will also help to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा है। मैं SHADC लैब में पैथोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ। मेरे साथ बरदा ली हैं, ये मेरे साथ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हैं। हम लोग यहाँ पे आज हेल्थ एक्सपो में आए हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था बदर वालों की तरफ से, बहुत अच्छा, मतलब डिफरेंट कैटेगरी से हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे हम गैदर हुए हैं और काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये रहा है हम लोगों के लिए। अब मैं अपनी लैब के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। हम लोगों की लैब JDC फ्री डायग्नोस्टिक लैब है, जहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 250 से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त हमारी कैपेसिटी है मोर देन 1 लाख टेस्ट करने की पर डे, और हमारे पास जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे कि जफ़र भाई कहते हैं कि जिसका खून लाल है वो हमारे पास आ सकता है टेस्ट करवाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। Ideas 2024 bring together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition is a platform for G2G, B2G, and B2B commercials, joint ventures, and investments in the defense sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, B2B interactions, joint ventures, and investments in the defense purchase sector. A strategic seminar will also facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas held from 9 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center.
अपने मुल्क से यहाँ मवेशी मंडी 2024 जो कराची के एक ज़बरदस्त किस्म के त्यौहार की तरह ही मनाई जाती है और हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, तो जानवर बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गए। आपकी पसंद के हर तरह के जानवर जो वो यहाँ पर दस्तयाब होंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम के तमाम जानवर हैं ये मुख्तलिफ जगहों से आए और लोग यहाँ पहुँच गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मद, आप कहाँ से आए? मैं कनकोट से आया हूँ। कनकोट से आए, तो कितने जानवर लेकर आए? 32 जानवर लेकर गए हूँ। और वैसे कितने आ चुके हैं अब तक जानवर? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे फर्स्ट गाड़ी जो है दोनों मेरे उतरे हैं। और उसके बाद जो है काफ़ी जानवर आ चुके हैं। नेक मोहम्मद भाई ने पहली गाड़ी उतारी है मवेशी मंडी में, तो नेक काम हुआ है, तो फिर देखे ना आगे इसका रास्ते बनेंगे। नेक मोहम्मद भाई आप जो आए खरीदारी करने के लिए, और ये जो फीस वगैरह रखी गई है सब बेहतरीन है, इंतजाम आपके लिए जो किए गए खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक ठाक हैं और सिक्योरिटी हर चीज़ जो तैनात किया गया सब कुछ। जो हम पहले ही उतरे हैं, फर्स्ट गाड़ी हमारे उतरे हैं तो इन्होंने सिक्योरिटी दे दिया, रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दिया। उसके बाद जो बाकी दूसरे सिक्योरिटी निज़ाम थे वो भी ठीक ठाक थे, जो उन्होंने दे दिया सिक्योरिटी हर चीज़। चलें, सिक्योरिटी का मकसद है कि तमाम व्यापारी जो यहाँ पर कारोबार करने के लिए आए, आपके लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का मौका फराहम करने के लिए आए, सब लोग बहुत मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी से लेके तमाम इंतजाम बहुत ज़बरदस्त हैं। नेक मोहम्मद भाई थैंक यू वेरी मच और गुड लक। अल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। सारे आप देख सकते हैं सच चुकी है यहाँ पर मवेशी मंडी। मैंने जैसे कहा ना कि कनकोट से नेक मोहम्मद साहब आए थे और बड़ी तादाद में हम देखें ना तो यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचना शुरू हो गए और स्टॉल्स भी यहाँ पे बन गए हैं। पान के केबिन खुल चुके हैं हर जगह पे। आप देखें तो रौनक लौट आई है इस वक्त मंडी में। और ये देखें ये क्या ज़बरदस्त किस्म के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद जी। शहजाद भाई कहाँ से आए हैं आप? शेखुपुरा से। शेखुपुरा से, तो ये अंदाज़ा करें पंजाब से जानवर पहुँचे हैं, वहाँ आपने कनकोट देखा और यहाँ पे शेखुपुरा से। कैसा सब अरेंजमेंट वगैरह? खुश, बेहतरीन, मज़ा आ रहा है यहाँ पे? बस मज़ा आ रहा है। हर साल होने 16-17 साल होने आ रहे हैं। अच्छा, हर साल आते हैं तो सब बेहतरीन है। कितने जानवर लेकर आए? अच्छी जानवर 36 लेके आए। 36 जानवर लेकर आए। सारे ऐसे ही तगड़े नजर आ रहे हैं? सारे इधर ऐसा तगड़े हैं, सारे तोड़ आगे अपने जानवर। अच्छा, सारे भी आपके। आइए तो हमसे बात करते हुए चलते हैं। आपको क्या, आइए हमारे साथ बात करें थोड़ा सा। ये कैसा जो अरेंजमेंट्स आपके लिए किए गए हैं, आप व्यापारी यहाँ पर आए तो ये ठीक अरेंजमेंट है? मुतमईन है आप? सिक्योरिटी से लेके सारे इंतजाम तामन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। सिक्योरिटी भी तामन कर रही है, फौजी भाई इतने होंगे ने, पानी पुनी सारा दे के जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा सारे लोग आपके आके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो सब आके तावन, पानी से लेके कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है? कोई सानू परेशानी नहीं किसी काम की है। आज सानू 12-13 दिन हो गए ना आए नू, बाकी हर साल ही आने आ, किसी साल भी ना परेशानी नहीं होने देती। अच्छा, किसी साल भी परेशानी नहीं हुई है। तो ये आप देख सकते हैं बच्चे ने अपने अगले साल दे ये खीरे बच्चे ने सारे। अच्छा, हाँ जी, 1 साल के बच्चे? हाँ, ये 10 महीने दे 11 महीने दे अगले साल वास्ते पढ़ाई वास्ते आंदे ने। क्या आपने तैयार किए हैं यार 10 महीने में? क्या खाते हैं और आप भी क्या खाते हैं यार? खा रहे हैं अगे, देखो अगे वही खा रहे हैं। तो आप भी माशाल्लाह जो है वो जबरदस्त पंजाबी जवान आ, कोई कराची वाले नहीं, पंजाबी पूरी मंडी पंजाब दे विच सेरा बनया विच। ये जरा देखें अंदाज जरा दिखाएं तो सही ना यार। ये जो काम हुआ हुआ है यहाँ पे, आप जानवर देख सकते हैं। किस आइए आइए जरा इधर आ जाए, आप मेरे साथ इधर ना, आपके साथ बात होगी। ये जरा ये क्या प्रोडक्ट है आपकी? वैसे हम भी पहलवानी है। पहलवान है, बिल्कुल सही बात है। पूरी मंडी में घूमे ऐसा है बछड़ा कहीं? नहीं, ये बछड़ा तो भाई कौन सी नस्ल कौन सी है ये साहिवाल क्रॉस है। साहिवाल क्रॉस? भाई ये एक ही है मेरे ख्याल इस साइज की। हाँ एक ही है। कुछ बछड़ा देखो आपको पसंद लगा है? बहुत जबरदस्त किस्म का बछड़ा है भाई। बहुत ही जो है ना अपना मजा आया। और हम लोगों को भी बता रहे हैं, पंजाब के शेर आपने देखे कि वाकई में शेर लेकर आए हुए हैं ये लोग ना। पंजाब के आप ही शेर ने। जरा देखें, जरा अंदाजा बताएं। आप ही शेर ने देखा? पंजाब के शेर दोबारा बोलेंगे आप? पंजाब के शेर हैं, जानवर भी शेर हैं, हम भी शेर हैं। शेर आ चुके हैं जी मैदान में। ये आप देख सकते हैं कि हमारी मंडी जो है वो मवेशी मंडी सज चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कोई पूरे मुल्क से, यानी कि KPK से भी लोग आए हुए हैं और हर जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। कैसा अरेंजमेंट्स वगैरह? खुश हैं, मुतमईन है, मज़ा आ रहा है? बेहतरीन माहौल है मंडी का माशाल्लाह, पहले से भी बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। फ्लाइट भी है, रास्ते भी खुले हैं, पानी का जो इंतज़ाम है वो भी बेहतरीन है। आप यानी कि बहुत मुतमईन है, बहुत खुश हैं? बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही।
बिल्कुल असल चीज़ है कि ये तमाम व्यापारी जो पूरे मुल्क से आते हैं इनका मुतमईन होना, इनका खुश होना, और आपने जिसको सुना होगा वो तमाम के तमाम लोग ख़ास मुतमईन दिखाई दिए हैं। वैसे मैं अगर थोड़ी सी आपको इस मंडी की डिटेल भी बता दूं तो उसके मुताबिक 2024 में 900 से 1000 एकड़ पर ये मंडी कायम हुई है। अगर आप देखें तो ये पूरा रकबा पीछे भी अगर आप दिखाएंगे तो दूर दूर तक 1000 एकड़ पर कायम की गई है। छोटी जगह नहीं है ये। उसके साथ साथ इसमें मजमूई तौर पर 20 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, और उन ब्लॉक्स की मैं बात कर लेता हूं तो उसमें वीवीआईपी ब्लॉक भी है, वीआईपी ब्लॉक भी है और नॉर्मल ब्लॉक भी है। तो तमाम के तमाम ब्लॉक आप लोगों के लिए, जितने भी मवेशी मंडी में व्यापारी आ रहे हैं, सारे मुल्क से आ रहे हैं और आके अपना कारोबार करने के लिए पहुँचे, तो 3 डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, जिसमें वीवीआईपी भी है, वीआईपी भी है और एक नॉर्मल ब्लॉक भी है। और इसके 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक नहीं है। व्यापारियों को पहले पाइए की बुनियाद पर यहाँ पर तमाम मुफ्त जगह दी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनको व्यापारियों को यहाँ पे फराहम की गई है कि आएँ और आके आप बिज़नेस करें, और इसके साथ साथ हमारे शहर के लोगों को, यहाँ बसने वाले लोगों को सुन्नत इब्राहिमी बेहतर अंदाज अदा करने का मौका मिले। उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ तो कई और चीज़ें दिखाई देती हैं कि मंडी में दाखिला फ़ीस फ़ी गाय और फ़ी ऊँट 4250 रुपये है, जबकि फ़ी बकरा और फ़ी बकरी 1000 रुपये रखी गई है। तो एक मुनासिब कीमत रखी है। मंडी में जब आप अपने जानवर लेके आते हैं, आपने देखा होगा एक बड़ी तादाद में जानवर अब भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ नमाजियों के लिए ख़ास तौर पर मंडी में जगह जगह जो है वो मस्जिद की सहूलत फराम की गई है। इसके साथ साथ हर जगह पे जो लोग भी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आएंगे उनके लिए टॉयलेट रखे गए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको दिखाया था कि होटल से लेके जूस के स्टॉल और दीगर स्टॉल्स ऑलरेडी यहाँ पर कायम हो गए। बहुत सारी सहूलतें यहाँ पर फराम की गई हैं, जिनमें अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें ख़वातीन के लिए भी अलहदा डेट, मतलब फिर आपको बताऊँ कि बहुत सारी ख़वातीन आना चाहती हैं बकरा पीढ़ी, लेकिन वो नहीं आ पाती सहूलतों की वजह से। आपके लिए नमाज़ पढ़ने की सहूलत भी है ख़वातीन के लिए, एट द सेम टाइम आपके लिए टॉयलेट्स, खाने पीने का इंतज़ाम भी यहाँ मवेशी मंडी में किया गया है। इसके साथ साथ पक्के सीमेंट के ब्लॉक बनाए गए हैं, बहुत सारे पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए बहुत सारे इक़दामात यहाँ किए गए हैं। मवेशी मंडी में बैंक की सहूलत भी मौजूद है, तो बैंक की सहूलत भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी 24 घंटे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं है मुंतज़मीन ने। जो मसाइल पहले हैं उन मसाइल को दूर किया जाए, और इस दफ़ा इंशाअल्लाह जो लोग भी मवेशी मंडी ख़रीदारी के लिए आएंगे उन्हें कोई मसला नहीं होगा। कुछ पुरानी वीडियोस वगैरह होती हैं, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल आप व्यापारियों से भी सुन चुकें, लोगों से भी सुन चुकें, तो तमाम के तमाम लोग मुतमईन हैं, सबको इत्मीनान है। और आप इत्मीनान से आएँ ताकि अपना जानवर यहाँ से ख़रीदें कुर्बानी के लिए और सुन्नत इब्राहिमी अदा करें। नसीम राजपूत आपसे यहाँ मुलाकात करता रहेगा, जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। मवेशी मंडी में तेज़ी के साथ आ रहे हैं, अभी तो वक्त सा बाकी है, लेकिन पूरे मुल्क से जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिनको जल्दी ख़रीदारी करनी हो जानवरों की, वो उस वक्त आके बासानी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जानवर के साथ मानूस होते हैं, उसको पालते हैं, 15-20 दिन रखते हैं, तो फिर यहाँ आ जाएँ, आपको हर बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन रेट में मैसर होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मवेशी मंडी से इजाज़त चाहते हैं, और आएँ और आप आके ख़रीदारी करें। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर एलिया है। मैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को हेड करता हूं। आज हम एक BIC की प्रोडक्ट, जो कि हमारे वर्दी वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान साहब का आइडिया था, जिसको हमने अमली जामा पहनाया है हमारे इंक्यूबेशन सेंटर ने, और हमने एक ध्यान के नाम से एक बॉट बनाया है जो कि घर में बच्चों का ध्यान रखेगा, उनके साथ इंटरेक्टिव सेशन करेगा। ये AI बेस होगा और इसके अलावा स्टोरीज सुनाएगा, उनके साथ इंटरेक्शन का रिप्लाई करेगा और बहुत सारे और टीचिंग में भी मदद देगा। शुरू में हमने ये प्रोडक्ट सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन अभी 7 मंथ में हमने ये प्रोडक्ट कंप्लीट किया है। तो अभी ये ब्रिगेडियर रफ़ीक साहब, जो कि नेवल कमांडर भी हैं यहाँ कराची में, तो
हम इनके अशफा हॉस्पिटल में भी इसको इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। जी, मेरा नाम शाद हसन है और मैं यहाँ पे हेल्प टेक्नोलॉजी की तरफ से हूँ और हम यहाँ पे हेल्प की तरफ से फीमेल्स के लिए सलून शॉर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम थ्रेडिंग दे रहे हैं, पॉलिश दे रहे हैं और मेहंदी का आप देख सकते हैं सेटअप है। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है बदर एक्सपो ने और इस तरह की जो है वो एक्सपो होने चाहिए। खासतौर कराची में हमारी जनरेट को, हमारी फीमेल्स को खासतौर बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पे बड़ा अच्छा, यहाँ पे काफ़ी क्राउड है, इस वक्त काफ़ी रश है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को, तो बहुत अच्छा लगा इन चीज़ों को लेकर। थैंक यू बदर एक्सपो के इस तरह का उन्होंने हमें चांस दिया। इस काम के ज़रिए हम एक अच्छी चीज़ों को ले आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, ये बदर एक्सपो की तरफ से जो एग्जीबिशन लगी है बचत बाजार की, उसमें इनोवेटिव कंपनी की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हमारा ये जितने भी स्टॉक आप देख रहे हैं ये सारा प्रीमियम क्वालिटी लगा हुआ है, लोकल मार्केट में हमारा चल रहा है। इस पर हम टोटल जो अपने डिस्काउंट दे रहे हैं वो फ्लैट 20% दे रहे हैं मार्केट के। अगर मार्केट में एक चीज़ 240 रुपये की है तो हम वो 200 रुपये की ऑफर कर रहे हैं और ये मार्केट में जो प्राइस है ये 200 का है, हम 150 का यहाँ सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा एक इवेंट है और पिछले साल में लगाया था, इस साल भी हम लगा रहे हैं, तो अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट भी है, लोगों को जो फैसिलिटेट किया जा रहा है और हम भी उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना इनपुट डाल रहे हैं। मवेशी मंडी में इंतजामात का आगाज़ हो गया। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ लग चुके हैं। सामने आप देखते हैं तो होटल्स तामीर हो चुकी हैं। आप हर चीज़ यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए अवेलेबल है। अगर आप देखें तो ये तमाम के तमाम स्टॉल्स अभी खासे दिन बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद सजना शुरू हो गई है हमारी मवेशी मंडी। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको पानी के जूस, पानी, जो भी आपको चीज़ रिक्वायर होगी वो तमाम की तमाम आपको अवेलेबल होगी यहाँ पर। ITS brings together stakeholders across different defense industries. The exhibition offers a platform for G2G, B2G, B2B merchants, joint venture and investments in the energy sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussion on global challenges within the defense sector. The publication of ideas will be held from 1922 to November 2024 at Karachi Expo Center. तासीर अहमद मेरा नाम है, बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर सेल मार्केटिंग हूँ। ये हमारा बेसिकली स्टॉल है अलबशीर कस्टम फैब्रिकेशन का। ये अलबशीर ग्रुप है हमारा, जिसमें हमारे पास टोयोटा की डीलरशिप्स हैं, एमजी की डीलरशिप है, जैक फॉरलैंड ट्रक की डीलरशिप है, 2-3 हमारे पास चाइनीज़ वेरिएंट्स हैं और उसके अलावा हमारा कस्टमाइज फैब्रिकेशन का काम है। जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं जिनमें एम्बुलेंसेज, फायर ट्रक्स, रेस्क्यू व्हीकल्स, कार्गो ट्रक्स, लग्जरी व्हीकल्स, मोटर होम्स, ये जितनी किस्म की गाड़ियाँ हैं सब पे हम फैब्रिकेशन करते हैं। और इसके अलावा हम EN सर्टिफाइड भी हैं, CE सर्टिफिकेशन भी हमारे पास है, ISO सर्टिफिकेशन भी है हम। और इसके अलावा तमाम किस्म के जो ब्रांड्स हैं हमारे पास, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो व्हीकल सेल के अंदर भी हमारी जो है वो सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा कंप्लीट सोल्यूशन हम ऑन व्हील्स प्रोवाइड करते हैं। उसमें आपके पास कोई भी गाड़ी हो, वो टोयोटा हाईएस हो, वो आपके पास फायर ट्रक है या किसी भी किस्म की गाड़ी है, उस पर आपने कुछ भी बनवाना हो तो हम उस पर बना देते हैं। ये हमारा ओवरऑल है। हमने यहाँ पे एक्सपो पे आए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, हमने एक फायर बाइक लगाई हुई है, यहाँ पे रेस्क्यू बाइक है। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आ सकती वहाँ के ऊपर बाइक लेके जाते हैं। इसके अलावा पीछे एम्बुलेंस भी है और छोटी गाड़ी भी है, बड़ी गाड़ी है। इन सब पे हमने जो है वो यहाँ पर हमने स्टॉल में एग्जिबिट की हुई है लोगों को दिखाने के लिए। थैंक यू। मैं इंडस्ट्रीज़ का CEO आप लोग से मुखातिब हूँ
आज हमने यहाँ पर बदर एक्सपो की हिसाब से जो यहाँ पर एग्जीबिशन हुआ है, ठीक है, उसके हवाले से हमने डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह लॉन्च किए हैं यहाँ पर, और हम तकरीबन 15 to 20% तक अपनी प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। हमारी एग्जिस्टिंग जी के ब्रांड से जो प्रोडक्ट आ रही हैं हम उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं, और इसके अलावा हमने प्रिंगल्स का सब्स्टिट्यूट भी लॉन्च किया पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसको भी हम बहुत रिजनेबल रेट्स पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे ऑफर कर रहे हैं। इस तरह हमने और मज़ीद इम्पोर्ट्स के भी हमने सब्स्टिट्यूट यहाँ पर हमने नुमाइश भी रखे हैं, और लोग वो आ सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं और फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और मैं आखिर में बदर एक्सपो का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म अता किया, और मैं लोगों को भी चाहता हूँ कि इसको आके अवेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा है। थैंक यू। इस वक्त हम जा रहे हैं मवेशी मंडी, और सुपर हाईवे से जस्ट हमने लेफ़्ट टर्न लिया है। अगर आपने देखी होगी सब्ज़ी मंडी, और सब्ज़ी मंडी के बाद फ़ौरन एक बड़ा फेमस अल हबीब होटल आता है, उसके फ़ौरन बाद नॉर्दर्न बाईपास का रास्ता मुड़ रहा है जो रास्ता कोयटा को भी जाता है। हम जस्ट से मुड़े, और अगर हम वहाँ से मुड़ते हैं तो फिर आप गूगल मैप में ज़रूर देख सकेंगे 8 मिनट का रास्ता, तकरीबन 1 मिनट हम और चलें तो 9 मिनट का रास्ता है जहाँ से हम मुड़े हैं, नॉर्दर्न बाईपास है। और आप देख सकते हैं ये रोड जिस तरीके का है, बेहतरीन किस्म का रोड बना हुआ है, तमाम की तमाम सहूलतें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और जैसे ही आप नॉर्दर्न बाईपास से तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर चलेंगे, तकरीबन 7 किलोमीटर, तो ये नॉर्दर्न बाईपास का रोड आप देख रहे हैं। यहाँ सुपर हाईवे से हम लोग आए हैं यहाँ, और यहाँ आने के बाद लतीफ़ ग्रीन सिटी के नाम से आपको ये पीछे बोर्ड दिखाई देगा, ये इलाका लतीफ़ ग्रीन सिटी की जानिब जा रहा है। और यहाँ आप वैसे ही देख सकते हैं मवेशी मंडी, कैटल मंडी का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको तकरीबन 7-8 किलोमीटर सुपर हाईवे के बाद यहाँ दस्तयाब होगा। और उसके बाद आप लतीफ़ ग्रीन सिटी को जो रास्ता जा रहा है आप इसके लिए चले जाएंगे। आप जिस जानिब देखेंगे तो फिर आपको मेरे पीछे इधर देखेंगे तो आपको सिक्योरिटी खड़ी हुई दिखाई देगी, बेहतर अंदाज से काम हो रहा है। और अगर आप मेरे इस जानिब भी देखेंगे तो आपको प्रॉपर सिक्योरिटी खड़ी हुई दिखाई देगी। यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम किए गए ताकि आप बेहतर अंदाज आके सुन्नत रहीमी अदा कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में जहाँ माशी बल अपने अरूज पर है और लोग बेयारो मददगार इंतजाम में हैं, लेकिन एक और बात मुझे समझ नहीं आती कि हम या तो जानते बूझते या अनजाने में गरीबों को ये एहसास दिलाते हैं कि आप गरीब हैं। यानी आप ऐसी लाइनों लगे जहां गुर्बत का एहसास हो। ये मैं गवर्नमेंट साइड की बात कर रहा हूँ। एनजीओज तो जो अपना काम कर रही हैं उनको तो खराज तहसीन पेश करना चाहिए, लेकिन आज मैं अपने उन लोगों से कह रहा हूँ जो इस अंदाज से लोगों को रिलीफ देते हैं कि उसे गुर्बत का 100% यकीन हो जाए कि वो गरीब है। यानी हमें खुशी होती है कि हम बड़े बड़े बैनर लगाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि ये रिलीफ बाजार है, ये बचत बाजार है, यहाँ गरीबों के लिए डिस्काउंट है। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। हमें उनके इस्तेकाक का और उसको मजरू करने का सबसे बड़ा एहसास होना चाहिए। हम अगर किसी को रिलीफ दे भी हैं और वो जिसको दे रहे हैं वो इस मुल्क की वो अवाम है, इसकी वजह से हम इक़्तिदार में आते हैं। तो आज इक़्तिदार में आकर उनसे जिनसे वोट मांगते हैं या जिनसे हम ये तवक्का रखते हैं कि वो हमारे लिए खड़े होंगे, ये कैसा जुल्म है। हम गरीब को ये एहसास इस शिद्दत से दिलाते हैं कि तुम गरीब हो, तुम गुर्बत की आखिरी लाइन पर हो, और हम कोई बादशाह हैं जो तुम पर ये एहसान कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए हमने यूटिलिटी स्टोर्स खोल दिए हैं या हम तुम्हें
चंद कतारों में खड़ा करके चंद लोगों को कम रेट के ऊपर दे रहे हैं। या तो आप मुफ्त में लें तो आप समझे आपने कोई बड़ा एहसान किया है। लेकिन हम ये देखें कि आज ज़ुहैर नसीर ने जो बचत एक्सपो में ये इंतज़ाम और एहतमाम किया है, ये एक रिस्पेक्टफुल तरीका है जहाँ पर तमाम ही ब्रांड्स मौजूद हैं और इनका या मेरा काम ये है कि हम उसको ये मेक श्योर करें कि वहाँ रेट्स कम हैं और उस वजह ये नहीं है कि यहाँ लेने आने वाला कोई गरीब है। यहाँ हर वो शख्स मुझसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, मुझसे ज़्यादा इज्जत रखता है अपने घर में, अपने ख़ानदान में। तो हम बार ये तस्करा ना करें कि ये हमने गरीबों के लिए या कोई मिडिल क्लास के लिए कोई बहुत बड़ा एहसान करना। यहाँ भी जो हो रहा है वो अपना कारोबार हो रहा है और जो शख्स भी आता है वो खरीदता है। ये हमारा ज़रूर काम है कि महंगाई को कंट्रोल करें। असल लफ्ज़ ये होना चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन हालात में जहाँ माशी बहरान मौजूद हो और हम अपनी आवाम के लिए कुछ ना करें। देखिए, अमीर लोग जो इंडस्ट्री हैं वो क्या ख्वाहिश करते हैं, वो कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। हर मीटिंग की बात करते हैं, लेकिन कभी आपने ये सुना है कि हुकूमत ये कह रही हो कि इन गरीब बिजनेसमैनों के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर दिया? नहीं, वहां पे तो इंटरेस्ट रेट अपना हक समझ के कम करवाया जा रहा है और गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने बिजनेसमैनों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए रिलीफ किया है कि इंटरेस्ट रेट कम कर। लेकिन मैं समझता हूँ ये लफ्ज हदफ होना चाहिए पाकिस्तान की डिक्शनरी से कि हाँ, आवाम के लिए अगर भी रिलीफ हो तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि हमने मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए बड़ा कोई एहसान कर दिया है। तो ये एहसान नहीं है, ये हमें रिलीफ देना है। यही हुकूमतों का काम होता है कि आवाम को रिलीफ दिया है जो उनका हक है। जैसे एक बड़े सनतकार का इस मुल्क पे हक है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को कम कराए, बिजली के नर्ख कराए, गैस के नर्ख कम कराए। तो अगर गरीब को गरीब कह के बार बार उसकी तस्दीक की जा रही है, अगर मैं ये कहूँ गरीब को गरीब, हमारी हुकूमती पॉलिसी ने तो बनाया है। वरना आज एक आम आदमी जब मुझसे बाहर जाता है तो वो 2, 4, 5 साल में ही कैसे बन जाता है? क्योंकि वहाँ हुकूमतें उसको इज्जत देती हैं और उसको मौके फराहम करती हैं जो हमने नहीं दिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर आज भी हम अज़्म कर लें, और मैं ज़ुहैर नसीर साहब यहाँ खड़े हैं और ये मेरी बात की तायीद करेंगे, वरना ये ना कर दें, अगर हम प्राइवेट सेक्टर में भी ये अहद कर लें कि हम कराची एयरपोर्ट से लेकर और सेंट्रल में हैदरी तक अगले 5 सालों में 100 बिल्डिंग्स बनानी है, 100 मंजिला। क्यों नहीं बन सकती? आज अगर हम अहद कर लें तो 5 साल में ये 100 बिल्डिंगें बन सकती हैं और ये 100 बिल्डिंगें बनना शुरू होगी तो आपको हर किस्म की मुलाजमत अच्छे पैसों पे इस शहर में मैसर होगी। जब आप दुबई उतरते हैं तो आप ये 2000 बिल्डिंगें देखते हैं, आप मलेशिया उतरते हैं तो 2000 बिल्डिंगें हैं, दुबई में 2000 बिल्डिंगें, इस्तांबुल में 2000 बिल्डिंग। तो मेरे शहर में जो माशी हब है पाकिस्तान का, जहां पर अगर इमार के अंदर अपार्टमेंट लेने जाए तो 20 करोड़ रुपए का है, अगर ये 100 बिल्डिंगें बनेगी तो ये 2 करोड़ का मिलेगा। तो इस पर हमने काम करना है और मैं समझता हूं कि ये पॉसिबल है और इसको मैं गवर्नर इनिशिएटिव का नाम दूंगा। प्राइवेट सेक्टर के बिल्डर्स को मैं बुलाऊंगा, उनके साथ बातचीत करूंगा और उनको कहूंगा कि कम रेट के ऊपर लोगों को रिहायशी मंसूबे दें। जिस तरह यहाँ आज बचत एक्सपो है, इसी तरह कम रेट पर अगर ज्यादा बिल्डिंग्स बनेगी तो लोगों को रिहायश मिलेगी। हमने काम करना है, हमने इस शहर को, इस सूबे को देनी है और ये मुमकिन है। आज कोई चीज ऐसी नहीं है जो नामुमकिन हो। हम ज़रई मुल्क है, पूरा सिंध जो है हमारे पास जमीनें हैं। अगर हम किसानों को, कारों को सही बीज, सही फैसिलिटीज दें तो आपकी क्रॉप है वो बेहतरीन हो सकती है, 4 गुना हो सकती है, 5 गुना हो सकती है। तो यहाँ पर अब सिलसिला, जिस तरह हमने गवर्नमेंट हाउस में IT का इनिशिएटिव लिया, अल्लाह ताला ने कंप्लीट करवा दिया। आज 50,000 नौजवान बच्चे बच्चियां
गवर्नर हाउस में पढ़ रहे हैं, आप मीडिया गवाह हैं। गवर्नर हाउस के दरवाजे रानुल मुबारक के लिए आज खुले हुए आवाम के लिए मीडिया गवाह है। गवर्नर हाउस से राशन ड्राइव आज तक हो रही है, मीडिया गवाह है। आज मैं आपके सामने ये ऐलान कर रहा हूं कि इस शहर की डेवलपमेंट के लिए मैं काम करूंगा और इंशाअल्लाह ताला अगले 3 से 5 साल में हम 100 मंजिला 100 बिल्डिंग बनाएंगे। इसी तरह से जो इंडस्ट्री है जो कि खत्म होती जा रही है, आज मैं जिस इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठता हूं उसकी बहुत सारी मजबूरियां हैं। अगर उनको एड्रेस किया जाए तो क्या जरूरत है कि वो बांग्लादेश में जाके इंडस्ट्री बनाए, उसे क्या जरूरत है कि वो इस्तांबुल में जाए, तुर्किया में जाए। इसी शहर इसी सूबे में इंडस्ट्री भी लगेगी, इमारतें भी बनेंगी, ज़राअत पर भी काम होगा। और मोदी को भारत का वजीर आजम है, उसने अभी 3 दिन पहले किया है कि मुझे दोबारा वोट दो, क्योंकि मैंने 5 साल के इक़्तिदार में पाकिस्तान को भीख मांगने वाला मुल्क बना दिया है। वो अपनी तकरीर में कह रहा है कि आज वो IMF के सामने हाथ फैला खड़ा है। तो हमें एक गैरतमंद कौम, एक पाकिस्तानी होने के नाते समेत सबको यह करना चाहिए कि मोदी के इस बयानिए का जवाब पाकिस्तान में तय करके देना है। ज़बानी बातों से जमा खर्च कुछ नहीं होगा। आज मैं यहाँ आने पहले कर्नल शहीद सैयद अली के घर उनके वालिद साहब से मिला, उनका जज्बा मैंने देखा। वो इस बात पे खुश है कि मेरे बेटे ने लोगों की जान बचाते हुए जान नजराना दिया। उसके बाद असीर सुमरों के पास दारुल सेहत हॉस्पिटल गया। वो फख्रे सिंध है, फख्रे पाकिस्तान है। हमारे पास हर किस्म का टैलेंट मौजूद है। हमारे पास जफर अब्बास हैं, हमारे पास सैलानी जैसे बशीर फारूकी साहब हैं। इन सबको बिठाना होगा, स्टेक होल्डर के साथ मैं बैठूंगा। कोई वजह नहीं है कि मेरा सूबा और मेरा मुल्क तरक्की ना कर सके। सिंध में कुदरती ज़खायर से माल मौजूद है। और एक और मैं आज ऐलान करना चाहूँ, मुझे बड़ा तनकीद की जाती है, जफर भाई भी खड़े हैं, कहते हैं जी आप जिन्हें सारे काम करते हैं इसलिए लोग आपके पीछे पड़े हैं कि इनको हटा दें। आपके काम आपके सामने आके खड़े हो गए। तो जफर भाई, मैं आपके सामने ये ऐलान कर रहा हूँ कि अभी तो सिर्फ कराची के गवर्नर हाउस में आई प्रोग्राम चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2 महीनों के अंदर ये थर में भी होगा, सक्खर में भी होगा, ये नवाबशाह में भी, लाड़काना में भी होगा और हैदराबाद में भी होगा। इंशाअल्लाह ताला IT की तमाम क्लासेस इन तमाम शहरों के अंदर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए। इस तरह इस 50,000 बच्चों को हम जो $8,000 का कोर्स करवा रहे हैं फी बचा, और 50,000 ऑन साइट पढ़ रहा है, 4.5 लाख ऑनलाइन पढ़ रहा है। सिर्फ यही कहूंगा कि रोक लो, आवाम के लिए दिन और रात खड़ा रहूंगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़ात पे मुझे उम्मीद है कि हम IT से ही इसमें सिंध को इस पाकिस्तान में IT का सूबा बनाएंगे। ये शहर कराची IT सिटी बनेगा और यहाँ हर लिखा नौजवान बच्ची IT की कोशिश करेगा और इस पाकिस्तान माशी बहरान से निकाल। और मैं उन सब के साथ शाना बजाना खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा है। मैं ऐसा JDC लैब में पैथोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ। मेरे साथ वर्दा ली हैं, ये मेरे साथ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हैं। हम लोग यहाँ पे आज हेल्थ एक्सपो में आए हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था बदर वालों की तरफ से। बहुत अच्छा, मतलब डिफरेंट कैटेगरी हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे हम गैदर हुए हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये रहा है हम लोगों के लिए। मैं अपनी लैब के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। हम लोगों की लैब JDC फ्री डायग्नोस्टिक लैब है, जहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 250 से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त हमारी कैपेसिटी है मोर देन 1 लाख टेस्ट करने की पर डे। और हमारे पास जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे कि जफर भाई कहते हैं कि जिसका खून लाल है वो हमारे पास आ सकता है टेस्ट करवाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मवेशी मंडी में इंतजामात का आगाज़ हो गया। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ लग चुके हैं। सामने आप देखते हैं तो होटल्स तामीर हो चुकी हैं। हर चीज़ यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए अवेलेबल है। अगर आप देखें तो ये तमाम के तमाम स्टॉल्स अभी खासे दिन बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद सजना शुरू हो गई है हमारी मवेशी मंडी। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको पानी के जूस, पानी, जो भी आपको चीज़ रिक्वायर होगी वो तमाम की तमाम आपको अवेलेबल होगी यहाँ पर।
together stakeholders across diverse defense industry. The food exhibition is a platform for B2G, B2G, and 2B actions, joint ventures, investments in the production sector. A straight will also have study practice global challenges within the defense sector. The 12th edition of ID Book from 1952 November 2024 at Karachi Expo Center. पूरे मुल्क से यहाँ मवेशी मंडी 2024 जो कराची के एक ज़बरदस्त किस्म के त्यौहार की तरह ही मनाई जाती है और हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, तो जानवर बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गए। आपकी पसंद के हर तरह के जानवर जो है वो यहाँ पर दस्तयाब होंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम के तमाम जानवर हैं ये मुख्तलिफ जगहों से आए और लोग यहाँ पहुँच गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मद, आप कहाँ से आए? मैं कनकोट से आया हूँ। कनकोट से आए, तो कितने जानवर लेकर आए? 32 जानवर करके आया हूँ। और वैसे कितने आ चुके हैं अब तक जानवर? अल्हम्दुलिल्लाह सब फर्स्ट गाड़ी जो है दोनों मेरे उतरे हैं, उसके बाद जो है काफ़ी जानवर आ चुके हैं। नेक मोहम्मद भाई ने पहली गाड़ी उतारी है मवेशी मंडी में, तो नेक काम हुआ है, तो फिर देखे ना आगे इसका रास्ते बनेंगे। नेक मोहम्मद भाई गुड लक जो आए खरीदारी करने के लिए। और जो फीस वगैरह रखी गई है सब बेहतरीन है, इंतजाम के लिए जो की गए खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक ठाक हैं और सिक्योरिटी हर चीज़ जो तैनात किया गया, सब कुछ जो हम पहले ही उतरे हैं, फर्स्ट गाड़ी हमारे उतरे हैं तो इन्होंने सिक्योरिटी दे दिया, रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दिया, उसके अलावा जो बाकी दूसरे सिक्योरिटी निज़ाम थे वो भी ठीक ठाक थे, जो उन्होंने दे दिया सिक्योरिटी हर चीज़। चले, सिक्योरिटी का मकसद है कि तमाम व्यापारी जो यहाँ पर कारोबार करने के लिए आए, आपके लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का मौका फराहम करने के लिए आए, वो सब लोग बहुत मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि सिक्योरिटी से लेके तमाम इंतजाम बहुत ज़बरदस्त है। नेक मोहम्मद भाई थैंक यू वेरी मच और गुड लक, अल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। सारे आप देख सकते हैं सच चुकी है यहाँ पर मवेशी मंडी। मैंने जैसे कहा ना कि कनकोट से नेक मोहम्मद साहब आए थे और बड़ी तादाद में हम देखें ना तो यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचना हो गए और स्टॉल्स भी यहाँ पे बन गए, पान के केबिन खुल चुके हैं, हर जगह पे आप देखें तो रौनक लौट आई है इस वक्त मंडी में। और ये देखें ये क्या ज़बरदस्त किस्म के जानवर यहाँ पर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद जी। शहजाद भाई कहाँ से आए आप? शेखुपुरा से। शेखुपुरा से, तो ये अंदाज़ा करें पंजाब से जानवर पहुँचे हैं, वहाँ पे कनकोट देखा और यहाँ पे शेखुपुरा से, कैसा सब अरेंजमेंट वगैरह खुश बेहतरीन मज़ा आ रहा है यहाँ पे? बस मज़ा आ रहा है, हर साल उन्हें 16-17 सौ आ रहे हैं। अच्छा हर साल आते हैं, तो सब बेहतरीन है। कितने जानवर लेकर आए? अच्छी जानवर 36 लेके हैं। 36 जानवर लेकर आए, सारे ऐसे ही तगड़े नजर आ रहे हैं? सारे इधर ऐसा तगड़े ना, वो सारे तोड़ आगे अपने जानवर। अच्छा सारे भी आपके? आइए तो हमसे बात करते हुए चलते हैं। आपको आइए हमारे साथ बात करें थोड़ा, ये कैसा जो अरेंजमेंट्स आपके लिए किए गए हैं, आप व्यापारी यहाँ पर आए तो ये ठीक अरेंजमेंट है? मुतमईन है आप? सिक्योरिटी से लेके सारे इंतजाम तामन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी तामन कर रही है, फौजी भाई इतने होंगे ने, पानी पुनी सारा देख जाते हैं, तो बहुत तामन कर रहे हैं। अच्छा बहुत ज़्यादा सारे लोग आपके आके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो सब आके ताबन, पानी से लेके कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है? कोई सानू परेशानी नहीं किसी काम की है। आज सानू 12-13 दिन हो गए ना आए नू, बाकी ये हर साल ही नया, किसी साल भी ना परेशानी नहीं होने देती। अच्छा किसी साल भी परेशानी नहीं हुई है, तो ये आप देख सकते हैं बच्चे ने अपने अगले साल दे, ये खीरे बच्चे ने सारे। अच्छा हाँ जी 1 साल के बच्चे? हाँ ये 10 महीने दे 11 महीने दे अगले साल वाली पढ़ाई पसंद है। क्या आपने तैयार किए हैं यार 10 महीने में, क्या खिलाते हैं और आप भी क्या खाते हैं यार? खा रहे हैं आगे, देखो आगे वही खा रहे हैं। तो आप भी माशाल्लाह जो है वो जबरदस्त पहलवान है। पंजाबी जवान आ कोई कराची वाले नहीं, पंजाबी ये जरा देखें अंदाज जरा दिखाएं तो सही ना यार, ये जो काम हुआ हुआ है यहाँ पे, आप जानवर देख सकते हैं किस। आइए जरा तो इधर आए आप मेरे साथ, इधर आए ना, आपके साथ बात होगी। ये जरा ये क्या प्रोडक्ट है आपकी? वैसे पहलवानी है। पहलवान है, बिल्कुल सही बात है। पूरी मंडी में घूमे हैं, ऐसा है बछड़ा कहीं? नहीं ये बछड़ा तो भाई कौन सी नस्ल कौन सी है ये साहिवाल क्रॉस है। साहिवाल क्रॉस? भाई ये एक ही है मेरे ख्याल इस साइज की। हाँ एक ही है, कुछ बछड़ा देखो आपको पसंद लगा? अरे बहुत ही जबरदस्त किस्म का बछड़ा है भाई, बहुत ही जो है ना अपना मजा आया। और हम लोगों को भी बता रहे हैं, पंजाब के शेर आपने देखे कि वाकई में शेर लेकर आए हुए हैं ये लोग ना। पंजाब के आप ही शेर ने, जरा देखें, जरा अंदाज अपना बताएं। आप ही शेर ने देखा पंजाब के शेर, दोबारा बोलेंगे आप? पंजाब के शेर हैं, जानवर भी शेर हैं, हम भी शेर हैं। शेर आ चुके हैं जी मैदान में। ये आप देख सकते हैं कि हमारी मंडी जो है वो मवेशी मंडी सज चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पूरे मुल्क यानी कि KPK से भी लोग आए हुए हैं और हर जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर।
कैसा अरेंजमेंट्स वगैरह, खुश हैं, मुतमईन है, मज़ा आ रहा है? बेहतरीन माहौल है मंडी का माशाल्लाह, पहले से भी बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। फ्लाइट भी वीआईपी हैं, रास्ते भी खुले हैं, पानी का जो इंतज़ाम है वो भी बेहतरीन है। आप यानी कि बहुत मुतमईन है, बहुत खुश हैं? बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही। बिल्कुल, असल चीज़ है कि ये तमाम व्यापारी जो पूरे मुल्क से आते हैं, इनका मुतमईन होना, इनका खुश होना, और आपने जिसको सुना होगा वो तमाम के तमाम लोग ख़ास मुतमईन दिखाई दिए हैं। वैसे मैं अगर थोड़ी सी आपको इस मंडी की डिटेल भी बता दूं तो उसके मुताबिक 2024 में 900 से 1000 एकड़ पर ये मंडी कायम हुई है। अगर आप देखें तो ये पूरा रकबा, पीछे भी अगर आप दिखाएंगे तो दूर दूर तक 1000 एकड़ पर कायम की गई है। छोटी जगह नहीं है ये। उसके साथ साथ इसमें मजमूई तौर पर 20 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, और उन ब्लॉक्स की मैं बात कर लेता हूं तो उसमें वीवीआईपी ब्लॉक भी है, वीआईपी ब्लॉक भी है और नॉर्मल ब्लॉक भी है। तो तमाम के तमाम ब्लॉक आप लोगों के लिए, जितने भी मवेशी मंडी में जितने व्यापारी आ रहे हैं, सारे मुल्क से आ रहे हैं और आके अपना कारोबार करने के लिए पहुँचे, तो 3 डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, जिसमें It's 12 a.m. Welcome back from the DHA Sports Club, Moin Khan Cricket Academy, Karachi. The second match of tonight, DA Dabangs are taking on Clifton Popular. And news from Century is that Clifton Populars have won the toss and they have opted to bowl first. A little surprisingly for me at least, but we'll see what they have to offer. It's going to be another very good game of cricket. Looks as if it's going to be Farhad Abdali, the man on your screen, will be starting the proceedings. He's a left-arm quickie. And taking strike is going to be KC, Khurram Chakwal. Here we go. And there you go. In the slot, and welcome to the bowling crease. And sails over eventually for the maximum. This is Casey for you. As another one, this time he goes over cover. And away as well. Couple sixes to stop proceedings. Entertainment already, Zishan. And again, flick of the wrist and away she goes. That's another one. 3 of 3. He's non-stoppable at the moment. There you go. It's a no ball. Aldi Soto, and he goes all the way. 4 of 4. Well, this is an onslaught, and so far the bowling side have no answer to that. 4 maximums to start off the campaign, 4 maximums to start the innings. Gotta got that Yorker right. It's not going to help. The length deliveries are not going to help his cause. It's a couple of bounces and over the boundary for 4 through mid-off. He goes big. This time it's Umar. And it's gone all the way. That has to be the biggest of the night so far. It's 37, would you believe, after first over. And there you go. Have a look at that for a shot. It's gone for 4, not gone all the way, but it was an amazing stroke of cricket. It was slower in pace and it went high in the air. Now somebody has to get underneath it. Someone lining underneath it makes a good reverse cup. And that's the end of Khurram Chakwal. Will be much relieved, Clifton, to see the back of this guy. At the moment, Umar is going to be on strike. And Umar goes big this time. It's very high in the air. And it's safely gone all the way, I reckon. Yes, it is. Another maximum. Full toss, put away on the leg side. It's going to be a flat. No, one bounce into the fence. Is it? The fingers go up. Well, the persistence with that line and angle eventually helping the bowler's cause. 63 for 2. Shot. He goes big, and this is what Waqas is known for. It went a country mile over mid-off for a half a dozen. Come on, umpire, put up your both hands. He goes big, he goes long, and it's a Waqas airliner once again, but lands in the hands. Unbelievably caught. They're losing wickets in clumps as well. They're hitting sixes and losing wickets, so it's a mix-up. End of the third over, it's 72 for 3. Another one, even bigger and better, and it's gone many a miles. Balls are traveling and visiting the boundary ropes regularly.
Oh, Yasir Mushtaq has hit it in the air, and that's exactly you are talking about. And finally, bowler got it right, and Yasir Mushtaq gifted a catch at the long on boundary, and fourth wicket falls. Oh, he caught that away and cut that away magnificently. It has gone all the way. Siptan, umpire, raised his arms and signaled it a half a dozen. Edged it. Going to be out. It is. Fielder was there at the flying slip, one we call it, who took that one gladly, and another wicket falls. Facing Irfan, and he straight away launched that one out of the park. Another six. What a way to start his innings. He hooked that one away onto the onside. Fielder was down at the long leg boundary, and he caught that one beautifully. He had to run, had to cover a bit of territory to get under the ball, which he did pretty well, and at the end caught that one very, very nicely. 1 or 2 for 6 now. And straight away, he cut that one over wide mid-on for a 6. It's a lot of sixes. In fact, too many sixes. That was a very good ball. And it's going to be a run out. It's going to be a run out. Yes, it is. 114 for 7. Single on the last ball of the innings, and it called leg byes by the umpire. So they have finished their innings, I reckon, at 120 for 7. It's a very good score in 6 overs. The umpire calls it play. Fast bowler is going to start the proceeding from the gymnasium end. He's going to come around the wicket first up. Hit away on the offside into the gap. That might go all the way for 4. Yes, it does. An excellent start as well from Clifton Popular. First ball has been dispatched for a boundary on the offside. This time he's taking the aerial load. Is that going to be the first maximum of the innings? You betcha it is. A boundary and now a maximum. And even Clifton Warriors are up and running. Short pitch delivery. That has been smoked on the leg side. That is going to go into the stands. What a way to get up the mark with that too from the captain. Hitting it up in the air. It's into the gap. One bounce into the fence. Or is it a maximum? Yes, it has been signaled as a boundary. So once again, Fahad starting the over with a boundary on the offside. A big shot attempted. Down the ground it goes, and it goes over the boundary ropes as well. Once again, a 4 followed by a maximum coming from the batter Fahad. Pick up shot on the leg side. That's going to travel to Journey as well. All of the batters from both the teams are showing no mercy whatsoever to the ball. Shot of the day to me. Against Fahad. He goes straight. He goes long. And he goes for yet another maximum. That has been the story in this over. It's the third of Zohaib. 26 of the over. Another swung away on the leg side. It's into the gap. That's going to go all the way for 4 as well. So that's the over they were looking for. 3 maximums and 3 boundaries. Make that 30 coming from that over of Zohaib. So it's going to be Awais Salim starting the third over. 4 fielders outside the ring. Starts off with a short delivery. Put away on the offside. Beautiful batting once again. This time coming from the batter, Fasad. Now he decides to go big as well. And that's going to go way over the stadium. And the crowd really enjoying it. Very good striker of the ball. He goes big this time. Doesn't get the elevation, but certainly in the upper boundary. Down to mid-wicket. First boundary in this over. He goes big. And he goes massive. And eventually comes down, but out of the ground. What a shot to start the proceedings. Welcome to the bowling crease. I'm very much excited about it. और आप देख रही हैं पीछे के कराची के बाल हो गए हैं और everybody is enjoying this match और खास तौर पर देखिए क्लिफ्टन पॉपुलर इस वक्त खेल रहा है। ओके, यहाँ पे हम आपको बता दें कि क्लिफ्टन पॉपुलर्स की एक विकेट गिर गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। But this is a game, you know. इसमें गेम में ऐसा होता है।
But if you bowl that length, then you're going to go through, no matter it's meat of the bat or not, and goes all the way with all the pace of the bowler. He picks that one away, but straight to the throat of deep square leg fielder. Another wicket goes down. It's Haq Nawaz, who the latest exit. Second wicket goes down now. He goes big, and this is what we were expecting of Umar Bajwa. He's a big striker of the ball, and that is the evidence. He chips one in the air, and he's been caught brilliantly. Very good catch there by Khurram Chakwal at long on boundary. So Bajwa goes for 6 after 2 deliveries faced. He goes big this time, does Tahir, and he goes long as well. Over square leg for a big 6. There he goes. And I wonder if that is a wicket. There you go. Your prediction comes true now. Yeah, they've managed 113 runs of their quota of 6 overs and lost 4 wickets, which means that they will have to trail by 7 runs. Welcome back to the DHA Moin Khan Academy, where the KTPL Season 3 is being played. And the third innings of this match about to be get underway. DHA Dabangs has the lead of 8 runs. And for what do you make of this 8 runs lead? But lead is a lead. And straight away, he had a wild swing at that one. But I think he changed his pace a bit. He bowled a slower one back of the hand. Left arm from round the wicket, and Vicky has got that away. Over mid-wicket all the way for 6. Tremendous shot. Wasn't a long hit, but half a dozen. This one is picked away, and picked away for a massive 6. 6s are being hit in every part of the ground again. He's a real class act, no doubt about that. And he goes again, and goes good enough for yet another 6. This one is going, and gone away for 6. That was a some hit. And he goes again. But fielder is there at the deep backward square leg, and he caught that one beautifully. Chota Vicky fend for the big hit again. He has to walk back. Big wicket, 15 to his name, 34 for 1 on the board. Meanwhile, Hassan is going to continue with his second, the left arm seamer. Picked up. Is it long enough? It's sailing over the boundary ropes. Yes, it is. Perfect start to the over this from Khurram. Another slower one. This time he decides to go straight over long over, and see you later, says it to the ball. Back-to-back 6s for Khurram. And now they're up and running once again, DHA Dabangs. 34 over 3 was not threatening for Clifton. Once again goes straight, goes long for yet another 6. It's the hat-trick of maximums now. This time we're on. Length. He goes flat. Is it another one? Yes, it is. Oh, someone please take it. Someone in the crowd, please take it. He's looking to make a grand of comeback. He tries to go big. He has sliced it up in the air. Is it going to be taken? It has been taken. Second wicket goes down. They are 62 for 2 at the moment. And he decides to go straight. There is a fielder down there at long on, but the ball is going to go over his head. A bit of a counter punch now from Arsalan. He tries to go big over long off, and he gets plenty on it. Another 6 from Arsalan's bat. The lead in the first innings of about 13 runs. It's in the air and it's been caught. So Khurram Chakwal has to take a long walk. So Khurram Chakwal will be walking on his way back to the pavilion. 42 of just 15 tonight for the big star. Once again, perfect execution of that yoga. It's going to be just one. In fact, they're looking to come back for the second run-out opportunity at the bowlers, and it's a suicidal run-out. There was no way he could have come back for the second run on that occasion. That just did not even cross the inner ring.
I wonder what the chemistry was going on between both of the batters. Full toss, picked away on the leg side, and a much needed maximum for DHA Dabangs. Missed out his length this time by just a few inches. Felt like he was almost waiting for it, Arsalan. He goes for another one. Full extension of the arm. That's the shot of the night. Over long gone for a gigantic 6. Forget about the distance. How was about that height? The innings of DHA Dabangs is over. 105 is the equation. Clifton Popular, they have to get 105. They did well in the second innings. First ball of the final innings. For toss outside the off stump and plug the gap and could be a boundary. Chases on and finally ball has got to the fence. The boundary to start the over. That should have been stopped. It wasn't struck very hard. Umar again. Smashed away over long off. He has cleared the boundary quite comfortably here. It's not a long strike, but he smashed it well enough to pick up a maximum. He goes leg side. It's high in there. Will this be taken? It's a tough one. Who wants it? And it's taken. What a wicket that is. It's a huge one. Fahad has to walk back. It's a leading edge and well judged catch indeed. It was a tough one. Picked up an important wicket of Fahad. Boundary and 6 followed by a wicket. Umar again. It's high in the air. Where it's going to land? Is there a chance or is it maximum? It's got him. 2 wickets and 2 balls. Would you believe it? Dream start for DHA Dabangs. It's 12 for 2 on the board and they are extremely happy. Hat-trick ball. Pulled away. Will this be taken or it goes for 4? Nicely struck. Importantly, it's a well-placed shot. He goes leg side as a Shah and it's got the distance. He's just cleared the hoardings and he starts off with the maximum. Beautifully played. Outside edge and gone. No doubt whatsoever. Massive deflection. Finger goes up as well. And Tahir Pindi just came and went. He knows it. He has to walk back. He went for after the bowler. He wanted to smash it over long off. Now he's walking back to the pavilion. He goes big. He goes high. And certainly has cleared the boundary by a long, long way. That has cleared the stadium. What a start that is. Beautifully picked shot by Haq Nawaz. What a start. Went for the big shot. And it took on in with absolute power and class. No doubt whatsoever. Up goes the arms of umpire. He goes leg side. It's high. Is it long? Certainly. It's just cleared the boundary. It should be maximum. He was right at the edge of the boundary. It was top edge. What a good strike. What a good strike. It has sailed over the rope comfortably. Haq Nawaz is on fire. He gets a full toss and he hits it hard, hits it long, and it's going all the way. Oh, not all the way, it's in the lap. Oh my word, it's Guram Chakwal again. You just can't keep him out of the action. And Asad Shah walking back after 12. It's 56 for 4. Full toss, picked up into the stand. That at least 6 rows back. He goes for another one. Once again, it's high up in the air. And that's way over the boundary ropes as well. Here we go. And there you go. If you pull a little short, you're going to go the journey. It's a 1 bounce 4, but they'll take it. Length, as I talk about length, he bowled 2 full, and he goes the journey again. That's another maximum, and now they're getting closer to the target. Now it's a different story altogether. Shot. Starts with a good delivery, and he's been thumped down the ground. There is a little bit of fumble, and I think he's signaling that ball has hit the skirting. It's gone for 4. Needs to bowl the perfect of the ball. He bowled full toss. It's up in the air. Third man fielder drops it. Goodness gracious me, that should have been taken. Ah, you gotta be kidding me! It's just the first game. It's a full toss. He has hit that on the leg side. It's gonna be taken. Mustafa has done it. He has provided an all-important breakthrough of Haq Nawaz, who is gonna perish after scoring 24.
93 for 5 with just one ball remaining. Yeah, even the delivery in which he got out, Daniel Shirazi is the new batter in. This from the captain. It's short. It missed everything. It's going to be a dot ball, and the defending champions have done it. They have defended this total against Clifton Popular and have managed to win this game by 11 runs. While the defending champions registering their first victory of this season 3 in this KTPL. Here's the match summary. The first innings, the bank made 121, courtesy 37 runs by Akram and 3 wickets taken by Arfan. Clifton in reply made just 113. Fahad once again another half century for him. Mustafa was pick of the bowlers with 3 wickets, and in the second innings the Bun made just 96 runs, whereas Clifton Populars were 11 runs short. Good evening to all of you across the globe, wherever you are, and it's day 3 of KTPL, day 2 season 3, and today's first match is going to be between Johor Jawans and Gulshan Goers. Earlier on, the news from the centre was that the captain Syed Nasser of Johor Jawans has won toss and has opted to bat first without any hesitation. So here we go. First ball of the night. Oh, it was a full toss, but way away from the batter. We'll have to re-bowl as it's wide, way outside the off stump. There is a lot of difference in tape ball and cricket ball, but this time it's in the slot and thrashed away over mid-off for a boundary. First boundary of the night, and it's Nasser, the captain. And there you go! We are here for this stuff! It's going all the way to the boundary. It's a beautifully struck. Not in time out of the middle. Was there a naked? The umpire figure is raised. So the first wicket goes down for Jawans, whom are gone for 3. 16 for 1 at the moment. So Basit lefty is the new coming batter at number 3. And he has to face that delivery, which he sends into the stands. Wow! Well, he announces his arrival at the crease with that big blow over mid-wicket. He means business tonight, his best Basit lefty. Full toss, gets the treatment, 6. That's big one, that's even bigger. He's not going to stop one bit. He goes big and he goes high, somebody getting underneath it. And somebody takes a brilliant catch. Celebrations from the bowler. And it's Basit lefty who leaves the arena at the score of 12 with a strike rate of 200. And he has got him. Bowler was generating a lot of pace. Batsman did swing his bat at that one, missed the line of the ball, and it did hit the stumps. And so Nasser is gone, and gone for after making 11. And he has caught that away. And it bounced away to the mid-wicket boundary for 4. Fielder, I think, should have stopped that one, but he made a mess of that one. And there you see, he lapped it away over square leg, and it's gone all the way for 6. There was authority there in that stroke. With great smoothness, and he goes again. Better and bigger. It lands outside the boundary for another 6. Oh, that can worry them. That can worry them. Way down the leg side, rest away, 5 or 6 wides. That was a bad ball. This will go. This will go. Blazed away through the offside for 4. That's a very good shot. They take 1. It's a leg by.
75-3 is what they have got in 6 overs. Saddam Shah coming back after injury. He's been the top bowler in 2019 and 2020. Here he comes. Straight away, that has been hit down the ground. Although there was a fielder down there, it long gone, so they'll still just get a single. Once again, picked up in the air. There is a fielder at deep mid-wicket, but the ball is going to go way past him. A boundary for the left-hander. He goes again on the leg side. Fielder at square leg is after the ball. Ball might just trickle past the boundary ropes. So back-to-back boundaries to Bahadur. So the chase is definitely on. Starts off with a short delivery. Taimur Mirza decides to go big and he hits it way over the boundary ropes on the leg side. First maximum of the innings. Well. It's TM in the house. Fuller. He decides to go straight and he goes long, does Taimur Mirza. Second maximum to TM in this over. Don't search for the Yorker, especially when you don't have enough pace. Short. He goes big again. This time long on. That's a magnificent hit from TM. Back-to-back maximums. He goes big. He goes straight. It's up in the air. Mid-off was inside. And that's going to go way over the boundary ropes. There you see the ball just landing from the orbit. Perfect start to the over. A 6 of the very first ball. Fuller. This time he goes over extra cover. It's into the gap. That's going to run away for 4 as well. Overcompensating time. Previous one was wide down the leg side. This time it was too wide outside the off stump. Rashid now bowling to TM. Going to come over the wicket. Once again, it's the leg ball, and that's going to travel into the stands. That went good 4 rows back. Down the leg side, clipped away. One bounce into the fence. There is no stopping him tonight, that's for sure. 50 also comes up for Gulshan Gohars. Watch it coming over the wicket. Starts off with a full toss, picked away on the leg side. It's into the gap, one bounce and into the fence. Horrible delivery. In fact, it has been signaled as a no ball as well by the on-field umpire. आई थिंक इन्होंने इस तरह से टीम को मैनेज किया है. अनलकीली लास्ट टाइम जो है वो हम फाइनल तक नहीं पहुंच सके थे, लेकिन इस दफ़ा आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारी परफॉर्मेंस ग्राउंड के अंदर नज़र आएगी आपको. Full toss put away and everybody's a spectator. That has been smashed way back over the boundary, and once again umpire raised his arms. So slow one, well picked up. And once again, same result for Taimur Mirza. He's just 1 away from an opening half century. And 6 to end the over, 82 for none after 4. Smashed hard, it's high, it's handsome, has gone way back. See you later. What a strike that is. And 50 is up for Taimur Mirza, now standing half century. And he just consumed 15 balls to get to this landmark. He goes leg side this time. Once again, he doesn't need to run. There is sitting from Taimur Mirza way back into the stands. Taimur Mirza, he's into the 60s now. Once again, pitched up. Thank you very much from Taimur Mirza. Hat-trick of 6s. Goodness me, this is real carnage. Bahadur lefty, beautifully played. Towards the side. Sublime shot from Bahadur lefty. This right and left in combination. Once again, he goes high. Is it long enough? Is it long enough? No, it's not. It's well taken a boundary. 2 fielders was converging and there was a certain chance, and the fielder judged it well. He kept his cool, and finally an opening partnership has come to a close. Bahadur lefty has to walk back. Final ball of the innings. And he finishes up with a maximum, yes. One of the biggest 6s of the innings. Of course, the arms. And Taimur Mirza finished his innings with 75. Blistering performance from a superstar.
Welcome back to the DHA Sports Club Moin Khan Academy, where KTPL Season 3 is taking place. And I think Gulshan Gaur have done a very good job as well by taking the lead of 43 runs. First ball of the third innings of this match is coming up. A left armer streaming into us. And first one has been smashed away. And batsman knows that it will go all the way for a maximum. मिलते जुलते नाम है, लेकिन जो मैं अभी धरती देख रहा हूँ वो गौहर की है। तो जवान्स की तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनको 47 का एक्स्ट्रा हमने टारगेट दिया है। तो पहले तो उनको 47 पूरे करने दोबारा मैच में आने के लिए, और यकीनन जब 47 पूरे करेंगे तब इनके टारगेट का पता लगेगा। In the air and taken at back foot point quite easily, and the first wicket falls. So the opening stand has been broken. George Javans and in the spot border. They are now at 25 for 1, with Shahraz has got back after scoring 5. He edged that one, and another beautiful catch is taken. That's a very, very good catch indeed from the fielder at short third. So the captain is walking back to the pavilion without even troubling the scorers, and George Javans are in all sort of trouble. They are 25 now for 2. Umar is taking strike, and he's going to bowl the hat-trick ball. He streams in, crosses the umpire, and it is in the air. Wicketkeeper is trying to get under. Oh, he made a mess of that one. I think he misjudged that one. Hat-trick could have been taken. Thank you so much, Rana, and there you go. It's a 6 of the left-hander's bat. What a time to jump into the commentary box. With me is Kainat. As we can see, a flat hit this time through mid-off, whitish mid-off. It goes all the way after a couple bounces. They need more of these. And keeping your shape just like that. That one has been smashed out of the screws. It was 6 written all over it when left the bat. What a cracking sound of the willow. Oh, he goes again this time. Not exactly very intended, but this is what it happens in tape ball. Not out of the screws, but he gets desired result. Maximum to say the least. Yeah, he's getting under. Full tosses are not going to help the bowler's cause. That one went into the night, Scott. We have lost a ball. Please get the ball back. And have a look at that shot. That is shot of the night so far, in my opinion. Mere flick of the wrist, and away she goes for a half dozen. That's gone. That's out of here. Please get the ball back. Well, it blinded me. In fact, when the ball was in the air, I thought it was out of here, but it was in the lap of the fielder. Comedy of errors in the commentating bench, I would say. Anyways, there was an action, so it was a bowler's victory. Falak Bashir goes through the extra cover. One bounce into the boundary. That's high. Where is it going? It's going in the square leg fielder's hands. So Falak Bashir has to take a long walk back to the change room as they lose their 4th wicket. All right, it's going to be Arib, the new coming batter, who is going to face. Look at that, not catching in the middle of the bat. No timing behind that. They will look for 2 here. Have to hurry, but they get it comfortably in the end. A batter throw could have got the interest a little too high, but they managed to pick up the couple to end the innings. So 6 overs now have been officially bowled. So they have managed 92 for 4 in their quota of 6 overs. As we see Taimur Mirza with Bahadur Ali making their way to the center. They've got 50 runs to defend, and it's not going to be that easy for the bowlers. I still believe the first ball has been hit away on the leg side by Taimur Mirza, and that has gone way into the stand. So an excellent start once again by Taimur, starting exactly from where he left in the first innings. He had a perfect seat in the house.
He decides to go straight. He goes long and he goes over long on as well. So both the openers opening their account with a maximum each. What a glorious shot. First ball and smashed it on the ground. He picked the ball very well. A slower one once again decides to go big. This time the long on fielder is going to take it. So an anti-climax this to the innings of Bahadur lefty. A 6 and a wicket. So wicket falls. So they need more wickets like that to keep the batting side away from the victory. 6 to his name, 13 for 1 on the board. There's one ball still to go. Jahangir running up. It's a length delivery. Blazed over long off. That's a magnificent hit by Taimur Mirza. Another 6, this time to end the over with. Low full toss. He has decided to go big and he has got plenty on it as well. This time 6 coming from the bat of Essen. Real consolation, real relief for Essen. They just try to play straight or towards the onside. Well played, that's gonna be 6. Beautifully played, no trouble. Short delivery and punished once again by Taimur Mirza. 6 more to his name. And now they need just 15. He decides to go big on the offside. There is no fielder out there. In fact, if there would have been even, it would have still sailed over his head. Back-to-back 6s to Taimur. Has he timed it well enough? Has he timed it well enough? Not quite. 1 bounce, 2 bounces into the fence for 4. It's a boundary to Essen. And now they're not far away from the victory. Once again, it's lift up, it's high up in the air. Who's trying to get underneath that? Is it going to be taken? It has been taken. A really good catch indeed by the fielder at deep mid wicket to get rid of Essen. A very well judged catch indeed. Kept his eye on the ball, kept his cool. So that wicket has delayed the victory of Gulshan Gauhar. 12 to his name, 43 for 2 on the board. Of UBL, KTPL Season 3. Lofted over extra cover. That's going to be a boundary. Beautiful hit this from Ilyas. Was there an outside edge? Yes, finger has gone up. What was he thinking, Taimur Mirza? An unusual way for Taimur Mirza, the way he got out. 24 to his name, but he's done his job for his side, 49 for 3. But he does not need any second invitation. Abdullah pulling the first ball down towards leg side for a boundary. And that is it. That is how Gulshan Gauhars have registered their first victory in this UBL KTPL Season 3. A commanding performance both with the bat as well as the ball. Welcome back to the DHA Sports Club in Khan Academy, where the KTL Season 3 is taking place. And the latest match is between Liari Legends and Maligangs, where Maligangs won the toss and they have elected to bat first without any hesitation. Shahjahan is very much ready. He's in, right arm over the wicket. Oh, batsman did have a go at that one, but Shahjahan knows how to baffle the batsman, how to castle the batsman. Shahjahan again. This time it has been bashed away and bashed away in the stands. Here comes the first 6 of this game. Goes again and goes big. It has gone all the way. Another 6. Daud Khan is looking relentless. He's looking ruthless. He was, and this one is going. Where it's going to land? It's land outside the boundary in the spectators. And look at the jubilation in the dugout. 26 runs off the over. And this one is whipped away magnificently. There we go. Another 6. Oh my God.
And he got that away and cut that away over mid-wicket. That's a huge one. That's a colossal hit, FS. That is a big blow. Gigantic one. that's been caught behind. Bowler made a very good comeback and wicketkeeper attached by taking a very good catch, and the first blood is drawn. Smacked it. It's a flat batted hit. That's go way over deep mid wicket for a magnificent hit once again. A 6 to start the over with. Malik Malangs, 56 for 1. Another big hit. And he has timed it well enough. Yes, he has. Back-to-back sixes to another good start to the over from Salam. Once again, terrific contact from Imran. It doesn't matter. It doesn't matter. This time the ball goes way over long off. 3 back-to-back maximums from Imran. This one's the biggest. Once again over the offside. There is no protection out there. 2 bounces and into the ball goes. Nothing is working in the favor of Salam in this over. 3 maximums are now boundary. This time he connects, but hasn't timed it well enough. There is a fielder and they're getting underneath that, but he did not even get his hands to it. And they're coming back for the 3rd one as well. I think it's really good running. Outside edge and taken this time in the 2nd attempt though. But what a magnificent spell this has been from Rana. Once again ending the over with a wicket. This time, once again, the dangerous batter Imran, who has been dismissed. 85 for 2 on the board, and Imran is walking back. Just 5 remaining in this innings. He tries to blast on the outside. It's a flat hit. That did not go high off the ground, but still carried to Johnny. Once again, ball hitting the legs. This has been an exceptional last over from Sohail. How well has he come back after being hit for a 6 on the offside? Just 7, in fact, just 8 runs conceded in the last over. And Malik Malangs are going to finish their first innings on 93 for 2 in their allotted 6 overs. So here we go. Down the leg side, misfiring. It was a bullet, but off target. A couple of runs given in the form of wide, and that's not on. Is the bowler. There he goes through the covers. This should go across the boundary for 4. The left-hander expanding a bit. His first boundary, Nizar lefty. There you go. If you bowl there, you're going to end up over the boundary for the maximum. Wow. Here is Ali continue his bowling spell. And welcome to the bowling crease. Simple as that. In the slot. And there you go. Oh, Ali, come on. Welcome back, and there you go. That's another fine stroke. A good bit of football skills there on the boundary line, managing to stop the ball with the boot. And it's comedy of errors. What happening at the non-striker? Look at that. Oh, that was a big mix-up. That was very comical as well. Very, very nicely and very neatly. And the first blood is drawn. He's launched that one, though, and that's going to carry all the way. It was long, it was high, it was handsome, it was all the way, it was maximum. That is picked and hit out of his presence for the maximum over squarely. Brilliant pickup once again. Straying onto the pads and paying the penalty. He definitely is swiveling around, but the fielder made a mess of it. That really was an opportunity at deep backward square. Oh, nicely picked. It was slower in pace and in the slot, and he gets his man because the lack of pace has done the batsman on that occasion. Ashraf Pathan goes for 10, and they are now 49 for 2. Straight down the ground. It's high. It's handsome. Is it long? Yes. Forget it. It's huge from Daud.
It was right in the slot, and what a strike that is. Dropped the ball short, and great shot in fact from Hamidullah. Picked the ball really well. It wasn't an easy shot to execute, but he finished the over with a magnificent maximum. Starts off with a short delivery, once again put away on the leg side. It's up in the air and it is going to land. Oh, it has been taken. What a brilliant take that is. What a standing catch. What a brilliant catch that is. One of the best catches of the tournament so far. Now Sulaiman goes for 6, 65 for 3 on the board. Straight away he announced his presence. Subhan and oh, caught! He caught. What a wonderful catch. 2 in a row. Would you leave it? Well, this one is even better. He's walking back. Golden duck his name, but he is disappointed. 65 for 4 on the board. A pickup shot. How well has he timed that? That is going to go way over the boundary rows for a maximum. They needed that. Low full toss. That's a skimmer. Oh, he jumped in the air to take that one once again, but this time the ball was timed just well enough. This time he has gone an outside half of the bat. The fielder is trying to get underneath that, and he's going to take an easy catch. Revenge has been taken by Fazal. He gets the big wicket of Hamidullah. He has the last half. He attempts it. Perfect execution, although they're going to get a run. But that's really good bowling. His overthrows coming back for the second. And will they come back for 3? Could be run out here. And it's gone, I think. I think wicket falls once again at the bowling end. Yes, the batsman is walking back here. So wicket number 6 down here. Time for the last ball of the innings. It's a short delivery, played straight, played flat. Has that gone all the way for 6? We'll have to wait for the umpire signal. Yes, the arms are aloft from the on-field umpire. And that means Liari Legends are going to finish off their innings on 89 for 6. Welcome back to DHA Sports Club, Moin Khan Academy, Karachi. It's almost half done. Mali Malang versus Liari Legend. The situation has been even Steven. Just 4 runs separates both sides. And Mali Malang's 4 runs ahead. So ball number 1 of innings number 3. Outside edge, just try to play towards the onside. In the end, just a single with the soft hands. Catch it as a cry. Will this be taken? Gone this time. No mistake whatsoever. Shirja this time made no mistake. The second time he got the opportunity, and what an over it has been. 3 for 1 on the board. Mimran goes back for 1. He goes offside. He is cleared the infield. That should be a boundary. Wit was offered and nicely managed by Kaleem, and it's the first boundary of the innings. Is there an edge? Is there an edge? Up goes the finger. Everyone was excited when the ball passed the outside edge. So, again, Sohail has been so impressive, and now he has been rewarded. And Kaleem goes for 6. Full toss. Once again, hasn't timed it properly, but has gone for 4. That should have been saved at the square leg boundary. A much needed boundary. Went for the big shot. Has he got enough on that? Yes. It's a crowd catch into the stands. A relief for Daud Khan. No ball. No ball signal. He has beaten the short fine leg fielder and has run away for the boundary. So gift here for Mali Malangs and Daud Khan. Last ball of over number 3. Free hit. Still alive. Full toss. Has he got the treatment? It's a big one. Into the stands for the maximum here. He finished the over in a grand fashion. Squatted away on the offside. It's into the gap, and since there is no fielder up there on the offside, he's going to collect a boundary as well away. He picks it up. Over long off. Has he timed it well enough?
Yes, he has. This time a flat hit. This time he has been held out. Doesn't get the elevation or the distance this time away, and a very good change of pace by Shah Jahan. He picks up another. And making his walk back after making very fine 17. Squatted away on the offside, over backward of point. Hasn't got a proper connection. The ball will just trickle past the boundary ropes. The fielder was a little slow in getting off the blocks. जी हाँ, काफ़ी थ्रिलिंग हो गया आज और इसमें बहुत अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिली है, बहुत अच्छी क्रिकेट हुई हैगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टूर्नामेंट में अभी तक वाइट बॉल्स बहुत कम हुए हैं सारे स्पॉन्सर्स और तो ये वाकई काबिल तारीफ है और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि Daud Khan decides to go straight as an arrow into the side screen he goes. That's another 6. Now he has moved in 40s. It's a low full toss. Hit away on the leg side, into the gap and into the fence she goes. A 6 followed by a boundary. 99 for 3. 1 ball remaining. Sohail charging in. Pulls it right into the block hole. There might be a chance of a run out. It is a run out. A run out at the wicket keeper's hand means Malir Malangs are going to finish off their innings on 99 for 4. And they lead by 103 runs. Karim Hamidullah is ready to face the first ball from Majid Gholi. Might be given as a wide, yes it is, although he was moving inside the crease there, because Majid Gholi is a little surprised by that decision which has been made by the umpire. And there he gets the connection he was waiting for. And there you go, it's the maximum. First, but not the last, by Nizar. And there you go. This time a pickup, it's high in the air and it's going towards the boundary. Eventually it will reach the boundary because it was perfectly gapped at fine leg region. Outside edge and a very good catch indeed. That's a remarkable catch. That is probably one of the catches of the tournament. Nizar Ali's taste comes to an end. 11 of 10 for the left-hander. Tonight it's 25 for 1. That is going down the leg side and going for 6 wides. Is this the opening of the gate which the chasing side is needing? This has been a terrific piece of bowling, but it still raced away to the boundary. This has been played away towards the fine leg boundary and it reaches the boundary. So first ball of this over has given them 13 runs. He has got that away and got that away into the stands. This is what they're looking for last few overs. And finally, Daud got one away. And he has got that away and got that way into the gap and picked up a 4. Here is the final ball of this over if it doesn't bowl wide. It's gonna go towards the fine leg boundary and got there. Another boundary to end the over, so 72 for 1 after 5 overs. Starting the final over. And first one is lofted and lofted over deep square leg for a 6. That's what they wanted on the first ball of this over. Obaid again. And he got that away and got that away over wide long on. Another 6 still on. Let's see. Here we go again. And he tried another one and he has been able to hit that one into the hands of the fielder. He tried the third 6 in a row, but he failed that time around and Badar has picked up a wicket.
or avoid from the no ball. Is it going to be a no ball? And fielder has done a very good job. Has he got it? It's on. Now we can see it. But Ashraf Pathan has to walk back. 84 for 3 on the board. This is going towards the boundary and gone all the way for 6. So they have ended their innings at 91 for 3 and they lost this match by a margin of 12 runs. It's 1 a.m. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum once again from DHA Sports Club, Moin Khan Academy Cricket Ground, number 5 of UBL Amin KTPL Season 3. It's going to be Gulshan Gohars up against Karachi Knights tonight in the second game of tonight's schedule. Karachi Knights have won the toss and have decided to bat first against Gulshan Gohars, who started off their campaign on a winning note last night against Johor Jawan. We are all set for the first ball of this match number 5 of UBL Amin presents KTPL Season 3. Karachi Knights are batting first against Gulshan Gohars. Starts off with a fuller pitch delivery, which was just gently played towards mid-wicket for a single by Ubaid Lefty. That was a first. Because tries to go big on the offside. There is no fielder out there. It's going to bounce twice, in fact once, before it goes past the boundary ropes. So the first boundary of the innings comes to the bat of the captain. Tries to go big. And tell you what, that is a monstrous hit from Ubaid Lefty. That has gone into the dugout of Karachi.
Down the leg side, it's up in the air, it's a leading edge. It's gone way over the head of the fielder at fine leg, and that's going to go vast boundary ropes as well. Pretty unfortunate just for the ball. We're looking to hit few more boundaries in this over. This time he connected that well. This time it's going to go way over the boundary ropes. In fact, the umpire is signaling it as a boundary. Might have bounced just inside the ropes, but just get the feeling he timed it too well. This time he goes straight. He goes massive over long off. That is some hit. And finally has been taken in the crowd. Well, that's why it's so important to play on the merit of the ball. Just like that, I was exactly talking about that, and oh my word, he nearly pulled out a blinder on the boundary line, but in the end, tips it over the bar for the maximum. Left-hander gets one in the slot. It's miles in the air. Does it have enough legs? I don't think so, because it's been caught on the boundary. Well, I thought it's going out of the stadium, but again, it was caught boundary. Well, lefty makes a long walk back to the change room. Oh, look at that. That's in the air somewhere in the covers, and it's been caught. Nicely pouched. And guess who? It's TM who's taken the catch. Usman Jan, 3 runs on 4 deliveries. Oh, that's miles in the air. And it's going to clear mid on even. As in no mistake. And another one goes now. 27 is made of 17 deliveries. There are 3 wickets down now. There you go. He goes through the offside. Will he clear the field? And no, he doesn't. Another one goes. Now wickets are tumbling here. All of a sudden, there are 4 down. Dinesh Juni gone for 1. Oh, and the music is a full toss, which has been belted brilliantly out of the ground, and it's going to be a no ball as well. This is the thing which they were waiting for. And there you go. It's gone somewhere. I don't know where. It's in the lap of the fielder. But it was a free hit, so the batter will be not out. Because the batters are going to go that way. That is out of here. See you next day and next night. There you go. We are going to see some stuff tonight. It's gone miles in the air and it's out of here. Second 6 on the dot, and look at the dugout. Well, definitely it is. Mix up of everything. Oh my God! How can you lift a ball from your feet all the way over the boundary line? It needs immense power to do that. It was a great shot in the end to finish it off with a 6. 82 for 4. 82 runs का टारगेट है सामने. दानिश अगर हम देखते हैं यहाँ, और जिस तरीके के बैटर्स इस वक्त गुलशन गौहर के मैदान में आ रहे, जिसमें तैमूर मिर्जा टीएम भी शामिल हैं, और टीएम ने जो कल इनिंग खेली थी 75 रन ऑन जस्ट 21 बॉल्स विद 10 सिक्सेस. आई थिंक ये बहुत ही क्रूशल होगा यहाँ टीएम की विकेट जल्दी लेना. और अगर विकेट ले जाए तैमूर मिर्जा या बहादुर अली की तो नेले पे दैला. पहली गेंद और बहुत ही अच्छी फील्डिंग एफर्ट यहाँ मिड ऑफ पे खड़े फील्डर की. इस तरह ये फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत हाई रखना होगा, क्योंकि रन्स बहुत ज्यादा बोर्ड पे नहीं है, सामने बहुत ही बैटर है. कब तक खामोश रखेंगे तैमूर को? इस बार गैप हासिल करने में कामयाब. 4 रन हासिल किए तैमूर मिर्जा ने. इस बार फिर गैप हासिल करने में कामयाब हुए तैमूर मिर्जा. एक और चरण, जिस तरह पहले डॉट बॉल्स थी, 2 चौकों के साथ इख्तिताम किया तैमूर ने इस ओवर का. और आउट बहादुर अली. ओ, पहला नुकसान उठाना पड़ा यहाँ. फुल टॉस था. बहादुर अली इसको 16 अंदाज में पहुंचाना चाहते थे, लेकिन सीधा शॉर्ट मिड विकेट पर थमा बैठे बहादुर अली. 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर वापस पवेलियन जाते हुए 16 पर 1. इस बार तैमूर मिर्जा का प्रॉपर कनेक्शन, गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर पहुंचाया. शॉट छक्का. तैमूर इतनी जेन्युइन बैटर के फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली, और इस बार आउट होने का खतरा है यहाँ. गेंद हवा में
हवाई हवा में गेंद बाहर चली गई। एहसन चिट्टा का शानदार Taimur is, and there you go. Taimur has got that away, and fielder got under the ball. In fact, it was Essen who hit that one in the air, and fielder got that one beautifully. And Essen's cameo is over. It's not a happy man. 38 for 2 on the board. This one is whipped away. Again, there is a protection at the deep square leg. He gets another one. Wickets are falling like 9 pins here at DHA. Well, low full toss has done the trick for Ali. 38 for 3, Gulshan Gohar. Full credit to the bowlers so far. They have done a very good job. And now Taimur Mirza has gone after him. It's going, and gone many a miles. He got that away and got that away magnificently. That's a big hit. It's gone all the way. जी अली 3 विकेट्स और उसके अलावा भी मैं आपको बताता चलूँ बहुत अच्छे बॉलर्स हैं हमारे पास और कोशिश यही है कि हम कम से कम जो है स्कोर पे इनको रोकें आगे जाके जो है अच्छा टारगेट दें. Taimur Mirza has hit that one away and hit that one away all the way towards the backward square leg for 4. Just 4 short of what would be a terrific century. Got that and got that away. Miles again. He's on fire and he gets his 50 in style. Taimur Mirza tried to go at that one, missed it altogether, and bowler had the final off. He got a wicket. Job done by Taimur. 22 deliveries, 83 for 4 on the board. He has hit that one and hit that one very, very nicely. And it's gone all the way for 6. What a way to finish the innings. 89 for 4 they have. So it means they've got a lead of 7 runs. Welcome back to live. We are live on BTV Sports Club Karachi. So Karachi Knights managed to score 82, and whereas in reply they took the lead of 7 runs, did Gulshan Gohars. Karachi Knights will be looking to score around about 90 or 95 so that they will end up with a healthy lead. Swing and a miss to start the proceedings in this innings, 3rd innings. Not there, certainly. If you bowl there, even if it is a top edge, it's going to carry all the way for the maximum. There you go. In the slot and into the night sky. It had so much elevation on that shot to bed lefty. Well, it was length. Swung away on the leg side. This time he connects and he connects it well off. Sailing over the boundary ropes for another maximum for Ubaid. 34 for none. Still halfway through the 3rd over. Picked up on the leg side. That's going to sail over the boundary ropes once again. Ubaid has been very severe on anything on the leg side. 8 deliveries have been bowled already. Another swing on the leg side. That's going to sail over the boundary ropes. And to add salt to the wound, it had been signaled as a no ball. When will this over come to an end? और इस गेंद को ऊंचा खेले और खूब खेले और गेंद हवा से पत करती हुई नीचे आ रही है. स्ट्रैंड्स में आके गिरी छक्का. इस गेंद को खेले, गेंद हवा में है, कहां जाके गिरेगी, बाउंड्री से बाहर. एक और छक्का. ओह, बेल्ट किया हवा में, अभी भी हवा में और दरख्तों के दरमियान जाके गेंद गिरी. एक और छक्का. वाओ, शॉट यार, देख क्राउड की खुशी. और इस गेंद को भी हिट किया. बहुत खूबसूरत मिड विकेट से बाहर. एक और छक्का. छक्कों की बरसात. सीटियां बज रही हैं. वाह, एक और जबरदस्त कनेक्शन यहाँ उबैद लेफ्टी का. गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑन और मिड विकेट बाउंड्री के दरमियान. 6 रन. शानदार स्ट्रोक.
और अपील हुई और खुद चल दिए थे उबैद। यहाँ पर अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उबैद की जानिब से, अंपायर का इंतजार नहीं किया इस तरह, ये पहली कामयाबी हासिल की गुरन गौर्स ने। उबैद लेफ्टी आउट। और इस गेंद को ऊंचा खेले, मिस क्यूड है, गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे आने की कोशिश में, नीचे आ गए और बड़ा शानदार कैच। इस तरह बहादुर अपनी पहली ही गेंद पे विकेट लेने में कामयाब हुए। तैमूर मिर्जा भी खुश दिखाई दे रहे हैं। उस्मान जान 34 रन बनाकर आउट 11 गेंदों पर with 4 sixes and a strike rate of 304.56. इस मरतबा ऊंचा स्ट्रोक, क्या इनफ कनेक्शन है कि गेंद बाहर ट्रेवल करे? अंदर ही है। ओ क्या रिबाउंड कैच लिया या? जी हाँ, एक फील्डर से गेंद छूटी, दूसरे ने कहा किया, शानदार कैचिंग। इम्तियाज इम्ती 4 गेंदे खेल गए, खाता भी नहीं खोला, नुकसानदेह साबित हुए कराची नाइट्स के लिए। आखिरी बॉल इस इनिंग्स की और बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, 1 रन जरूर मिलेगा। और ओवर थ्रो, लेकिन बैकअप किया, अब रन आउट चांस है, दौड़ कर आए और रन आउट करने में कामयाब हो गए। अंपायर ने फौरन उंगली फजा में बुलंद की। इस तरह 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 90। 6 ओवर्स के बाद 3 विकेट के नुकसान पर ओवरऑल लीड हो गई 83 की। 84 का टारगेट है गुलशन के सामने। The last innings, and it's going to be a thrilling one. None other than Taimur Mirza is making his way to the middle. So it's the first ball of the new innings. As Bahadur lefty will be on a strike here. He goes for it. Full shot. Has he got enough on that? Yes, he has. That has gone way over the boundary. Connected. What a start for Gulshan Gaur. He goes for it. Beautifully picked up. And 6 more to his name. What a start that is. 12 runs of the first 2 balls. 2 different shots. Result is the same. He goes for it. Good swing of the bat. He's found the placement to pick up a boundary. Goes straight, goes high. Someone is getting in under the ball and is taken. Good catch. Good catch. Is Zubaid lefty who covered a lot of ground. He was very calm, very cool. And it's a big wicket. So cameo is over. It's high in the air. He hasn't got the timing right. He is in trouble. Will this be taken? Oh, good catch. Terrific take. My word. 2 wickets in 2 balls. 18 for 2 on the board. Will be on hat-trick. Taimur Mirza takes him on. And takes him on with absolute flair. What a good shot that is. He cleared the hoardings comfortably. He goes for it. It's hard, it's flat. 6 more. Terrific. Unbelievable. How can you keep a player of team's class and team's caliber? He goes for it. Picked it up from outside the off stump and smacked it over long on. This is tremendous. Watch out. There'll be a lot to come. This time using the pace bowler down to fine leg in the vacant region for another boundary. Full toss. And the bowler has got punishment once again. It's hard and flat. He is unstoppable here. Going for the quick single too. He's trying to retain the strike and quite wisely so. I think they have asked for a referral for that run-out appeal. TV umpire had to make the decision. Finally, we've got the decision. Aliasani has to take a long walk. But Taimur Mirza has launched it. Is it long enough? Oh, that should have been saved. That should have been saved. The fielder had a chance to get it off, pull the ball back, but the ball has gone over the boundary. 4 more. Starting off with a big shot on the leg side. It's into the gap. That's going to race it to the boundary ropes. Taimur Mirza is not stopping. Another big hit. That sounded really good. Once again, the ball is going to disappear into the trees on the leg side. He's showing no mercy whatsoever to any of the bowlers tonight. A full toss. Similar direction. A flat hit. Another 6. He's cutting loose now. Taimur Mirza, and with that 6, 50 also comes up for the superstar of tape ball cricket. 52 off, giving himself room, playing it over extra cover. My goodness, how good a shot that is.
One bounce into the fence. That's going to be a boundary. And that is it for Gulshan Kauhars. They managed to win this game comfortably by 7 wickets. Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, everyone. We are at DHA Moin Khan Academy, KTBL Season 3, Johar Jawans versus North Nawabs is today's first game, where Johar Jawans have won the toss and they have elected to field first. He's going to take the attack from the far end. Here is the first ball, and batsmen have wilds to get that one, but it goes through to the keeper as he didn't make any contact. This time batsman has given it a go, and he has given it a go over long on for 6. Outside the off stump, that was in his radar, in his arc. Here comes the first 6 of the night. There we go, there we go. Yes, put that away, and puts that away over the car corner. Another 6 to end the over. There we go again. But he pitched it up, and it has been tonked away onto the onside. One bounce into the wide mid-on boundary for 4. He edged that one, but there isn't any protection at third end. Ball running away to the boundary for 4. Doesn't matter how they come, as long as they come. Another boundary. Shafi has hit that one in the air. It is coming down towards the long leg. Has it cleared the long leg boundary? Yes, it has. Another 6. It was Shafi Agha, the captain himself. Look at that. On the legs. And he goes again. It's going to be caught. Fielder placing himself under the ball, and he takes it. He takes a very catch. He took a very good catch, I would have said, and the first wicket goes down. So captain goes. Bowler always play stubborn kind of a strokes. He cut that away onto the onside, down towards the square leg for 4. This time it's coming down towards the fine leg boundary. There isn't anybody down at the fine leg boundary. It has gone for 4 again. This time he's got the connection he desired for. This will give him half a dozen. It's a big blow. Wonderful, wonderful blow. Tapas bowler is on fire. Saddam Shah is back into the attack, and he comes back with a massive wicket of Pola. This time he doesn't connect as he would have liked, and he's been caught to wideish long on. Very good catch and a good comeback by Saddam Shah, who was expensive in his first over. Finally a departure for a Hafiz bowler. This time flicked away by A.B. Paro, and he's off the mark with the boundary. KTBL committee is watching contest. He went it, catched it as a cry. But it has gone for 4, nobody was there. Placed it beautifully. Boundary here to end the over. This time he goes through the covers. It's a very good strike, and it's well stopped. Or is it? No, it hasn't stopped. It's gone for 4. He will go leg side, and he will collect a 6 he was waiting for. Wow. He goes for it. Is it long enough? Yes. Once again, he has cleared the ground by a long, long way. Up go the arms of umpire. What a batting performance here. Batter length very full. Will he come back for 2? Will he come back for 2? He slipped. Oh, there could be run out here. Mix up, and at the batting end, run out
took place, and he's not happy with his partner. Unfortunate way to get out, but he has to leave the arena. Swing and a miss. And single taken as a result of bye. So good comeback here. So finally the innings has come to an end here. So 88 they managed in their quota of 6 overs. George Javans, 88 is not a bad score as far as the format is concerned. And here's the first ball of the innings. And straight away it is going down towards the fine leg boundary. And there isn't anybody down there, so it's 4. Once again, some serious pace on offer here. This one is going and going all the way at mid boundary for 6. Now that is just insane. How could you hit that to a square leg? Just flicked it. Did not even use his arms at that time. Oh, that's a colossal, humongous. He bashed that one from that presence. That's a terrific shot, a massive one. Another one goes over cow corner, another 6. Here's this first ball of the second over. It is in the air. Fielder is trying to come under the ball. He has come in and then he caught that one gladly. So the first wicket goes down. Falak, 1 for 5. It's 23 for 1. Nasir, the captain, is taking strike and he has hit it in the air. Fielder is paddling back a bit and he took a very good catch. Another wicket goes down. So 2 wickets in the same over. Bowler doing a terrific job here. That was a simple catch. Nasir walking back for a duck. But batsman now replied him with a beautiful shot. Pulled that away, front of square or backward of square, I reckon, down to the boundary for 4. Oh ho ho! What is that? What is that? That's a big, another 6. This is in the air. He pelted that one straight down the ground, right below our commentary position 6. A proper bazooka. Down he goes. Mid-wicket tried his level best to get around, but couldn't. 4 more. Runs coming thick and fast here. Pick up shot on the leg side. Once again, this time the ball is going to travel to Journey. What an awesome stroke this is from Basit lefty. Once again, a top shot attempted. Has that gone all the way for 6? Another maximum to Basit lefty. Now bowling to Basit lefty, who has been simply exceptional. Once again, trying to hit it a little too hard. Chance for a fielder. And taken. What an excellent catch this is from the wicketkeeper. He was running backwards. Had to dive in front. Took an excellent catch in the end to get rid of Basit. Basit lefty has been parried. He's going to walk back after scoring 38 of 13 deliveries. And with that, it's 71 for 3 Johar Javans. Shahid Afridi now bowling his last ball. Once again smashed down the ground. It's into gap. And that has gone all the way for 4. Wonderful placement this time from the right-hander. So all the angles are covered up with the right-hander, who decides to swing. And has he managed to hit it over extra cover? He's swinging underneath that. Just could hold on to it. The umpires are going to take it. The ball might have crossed the boundary ropes. Yes, it did. Once again, a pickup shot on the side. How well has he timed that? Just look at the wrist power from Shah Raza on that ball. He goes again on the leg side, and I think he has timed it well enough as well. Yes, he does. So 3 maximums to finish off the innings, and Johar Javans are going to finish off on a lead, getting a valuable lead of 21 runs here in the first innings. welcome back once again to THS Sports Club, Moin Khan Academy, Karachi. KTPL Season 3 is in full swing. Johar Javans is taking on. So it's a 21 runs lead picked up by Johar Javans. So action will continue here in THS Sports Club. So they are 21 runs behind. So innings number 3 is about to begin. Heaved away to the onside. And there's a protection. So North Nawab off the mark. No, they are off the mark with a single. Big full toss, smashed away to the offside. Will he go all the way?
One bounce into the fence for 4. So first ball boundary for Hafiz bowler and no ball has been signalled. Flick of the wrist. Is it long enough? Not quite taken. Comfortable catch at mid-wicket here. And Shafi is absolutely disappointed. He doesn't want to move. He thought it would go other way. But he has to depart now from the middle. Saddam again. Low full toss, smacked away down the ground. One bounce into the fence for 4. Lovely shot and a much needed boundary. He goes for it. It's hard, it's flat. Nobody's out there. And once again he picked the same region. Consecutive boundaries here for AB Paro. Last ball of the over. He goes for it through the onside. Catch it is a cry. Will this be taken? It's a tough one. Oh, he missed it. Goodness me. Well, he's misjudged it terribly. North Nawabs, they need a couple of huge overs. Full toss. Punished. That is out of the park. What a good blow that is. Full toss. Ideal height for AB Paro. Outside edge gone, caught behind. No doubt whatsoever. Finger goes up. Massive deflection and it's a huge wicket. So the dangerous bowler this time goes for just 7 of 5 deliveries. Just don't let the batter get underneath like that. How long has that gone? I think it's 1 bounce 4. He has decided to hit that big. Has he cleared the field at long? Oh, just by the best of margin. And with that 650 also comes up for North Nawabs. Pretty packed leg side field. Starts off with a full toss. Hit away on the offside. It's a flat hit. Even the fielder at long off couldn't take that one. So a boundary to start the over with. A leg delivery. Swung it as hard as possible and he's going to get 6 for that. And it was dropped in the crowd as well. For the team. That was a full toss once again, trying to hit that a little too hard down the leg side, and it's going to be a run out. It was a slow and low throw which finally managed to hit the stumps. Third wicket has now been done. North Nawabs are 80 for 3 with Yahya Khan walking back after scoring just 9. Has he knocked him over? Yes, he has. Just get the feeling it was the bat who hit the stumps, because the ball was well outside the off stump, but it's a wicket nevertheless for George Javans. Zain Pathan, 0. Low full toss, hit away on the leg side. It's in the air. Square fielder is trying to get it on, but he's not going to get there. A boundary, a very crucial boundary indeed for the batting side. Last ball of the innings coming up. North Nawab lead by 64. It's going to be a wide. They're running for it. We might see another run out. It's going to be AB Paro. Yeah, he's going to be dismissed. AB Paro walks back after scoring well-constructed 40 of just 19 deliveries. It's 85 for 5. Yeah, he has changed his angle now, coming around the wicket. It's up in the air. There is a fielder at deep extra cover, but still, he's very far away from it. Point, he was running backwards. Couldn't get to the ball. They're going to get 2 runs, in fact. Yes, we are going to witness another run out. It's all happening in this last over. So 2 runs conceded of the last ball, then a wicket fell. The North Nawabs are going to finish their second innings on 89 for 5. Well, they scored 88 in the first innings. Could just score 1 more run in the second. And technically means that now they lead by 68 runs. George Javans' openers are out there to give it a go. 71 is what their target is. Shah Raza, who batted supremely well in the first innings. Here's the first ball of the final innings of this match. And he did throw kitchen sinks at that one. Third man was there inside the circle. I think it dropped just in front of him. But that was a good ball. Batsman chased that one. Oh, it is in the air. Fielder is under the ball and takes it quite easily. What a beautiful ball. Batsman didn't have any clue at that one. Basit has to make his walk back. And he has hooked it away. And hooked it away beautifully round the corner, down to the long leg boundary for 4. This is in the air. Fielder is under the ball.
Could be caught. Could be caught. It is caught. It is caught. Another wicket goes down. Will it go right down the wire? Will it be a cliffhanger? 2 wickets in the first over, Danish. Shahrazad goes for 1 and the second wicket falls. This one is driven away. Almost drilled away towards the boundary for 4. He edged that one. Fielder is under the ball. Irshad gets another one. We are watching tremendous piece of bowling from Irshad. He held on to it really well. Syed Nasser will have to go back for 10 of 8 deliveries. But this time batsman has lofted him, but lofted him straight into the hands of the fielder. As I was saying, can he get another one? He got another one. Oh, he's knocked him over. Try to go for the big left-hander. Another one bites the dust. Johor Jawans are in all sorts of trouble, and the bowling side are turning it on. They're very young at the crease. It's high in the air. Has he got enough legs on it? I think it has. It's a very good connection. Oh, right in the block hole. This is what you can do with that type of delivery. There's a chance of run out. Oh my word! Another one goes. Well, 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 it's all happening, and Jawans are going nowhere at the moment. That's high. It should be taken now. Paula is getting underneath, a little bit of collision, almost a collision, but in the end the catch has been completed. So wicket for Sairam, a reward of some very good accuracy and very good, I would say, experimentation in this over. 7 to his name, 29 for 7. Swing and a miss. This time within the stumps. How could run out here? Yes, no, yes, no. Asif Farhan has a chance, finally a run out here. So wicket falls, Farman has to walk back. Lots of confusion. The wicketkeeper produced a throw and a run happened at the bowler's end. Well, there was a comedy of errors in the middle between both of the bats. Farman goes for 1. Toss, been asked to bat first, and batted well they did. In the first innings, made 88 runs. And then the opposition got a lead as well of 21 runs. And that's it. It's all over. North Nawabs have been able to register their first victory in their first game against Johor Jawans. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening to all wherever you are. Another exciting night ahead of us where DHA Dabangs are taking on Malir Malangs for match 6, night 4 of Karachi Premier League 3. As the toss has been done and dusted, DHA Dabangs and Captain Yasser Mushtaq has decided to bowl first. It's going to be Omri Pacer to start the proceedings. This guy's got some serious pace to work with. Back with a point. Extra cover, mid-off, mid-on. And here goes Omri. Nicely bowled, good delivery to start with. They'll get off the mark, but it wasn't a convincing manner. Ball toss, wrong line. It's high in the air. It's going towards the boundary. And it's gone. It's gone for 4. 1 bounce into the boundary, using all the pace that he has, and it was a poor delivery, wasn't that? And this time it's a proper flake, but it's a 1 bounce for 8. So it didn't get the desired result, the batter, but still it's good enough to earn him a boundary.
look at that. It's high in the air. Has it traveled? Yes, it has. First six of the night. Why finished the first over? It's been an expensive one from Umari. He's been taken to the cleaners. And there you go. Length again, but he has protection for no use. I think it's cross boundary for 4. Oh, where has that gone? Pick the bones out of that. That has gone many a miles, and it's a no ball too. Oh my gosh. There you go. It's a free hit anyways. It's miles in the air. And oh, it was a tantalizing one for the fielder, but it goes all the way in the end. Pathan's on fire. Oh, there we go. He stood and delivered all the way at 5 on for 6. Oh, well bowled. Very well bowled. As we were talking about that, they got to do something. The first wicket goes down. It's a very full delivery, and again, it has some pace on it. 63 for 1 in the 4th over. And he straight away announced that he's there and put that away over mid-wicket for a 6. Another one, but this time it could be caught. And it is taken by the man at the cow corner. It was in the air for a long while. Took that one very cleanly and gladly as well. Clean goes for 6, 6-9 for 2. A beautiful trophy that they all have been fighting for. This is in the air. Fielder is under the ball. Ball is coming down. He kept his cool, then took that one very easily and nicely at the end. Another wicket goes down. So bowling side making a very good comeback. Not only they are keeping them wide now, but also picking up regular wickets. Awais Pathan goes for none. 3 down for 72 now. Fine leg did pretty well. To stop it, and it could be a run out or not. Let's see. I think umpire's going to refer it to the third umpire. Yes, he has referred that one to the third umpire. Let's see what will be his verdict about this one. Yes, he's gone by good margin. That's what you need from any bowler. Wickets are tumbling regularly now, 73 for 4. Yes, he has hit that and hit that well. That's exactly what the doctor for him, and he smashed a 6. He goes again, even better and even bigger. Here it comes down outside the boundary. 2 6s in a row. Last ball of the innings coming up if he doesn't bowl wide or no. And this has been spanked and spanked well and way over deep forward square leg for 6. What a way to finish the innings. They'll be very happy with the score. 93 for 4 in 6 overs. Here we go. MG. वेरी वेल बोल्ड। पहली गेंद यॉर्कर लैंड पे दी, छोटा विकी, वकास के पास कोई जवाब नहीं था। इस बार प्रॉपर कनेक्शन, फील्डर वहां मौजूद नहीं, रन हासिल किए छोटा विकी ने। फुल टॉस गेंद जिसका भरपूर फायदा उठाया छोटा विकी ने और पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। शानदार छक्का, इंक्लोजर में गेंद गई। खुर्रम चकवाल का प्रॉपर कनेक्शन, गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। जोरदार छक्का, खुर्रम चकवाल किंग ऑफ एशिया। एक और प्रॉपर कनेक्शन, खुर्रम चकवाल एक और शॉट। खुर्रम चकवाल की क्या ही बात है, मिलाकर देते हैं, एक और 6 हासिल किया। अली गेंद करेंगे। और अच्छा कनेक्शन यहां पर खुर्रम चकवाल का, छक्कों की हैट्रिक यहां खुर्रम चकवाल की जाने से शाही ने क्रिकेट खुशी से झूम उठे। छोटा अली को बड़े बड़े छक्के लगा रहे हैं यहां चकवाल। इस बार छोटा वकी का ये कनेक्शन, गेंद को पहुंचाया बाउंड्री बाहर। एक और छक्का, एक्सपेंसिव ओवर अली छोटा का जिसमें 4 छक्के लगे।
और इस बार छोटा विकी के आउट होने का खतरा हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि छोटा विकी है। गेंद बजाई सामने बाउंड्री के बाहर, एक और छक्का। इतनी दूर और इतनी ऊंची गई कि किसी को नजर ना आई। एक और जबरदस्त कनेक्शन छोटा विकी का, एक और छक्का। तो फिर छक्कों की बारिश यहाँ डिफेंडिंग चैंपियन दबंग की जानिब से, दबंग बैटिंग। और इस बार आउट हो सकते हैं क्योंकि गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के लिए देखना होगा और कैच लेने में कामयाब। मच नीडेड विकेट फॉर मलीर मलंग। छोटा विकी आउट। 30 रन, 11 गेंदें, 1 चौका और 4 छक्के। और आते ही उमर ने अपने इरादे जाहिर किए, पहली गेंद पे जोरदार छक्का। और इस तरह जबरदस्त बैटिंग जारी यहां डीएचए दबंग की। He goes over extra cover, typical of Chakwal. And that travel could at least 20 meters even beyond the boundary ropes. This time he goes leg side. It's high, it's handsome, and it's all the way over square leg. Oh, it's a leading edge, and some should get rid. Oh my word! It's Chota Ali who's made the mess of it. That could be very costly, I can tell you, Zishan. Down the leg side, a pickup shot that might go all the way for 6. Yes, it does. That has landed into the pavilion there on the first floor, just behind the commentary box. Let's see क्या होता है, लेकिन I hope for the best for this evening. Yes, DHA दबंग से नोमान हबीब सपोर्ट कर रहे हैं। वेल छक्के और चौकों की बरसात हो रही है, एक लंबा छक्का डेफिनेटली। और यही टेप बॉल की खूबसूरती है कि 6s और 4s हमें बड़े देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत इवेंट हो रहा है। बदर एक्सपो ने ऑर्गेनाइज किया है, उनके हवाले से भी कहे। सारे जो लोग हैं, उन सब लोगों के लिए जो मेरी बेस्ट विश है कि आप लोग की सपोर्ट में ऐसे इवेंट हो रहे हैं, प्लीज इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि ये लोगों का जो टेम्परामेंट बना रहे। He's going to come around the wicket first, Abu Bed. It's a flat hit, and that is going to way over the boundary ropes over long on. Well done this over by Khurram Chakwal. Of course, there to be hit, and he's going to punish them all day along. Khurram Chakwal on the way to pick up his half century. 50 of just 16 balls. Still 3 balls remaining. Fuller. Look at that bat swing and look at that distance. The ball has covered. It took an eternity to come out ball. This time coming from the bat of Omar. Last ball of the innings coming up. He's disappointed. He has struck it nicely on the onside, but there is a fielder out there. He's charging for the second run. And they're going to get it in the end. So a perfect end to the innings for DHA Dabangs. They managed to score 24 in the last over. They've got a very healthy 40 runs, and they're going to finish off on 133 for the loss of just 1 wicket. Welcome back to DHA Sports Club, Khan Academy, and the great match is going on between DHA Dabangs and Mali Malangs, and plenty of fireworks we saw as DHA Dabangs posted a massive score. They got a lead of 40 odd runs. That's a huge lead. Get the trial runs and then get the lead. This is very important for them to win because they want to have that start again. First ball. He goes for it and beats mid off. That could be a boundary. It was quite his best. Certainly, it wasn't the best of efforts. Has he nicked it? Has he nicked it? Yes, he knows it. He's walking back. The wicketkeeper made no mistake whatsoever. Held the outside edge, and it's a huge blow. DK is gone. 4 for 1. Omar again. Pulled away. And could be out. Gone. Straight to the fielder. Goodness me. 2 wickets and 2 ball, and Umar is on a hat-trick here. Kalim has to walk back. He just came and went. Hat-trick ball. Chance. That was off the edge, I reckon. Beats the fielder, and ball goes for 4. Big shot. Is it long enough? It's high. It's handsome. And it's launched it over the rope. 6 to finish the over. Nice shot. Has he found the boundary? That's well played. No protection.
Just high in the air, he has been deceived, should be taken, gone, comfortable catch. Slight change in pace here, well foxed, and there has to walk back. इस बार मिमरान का जोरदार छक्का, यहाँ पर मच नीडेड बाउंड्री फॉर मलीर मलंग्स। और जैसे ये ज़ुहैर साहब का जज्बा देखने वाला है पूरा इस टूर्नामेंट में, और उनकी जो क्रिकेट के लिए लव है, और स्पेशली यूबीएल भी आपको पता है इसकी हिस्ट्री है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हम टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं अपने लेवल पे वो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। टेस्ट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, ये सब जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं पावर हिटिंग के लिए, क्योंकि आप क्रिकेट समझते हैं, ये क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, पावर हिटिंग। ये देखें, अभी आपसे बात हो रही थी। जी बहुत ही दिलकश शॉट एक दफ़ा फिर, और वो बहुत ज़्यादा फॉलो भी होती थी। नाज़िमाबाद सुपर कप था, कराची जिमखाना का भी टूर्नामेंट था, तो उस लिहाज से ये एक और टूर्नामेंट क्रिएट हो रहा है, और मेरा ख्याल है कि कई साल चलता रहेगा और कई साल एंटरटेन करेगा। एक और बहुत ही ज़बरदस्त शॉट। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं आप लोग जो कर रहे हैं, इससे आई फील दैट दिस विल एक्चुअली जनरेट अ लॉट ऑफ टैलेंट इन द कंट्री। सो आई होप कि इस तरह के और इवेंट्स हो, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Lead by some good runs. This is going, and it's gone out of here. What a magnificent blow, and welcome FS. And he swings this away. He does try a lot, but it doesn't succeed. It has gone for 4 runs everywhere. Got that in the air. Miles, who's coming under the ball. Long off, long off. Oh! He juggled with the ball, and ball goes to the boundary as well. But he played magnificently well. Got that away. Over backwards leg. 6 more. Runs are coming thick and fast. 2 balls to be bowled. He has lofted it, and lofted it in the stands or on the grass bank. What a terrific 6. What an amazing batting performance. Wicketkeeper collected the last ball behind the wicket because batsman didn't get the bat on that one. 112 for 3, where they finished their second innings, and Mimran remained not out at 73. Ubaid not out at 12. I think they did a decent job. So 73 is going to be the target for DHA Dabangs. What magnificent batting performance it was from Limal, especially in the last 3 overs. Still remember they were 30 for 3 in the first 3, but magnificent batting performance by the lower order, and they made sure that they now have given a very respectable target to the opposition. So Khurram Chakwal is on strike. Majid Goli is all set to bowl the first ball of this run chase. It was a length delivery. It was there to be hit on the leg side. Just couldn't connect it. Short delivery. Chance. Is it taken? Yes, it is. The finger has gone up. For a brilliant start. This is Khurram Chakwal we are talking about, who has been dismissed for a duck. We really want to develop all across Pakistan, and our branch network is also growing, and our penetration in Islamic business is growing. But cricket is better, as I always say, product nahi hoti to promote your brand. That association is 50 years old, and UBL Amin is going to start it all over again with the table cricket as a first pilot project. I'll interrupt you here और अपने viewers को बताते हैं यहाँ पर एक और विकेट गिर गई है. Well, exciting बहुत होते जा रहा है मैच. It's a pickup shot. Has he timed it well enough? There is a fielder who is getting underneath that. Is it going to be taken? It is! It's the third wicket that has gone to the dugout without troubling the scorer. Outside the off stump, he had a full swing at that. And the fielder is just going to watch the ball sail over his head. First maximum of the innings. And no surprise is coming from the bat of Chora Vicky. Full toss, has he knocked him over? Yes, he has! Completely boxed him with a slower one. Majid Goli is on a roll. Chota Vicky, known as Mohammad Waqas, has now been dismissed after scoring 11. It's 17 for 4. Slower one, picked up on the leg side. It's a bit of an anticlimax. That's all for 6. Getting it outside edge. Has that been taken? It is. What an excellent catch by the wicket keeper. He can do nothing wrong, Majid Goli. It's his 5th wicket already. Darsalan Jamshed came and went, hit a 6 and has now been dismissed. It's 23 for 5. अली नए ओवर के साथ और इस गेंद को ऊंचा खेले
लॉन्ग ऑफ की जानिब, गेंद हवा में, फील्डर के हाथ में, एक और विकेट। बॉलर्स की रात लग रही है यहां पर। 6 खिलाड़ी आउट है 25 रन पर। बैट्समैन ने इस मरतबा ऊंचा खेल दिया इस गेंद को और गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के तरफ। फील्डर ने अपने आप को प्लेस किया, बड़ा खूबसूरत कैच, वाओ, जितनी तारीफ करें वो कम है। शानदार कैच लिया, एक और विकेट। दबंग बॉलिंग परफॉर्मेंस है मलिर मलंग की इस इनिंग्स में और इस बार बैट्समैन ने गेंद को हिट किया है। फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, आ गए और कैच ले लिया, एक और विकेट। कोई स्ट्रोक ग्राउंड से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं और फील्डर्स कोई कैच गिराने के लिए तैयार नहीं और 8 खिलाड़ी 27 पे आउट। इस गेंद को ऊंचा खेला, लॉन्ग ऑफ की जानिब, जंप किया, लेकिन इस बार बैट्समैन ने कहा भैया कितने कैच करोगे, अब मेरी बारी है। लॉन्ग ऑफ से बाहर छक्का, मैच नीडेड 1। एक और शॉट, बड़े शॉट के लिए गए, पुल किया है और कैच हो सकता है बल्कि 4 रन के लिए। चौका भी नहीं रोक पाए, कैच भी ड्रॉप किया और इस बार नाराज हैं उबैद। 4 रन मिले और ये देख ग्लूमी फेसेस और यहाँ ये मैच खत्म हो गया है। खत्म है मलिर मलंग की फतह के साथ, जिन्होंने 25 रन से ये मुकाबला जीत लिया है। एक आउटस्टैंडिंग कमबैक। IDEAS 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The exhibition for the platform G2G, B2G, and B2B interactions, vendors and investments in defense production sector. A strategic seminar will also help to facilitate discussions global leaders within the defense sector. The dinner of ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. वाह, कितना अमेजिंग जानवर है। चलिए इसके मालिक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम, मलिक शुएब अमान फ्राम जिला चकवाल। अच्छा, और हमें इस जानवर के बारे में कुछ बताएं, कितने का है, कितनी उम्र का है और ये कहाँ से आया है? ये तलंग अलवान कैटल फार्म जिला चकवाल से रावलपिंडी के पास पड़ता है ना। तो इसकी डिमांड जो है 1 करोड़ 20 लाख रुपया कर रहे हैं और इधर भी इंशाल्लाह अच्छे रेस्पॉन्स आ रहा है। हर जो शौकीन है ना, ज़्यादा कैटल फार्मर वो मांग रहे हैं और अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है और अच्छे रेट आ रहे हैं। बाकी जो नसीब में होगा वही होगा। IDEAS 2020 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions and challenges within the defense sector. The 12th edition of IDEAS will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening to every one of you who are watching us from different parts of the world. Once again, we welcome you for an exciting contest where Gulshan Gohars are taking on Liari Legends in match number 8 of this KPL Season 3. News from the center has been that Asan Chitta, the captain of Gulshan Gohars, have won the toss and has opted to bowl first.
So here we go as match 8 is just about going to get underway. Oh, Loosener to start the proceedings by the quick bowler down the leg side. And this time he goes through the offside. It was there and length was there and he puts it away in style. This time it's launched. It's gone many a miles and safely over the advertising hoardings. First 6 of the night, a good one. This time he goes down the ground, all along the carpet. Kind of a tape ball, but we have seen some great stuff. This time he goes leg side and it's fine leg and goes into the boundary for 4. So 8 boundaries in the first over. He goes high. Somebody getting underneath in a big catch at short third. It was a sky, it was miscued. Went across the line, played away from the body and pays the price, does Nizar. 24 for 1. Flicked away off the hit and it's gone all the way to the boundary for 4. This time he goes through the offside. That's a beauty of a stroke. He gave it a real thump. Over wideish mid-off. It's a phenomenal achievement. Goes again through the offside. It's a flat one. It's Dawood Carnival here in Karachi. And have a look at that for a stroke. Unbelievable. 1+4, but it has been picked and just dispatched out of its presence. And there you go, bowls a full toss and he receives a thump and that is one of the best catches of this tournament. And excellently catched by the fielder. Ashraf Pathan goes for 22 of 7 deliveries. He bowls another full toss. Always full toss is not going to yield fruit. This time it's been thumped down the ground for the maximum. Visiting Layari legends. This time he has got that away. Fielder is trying to get under. He jumped in the air, but couldn't quite get his hands into that one. And umpire raised his arms. It means that has gone for 6. It is in the air. Who's going to take it? Fielder is placing himself under the ball, and he took that one beautifully, or very nicely, and one would say easily as well. So the 3rd wicket goes down. It's in the air. He is going to out race. Wicket keeper comes forward and grabs that one nicely. And finally, he gave his wicket away as well. He hit it in the air. Wicket keeper again in business. Yes, he's grabbing another catch gladly, gleefully. And another wicket goes down. And Mars suddenly is on a hat-trick. Saeed Bilal just came and went. Golden duck to his name, 70 for 5. He hits that away and hits that away well. He picked up a 6 here and much needed one as well. It is in the air, but it will clear the man at covers and it racing away to the deep extra covers boundary for 4 runs. He has hit that away and hit that away for a massive 6. That's a good shot. Right out of the mid of the bat. Shaban has driven that away. That's a beautiful shot. It has gone down to the boundary and then clatters it for runs. What a beauty of a shot. 26 runs of the last over, including 7 extras. 105 for 5. What they have scored in their allotted 6 overs. दोनों बैट्समैन तैयार हैं इनिंग्स आगाज करने के लिए. 105 रन्स यहाँ पे स्कोर करने में कामयाब हुए लियारी लेजेंड्स के बैट्समैन. राना मोहसिन फार एंड पहली बॉल लेकर और पहली गेंद को स्विंग कर दिया लॉन्ग लेग और फाइन लेग के दरमियान और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर. छक्का. अगली गेंद एक और ऊंचा स्ट्रोक और गेंद एक बार फिर बाउंड्री से बाहर. एक खूबसूरत जोरदार और बड़ा छक्का इस मर्तबा बहादुर का. एक और ऊंचा शॉट मिड विकेट बाउंड्री से बाहर. एक और छक्का.
छक्कों की हैट्रिक, राना मोहसिन पे तमाम बाव। इस मरतबा खूबसूरत शॉट, फ्लिक ऑफ द रिस्ट। पहली गेंद, तैमूर मिर्जा ने कहा मैं यहां पहुंच चुका हूं डीजे मोइन खान एकेडमी में, गेंद ग्राउंड से बाहर, छक्का। इस गेंद को तैमूर मिर्जा ने स्विंग कर दिया, वाइड ऑफ मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, 4 रन्स। तैमूर मिर्जा का ऊंचा लंबा खूबसूरत शॉट, क्या खूबसूरत दिलकश अंदाज में गेंद को सैर खाई है मीलों दूर, बहुत ही दूर, 6 रन के लिए। 59 रन हो चुके हैं। एक और बड़ा जोरदार और खूबसूरत शॉट, तैमूर मिर्जा हैविंग अ गो एट एवरीथिंग। अब रन्स उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक बन रहे हैं। इस गेंद को स्विंग कर दिया है ऑन साइड पे बहादुर लेफ्टी ने, और नतीजा सिर्फ एक होगा और वो है छक्का। Slower one, picked up on the leg side. It's up in the air. There is a fielder who is trying to get underneath that, and he takes it. They needed that, and they have made a very strong breakthrough. Taimur Mirza has now been dismissed. Good ball once again. Was there an inside air, or has it knocked the stumps? Yes, he has. Well, there was definitely some bat involved, but the ball might have rolled back onto the off stump. 2 wickets now in 2 balls for Hill. The stroke will get just a single. There is a shy at the bowler's end. They might collect an extra run on the overthrow. This time there might be an opportunity at the wicket-keeper's end. I think he has been dismissed. Yes, the finger has been raised already. It's Liaz who's going to walk back to the pavilion. Rana's going to start his second over. He gave away 28 runs of the first over of the innings. It's an outside edge that has been taken. What an interesting passage of play this has been for Riyali agents. Tell you what, it's Bahadur lefty who has now been dismissed. Fuller getting a thickish outside edge, going to go past the wicketkeeper and then the short third. A very fortunate boundary this for Shiraz. Slow one picked up on the leg side. It's up in the air. There is a fielder who was initially watching the ball. Well, he's still watching, but this time over the boundary ropes. Short. It has been pulled. Once again, it's in the air. Has it got the distance? I think it has. Just by the barest of margin, it went over the head of the fielder at Longdon. This time he has hit that over extra cover. Has he timed it well enough? But he's still running. There is a fielder who's going to need that. And there was no communication whatsoever. I think it was Qari Hamidullah and the other fielder. And they're going to collect another run on the overthrow. Oh my goodness, they're coming back for the other one. There might be a chance of run out at the bowler's end. It's all happening. Finally they have managed to run a batter out. Another wicket has gone down, the 5th of the night for Gulshan Gohar, Shiraz Ali. It's a full toss, picked away on the leg side. One bounce in fence. Arju, the new batter in, just facing his first delivery, just helping the ball on its way down the leg side. So 19 runs coming in the last over from Shah Jahan. Gulshan Gohar are going to end their innings on 114 for 5. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूबीएल अमीन KPL सीजन 3 2023 और दूसरी से थोड़ी देर बाद डीएचए क्रिकेट एकेडमी मोइन खान पर शुरू होने जा रही है। और पहली ही गेंद को मोड़ दिया है ऑन साइड पर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस बार गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई काफी देर हवा में रही और बहुत ही उम्दा कैच। बड़ा उम्दा कैच, आसान नहीं है अंडर द नाइट स्काइज इस तरह के कैच पकड़ना। पहला नुकसान यहां पर लियारी लेजेंड्स को। दूसरा ओवर, पिछले कदम पर जाकर गेंद को उठा दिया, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और क्या कर लिया उन्होंने। बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, ऑफ साइड दी, ऑफ स्टंप, बैट्समैन को विट जरूर दी मगर अच्छा बाउंस करने में कामयाब हुए। इस तरह दूसरी विकेट गिर गई है और स्कोर है महज 13। और इस बार गेंद को उठा दिया है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, क्या गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी या फिर
और ये अंपायर का इशारा कि ये छक्का। अशरफ लेफ्टी और इस बार गेंद को उठा दिया है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बिल्कुल लगता है कि इन्होंने याया हुसैनी की बात फौरन सुनी और कुछ एक्स्ट्रा की रूह इनके अंदर जो है वो और इस बार रन होंगे जी, बिल्कुल 4 रन। तो पहली 2 गेंदों पर 10 रन और यही चाहिए लियारी लेजेंड्स को। लियारी लेजेंड्स 33 2 विकेटों के नुकसान पर और अशरफ लेफ्टी की इस गेंद को उठा दिया है। फील्डर गेंद के नीचे है और उन्होंने इस कैच को मुकम्मल कर लिया। तो तीसरा नुकसान लियारी लेजेंड्स को 2.5 ओवर के खेल में 33 3 विकेटों के नुकसान पर। Yeah, they got to keep on trying. This time he thrushes it. It went through the covers. And I think it's gone all the way. Yes, it has. Nicely played. He split the field through the offside and got it in the gap for a boundary. And this time it's high in the air. Somebody should get underneath it. Oh, he's dropped it. It was easy as they come, in my opinion, because he's got underneath it and in the end just couldn't grab it. Good shot straight down the ground. Is it long? Yes, it's a gigantic one. What a blow that is. Tremendous. Well, that is colossal. It's out here. It had everything in it. He goes again. That's another one. 2 of 2. This is the momentum they need. This time on the rise. Outside the off stump, he got what a shot that is. And flick that away over square leg into the boundary after a couple of bounces. Vacant space available at a square leg. Lovely flick shot from Shubhan. This time he gets the connection, but we had to wait ages to get that. He does well to get it away for a boundary. And this time it was a quicker one. And they've scampered through for a single, but they will not be able to complete it as we see a run out at bowler's end. So Shaban has to take a long walk back to the dressing room as he's been run out. Oh, another big heave, but he gets beaten altogether. What an eventful this over has been. Great bowling. Forced him and dot ball to end the over. They've managed only 75 in their quota of 6 overs, which means that virtually they have made 66. It's not a big target for Gulshan Gohar, considering the fact that they have got a very strong batting lineup, especially with the likes of Taimur Mirza and Bahadur Lefty, who are going to be opening the batting. It's just 67 runs tonight, Kainat, and they have done it in the past. They have done it on 2 occasions in the first 2 games. Looks like it's going to be another easy victory for Gulshan Gohar's left arm seam is going to start the proceedings. Swung away on the leg side. It's all along the turf and some misfield from the field at Nayak. They will just get 1 run. He's going to come around the wicket first up. Starts off with a short delivery. It's passed on the leg side. And it's a flat 6 from Taimur Mirza. Another pickup shot. This time he has managed to hit that in the long on direction and way over the boundary ropes as well. And getting it outside the park. An exceptional shot, showing his dominance. He needs to come back well here, Rana Mohsin. A slower delivery, chance for the fielder at short third, and that has been taken in the third attempt. It's the chairman of KTPL, Zuhair Nasir, who completes that catch, and they get a big wicket of Taimur Mirza. Big swing on the leg side, it's up in the air, and it's over the boundary ropes. What a hit of the very first ball, this from Ilyas Jani. He's going to bowl to the left-hander, Bahadur Lefty, once again coming around the wicket. Big swing on the leg side, it's up in the air and it's into the stands. He doesn't need second invitation, especially when the ball is pitched up. Swung away on the leg side, just helping the ball on its way. And I think that has travelled to Journey as well. Yes, the arms are aloft from the on-field umpire. Not good bowling. This from Sohail Lefty. Last ball of the over coming up. Once again, a full swing over long gone. He's not going anywhere, but he's going to stay there till the end, depositing the ball in the dugout. In fact, in the pavilion, I believe. And there you go.
He's hit that hard, and it's 1 bounce 4. And that's another one in the air. The batter is also not managing it to connect out of the screws. But this time around, the pace of the bowler has carried the ball all the way for 6. Which player? Outside edge, and finally, he gets one in his favor, does Shah Jahan. Shah Jahan is well respected by all the tape bodies. Outside the off stump this time, spanked away. 1 bounce 4. Just to the left of mid-off. Nicely executed stroke. And this match is over. They have won that match comfortably by lots of wickets. So here we are. Welcome back to every one of you. With match number 7, North Nawabs are taking on Clifton Populars. Live all the way from BTV Sports Club, Moin Khan Cricket Academy, Karachi. And the news from the center is that Clifton Populars have won the toss and opted to bat first. So here we are, the umpires are ready, players are ready, and the umpire says, let's play. Dia denied against Johar Jawans. Starts off with a short delivery that has been put on the leg side. There's a fielder out there. They'll just get a single to get off the mark with. We'll be feeling good, will be Fahad. And there you go, this time it's Asad Shah who has taken serious bit of punishment, and it's been hooked away. No half edgers from Asad Shah. Another short pitch delivery that has been nailed on the leg side. That's going to be another 6. Well, well, well. This time it's in the air. It smiles in the air. Somebody getting underneath it, but no one is there actually. It's gone in the gap for 4. Look at that. This is not going to help his cause. Poor line, poor length, and pays the price every time. And let's go together, says Fahad to Sehram. Wow, in the arc and away it went a country mile. He drops his another shot, this time over long gone. That's a flat hit. Well, they're just dealing in maximum so far, both these openers. It's short, it's pulled. See you later. He says it to the ball. That's the 3rd of the over. With 1 ball still remaining in the 2nd over. And that ball too has been sent into those trees, I would say. Oh, what a strike. What a way to end the over. Fahad is now on strike and we can expect anything from him. Boom shakalaka! Over mid-wicket. Unstoppable Fahad. But he does, but this time it's Asad, it's the captain, gets a full toss and sends it way back into the stands, into the members. असद शाह 360 ग्राउंड से बाहर फेंके इनको जोरदार छक्का फहद मियां चुन्नू का इस बार अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हुए एफएमसी फहद मियां चुन्नू वेरी वेल प्लेड on just 14 balls Danish Anis 360 Asad Shah on the toes जबरदस्त हिट 4 रन्स के लिए क्या जबरदस्त स्ट्रोक है असद शाह एक और जोरदार हिट असद की बाउंड्री के बाहर एक और छक्का क्लिफ्टन पॉपुलर का डगआउट खुश लेकिन इस बार जहां हिट करने गए थे वहीं हिट किया गेंद को और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर एक और जोरदार छक्का 360 असद शाह का फुल टॉस गेंद और जैसा उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो ही किया असद शाह ने एक और जोरदार छक्का अंपायर देखना चाह रहे हैं लेकिन यहां ऐसा लगा कि गेंद बाउंड्री के बाहर गई है दानिश
यहाँ अंपायर चेक कर रहे हैं कि बॉल जी बिल्कुल असद शाह अपनी निफ सेंचुरी 15 गेंदों पे मुकम्मल कर चुके। 14 गेंदों पे फाद मियां चुन्नू ने मुकम्मल की। एक और जोरदार हिट असद शाह इन फुल फ्लो और जोरदार छक्का कैप्टन क्लिफ्टन पॉपुलर 360 का। एक और जबरदस्त हिट फाद मियां चुन्नू, एक और छक्का दानिश अनीस। हो रहा है यहाँ पर नसीम राजपूत। एक्स्ट्रा कवर पर जोरदार छक्का। व्हाट अ शॉट। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग और इस बार एक और शानदार स्ट्रोक फाद मियां चुन्नू का। फर्स्ट बॉल के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर की गई और यूबीएल अमीन सीजन 3 का सबसे बड़ा स्कोर क्लिफ्टन पॉपुलर अब तक करने में कामयाब हुए। 141 फॉर नो लॉस। Not Nawab, they just kept watching the carnage. Brilliant shots they played and played with real dominance. Goes for it. What a good blow that is. Into the stands. What a perfect start. His half-pitch bowler has announced his presence. Goes for it. Pulled away. Has beaten the man. Could be a boundary. It is a boundary. That's the start they were looking for. Well played. He goes for it. That's the connection. He loved it. What a shot that is. Half his bowler is off to a flyer here. Spanked away to the offside. He has got the elevation and he found the boundary. Lovely shot. He has picked up his first boundary, 7 of the over so far. Big full toss. He smoked it. He smoked it hard. Over the rope for 6 more. Oh, look at him. Look at him. He's absolutely jubilant. It's high, it's handsome. What a good strike. What a tremendous strike. My word, that is enormous. One of the biggest sixes of the tournament. Outside edge gone, caught behind. No doubt whatsoever. It's a huge wicket. Half his bowler went for the big shot again. Massive deflection. And wicketkeeper did the rest. यूबीएल इटसेल्फ क्रिकेट को लेकर कितना नहीं, यूबीएल तो बहुत पैशनेट है। आपने जब सुना हो यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में। और यहाँ पर विकेट गिर गई है, हम व्यूअर्स को बताते हैं। बहुत जबरदस्त क्रिकेट जारी है और विकेट्स गिर रहे हैं। Shafi Agha, the latest victim, got out. So, a couple of wickets falls in the shorter space of time. He goes for it to the outside edge. And is taken. Wicket number 3 down of the over. What's happening here? Mansoor has been very penetrative. And now he's looking very ominous and lethal. He has taken the wicket number 3 in this over. It's a hat-trick ball, forget that. He goes for it, swing of the bat. Could be out, gone! It's a hat-trick! It's a hat-trick for Mansoor. What a performance. 4 wickets in the over. Would you believe it? Oh, what we are watching, what we are seeing. He goes for naught. 4 down for 44. In the slot over the extra cover, that is going to go straight into the hands of that fielder. Initially it was all about maximum, now they have started to pick up wickets. And the batting line of North Nawabs is falling like a house of cards here. And there you go, it smiles in the air once again. Somebody getting underneath it. And what happened? I think he's pouched it safely. Very good catch in the end. He's going to walk back to the pavilion without even troubling the scorers. And Pathan, it's 48 for 6. Swung away on the left side, it's in the air. And it's way past the fielder at square leg. That's going to run away for 4. And how about that? It's long. And where is it going? It's going out of the ground. What a stroke that is, Zishan. That's the power of Pathan. Not many would have been able to hit that ball on that length. And full toss has been belted into the members. Wow. That's in the air again. How far is it that? I think it's 1 bounce 4. Or has it carried all the way? It's gone all the way. 3 sixes of 3 deliveries. What a way to finish the over.
Nicely bowled and nicely played, but unfortunately he's picked out the man at the deep mid-off. Another wicket goes down for North Nawabs. Their 7th of the night. Asif Pathan's cameo comes to an end. 25 of 8 for him tonight. So it's Saram, the new coming batter, who is known for his bowling more than his batting, but he can hold the bat. Gets a dot going on to finish the innings. So it's 82 for 7 what they achieve in their 6 overs, which means that the lead is going to be 59 runs. वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी से। और बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा यहाँ पर किया है क्लिफ्टन की टीम ने पहली इनिंग्स में, और 59 रन के करीब उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बर्तरी हासिल की है। बेहतर गेंद थी जिसे खेल दिया है फाइन लेग की जानिब। फील्डर ने गेंद को बाउंड्री के आधे रास्ते में रोका और पहला रन इस इनिंग्स का। जी हाँ, और फान ने पहली गेंद को कर दिया है खूबसूरती के साथ, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा गिरी, छक्का। और इस मरतबा ऊंचा और जोरदार शॉट, गेंद हवा से बातें करती हुई ग्राउंड से बाहर जाकर गिरी, एक और खूबसूरत छक्का। इस मरतबा बहुत खूबसूरत शॉट देखने में बनता है, हल्का सा इनसाइड आउट ओवर डीप एक्स्ट्रा कवर्स, बहुत ही उम्दा शॉट। बॉलर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप विड्थ मिली और गेंद को ब्लास्ट कर दिया ऑफ साइड में। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बड़ा खूबसूरत शॉट, वन बाउंस इनटू द कवर्स बाउंड्री, एक और चौका। और इस मरतबा गेंद को ऑन दी अप बेल्ट कर दिया है ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, और इस खातून का जज्बा देखें, लुक एट दैट। इस पर तो बड़ा एक्सेप्शनल शॉट, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का। एक और ऊंचा शॉट, और तो फिर गेंद ट्रेवल कर गई बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का। और इस गेंद को खूबसूरती से किया, गो के फील्डर मौजूद थे मगर न सिर्फ गेंद उनके ऊपर से गुजरी और बाउंड्री से बाहर जा गिरी, एक और छक्का। बहुत अच्छा लग रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। और टेप बॉल की क्रिकेट हमारे वक्तों में भी होती थी, लेकिन इस लेवल पे नहीं होती थी। और मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट की प्रमोशन के लिए बेस्ट चीज़ है। डेफिनेटली क्रिकेट की प्रमोशन के लिए इस लीग का बहुत बड़ा रोल है। क्रिकेट को बड़ा खूबसूरत ग्राउंड इस्तेमाल हो रहा है, बड़ी लाइटिंग ज़बरदस्त है। और जियो सुपर की टीम को और तमाम ऑर्गेनाइजर्स को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना ज़बरदस्त इवेंट करा रहे हैं कि लोग बहुत इसको एंजॉय कर रहे हैं। मुझे नसीम राजा ने कई दफ़ा इनवाइट ज़रूर किया, लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं गैर हाजिर हूँ। लेकिन आज आने का जो इत्तेफाक हुआ, और सबसे पहले नसीम भाई को मैंने बोला कि मैं आ गया हूँ, तो फ़ौरन आए। और ऐसा 6 अगेंस्ट जबरदस्त माहौल बना हुआ है और छक्के चौकों की गूंज है। Into his last over, and it's going to be the innings last over as well. He starts off with a full toss which has been belted hard. It's going, and it's gone! There you see Shahid Aslam, the on-field umpire, signaling it as a no ball. Can score 100 once again. They will definitely score 100. That's going to go over the boundary ropes. Well, that was launched from Clifton and that landed in North Karachi. So with that performance, Clifton Popular also becomes the first side to go past 100 on both the occasions in one game. They now lead by 159 runs. Huge target to chase, 160s to be specific. It's not going to be easy. Here's the first ball. This one is going down the leg side. Has to be a wide. Yes, it is. And here he has hit that one in the air. One bounce into the long off boundary for 4. Good shot. There we go. He has hit that one away into the leg side, and it's gone all the way. This one is put away.
and put away over to the leg side again. Another 6. And he has got that away and got that away beautifully. 6. Again, even better through the offside, and it landed in the trees, and then he bashed his bat at the pitch in his trademark style, the Hafiz bowler. This is coming down towards the fine leg boundary. Somebody has to pick it up from outside the boundary. This is in the air. Fielder is trying to get under the ball. Yes, he has got under the ball and he has taken that catch as well. So first wicket goes down at the score of 54, and Mansoor is the one who got a wicket on the final ball of his first over. And Yaya has hit it straight down to the throat of the fielder, who accepted that gleefully, and another wicket goes down. It is coming out of the ground. 6 more. और इस बार हाफिज बॉलर ने गेंद को स्विंग कर दिया ऑन साइड में. फील्डर जहां पहुंचना चाहते पहुंच ना पाए और गेंद टप्पे खाती हुई बाउंड्री से बाहर निकल गई. चौका. तो 159 रन 6 ओवर्स में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है. इस बार बड़ा खूबसूरत शॉट फ्रंट फुट पे आके लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर. 6 रन. बाउंस के बाद गेंद गई गली की जानिब. ऑलमोस्ट थ्रो में लग गया और बैट्समैन बिल्कुल साफ आउट हैं और उन्होंने सीधा दौड़ना शुरू कर दिया डग आउट की जानिब. 85 पे तीसरा खिलाड़ी आउट हुआ है. क्रिकेट लविंग स्पोर्ट्स लविंग नेशन है और इस मरतबा बड़ा जोरदार शॉट और भरपूर कुव्वत से हिट किया. बहुत उम्दा छक्का यहाँ पर आसिफ का. और एक बार फिर से हवा में है गेंद और यहाँ पे फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, लेकिन जी हाँ, फाद मियां चन्नू ने कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की और अपनी हाइट का भरपूर इस्तेमाल किया है वहां पे. पठान 7 रन बनाकर आउट हुए. 93 पे 4. इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए. ऊंचा गेंद ने फील्डर के आगे टप्पा खाया, उनको धोखा देती, उनको पैफल करती हुई निकल गई बाउंड्री से बाहर. 4 रन के लिए और इस तरह 61 रन के बड़े मार्जिन से ये मुकाबला अपने नाम किया है. क्लिफ्टन पॉपुलर्स ने बहुत उम्दा कारकर्दगी एफएस क्लिफ्टन की जानिब से. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Once again we welcome you all. A brand new match coming up. UBL Amin KTPL Season 3. George Jawan will take on Maleed Malang. He was very confident at the time of toss. He was very clear. He opted to bat first straight away. So we all set here for the match. The match number 2 of today. Maleed Malang will take on George Jawan. First ball coming up. Here he goes, good swing of the bat. Straight away he made his presence. It's high and in hand and it appeared. My word, what a good strike that is. What a start from Daud Khan. Flat, hard, nobody's out there. One bounce to the boundary. Outside edge gone. Is he gone? We have to wait for the umpire signal. Yes, finger goes up. And DK is not a happy man. He suggested that he hasn't hit it, but we saw some kind of deviation. George Jawan, they are absolutely delighted. Good sound of the bat. Is it long enough? Yes, more than enough. That is gigantic from Karim. Either it's a wicket or it's a 6. Good strike, good strike. First ball over long on.
6 more. This shot was only hit the wrist power. It's high in the air. It got a lot of height. And this time here got the distance as well. Quick provided, beautifully played. 6 to finish the over. 3 sixes in this partnership. Round the wicket. He goes for it, he waited, and what a good shot that is. It has gone many a mile. My word, what a good strike that is. And welcome to the crease, Farman. Pulled away, gone. Good catch. The batsman can't believe it. Kaleem, he smashed it pretty well, but picked the man to the perfection at square leg. Farman has got the breakthrough. He struck it well taken. It was a tough one. Oh, इस मरतबा बड़ा जोरदार खूबसूरत शॉट फ्रंट फुट पे आए ओवर पे गेंद करना किसी गुनाह से कम नहीं है बॉल में फरमान 5वें ओवर के साथ और इस गेंद को हिट आउट किया मगर गेंद कुछ टप्पे खाती हुई जा रही है मिड विकेट बाउंड्री जाने फील्डर ने भरपूर कोशिश की वहां पर लेकिन लगता है कि कामयाब नहीं हुए 2 फील्डर से वहां पर गेंद फिर भी बाउंड्री से बाहर चौका इस बार एड हुआ है फील्डर गेंद के नीचे और गेंद को ग्रैब किया अपने दोनों हाथों से इस तरह ये एक और विकेट MM 78 पे थी बड़ी बेहतरीन बॉलिंग मगर इस मर्तबा फाइन लेग बाउंड्री से बाहर राउंड द कॉर्नर और ढोल वालों के लिए एक मर्तबा फिर मौका कि अपने ढोल को खूब पीटें Here we go फर्स्ट बॉल और इस गेंद को हिट कर दिया ऑन साइड पे और गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री से बाहर छक्का तो नहीं लेकिन चौके से आगाज इस मर्तबा गेंद को हिट किया एंड इट हैज गॉन ऑल द वे नहीं हो सकी गेंद चूंकि फील्डर मौजूद थे बिल्कुल बाउंड्री पर और अभी हम बात कर रहे थे बॉलर के लिए कि बॉलर भी कुछ कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि वो गेम से बाहर हैं उन्होंने विकेट हासिल किया है इन फॉर्म में इमरान की 46 पे आउट हुए इस मर्तबा इस गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑन पोजीशन पर और गेंद बाउंड्री से बाहर 6 रन इस बार तैयार थे मुख्तार ऐसा लगता है हमारी बात सुन ली उन्होंने इस बार बैक लिफ्ट भी कदरे कम थी बल्ला वहीं से लेके आए जहां से उठाया और बड़ा जोरदार शॉट मुख्तार छच्चर यू ब्यूटी वाइड ऑफ मिड ऑन एक छक्का व्हाट अ वे टू फिनिश आप 2 गेंदों पे 2 छक्के लगे 103 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए मलीर मलंग ने It's a very good batting performance by Maleer Malang. Finally they managed to score 103 in their allotted 6 overs. It was looking a little difficult. As we see, Majid Gholi will start the proceedings. He was one of the pick of the bowlers yesterday night, picked up 5 wickets. Started off with a slow takes a right hander. Shot. This time he has managed to pull it. He has connected that well enough. That's going to run away for 4 down towards fine leg. Yeah, it's pretty hard to adjust for a bowler against the left-hander. Swung away on the leg side. It's flat, it's hard, and it's all the way for 4 again. That deep mid-wicket did not have much distance cover. Still, how well did he time that? Starts off with a fuller delivery. That has been launched over mid-wicket. And I think that has gone all the way for 6. Yes, arms are allowed from the field umpire. He goes straight. It's up in the air. Long on is trying to get underneath that. And that has been taken. Big wicket this for Maleer Malang. It's Nasir, the captain, who is going to be walking back. बिल्कुल सर लोग आपको सुनना चाहेंगे लेकिन आप थोड़ा सा माइक ऊपर करें ताकि जो व्यूवर्स हैं वो आपकी बात सुन सके और ये जान सकें कि प्रीमियर लीग में किस तरह की रौनक लगी है क्रिकेट की नहीं इट्स वेरी नाइस फैमिली एंटरटेनमेंट बड़ा अच्छा म्यूजिक है एंटरटेनमेंट ड्रम्स हैं क्रिकेट तो अपनी जगह है ही एक्साइटिंग वी आर एंजॉयिंग इट विद फैमिली Oh, okay. So, yeah, different fans here. They're happy. They're enjoying the Premier League. But now let's go back to the commentary box. He pulls a low toss and that has been tongued over mid-wicket. They were looking for it. And Basit has delivered one. Now, that is the problem with this game, really. Another swing. It's high and it's handsome. Second maximum of the over. And not a good way to finish off the over this from Majid Gholi.
He goes for it. Good swing of the bat, and look at that. That's gone many a mile. What a good stroke is. Absolutely muscled by Shah. Good shot, good shot. Flick of the wrist. That is extraordinary from Shah. That is even better from him. Chance should be taken. Gone. Certainly gone. Winger covered down to his left. And a simple catch for him and some relief and consolation puzzle here for his side, Malir Malangs. And Bassett has to go. Pulls it, catches a cry. Gone. Oh, good catch. It's out. He's for the house. Pulled it well. And Shah has been dismissed. It's a big wicket. In the air, goes over offside. Glorious shot. One bounce over extra cover. Flick of the wrist. Is it long enough? Somebody is positioning himself and got him. Good catch. Good catch. All. A good catching by Malir Malangs. Umair went for 0. 71 for 4. Smashed high in the air. Somebody is carrying on the ball. Daud Khan once again. Got him. He's an exceptional fielder. He doesn't miss many. It was a high catch. He kept his cool. In the end, no mistake whatsoever. Falak has to walk back now. Low full toss. Smack down the ground. Could be gone. Oh, wicket falls in. Good catch. He was on a hat-trick, Ali. The catching spot has been brilliant. Arib Palki went for 0. Full toss, mistimed, he's got the height. Somebody should catch it. Dropped. Hat-trick missed here. A sitter has been dropped. Well, dropped from in between the hands. Last ball of the innings. Big full toss. He's got the height. Will this be taken? Gone. Daud Khan once again safe at the house. 4 wickets already. And George Jawan innings has come to a close. 80 for the loss of 7 wickets. एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी से तीसरी इनिंग्स को इस मुकाबले की ऑफिशिएट करने के लिए तैयार हैं मलीर मलंग्स अपनी दूसरी इनिंग्स खेलेगा 23 रन की सबकत से पहली इनिंग्स की बुनियाद पर पहली बॉल इस इनिंग्स की और इस गेंद को ड्राइव करने में कामयाब हुए ऑफ साइड में गेंद गई रेगोशेड होकर और 1 रन बन गया इस बार बड़ी हिट मारने की कोशिश टाइम प्रॉपर नहीं कर सके थे लेकिन मिड ऑफ के फील्डर चूंकि सर्कल में थे इसलिए 4 रन हासिल हुए यहाँ प्रॉपर टाइम नहीं किया था दाऊद पठान ने लेकिन लकी रहे कि 4 रन मिले इस बार बहुत ही अच्छा कनेक्शन गैप हासिल करने में कामयाब हुए डीके 4 रन हासिल किए और इस बार इनसाइड एज मिमरान की बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए फरमान मिमरान परफॉर्म कर रहे थे मलीर मलंग के लिए क्रूशियल विकेट हासिल की यहां फरमान ने इस बार थोड़ी सी अपनी लाइन को मिस किया था जिसका भरपूर फायदा उठाया डीके दाऊद खान पठान ने इस बार आउट होने का खतरा फील्डर गेंद के नीचे और न्यू कलीम की इनिंग का खात्मा इरफान ने ये दूसरी कामयाबी दिलाई है जॉर्ज जवान को और स्ट्रॉन्ग कमबैक यहां जवान था इस तरह एक और विकेट गिरी 20 रन पे अब 3 खिलाड़ी आउट हो गए और कलीम 1 रन बनाकर आउट हुए इस बार अच्छा कनेक्शन लेकिन बाउंड्री के हाथों में थामे गए इस तरह दाऊद खान पठान बहुत ही बड़ी विकेट यहां जॉर्ज जवान ने हासिल की मच नीडेड विकेट और इस बार थोड़ी सी खुद मुख्तारी जरूर दिखाई मुख्तियार ने छक्का इस बार सद्दाम की गेंद गाइड करने में कामयाब हुए स्क्वायर लेग की जानिब फील्डर गेंद को नहीं रोक सके इस तरह 4 रन हासिल हुए And this time it's a connection. He has bludgeoned away over cow corner. That
is a majestic 6. Outside edge and grabbed gladly by the keeper. He says thank you very much and celebrations of Farman. Badar has now been dismissed, walking back after scoring 10. It's 46 for 4. From a different angle, a different strike, and it's gone away. He goes again. This time it's even bigger. That's out of here. See you later. Come on, son. I need a piece of it, says the batter. You bowl like that, you're going to travel all night along for these type of gigantic blows. There's a skimmer. Given the responsibility to finish off the innings now. And there you go. Welcome to the arena. Wow. These guys are absolutely merciless. He's going big. This time he goes over cover. This won't go all the way. But I think it's trickled over. Yeah, it has trickled over eventually to the boundary. Didn't carry it on the full, but a boundary nevertheless. 3 balls now remaining in the innings. Oh, he's hit that hard, but it's only going to be a single. Oh, they look for 2. Here's the trouble, and he gets out on the non-striker's end. Well, well, well. It's all happening here. I would say he's sacrificed his wicket because they are into the last over, but there was never a run. He goes downtown, he goes flat, and he goes all the way. 1 bounce, that's a skimmer. And this time he's got the length, but couldn't get the elevation as he would have liked. It's going to be a single. They will look to get another one, but it's not there. Another run out, just a couple of run outs towards the end of the innings. But they've managed 85 for 5 in their 6 overs. Johar Jawans needing 100 to register their first ever victory in this KTPL Season 3. Umpire signals, let's play, gentlemen. The last innings of this match is getting underway here. Here's Majid Gholi steaming in. And first one is hit back, and hit back with the power. Over wide, long on for a massive 6. What a way to start the proceedings. What a magnificent shot. He gets that away. Wide of the fielder at fine leg, and it raced away in an eye flash. Runs have started flown. He goes again, but fielder is there. Who doesn't make any mistake at the long on boundary? Majid Gholi is saying, you hit me a 6 and you clobbered me a 4. Now it's my turn, and go back to your dugout. 10 of 3, 10 for 1 on the board. George Jones. Basit is taking strike. And straight away, he goes bang over long on. That good hit right out of the screws. This time it is going, and gone out of the boundary. What a magnificent stroke. And Shah has given this a go. And given this a go beautifully. I think it bounced once before it get over the line. 4 more. Basit has lofted him over long off. What a beautiful shot. Umpire is lofting his arms for signaling, and that's a terrific stuff from Basit. He has swung it away, and swung it away in the air and cleared the boundary by a big margin. इस मर्तबा छोटी गेंद कर दी थी और इसको सजा देने में कामयाब हुए हैं। जिस तरह चाह रहे थे उस तरह कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 4 रन जरूर मिले हैं। मेहनत की बात की जाए तो कोई कमी नहीं है। जिस किस्म की स्ट्रोक खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे हैं यहाँ पे। लॉन्ग ऑन के हाथों कैच थमा बैठे और टिपिकल सेलिब्रेशन। बस लेफ्टी को पवेलियन दिखाते हुए कलाइयों का इस्तेमाल करने चाह रहे थे, लेकिन सिर्फ पोजीशन बना के ही पवेलियन लौटे हैं। जोरदार हिट लगाई है और अपनी अनाउंसमेंट की है, लेकिन यहाँ पे एक और कैच पकड़ने में कामयाब हुए दाऊद पठान।
फलक बशीर 0 रन पर आउट। KTPL सीजन 3 से एंजॉय होते हुए और इस मरतबा पीछे पड़ी हुई इस गेंद को खूब सजा दी है स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। लाजवाब था और इस बार फिर एक लाजवाब कनेक्शन देखना होगा। गेंद जाएगी यहां लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का और फिनिश अच्छा नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्लॉट में कर दी है गेंद और सफर किया है दूर का। यहां पे एक और छिक्का इस मरतबा उमर ने अपने हाथ खोले हैं। फजल अफरीदी पहले ही बॉल को भेज दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री की जानिब, लेकिन इनफ लेग्स नहीं थी, क्लियर नहीं कर पाए। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ने में कामयाब। एक और विकेट गिर गई है और यहां पर बहुत ही मुश्किल होती हुई इक्वेशन, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इस मरतबा उठा दिया है बहुत देर की मेहरबान आते आते। फील्डर वहां पे मौजूद है मिड विकेट पे, वो इसने कलाइयों का इस्तेमाल करके बॉल को उठाया और 6 रन बटोरे। और फिर से यहाँ पे कवर्स में खेल दिया है और गेंद जा रही है बाउंड्री की जानिब। यहाँ पे भी चौका मिल जाएगा, लेकिन मैच जो है वो हाथ से निकल गया है यहाँ पे और जौहर जवान जो है वो मैच हार चुके हैं, जबकि बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दाऊद पठान की जानिब से जितनी इनकी तारीफ की जाए कम। कंप्रीहेंसिव विक्ट्री। Welcome back to Sports Club Boyan Khan Academy. Match number 11 of KTPL Season 3. It's Clifton Popular up against Karachi Knights here tonight. From this, we an everything encounter once again between these two very strong sides. BC2. If we talk about the toss, it was Karachi Knights who wanted to bat first.
set. The umpires are all set. The batters are all set. We are in for the first ball of this match number 11 of UBL Amin KTPL Season 3. Irfan Nana will be bowling to Ubed lefty. Some fuller delivery that has been picked up on the leg side, and that is gone all the way past. Wonderful start this from Ubed. A 6 of the very first ball of the innings. Once again, another pickup shot, almost a carbon copy of what happened in the first delivery. This time it has been taken. And it's Fahad Mia Chunnu down there at deep square leg, who has taken an excellent catch. So a 6 and a wicket for Ubed, and a wonderful start for Clifton Popular. Farhad gets ready for once again. This time he has managed to hit that. Oh, just over a bit off. And it's going to run away for as well. Low toss. He has connected that, and that has gone over the boundary ropes for a maximum. Much relief for the batting side. Finally, he found a sweet spot of the bat. Another slower one. This time he decided to go straight. Is it long enough? I don't think it has got it. It's just over long offside, and the arms are aloft from the on-field umpire. Back-to-back maximums to Usman. Can he witness a wicket as well? Outside edge, is it? Yes, it is. Once again, it's Irfan sending off the batter. Just when we were mentioning, we have seen pretty much everything. Irfan finishes off with another wicket. Bowlers have done a decent job. And this time around, batsman is in with a good reply to the bowler. He just banged that one outside the boundary over to the leg side, and it's a no ball as well. There we go. Come on, boy. Oh, got that away! This is going miles! Oh, what a shot! Shot, yaar! That was banged. What a great hit that one was from Usman. He's having a go at everything now. And there you go. Full toss. And it gets tonked over long on. 6. It gets hammered, tonked, or punished. Oh, very well bowled. What a peach of a ball. It pitched just in front of the batsman and then probably moved away a bit. And wicketkeeper did take that catch. He goes for 34, the Usman. Here we go. He has pumped that away and pumped that away over wide mid on. 6. This one is going, and gone right in front of the scorchcourt. Ah, shot, yaar. Here he goes again. It is lofted in the air, and it comes down as a 6, and up goes the arm of the umpire. There we go. Last ball of the innings. If it does not bowl a no or a wide or even a dead. Batsman whipped it away. Bit of mark on that one, and that one travelled all the way at deep forward square leg boundary for 6. Wow, what a way to finish the innings, and what a way to bring their 100 up. 101 what they have scored in their allotted 6 overs, and Wasim and Imtiaz finished their innings well. अली शेर पहली बॉल लेकर इस इनिंग्स की और पहली गेंद को उठा दिया. आई थिंक हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर कहीं जाकर गेंद ने लैंड किया है. जोरदार छक्का कायनात. अच्छा ने अपने इरादे और अज़ाइम जाहिर कर दिए हैं. एक और जोरदार शॉट. किसी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं. नतीजा एक बार फिर छक्के की सूरत में. और इस मर्तबा बड़ा जोरदार शॉट. असद शाह अपने पूरे ड्राइव पे, पूरे स्विंग पे. ओह माय गॉड, इस गेंद को हिट किया और फिर खूब हिट किया और बहुत जोरदार छक्का लगाया. असद शाह एक बार फिर ऑफ साइड में. एक और खूबसूरत छक्का. छक्कों की बरसात, हालांकि मौसम बरसात का नहीं डीएचए में. और इस गेंद को फहद मियां चन्नू ने खूबसूरती के साथ छक्का.
इस दौरान ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को कवर्स में फोर्स किया, कोई मौका नहीं, 4 रन। बैक फुट पे जाके उन्होंने पॉइंट और कवर के बीच में से ये शॉट खेला है और इस गेंद को बैक फुट पे जाके हुक कर दिया ऑन साइड में, एक और छक्का। ओह, आज रुकने वाले नहीं बैट्समैन, हर जगह छक्के पड़ रहे हैं। खूबसूरत जारहाना तूफानी बैटिंग। ओह, ऑन साइड में स्विंग किया, अपनी क्रीज में खड़े हैं क्योंकि उन्हें पता है कि गेंद बाउंड्री से बाहर गिरेगी। निहायत शानदार यादगार हाफ सेंचुरी 10 गेंदों पे। उफ खुदाया। अगली गेंद, इस मरतबा गेंद हवा में है, फील्डर नीचे, और कोई गलती नहीं की इस मरतबा फील्डर ने, लेकिन असद आउट तो हुए मगर टेक करने के बाद 54 रन बनाए 11 गेंदों पर। It's a pickup shot on the leg side that has gone high up in the air. Ubaid left, he's jumping in the air, but the ball wins the race. It's another maximum to the right-hander. He goes again, this time it's flat and it's over once again. But they're going to lob their arms because that's another maximum to the big right-hander. Big shot, pulled away, and it's gone over the rope. 6 more. Once again, he's got a flat 6 to his name. What an over this time turning out to be for Clifton Popular. Outside the off stump, smashed it down the ground, and it's long enough. Yes, up goes the arms of umpire, and Fadmir Chinu continues to amaze us. It's a slower delivery. He has picked it up all right, and he has sent that into an orbit. That's another maximum for Fahad, and with that, 100 also comes up for Clifton Popular. Another pickup shot. These are easy picking for someone like Fahad Miachun. How easily has he managed to clear the boundary on that occasion? Just managed to hit it towards long off. Will get a single. And with that, he also go past his half century. 50 of just 16 deliveries to Fahad Miachunu. An excellent knock. What a time he's having out here in Karachi. That's way over the boundary ropes towards that futsal field. Didn't this time. He got a chance to get the strike back and smash it down the ground. Not many balls are left to finish the over. Went for it. Pick up shot. 6 more. No problem. What a batting performance here from Fahad Miachunu. Powerfully struck down the ground. It's not going to go all the way for 4. They will be satisfied with the single. And why not? They're going to finish off their innings on 139 for the loss of just 1 wicket. And Clifton Popular gets a very healthy lead of 38 runs. There's your on your screen for Fahad Miachunu and the captain, Asad Shah, who scored 50 for just 11 deliveries. All right, we're back now with the third innings of this match. Match 11 here in this competition. A big lead for Clifton Populars. 38 runs, courtesy brilliance with the bat by Fahad and Asad Shah, the captain. Play says the umpire. Nicely bowled. This is the start you can expect when you have runs on the board. Arfan is the bowler. Yeah, they need some stuff like that. Full toss, picked up, 1 bounce over the boundary for 4. Just like that. This time he's got the connection and it's another boundary. 1 bounce, 4. He's dealing in boundaries instead of 6s. This time it's launched and it's gone many miles in the air, and eventually it's 16 without loss of wicket, chases in pursuit. So it's going to be Farhad Abdali to share the attack. Oh, is there a nick? They're gone for the appeal and finger is raised as well. So Farhad Abdali, who was struggling to get back into form, he gets a wicket of the very first delivery of his spell. That will do his confidence a world of good. Usman John has gone for 1s.
This time it's picked and dispatched out of its presence. That's a big blow by the left-hander. Well, taken all the power from his body to onto that shot. Arfan comes and he's been hit in the air. And it's going to fall safely. Or not. Oh, it's in the lap of the fielder. It was miles in the air. Confused me as well. At the time it was in the air. It went miles in the air. And safely pouched. Very good catch. Ubaid lefty made 20 on 8 deliveries. There you go. This is what is expected by him. And this is what he needs to keep on doing it. It's flicked in the air. It's high. And it's handsome as well, as it has crossed the boundary. Was not that of a confident shot, but again, it was hit for a boundary. And this time it's been thumped hard and it's in the air. And it's been caught. So, looks as if that it's going to be Farhad Abdali's night. His second wicket. Junaid has made just 8 runs of 5 deliveries. It's 49 for 3. बड़े शॉट के लिए यहाँ पर गए ऑन द राइज. इस दफा लेंथ लेने में कामयाब होंगे यकीनन. बॉल गई बाउंड्री के बाहर. अच्छा शॉट. इस दफा कनेक्ट करने में कामयाब हुए. बॉल को मिडिल अच्छा किया. बड़े शॉट के लिए गए यहाँ पर. कनेक्ट करने में कामयाब हुए. बहुत ही आला शॉट. स्पेक्टेटर्स में जाके गिरी गेंद और पहली बॉल पे 6 रन हासिल किए. इस बॉल फैट गए और इनफील्ड के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए. और एफर्ट जरूर की. इतनी अच्छी एफर्ट नहीं कि वो बॉल रोक पाते, लेकिन बॉल गई बाउंड्री की तरफ. 10 रन आ चुके हैं पहली 2 बॉलों पर. आउटसाइड एज आउट होना चाहिए यकीनन. और टॉप कर दिया. कैजुअल एफर्ट, लेकिन इस दौरान 1 रन मिला. मंसूर को विकेट मिल सकती थी, लेकिन बहरहाल विकेटलेस रहे. यहाँ पर एक अपना आखिरी ओवर मुकम्मल किया. पहला और आखिरी ओवर 6 ओवर्स के बाद 77 पर 3 और 39 रन की लीड ली है. Second innings of the game, because 40 by no stretch of imagination is going to be tough for Clifton Popular, especially with the batting lineup they have got. Spinner starts off with a half track and that has been nailed over the boundary ropes. A typical start for Fahad Mia Channu. Well, it was a half tracker bowled with a half hot. Let's have a bit of experimentation. It's a pickup shot down the ground. How well has he timed that? How easily has he cleared the fielder at long off? I've literally got no words to describe that. Net practice being happening for Clifton Popular, and Fahad Mia Channu is not going to spare anything. He's saying to the bowler, don't bowl me rubbish, because you're going to get punished. Yeah, easy pickings for a man of Fahad's caliber. There he goes again. Look at that. He's entertaining this colourful crowd here in Karachi. I'm putting my money on 6 sixes in this over. Well, we have seen 4 already. Wicket. It's a reverse sweep. It's up in the air, not timed well enough. And that has been taken. Oh my goodness. What a catch this is. What an anti-climax this to the innings of Fahad Mia Channu. Fahad goes for 24 of just 5 deliveries. Whipped away. That's gone 1 bounce 4. It's pretty late. But it's just for the entertainment of the crowd. He has hit that down the ground. Mid on and mid off are both up. Has that gone all the way for 6? Yes, it has. That is it. Rightly so. It's the captain finishing off in style, hitting the winning runs in the most perfect fashion. A 6 to end the game for his side. And it's the second victory now for Clifton Popular in UBL Amin Karachi Table Premier League Season 3.
Rahim. Assalamu alaikum and good evening to all of you folks wherever you are in the world. We are here for match number 10 between DHA Dabangs and North Nawabs. Another exciting contest is in our hands and the toss has been won by the captain Yasir Mushtaq of DHA Dabangs and simple way of batting first. Plays the nicely ball right there. This length you want to achieve very early in the piece, in the block hole, because this altogether different ball game. This is tape ball. But maybe this is what he was waiting for in the slot, and first six of it, and it's from the bat of Waqas Sher. It was a good strike. He goes short, he goes through the offside. It's a big heave attempted. He gets an outside edge, and it's carried all the way. Would you believe that? Over cover. Unbelievable shot, isn't it? This is what I was mentioning. It'll be very hard to come back after that performance from his partner. He's going the journey. He's feeding him and getting the treatment. Full toss, didn't get the connection, but it's good enough for a boundary. Didn't get the desired result, was inside half of the bat. You cannot get away with these for a long time when you are bowling to Khurram Chakwal. It was high, it was long, it was maximum, and it's gone all the way. And bowled him, knocked him over! That is the response you can get from a talented fast bowler like Asif Pathan. He's got gold here. What a Yorker this was. Khurram Shehzad is gone for 11 of 7 deliveries. Nicely bowled, drilled hard. Oh my word, the fielder makes a mess of it. That's gone for 4. That ends the over. 3 overs done. It goes onside. It's high and handsome, beautifully connected. My word, it's a monster one from Arsalan. What a way to pick up his first maximum of the day. And now it's Arsalan. Outside edge. Oh, taken. Yes, good catch. The short third has pepper catch. Wicketkeeper Twat first. In the end, short third anticipated. And wicket goes down here off Arsalan. This is great piece of bowling from Tehran. Jamshed goes for 7, 61 for 2. Full toss. He goes leg side. It's high. Is it long enough? Yes, more than enough. I think it will destroy his over. Flicked away. Catched as a cry. Gone. Oh, drop. Taken 1 second finally. Relief for the bowler. And Waqas has to walk back. Waqas goes for 34, 70 for 3. What Yasir got in his armory or in his arsenal. Oh, he's got something big. He's got something big and important for his team. It's gone all the way for 6. Top edge, somebody wants it. And it's a caught and bowled. Perfect finish from Saifullah for his side, North Nawab. Wicket goes down here. So eventful over. The final over has come to a close and first innings has been wrapped up. 86. The score in the first innings picked up by Chaban. मोहम्मद उमर बॉलिंग का आगाज करेंगे डिफेंडिंग चैंपियन डीएचए दबंग के लिए। नॉर्थ नवाब के सामने, लेकिन अच्छी बैटिंग करना होगी। इस बार आउट होने का खतरा पहली ही गेंद पर, लेकिन और बहुत ही शानदार कैच लिया, जबरदस्त कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच। हम कहें कि अब तक कायनात टूर्नामेंट का बेहतरीन कैच हाफिज पोला की विकेट ये जो हासिल किया डीएचए दबंग ने पहली गेंद पर। और इस बार देखना होगा फुल टॉस वेस्ट साइड से ऊपर थी या नहीं। कैच आउट तो हुए, लेकिन अंपायर का सिग्नल नो बॉल। इस तरीके से ये फ्री हिट करार दी गई। इस बार सामने की जाने जोरदार हिट याहिया की। 6 रन हासिल हुए नॉर्थ नवाब को, पहली बड़ी हिट।
इसी तरीके से हाथ खुल जाते हैं फ्री हिट पे। और इस बार फुल टॉस गेंद बनाया और पहुंचाया लॉन्ग ऑन के बाहर। एक और छक्का, अच्छा हुआ तक नॉर्थ नवाब के लिए। और इस बार छक्का लगाया जैन ने। और इस बार बहुत ही शानदार फ्लिक फ्रॉम द टोज। 4 रन हासिल किए यहां जैन ने, जबरदस्त स्ट्रोक। और इस बार एक और जैन का शानदार कनेक्शन, गेंद गई बाउंड्री के बाहर। एक और जोरदार छक्का, बहुत ही एक्सपेंसिव ओवर है। इस बार आउट होने का खतरा, फील्डर गेंद की नीचे और इस तरीके से कैच लेने में कामयाब हुए। दूसरी कामयाबी हासिल हुई यहां डीएचए दबंग को। याया खान आउट हुए, 7 रन 4 गेंदें खेली उन्होंने। और इस बार जैन की जबरदस्त हिटिंग जारी, एक मरतबा फिर प्रॉपर कनेक्शन। और ये चौथा छक्का लगाया है जैन ने, जबरदस्त बैटिंग यंगस्टर की। और बिल्कुल वही सिलसिला जारी, लेकिन इस बार जैन आउट। फिर ट्राई किया था जैन ने, लेकिन इस बार गेंद थोड़ा सा तेज था, पेस ज्यादा रहा, जिसको पेस से डिसीव हुए यहां जैन। और ये तीसरी कामयाबी डिफेंडिंग चैंपियंस डीएचए दबंग की। अब इस बार जबरदस्त हिट, बहुत ही शानदार हिट, एबी पारो का जोरदार छक्का। बेहतरीन हिट यहां पर एबी पारो की। और इस बार जोरदार हिट, शानदार हिट यहां शफी आगा की। 6 रन। He goes big, he goes massive, and I think it's landed in the lap of the fielder. Oh, didn't catch it in the middle of the bat, but Waqas shared it the fielder. The umpires might have asked the batter to just wait. They might be checking the no ball. Here you see. Oh, it's gonna be very dangerous. I think it's over. The decision has been made. It's a no ball. Nicely bowled in the block hole. They can only get one. Well, look for 2. It's going to be a trouble here. It's all happening. Oh, it's very close. They have asked for a referral as the umpire on the field. I think that was a close case. That is going to be a close case. I get the feeling that the batter might be found short here. There you see, it's touch and go still, and the line belongs to the umpire. In fact, the decision has been made. So it's a wicket of the last ball. They could only score 1 run. Now Nawabs in the last ball. Another excellent this from the left arm seamer. Couldn't. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएचए क्रिकेट स्टेडियम, मोइन खान क्रिकेट एकेडमी, जहां केटीपीएल सीजन 3 2023 और आज का पहला मैच इस वक्त नॉर्थ नवाब और डीएचए दबंग के दरमियान खेला जा रहा है। और अब डीएचए दबंग दूसरी इनिंग 16 रन के इजाफे के साथ शुरू करेगी। और एंट्री बॉक्स में हमारे साथ मौजूद हैं राना अशफाक साहब। आसिफ पठान बॉलिंग की शुरुआत करेंगे सेकेंड इनिंग में। और ये पहली गेंद दूसरी इनिंग की। तो रन्स यहां पर नहीं होगा। आसिफ पठान का बॉल जो कि डॉट बॉल था। और पठान की अगली गेंद को उठा दिया है। गेंद हवा में बाती करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। छोटा विक्की ने कहा कि मेरा नाम छोटा विक्की नहीं है, मगर मेरे पास स्ट्रोक्स बहुत बड़े बड़े हैं। और इस बार गेंद को बड़े महसूस अंदाज में खेले, लेकिन शानदार अंदाज में गेंद को फील्डर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा से बातें करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। सैराम एक बार फिर। और इस बार गेंद को उठा दिया है और ये 6 रन होंगे किसी शक को शुबे के बगैर। वाओ शॉट यार, बड़ा जोरदार स्ट्रोक। इस बार गेंद को उठा दिया है खुर्रम चकवाल ने। क्या एक और छक्का इस ओवर में हम देखेंगे? जी बिल्कुल, तो बैक टू बैक छक्के। जी हाँ, इस बात में कोई शुबा नहीं कि बैट्समैन का मूड इस वक्त बहुत जारहाना है।
और विकी ने इस बार गेंद को उठाया है, काफी देर गेंद हवा में रही है, क्या ये छक्कों की हैट्रिक होगी और हो गई? एब्सोल्युटली राइट। छोटा विक्की करें कि नाम में क्या रखा है, छक्के तो भाई आइए और राना मैं ही मार रहा हूँ ना। सारे बड़ा महंगा ओवर है ये, 26 रन दे चुके हैं इस ओवर में, और एक और छक्का होगा। जी हो गया। वाह वाह, बॉलर जो हैं वो इस वक्त पूरी तरह से बैट्समैन के रहमो करम पे हैं। खुर्रम चकवाल, और बड़ा टेक्निकल खेले हैं, लेकिन फील्ड को वो अबूर नहीं कर पाए क्योंकि फील्डर यहां पर मौजूद है। आखिरी लम्हे तक निगाह रखी, को स्टेप और गली के ऊपर से वो निकालना चाहते थे, लेकिन फील्डर थोड़ा सा वाइड थे तो उनको इस कैच लेने में दिक्कत नहीं हुई। 3 गेंदों पर 6 रन बनाने के बाद डिपार्चर खुर्रम शहजाद चकवाल का। Knocked him over. That's a perfect sight for any fast bowler. Look at that off stump. That has been uprooted. A sight to behold for Saifullah. Harsan Damshel walking back after scoring 7. The Bungs are 58 for 2. Umar, the new batter in, and he has dispatched the first ball out of his sights on the leg side for a maximum. Wonderful start this from the newcomer. It's on the leg side, it picked up in the air, chance for the fielder, and this time he doesn't miss. It's a really good catch towards his right. And tell you what, it's Chota Vicky who has now been dismissed. Waqas went off for 40 runs, 68 for 3. Asif will once again come around the wicket. He goes after the ball, a first ball that has been tonked over, long gone. What a confident start this is from Mustafa. He's not going to hold himself back, opening his account with a maximum. It's a short delivery, try to play it out over extra cover. He does that, he finds the gap, and he's going to run away for it. Excellent timing and placement by Mustafa. Enjoying this game. It's a short delivery that has been launched over square leg. They want that big hit, they have got that hit. This time it's Umar who has cleared the field on the leg side. Short and wide. It's up in the air. Who wants it? Extra cover is getting underneath that, and he takes it really nicely indeed. Umar went for 15 on 6 deliveries. So the last ball of the innings coming up. Gets inside edge. It's going to go straight to the fielder at short fine. They'll get a single. Really good last over this from Saifullah. Just 9 runs, in fact, just 10 runs conceded. Which means the Bungs are going to finish off their innings on 89 for 4. Now they lead by 105 runs. Starts off with a shorter delivery that has been pulled away on the leg side. Will just get a run off his bowler. Definite change of plan for Umar. It's picked up. It's up. And it's long over the mid wicket. That's a reply from Hafiz bowler. Lovely shot, good wrist work. Short delivery. Chance for the fielder, take it. As soon as it has worked, not only for the bowler but for the fielding side as well. Hafiz once it has been dismissed for a low score. जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि आज ये हमारा मैच हो रहा है डीएचए वर्सेस नवाब, तो आप ये देखें कि ये जितने भी सारे के सारे इस वक्त यहाँ पे यंगस्टर्स खेल रहे हैं, ये वो लड़के थे सारे के सारे जो समझ लें स्ट्रीट बॉयज़ थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इन सबको यहाँ पे देखते हुए ज़बरदस्ती खुशी हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी एक सक्सेस है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि हमारे साथ स्टेट लाइफ जिस तरीके से इस पूरे मिशन में हमारे साथ, मैं चेयरमैन साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें इस पूरी लीग के अंदर जिस तरीके से सपोर्ट किया। एंड आई थिंक आप जितने भी चाहे पाकिस्तानी या बाहर के, एक सेकंड शुएब भाई आपको रुकना पड़ेगा कि और नुकसान हुआ है नॉर्थ नवाब को। यहाँ कॉट बिहाइंड हुए जैन, जिन्होंने पहली इनिंग में बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है नॉर्थ नवाब के सामने, लेकिन ये बहुत ही क्रूशल विकेट डिफेंडिंग चैंपियन डीएचए दबंग ने हासिल किया। आउटसाइड एज लगा और विकेटकीपर ने अच्छा कैच इनिंग का खात्मा किया। देखिए आपके माशाल्लाह मैनेजमेंट टीम है, टेक्निकल टीम है, इट हैज लेजेंड्स ऑफ द गेम। आप जब बात की बात कर रहे थे, देखें
from the concept कि 2 innings हों. It keeps the game engaged. And he has knocked him over. He has knocked him over. Beauty of a ball. Now North Marks deeper in mind. Deeper in soup. Oh, they are in dire straits. This time he has lofted him and lofted him beautifully, and it carried all the way for a magnificent 6. That's what I was talking about. A no ball and a 6. Maybe they heard your call, Rana. This is one of those magics, and they need more of these. And have a look at that boy. He's praying hard. Yeah, in that match in particular, Rub of the Ring just didn't go their way, as we see them celebrating. So it's over. They've managed only 50 runs in 6 overs, which means that DH at the Bungs have won the match by a big margin of 55 runs. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum and good evening to all of you wherever you are. We are up here for another entertaining clash between Gulshan Gohars and Malir Malangs. Match 12 of this UBL Amin presents KTPL Season 3. Earlier on, the news from the center has been that the captain of Gulshan Gohars, Badar Ali, has won the toss and has elected to bat first. Here we go. And this time he goes down the ground and we cut it off. They have a lot in place. Captain Daud Khan in a catching position. The missile is in a sublime form. He's heard your call and he's bowled a full toss and he's been hit downtown, but it's been caught. Well. Not a wicket-taking delivery, to be honest, but still he gets the reward. Taimur Mirza goes for 1. Not so this time. He's been picked away of the full toss. Your strengths are your weaknesses, and here is the evidence. And this time he's been picked away on the onside. It's going to be a 1-base boundary down to 4 leg. Sadeh, flying keeper, drops the ball. I think they've taken a rebound. They're claiming a catch. The slip fielder is claiming a catch. Umpire, I'm sure, will go upstairs. What's happening there, Rana? They are absolutely over the moon. Edge was found. Yeah, this is how it happened. Diving keeper, diving forward. That wasn't so easy. Good job. What a terrific catch. To me, Badar Ali making his way back to the dugout for just 11. Now, what about that? That's a beautiful stroke. That is all about timing. That is effortless over mid-off for the maximum. I think he's knocked him over. Yes, he's gone in. A little bit of inside edge and through it goes and disturbs the timber. he goes for 4 and it's 3 down for 42. Full toss through the offside he goes, and it's going down towards the third man boundary. The fielder is given the chase. Ball wins the race. Another boundary. This time he goes downtown and he goes massive off, over mid-off. What a strike. और इस बार सामने की जानिब इलियास का जबरदस्त कनेक्शन, गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर अपने ही डग आउट में, अपनी मालिक डग आउट में शानदार छक्का। बड़ी कमाल क्लीन हिटिंग करते हैं इलियास जानी
और इस बार ऑफ वॉली गेंद थी एक्स्ट्रा कवर की जाने खूबसूरती से खिला और 4 रन हासिल किए जानी ने। अली बॉल करी और इस बार फुल टॉस गेंद थी जिसका पूरा फायदा उठाया बैटर ने और ऑन साइड पर जोरदार छक्का लगाया। यहाँ बॉल होती रही तो शायद रजा अपनी नींद में भी छक्के लगा लेंगे। इस बार बैकफुट पर रहे और गैप तलाश करके खेले हैं। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर रजा। और रजा वेरी वेल प्लेड। रजा परफेक्ट क्रिकेटिंग शॉट, जबरदस्त किस्म का ड्राइव, 4 रन हासिल किए यहाँ रजा ने। वेरी वेल प्लेड, शानदार स्ट्रोक, बहुत ही अच्छा छक्का लगाया। यहाँ पर ब्लॉक होल्ड में गेंद थी जिसको सामने की जानिब स्ट्रेट हिट लगाई, 6 रन हासिल किए रजा ने। ऑन साइड की जानिब जोरदार हिट और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। एक और छक्का, खुशी दिखाई दे रही है गोवा के डग आउट में। इस बार हवा में ज्यादा खेल गए, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, देखना होगा कि वो गेंद को थामते हैं या नहीं और कैच लेने में कामयाब हुए। इस तरह इनिंग का इख्तिताम हुआ यहाँ गुलशन गौहर की इस विकेट के साथ। 119 फॉर 4 आफ्टर 6 ओवर्स। So it's all set here for the second innings. Nicely bowled outside edge and a wicket of the first ball. Drama already. And it's Pathan who has just come and gone. Dal Khan just did not even want to leave. He was looking at the pitch. Well, he's gone without troubling the scorer. They are not for one. Get a freebie and dispatch it downtown to get yourself off the mark. Full toss through the offside, goes over, covers. That will run away to the boundary for 4. Goes down the ground, goes hard, goes long, goes flat, goes all the way. That just went the mid-off fielder's head, but still it was hit so hard and so flat. He goes massive this time, through the onside, it's into the stands. Well, off measures when you talk about Mimran. He has been scintillating so far in this tournament for Mali Malang. That's hit hard, and it's handsome. It's going all the way. It's gone. Well, he's just dealing in sixes, Mimran. Nicely hit. That is smashed away over long on. He'll leave and gets the connection. He goes again, this time over squared, and it's a monstrous. It's another one. Seconds, it's on the trot here. Well, there's no stopping Mimran tonight. This time it's a sound of the bat, which is a cracker, and it's a boundary over extra course. And he played one. He played one magnificently, and it has gone way back. What a terrific 6. It is in the air, but it will over the top of the fielders and will go down to the boundary as well. This one is in the air. Fielder is coming. Oh, he came under the ball. Ball came in his hands and then popped out. A catch has gone down. And there you go. There you go. Go and fetch it back. The moment it left the bat, it was a 6 shot. Yeah. Wow. Half century, 18 balls consumed. He got to 52. Oh, he has cut that away and cut that away over wide mid-wicket. 6 more runs coming from the bats of both the batsmen now. Oh, this is a colossal one.
straight down the ground. What a good hit. Oh, he's hit it in the air. It is going, and gone over long off for another 6. And this one is whipped it away. This one is whipped away rather. Down towards the backward square leg for 4. Here is the last ball. If it won't be a no or wide. He has belted that and belted that with some brutality. Some disdain was there. 136 for 1 where they finished the innings and they have got the lead of 17 and Memran missed his half century by just a single. वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं डीएचए स्पोर्ट्स क्लब वन एकेडमी केटीपीएल सीजन 3 की 7वीं रात। 17 रन्स की लीड हासिल कर रखी है यहाँ पे मलीर मलंग्स ने। बहुत ही उम्दा कारकर्दगी इनकी पिछली इनिंग्स में। तीसरी इनिंग का खेल शुरू। फार एंड की जानिब से ग्राउंड के मशरकी हिस्से से दौड़ना शुरू करेंगे माजिद गोली और उनके सामने ननेल स्पॉट तैमूर मिर्जा। पहली गेंद तैमूर मिर्जा ने अपने हाथ दिखाए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा जोरदार छक्का। तैमूर मिर्जा वर्सेस माजिद गोली, मुकाबले के अंदर मुकाबला, कॉन्टेस्ट विद इन द कॉन्टेस्ट। तैमूर मिर्जा का जोरदार शॉट, गेंद स्टिल हवा में है और अब नीचे आ रही है। बड़ा खूबसूरत और जोरदार छक्का और इस गेंद को स्विंग कर दिया ऑन साइड पे। गेंद मिड विकेट बाउंड्री की जानिब रवां दवा है और कुछ टप्पे खाकर बाउंड्री से बाहर 4 रन। इस गेंद को ऊंचा खेले, फील्डर बैक हो रहे हैं, पैडल बैक होते हुए अच्छा कैच किया। माजिद गोली की सेलिब्रेशन देखने से ताल्लुक रखती है, होनी भी चाहिए क्योंकि किसी और को आउट नहीं किया इन्होंने। ही हैज गॉट द विकेट ऑफ तैमूर मिर्जा। बड़ा शिकार करने में कामयाब एक मरतबा फिर माजिद गोली। इस गेंद को ऑफ साइड में खेले, अप एंड ओवर, गेंद बाहर, 4 रन। इस गेंद ऑन साइड में खेल दिया है, गेंद फाइन लेग की जानिब दौड़ी चली जा रही है और बाउंड्री से बाहर 4 रन। इस गेंद को ऑन साइड में खेल दिया, खूबसूरत शॉट, 1 बाउंस, दूसरा बाउंस बाउंड्री से बाहर, चौका। Picked away on the leg side, all across the turf. That's going to run away for 4. Not out of the middle of his bat, but he'll take it nevertheless, Bahadur lefty. Not the best of his boundaries, but it's a streaky one. Once again, hit that flat on the leg side. There is a field out in deep. That has run away for 4 as well. Better effort was required from the fielder at deep mid wicket. Hit away straight, it's up in the air, and tell you what, that is a monstrous hit from Bahadur lefty. Couldn't finish off the over well, Ali Chota. 16 of the over. He goes straight. And he goes just over off. That was in the air for quite a bit of time. That's why the longer fielder thought he was there within a chance of taking it. It's a full toss. It's there to be hit. And that has travelled many a mile. Not a good delivery for Ubaid. Once again, Ubaid has got a hammering here. Second 6 is conceded, and it's a full toss, a juicy one on middle stump. Short and wide. Carved away on the offside. Has that gone all the way for 6? No, 1 bounce into the fence. But a proper cricketing stroke this time from Ilyas. It's full, swung away on the leg side. It went hard just past the fielder at mid-wicket, and that's run away for 4. And the ball might have hit one of the spectators as well. Lovely shot. This time he got the line right, but not a good length from Fazal Afridi. Knocked him over. Beautiful delivery this time by Fazal Afridi. You could see that ball tailing into the left-hander. Perfect side for any fast bowler.
And he gets the reward by removing Bahadur Lefty out of the scene. Knocked him over. That's a beauty of a ball from Fazal. Once again, it swinging into the right-hander. 2 wickets in the last over. And Ilyas Dani goes back after a cameo. It's 95 for 3. Once again hitting the boot. They will only get a single. Ahsan Chitta once again running for the second one, but it's going to be an easy run out at the bowler's end. The Gulshan Gohar are going to finish on 99 for 4, which means they lead by just 82 runs in the third innings. रन की इस मैच में जीत के लिए जरूरत होगी मलीर मलंग की टीम को। और आधी गेंद को उन्होंने उठा दिया है और गेंद एक बोल्स के बाद तमाशाइयों के दरमियान पहला छक्का, पहली गेंद इस ओवर में आखिरी मर्तबा। और इस बार बहुत ही उम्दा ये कैच हो सकते थे और ये हाथ में आके दूसरी अटेम्प्ट में ये कैच छूट गया। बड़ी की विकेट होती। हसन इसी दौरान अपनी अगली गेंद करने के लिए तैयार हुए और इस बार ड्राइव किया है, खूब खेल है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर।